Hi everyone, a very good morning to all of you. How are you all? I see a lot of energy in the chat box. Hello, good morning, all of you who are already here. Chahat, the recording for various sessions on YouTube is always available, okay? So you don't have to worry about it. Hello. Yes, let's go. Good morning, all of you. Let's begin. So, before I begin, what will we do today? You know that broadly we are going to talk about RC passages. But in RC passages, we will specifically see how to select RC passages, which questions to attempt, which questions to leave, how to decide that, and how to prepare for any surprises that RC passages might throw my way. Right? So some of you have done some such sessions with me in our regular classes, but for some of you this will be entirely new. Right? So let's have a look at this. Swati, am I audible to everybody? Portal par bhi. Okay, Ahmed, noted. Perfect. Right, so I have 3 RC passages today, okay, and what we'll see is, first of all, we will select one passage, okay. So I'll ask you which passage would you select in the exam, and based on that we will attempt that first. We'll rank them first, right, and we'll see how to do that actually, what should be our criteria. So this is your first passage. Now how would you decide how, in what order should you place this passage? Tell me. Sure, Vignesh. Yes, Suryansh, it's been a long time. Am I properly audible to everybody? Because I am using my mic here, the one that podcasters use. Perfect. All right. Thank you. A perfect overview. Abhishek is saying, sorry, a quick overview. So, a quick overview would mean that, you read some such sentences, right? So, before we do that, yes, let me address this. Yeah, the audio from my end looks good. Okay. Just let me see if there's something that I can do. Right. Okay. More people are joining. All right. Let's wait. 1 to 2 sentences from each paragraph. Okay. So 1 to 2 sentences, let's say, basically, just looking at the opening sentences of various paragraph can help us at times. And especially I would encourage you to not just stick to the opening paragraph. A lot of students do this. They just read the opening paragraph. But sometimes that's not a good strategy. Why do you think? Yes, Chahat, absolutely. That's because, let's say, in the first paragraph, I am narrating an anecdote, right? Now, that anecdote is not the main point of the passage. The main point comes from the second paragraph onwards, right? So, the anecdote is just to establish a relationship, just to engage the reader, or just to give an analogy, a sort of a similarity between two situations. So, don't just stick to the opening paragraph. Okay, and yes, you are right. We'll look at the first couple of sentences. Okay, so for instance, let's do it here rather than my telling you this theoretically. So in passage 1, this says, I was in a room of men. Now, it's in the first person, so probably it will be a narrative passage, right? Probably, because here also in the second paragraph I see, I was at the Chittanuga Convention Center for Project Voice.
a major gathering for software developers, venture capitalists, and entrepreneurs in conversational AI. Okay, so this to me looks readable, looks narrative and topical. It's not very abstract. Perhaps talks about AI. And then I verified, oh yes, AI is here as well, AI is here as well, here as well. Yes, this passage is perhaps talking about AI. Yes, so looks interesting. So what we did see, we read the first couple of sentences. I looked at the difficulty level. Right, they seemed, when it says I was in a room full of men, right, so it tells me that the language is not very difficult. Here also it doesn't seem very difficult, right? And so the second thing I saw apart from the difficulty level was that the genre, which was AI technology, it was topical, and it is something that I have read stuff about. Okay, I have read articles about, right? And fortunately here I could also gauge the tone, but that's not always the case. So here I could see that it's a narrative tone. Narrative means a storytelling tone. Okay, so this may not always be the case, but yes, these two things, the genre, the broad topic, this is something that you can gauge by reading just 2 or 3 sentences. 2 to 3 sentences. That's what we did, right? Okay, from the passage. Don't just stick to the opening paragraph. Okay, don't stick only to the opening paragraph. This is something that you have to remember. And yes, the density of the passage, the difficulty level of the sentences. So this is what I saw. Anything else that I need to see? So if you notice, now let's compare it with the other passages. So focus on the length of this passage, and let me show you passage 2. Passage 2 also appears to be of a similar length. Again, we'll repeat this exercise, right? So do this. Read first couple of sentences. Let's say I read this. In 1967, Noam Chomsky published an essay in the New York Review of Books on the responsibility of intellectuals. Chomsky pushed MacDonald's question further. What, he asked, are the special moral responsibilities of intellectuals? So, looks probably more, I would not say entirely abstract, it's not entirely abstract, but yes, more abstract than the previous one. The length is also similar, right? The sentences, while there it was quite a story, so they were pretty easy to comprehend, at least the ones that we read. Here I could say relatively, I would not say completely, but relatively more challenging or difficult, right? Okay, now let's have a look at the third passage, right? So this is our third passage. What do you think about the length of this passage? Do you notice that the font size has gone bigger? Ayush is saying Chomsky is the sign to not pick. I understand. Abhishek, I agree. It is shorter than actually the first and the second both, right? That's why I could actually put a higher font size here. Okay. Now, again, we'll do the same exercise. It says, in his essay, Persecution and the Art of Writing, the political philosopher Leo Strauss painted a picture of intellectual life that should offend me as a person with political commitments to democracy and egalitarianism, and philosophical commitments to pluralism and against monism. Okay, so I see isms. Yes, this is abstract, isn't it? It is going to talk about philosophy. It looks like it, at least, right? The language also appears to be challenging. So now, however, this is shorter, and
it is followed by only 3 questions. Shorter. So although in the exam you won't get to know the exact word count, but here I can tell you the word count. It is approximately 400 words. Approx. Less than that actually. Okay, and it has 3 questions. So what will you do? Yes, vocabulary could do that, but you can learn to navigate it, as not all the words are important for you to answer questions. Remember, CAT does not question you on jargon, technical words. It rather questions you on ideas. Okay, 1, 2, 3, 2, 1, 3. Acha, one more piece of information that I would like to add. Passage 2 has 4 questions, right? And passage 1 has 5 questions. Okay. So, passage 1 has 5 questions, approximately 500, this is 565 actually. So, 565 words, 5 questions. Passage 2 is approx 500 words, actually 480 something. And this is 4 questions. So now a new element has been added for you, which you haven't seen in the last few years since 2021. Differing lengths of the passages and differing questions, differing number of questions. Okay. What is abstract? Abstract means something that's not very topical. For example, if I talk to you about what is the purpose of my existence, right? That is not something that's very topical, right? As in, not something related to currently what is happening. It's an evergreen question. It's a deep intellectual question. So such passages that are more philosophical, they tend to be abstract, right? Okay, 1, 3, 2. So basic, what I can see in the chat box is that 1 reigns supreme. So let's begin with passage 1. Yes, passage 1. Okay, let's do that. Doesn't matter how many questions. Right. So I absolutely agree that because see, the number of questions doesn't vary drastically. It's not like a choice between 6 questions versus 3 questions, right? So between 5 and 4 questions, I would be a little agnostic about the number of questions here, meaning that would not affect me so much. I would just look at the topic and decide. So between passage 1 and 2, probably I would prefer passage 1 in the exam, right? So this is how I would decide, and passage 3 appears to be philosophical, so I would not attempt it right away in the beginning. So for me, I think the first passage is going to be passage 1, right? And I can see for a lot of you as well. So let's attempt this. Let's read this. I will give you 4 minutes to read this. I think that's a lot of time. Okay. So read it, and once you are done, you can let me know in the chat box, right? Then we'll proceed to the questions. So yes, which way do you want to go about it? I think for this passage we can do this, that first you attempt the questions and then we discuss it. We discuss the entire passage and questions. Right? That works? Chalo then. Let's go. Let's start.
So Mr. PK, have you also finished? Let's go to the questions then. Perfect. So this is your first question. Take approximately 90 seconds and tell me the answer. All right, I've got a lot of responses already. See, so you are answering within time limits, so don't worry, relax. Okay, have faith in yourself. Okay, B, C, D, all right. I see a lot of B's though in the chat box. Right, so B is the answer here. We will discuss this, okay? Let's see. Okay, the second question again, 90 seconds. Let's go. So see, 1 minute has elapsed now, okay, and I can already see many responses. So yes, you are answering well within time limits. Good. Okay, so I see C, D, a few A's as well. Okay, all right, B as well. Okay, so pretty much all the options I can see here. So why does the author begin a detailed description? Okay, so the answer here is A. Okay, we will discuss again, don't worry. Okay, let's see the third question.
So 60 seconds have elapsed now. Okay, you still have 30 seconds. Okay, A, B, C. All right, so basically you've eliminated D. Good that you've eliminated D. Why did it feel like a setup for failure? Okay, so the answer here is A. Okay, these, I mean, two similar questions we have, but they are different actually. We'll discuss, don't worry. Okay, let's see this one. Okay, so it's been 1 minute 10 seconds and I see a lot of responses already. Confused between B and D. All right. Okay, B and D. All right. We will discuss this again. This seems to be a tricky question for you. The answer here is C. Okay, we'll discuss this again. Don't worry. The answer was C. Let's see this one. Okay, it's again been 1 minute 6 seconds and I see many responses. What is the functional advantage? C. Okay, interesting. The answer is D, Delhi. Okay, D, Delhi. Passage, yes. So this is that kind of a passage where the options are close. Okay, at least for some of the questions, not all the questions, but at least for some of the questions the options are close. Okay, so we will discuss this, don't worry. And if you again pick up your CAT 2023 and 24 papers, you will see such passages. So what I sometimes see is that students just keep practicing abstract RCs. They don't practice topical RCs. But if you pick up your 23-24 papers, there are topical RCs as well. And they are the kinds of RCs that are easy to read.
but the questions, the options sometimes are tricky. Okay, so do practice such RCs also. Okay, all right. Let's have a look at all the questions here. Now, the first question said the author mentions their previous job. Why do they mention it? Impersonating a chatbot for a real estate startup in order to. So, what is the purpose? So, let's see where they mention their first job. In this paragraph, right? The author says the magazine in question was this one. Bradley, the person who invited the author for the conference, had read my essay Human Fallback in N+1's Winter 2022 issue, in which I described my year impersonating a chatbot for a real estate startup. So when the author introduces it, the author says that Bradley had read my essay about this. Okay, all right. A lonely year. So this period was a lonely year, a depressing charade. It had made an impression on Bradley. It had made an impression on Bradley. Right. He asked if I would attend Project Voice as the honorary contrarian speaker, a title bestowed each year on a public figure, often a journalist, who has expressed objections to conversational AI. So tell me, why does the author mention their job? Yes, the author mentions their job because they want to give you a context as to why Bradley contacted them, why they were invited for this conference, isn't it? So that's why the author mentions this. So to provide the biographical context for the conference invitation and explain the origin of their contrarian views. So it is said that, basically the author here, he asked if I would attend Project Voice as the honorary contrarian speaker, right? So basically here they had written an article, an essay called Human Fallback, and they described this year as a lonely year, a depressing charade, which according to Bradley, in Bradley's circles, this was contrarian. This was a contrarian view, right? So the idea behind introducing it is primarily to give you a context as to why, what are their, why were they invited in the first place. Now, I understand that some of you must have marked C, yes, thinking that the author does draw a parallel when the author says towards the end, still I accepted the invitation for the same reason I took the job with the real estate startup. It was a paid opportunity and seemed like something I could write about. Now notice that the parallel is between the author's reasons for accepting the job. The similarity is in the reasons the author accepted both jobs. We can't go as far as to say, to draw a subtle parallel between the depressing charade of their former job and the perceived insincerity of their role at the conference. That kind of a comparison has not been made in the passage. Okay, also depressing charade, this depressing here has been used for this job, real estate job. The author doesn't go as far as to call the invitation for the role of honorary contrarian speaker as depressing. Okay, I hope this is clear to you. All right. So some of you are asking me to explain the passage. The passage details, the passage narrates the story. Basically a person is telling you about how they were invited to be a speaker at a conference. It was an AI conference, okay, and they were invited as a contrarian speaker. What is the meaning of this word, contrarian? Contrarian. Somebody who is against, whose views are against the prevalent views of the time. That person is contrarian, right? So here the author opens the passage by telling you, I was in a room of men. Every man was overgroomed. Checked shirt, cologne behind the ears, deluxe bed or clean shaven jaw. Their conversations bounced around me in jolly rat-a-tats. Rat-a-tats, basically rat-tat means rapping sound. So to the author they were like rapping sounds. But the argot, the jargon is called argot. The argot evaded interpretation. All I made out, all I could understand were acronyms.
short forms, and discerning grunts. Okay, that kind of a sound. Back slaps, slapping on each other backs. A mannered nonchalance. So they appeared to be well mannered, but it was a well mannered nonchalance. Oh, we just don't care, right? That sort of an attitude. So this is how the author opens the passage for you. Then the author tells you that they were at this convention center for Project Voice. It was a gathering for software developers, venture capitalists, entrepreneurs in conversational AI that talks to you, right? Converses with you. And then the author gives the details of the conference. It was in its 8th year. It was run by this person named Bradley Metrock. He was tall. Okay, he had this frat boy energy. Frat boy energy, what does this mean? Absolutely correct. Your answer's on contrarian, I just saw. Frat boy, basically, in schools and colleges in the West, there are fraternities. Fraternities which were traditionally groups of boys, okay, societies of boys, and they used to do extracurricular activities, okay, and meet up, etc. So frat boy energy, that kind of an energy that a boy would exude at a fraternity gathering, who is, per his professional bio, a leading thought leader in voice tech. Okay, so the author is putting it in double quotes. That means the author is being slightly skeptical of this leading thought leader. I'm a conservative guy, he said to me on a Zoom call some week prior. I was like, what kind of magazine is this? So this is Bradley speaking, okay? Who is saying this? Bradley. What kind of magazine is this? Seems pretty out there. Pretty out there. What would that mean? Out there. Unusual. Okay. The magazine is unusual as per Bradley's view, because Bradley feels that the views that this author has expressed, right, they in Bradley's world are contrarian views, right? That's why the magazine seems unusual to him. Okay. So then he invites the author that, come to this conference. And what was she expected to do? What were they expected to do? Sorry. As part of my contrarian duties, I was to close out the conference with a 30-minute speech to an audience of 500, a sort of valedictory of grievances, I gathered. Basically, she was expected to give a valedictory speech, the one that is given at graduations, and grievances, because the author was supposed to tell what was wrong with AI, right? So I hope this is clear to you, the setup of it. Okay. Now the author will express her views. So that, like, why am I giving this? Why am I giving this speech again? So that what? So that no one could accuse the AI pioneers of ignoring existential threats to culture. They just want that, they just want to show, oh, we are very open-minded people. Look, we entertain others' views as well, right? Opposing views as well. To facilitate a brief moment, because see, this is a 30-minute talk. Okay. And I read this somewhere. This was a 3-day conference. Maybe I haven't included that excerpt, but yes, it's originally a 3-day conference. To facilitate a brief moment of self-flagellation before everyone hit the bars. Self-flagellation. What does this mean? Self-flagellation. So this passage is easy to read, but it's very rich in terms of the tone, in terms of, let's say, the vocabulary, the kind of words that the author has chosen, argot, rat-a-tats, self-flagellation, right? So what does that mean? Actually, you know what? The word comes from flogging. Okay, so but it is no longer used in that sense. I mean, it could be, but it is more used in the sense of excessive criticism of oneself. Okay, excessive criticism of oneself. So to facilitate a brief moment of self-flagellation before everyone hit the bars. I wasn't sure, but I sensed my presence has less to do with balance and more to do with sport. Bradley kept using the word exciting. It's a very common word used in the corporate sector, an overused word. An exciting new project has come up.
Okay, anyway, I wondered, yes, it if you look at it deeply, it is a layered passage, right? I got confused while reading the passage. Okay, so per what exactly in? I wondered if I should be offended by my contrarian designation, which positioned AI as the de facto orthodoxy and framed any argument I could make as the inevitable expression of my antagonistic pathology. Now, this is important to understand. So, it says that, my designation, the honorary contrarian speaker designation, it positioned AI as the de facto, by default, orthodoxy. Orthodoxy is established belief. That by default, this is the this is the established belief, AI, and framed any argument I could make as the inevitable expression of my antagonistic. What is antagonism? A feeling of hostility, right? My hostile pathology. What is pathology? Basically, when somebody has this tendency to do something, right? And usually a tendency that is seen on the verge of being a disease of sorts, right? That it's my hostile tendency. And pathology is something, a kind of tendency that verges on the being of a disease, right? On being a disease. So this is the problem that the author has, and this will answer two questions, this paragraph, it will answer your 2 to 3 questions. So the author has a problem. The author feels that the problem in her designation, when you call somebody contrarian, what are you trying to say? Contrarian is somebody whose views clash with the prevailing views of the times. So you are trying to say that it's a problem with their own views, their own tendencies, their hostile nature, their personal disposition is again your inclination, your tendency. Do you realize why the choice that I told you there was the answer? Okay, so that's the problem that the author has with her title. ये problem है title के साथ, contrarian title के साथ. Now, why does the author think that they were being set up for failure? The more I thought about it, the more I became convinced I was being set up for failure. Why? Is it just because of the designation? Not really. We have to read further. Okay, we have to take the passage in its entirety. Recent discussion of conversational AI has tended to treat the technology as a monolithic force. When we think of AI, we think ChatGPT as if it's a monolithic force. Monolith, something made of single stones, something that is a single overwhelming force. So we tend to think of AI as simply something synonymous with ChatGPT. Okay, capable of both cultural upheaval and benign comedy, right? Sometimes, yes, ChatGPT can result in humorous situations. But conversational AI encloses a vast, teeming domain full of activity, a domain full of activity. The term refers to any technology you can talk to the way you would talk to a person, and also includes any software that uses large language models to modify, translate, interpret, or forge written or spoken words. The field is motley. What is motley? Again, a combination of various things. Okay. Prodigious, something that produces a lot, with countless companies speculating in their own little corners. There are companies that make telemarketing tools, psychotherapy chatbots, essay writing aids. There are conversational banking apps, avatars that take food orders, and virtual assistants for every industry under the sun. There are companies cloning celebrity voices so that an American actor can, for example, film in a commercial in Dutch. So this is the part that you could read relatively speedily, because here we have examples, right? The field is so crowded and the hype is so loud that to offset a 3-day circus, look at the author's tone, to offset a 3-day circus with 30 minutes of counterpoint is to practically coerce the critique into abstractions.
So the author feels that she is being set up for failure not just because of her designation, because of the fact that this is such a vast teeming field. And what was she being given? She was being given 30 minutes in a 3-day conference. So in such short time, you will just be able to make only very general observations. Your critique will be very abstract, very general. You'll not be able to make any specific recommendations. So she was they were practically being coerced, being forced, okay, to actually make her criticism abstract, very generic. And when something is very generic, it hardly is implementable, right? Still, I accepted the invitation for the same reason I took the job with the real estate startup. It was a paid opportunity and seemed like something I could write about. Right? So I hope इसके अराउंड समझ में आता. That's absolutely okay. So now I am explaining this in depth to you because some of you asked me to explain the full passage, the whole passage. Otherwise, when you are reading, a lot of times, for instance, let's say you don't know the meaning of rat-tat, that's absolutely okay, right? If you don't know the meaning of self-flagellation, from the surrounding words, you can guess that it probably talks about criticism. So even that is fine, okay? Yes. Chalo. Now we can attempt the questions, we can discuss the questions. So now is this clear to you? Why does the author mention about her previous job in the first place here? Yeah, third paragraph. Okay. And why C not the answer? Because the similarity that has been drawn towards the end is the parallel that has been drawn towards the end is in the reason behind accepting the job, right? Nowhere does the author very even subtly, I don't see this comparison being made between the two jobs. Okay, parallel नहीं हुआ draw. ठीक है, the author is saying ये depressing था, the author is saying ये insincere लग रहा है, पर parallel draw करना aim है, ये हम खुद से नहीं बोल सकते, right? So B is the answer. Okay. A established their credentials as an expert with hands-on experience in the conversational AI industry. Does the author say this or imply this at any point that she is an expert with hands-on experience? My years of experience had actually positioned me to take this role. No. Illustrate the loneliness and alienation that can result from working in the technology sector. Now this is very broad, very generic, the kind of option that you should eliminate in the technology sector. The technology sector is much more than AI, isn't it? है ना? So ये वाला option सबको eliminate करना था. It's very important to know which was the option that you should have definitely eliminated, right? Okay. The author begins the passage with a detailed description of the men at the conference. Now, why does she talk about this? See, she's opening the passage like this. The moment I read, I was in a room of men. So that's why I was saying she time and again, because I sort of assumed, which may not turn out to be correct, it's just an assumption that this has been written by a woman perhaps, right? I was in a room of men. Every man was overgroomed. So the author is really feeling out of place here. Do you see? The argot, the jargon evaded interpretation. She's not able to understand the jargon. All I could understand were acronyms and discerning grunts, backslaps, a mannered nonchalance. So why does the author do this? To talk about her alienation. Okay, to actually indicate her alienation. So the word alienation is very, the moment I read it, I felt, oh, she's feeling left out. She's feeling out of place. So this word fits here. Now, some of you have marked C as the answer, and I understand that also. But tell me, have we really discussed the industry's intellectual output? Let's say the quality of research in the AI industry that is happening. Or has she critiqued the output, or has she just given you examples as to what all is happening? In my opinion, she is not critiquing the intellectual output, right? She's just giving examples. So, eliminated. Okay. This makes sense. Okay, that this alienation is something that is being established, and we also see a difficulty in understanding the jargon of the field. Okay, the jargon of the field, right?
So that is why A over C, because the output bit is not something that I saw in this passage. I understand, Abhishek. That is why we are practicing. That's the goal today, right? To make you notice them. Now, B says personal disdain. Again, the kind of option that should have been absolutely eliminated. A personal disdain for the attendees. What is disdain? When you look down upon a person, right? You feel that kind of a feeling. Yeah, you're a condescending dislike is disdain. Okay, so the author has not got so personal anywhere, right? And we can reject this and should have been eliminated. I would call this extreme, in the sense that personal disdain becomes a little hyperbolic. So some of you, if you know the Rodha method of elimination, H is for hyperbole, exaggeration, right? So ये exaggerate कर रहा है. D says provide a vivid backdrop for the introduction of the conference organizer whose personality is a reflection of the attendees. No. It's not focused on Bradley so much. Bradley is not the hero of this passage, right? So it's not about Bradley, that he is a reflection of them. Right? So this is missing the point. Yes? This is tangential. This is a distractor. It's making interpretations that are not there. Megha, so it's good to go back once to find evidence in the passage. So for example, when I would attempt this question, I would also go back and see, okay, setup for failure. What information surrounds this? I would read this, but I would also read this bit, right? So it is fine to go back. Don't think that it is not. Okay, according to the author, the role of honorary contrarian speaker felt like a setup for failure. Look at the focus. The focus is not on the title right now. Why did the author feel offended with the title? No, that's not the question. The question is, why did she feel? Why did they feel that they are being set up for failure? Right? So that's the question. So they felt that they are being set up for failure because of this bit here. That they felt, 30 minutes in a 3-day conference, you're giving me that. And that way, I'll just be able to make very, very generic points. Right? For something so vast, this is what I am being given. So the vast and fragmented nature of the conversational AI field forces any short critique into ineffective abstractions. That is why, failure, success, just think, okay. In the exam also, in the time pressure, read the question stem very carefully. The passage is focused on failure or success. Failure or success depends on how effective you are, isn't it? Have you been able to do your job well or not? So here the author feels she will not even be able to do her job well. The author is a woman, okay? I know this. I read the whole bit. I can't, I'm getting confused between she and they. The author is a she, okay? It's mentioned later. अब मैं she बोलूँगी. So the field is so crowded and the hype is so loud that to offset a 3-day circus with 30 minutes of counterpoint is to practically coerce the critique into abstractions. ये यहाँ से answer आना था इसका, okay? So A is the answer. Now, okay, coming to B. The title itself framed their objections as a pathological antagonism rather than a legitimate intellectual position. I am sure a lot of you marked this. I understand that, but the question is not about her idea of being offended by the title. It's about why she thinks she will fail. Okay? Right. No, this is not a cat passage. Our content team created these questions. Now, the audience of industry, I'll just tell you, Sripati, I'll tell you. The audience of industry insiders was presumed to be more interested in the sport of a debate than in genuine self-reflection. While, okay, what kind of an option is this? It feels true, right? It is true because it says that it felt like a sport, right? So it is true, but is it addressing the question? Again, it's a distractor, right? It is distorted. In fact, I would say this is a distractor meant to distract you. You see something that's true as per the passage and you end up marking it. But is it answering the question? Right? Yes, Tinder option भी बोलते हैं KD sir उसको. Absolutely. D.
The monolithic public perception of AI as ChatGPT makes it difficult to address. This is not at all the reason why she fell. ChatGPT alone was not the reason why she fell. She was being set up for failure. Okay, so eliminated. All right, and A is the answer. I hope this is clear to everybody. Okay, can I explain A again? So why did the author feel that she is likely to fail at the job that she was assigned, this role of delivering a 30-minute speech? So why does the author feel that she was being set up for failure? Set up for failure because in what ways will the author be ineffective? That is what you had to fill here after this because. So in what ways will she be ineffective? She'll not be able to provide any meaningful critique, any meaningful implementable suggestions in just 30 minutes for a field so vast. That's the reason why A is the answer. Is this clear now? Title पे question होता then yes. अब yes title पे है ना question Amisha. The very next question is on title, isn't it? So here yes, this is what I would see. This idea that framed their objections as a pathological antagonism. Pathology is again your personal tendency, something that verges on a disease, right? Something that is so strong. Antagonism is hostile. Remember this, right? And this will come in handy for this question. The author's primary objection to being designated the honorary speaker, right, is that the title. All right, let's look at the options. A says implies that their role is merely symbolic and lacks real influence on the conference's proceedings. So this is the part we saw in the previous question, being set up for failure, that she feels that she'll not have any real influence, right? Being set up for failure. So this is not the reason why she's offended with the title itself. Contrarian. Her problem is with this word, contrarian. When you label somebody as a contrarian and iconoclast, right? Let me give you some synonyms. Iconoclast. That means this person is going against what is the norm, against the views that are widely accepted. So B positions the conversational AI industry as an established orthodoxy, making any dissenting view seem marginal. This is a very close option. So B and C are actually close. In fact, some of you may have rejected C because of personal disposition. Okay. But look at B. B is saying that her dissent, that her views will seem marginal. Marginal means something that is not mainstream, right? Something that is not mainstream. So these views are held by fewer people in the society, right? Fewer people will hold this. Okay. However, when I look at C, it says preemptively. What is the meaning of preemptive? Yes. Preemptive. Something that even before the happening of something prevents it. Preemptively. Right. So if let's say you, a lot of times countries go for a preemptive strike on their enemy when they feel the enemy is about to strike them. So in order to protect themselves in advance, they'll strike. That is called a preemptive strike. So preemptively reframes their intellectual critique as a personal disposition, right? So she was offended because it was being made to look that she is the one with the problem, okay? That it's because of her own personal hostility, or probably a personal vendetta, a personal hostility. That is why she is saying such things. So that, what will that have? It will neutralize, it will just cancel out any potential impact that she has. So while in B I am saying that the impact is marginal, यहाँ पर उसका impact कम है, कम लोग ये view hold करते हैं, यहाँ पर तो उसका कोई impact ही नहीं होगा. Isn't it? So what is she primarily offended by? Not that what she's saying is believed by only few people in the society, but that whatever she's saying will not be perceived as something that a genuine intellectual will say. She will be perceived as somebody holding an antagonism against a particular industry. Right? Does this make sense? B versus C.
Yes, this is Trump behavior, Chahat. I agree. I agree. Perfecto. So C is the answer here. D says forces them into a position of opposition which they believe is counterproductive to a genuine exchange of ideas. Uh, More than, so this part is correct. The former part of the option is correct. So her main objection with this is that when she's being positioned as somebody who's opposing, she's also being positioned as somebody who has a personal dislike, a personal vendetta against this entire industry. So it's not just about this, it's primarily about C. So this was a difficult question, right? So I told you we'll talk about question selection as well. So in this question, if you were attempting and you felt, अरे B भी लग रहा है, C भी लग रहा है, D भी लग रहा है, right? If you had that kind of a feeling, even after a minute, you should leave this question. You don't have to attempt every question under the sun, right? Okay. The passage suggests that the disparity between the public's monolithic perception of conversational AI and its actual motley and prodigious nature is functionally advantageous for the industry. Industry को क्या benefit हो रहा है? Because of this misperception that people have that AI means ChatGPT. How is the industry benefiting from this? Because broadly anybody who is criticizing AI would broadly just focus on these generative AI, right? Large language models like ChatGPT. So the critique tends to be very broad, whereas the field is so vast and such specific applications are there. So when somebody perceives your field to be broad, whereas it has very specific, narrow, diverse applications, their critique will be broad. It will be ineffective, and you can straight away say, no effective critique is being made against me. Why should I improve? How can I improve? Right? So it then becomes functionally advantageous for you. So this one was on the easier side, this question. Did you also feel that? Yes, this one was on the easier side, and I would definitely attempt this question, right? Okay. Ethical scrutiny, not discussed. So this becomes alien to the passage, not discussed. Channels generalized hype towards a wide array of speculative and often unrelated ventures. Okay. The hype, tell me. Okay, why is this not the answer? Yes, B. And this one was doable. Yes, alienation one was also easy. I agree. Actually, 3 out of 5 questions in this passage were doable if you ask me, as in they were on the easier side. I'll point them out to you. Yes. So A and C were easy to eliminate because no internal rivalries or no ethical scrutiny has really been discussed, right? So ये तो out of scope हो गया, alien हो गया, and we would reject them. But between B and D, B says channels the generalized hype towards a wide array of speculative and often unrelated ventures. So the hype, see, where do we talk about the hype? The field is so crowded and the hype is so loud. So the hype is not coming from just outside. The hype is also industry generated as well, right? So it's not advantageous because there is a generalized hype. It's advantageous because the critique is very generalized so that they don't have to do anything to improve. So the answer comes from this idea. Okay, this is the fact that is important for us. Is this clear? Does it make sense? Also, the ventures are fine. People are speculating, and it says often unrelated ventures. I would not go so far as to say that they are unrelated. The author does not mention this, that they are unrelated, right? Hype is loud is negative here. Yes, so the author is critical. Rupali, the author is critical of this field. Yes, Mohit, that's what I've been doing. I am trying to use a bit of Hindi in between as well, but since we have students from all the regions, that's why I'm trying to balance it a bit. ठीक है? So, अच्छा, तो in my opinion, I think this question was easy. This is my opinion. Of course, yours can differ, right? I felt this question was easy and the last question was easy. The 2 questions in between,
they could have been confusing for you. Okay. So 4 on 5 would be a great attempt in this passage. So far so good? 3 on 5, yes, absolutely a good score. Source of this passage, I think this is N1 plus mag. Okay. All right, Samyukta. RC doable lag raha tha. Absolutely, I understand this. That, you know, initially it looked like a doable passage, and then when we attempted the questions, they turned out to be tricky. So I am preparing you for such an eventuality. See, I could have brought a passage today where the passage was an easy read and the questions were also easy to moderate. But you have to prepare for this eventuality also. Know that okay, this looked easy, I ended up choosing it. Now I have to live with it, right? Once I come to the questions, I realize that the questions are perhaps tricky, but I have to live with this choice that I made this my first passage. So how do I live with it? By being selective, right? So this is what we are learning. Okay, now let's see which passage do you want to go for, 2 or 3? We have a 4 question passage. The topic is, okay, this is about the moral responsibility of intellectuals, and this is about philosophy's obscure nature perhaps. Okay, we seem to be a little divided here. 2, 3, okay. Let's look at the one that has more questions, right? I would say that would perhaps be a more fruitful exercise, at least for today's purpose, where I want to do more questions with you, right? Okay. So, okay, some of you are spamming, don't do that. Let's read this. I'll again give you 4 minutes, right? Although this is 487 words, still 4 minutes. So, your time starts. Okay, take a deep breath first. You've understood a lot, processed a lot, pats on your backs. Now, let's read this. 4 minutes. You can actually read it in a relaxed manner in 4 minutes, so no need to hurry. Okay, go for it. Start.
Perfect. Has everybody finished? I'm giving you extra 30 seconds. Okay, so here's the first question on your screen. Attempt it and let me know the answer in 90 seconds. Okay. So pretty much everything again, A, B, C, D. But I can see that a lot of you think that D, C and C, yes. More of C's I can see towards the end. Okay. So why is the author reflecting on this? Now here, so this is what the author is doing. The author is not trying to build a rapport with the reader, what some of you said, but we'll discuss, don't worry. Second question, let's go. Okay. So see, it's been 1 minute 10 seconds now and many of you have already answered. Okay. So 90 seconds are up. Okay. So this is the answer here. Okay, because McDonald focused on intellectuals, right? Okay. Oh sorry, I didn't have to tell you the answer. No, so one of you mentioned that let's not discuss the answers at all. Let's do that. Yes, I'm sorry. Okay, third question. Oh, I'm sorry. Okay.
I'll just, yeah. Now it will be visible. Now it's visible. Now it's visible. Perfect. So I gave you 10 extra seconds because initially, the question was not visible to you, right? Okay. I'll not tell the answer now. Let's go to our fourth question. Attempt. I'm right here. This is not visible. Excellent. B is the, oh, I am sorry, but this was the last question, so now I can tell you answers, right? Okay, let me come back. So okay, I have come back. So let's see. A lot of you found the last question to be easy. Perfect. Let's discuss passage 2. So in 1967, ये बिल्कुल थोड़ा जादू थोड़ी शरारत, if you remember that. No, I think you were too young. But in 1967, Noam Chomsky published थर्ड का आंसर क्या था? सौरभ इज लाइक जल्दी से मुझे आंसर बताओ, मुझे जाना है. थर्ड आंसर, इट सेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ डिड इट डेवलप? लुकिंग इनवर्ड्स. या, सी इज द आंसर. ओके, सो सी इज द आंसर. नाउ यू नो ऑल द आंसर्स ऑलरेडी. लेट्स डिस्कस द पैसेज. In 1967, Noam Chomsky published an essay in the New York Review of Books on the responsibility of intellectuals. So what was the topic of the essay? Intellectuals की क्या responsibility है, right? Written in the midst of national turmoil surrounding US intervention in Southeast Asia. So when was it written? There was a national turmoil surrounding US intervention in Southeast Asia. It's not new, we know about it, right? So the essay raised a number of disturbing questions about the relationship of intellectuals to power. So what did the essay talk about, right? I hope I am visible to all of you now. Yeah, I am. Perfect. So it said that how do the intellectuals hold power, what kind of power do they have,
and about the moral and political requirements of the pursuit of truth. So if let's say an intellectual decides to pursue truth, what are the moral requirements for it? What are the political requirements for it? Chomsky was inspired by a series of articles by Dwight MacDonald in the journal Politics. Okay. Writing some 20 years earlier, MacDonald focused on the question of war guilt. So MacDonald focused on the question of war guilt. To what extent, he asked, were the German or Japanese people responsible for the atrocities committed by their governments? So he is focusing on, yes, absolutely, Mudit. People, not intellectuals per se, right? To what extent, he asked, were the German or Japanese people responsible for the atrocities committed by their governments? He then turned the question back to the American and British people. So first he asked that to what extent were they responsible on the atrocities committed by their governments. Then he didn't even spare American and British people. To what extent were American and British people responsible for the vicious terror bombings of civilians by the Western democracies and reaching their culmination in Hiroshima and Nagasaki? I'm sure you know about Hiroshima and Nagasaki, atom bombs that were dropped on these two cities, and with, of course, disastrous impact. Chomsky pushed MacDonald's question further. So MacDonald asked this some years earlier. MacDonald focused on people. Okay. Chomsky focused on intellectuals. So how has he pushed the question further? Right? From, okay, MacDonald, people, Chomsky, intellectuals. Yes, author, minority intellectuals. Tanmay, minority intellectuals, right? Okay, so first of all, these names somehow are a little funny to me. McDonald से मुझे हमेशा वो nursery rhyme, old MacDonald had a farm, that is something that comes to my mind. Chomsky, again, I don't know, I find the name itself funny, but we shouldn't do this. So Chomsky pushed MacDonald's question further. What he asked are the special moral responsibilities of intellectuals. Okay, given the unique privileges that intellectuals enjoy, they are privileged people, right? And especially in Western capitalist democracies. His answer was that intellectuals have a responsibility to speak the truth. So this was Chomsky's answer, remember? Okay. Have a responsibility to speak the truth and expose lies, and duty to see events in their historical perspective. Now see, this is very important. I am looking at current events in their historical perspective. That does not mean I am just looking at historical events. Okay, I am looking at current events, but I am contextualizing them with a historical perspective. Why am I making you notice this? I'll just tell you. See, in a question, it talked about historical events, inconvenient historical events. No, we are not just focused on inconvenient historical events. We are focused on current events and looking them with a historical perspective. Right? Chomsky's claims about the Mandarin status of opinion forming elites and about the elementary obligations that come with status have lost none of their relevance. Let's say you do not know the meaning of Mandarin. Will it affect your health and comprehension for this particular passage? Tell me. It won't. But because we are currently also accumulating knowledge, Mandarin is the special power that people enjoy, especially bureaucrats. For them, you can use this adjective. Okay, people working for the government. So, people in power, right? Mandarin status, the powerful status of opinion forming elites. Elites have the power to form the opinion of people, right? And about the elementary obligations that come with status have lost none of their relevance. So the author now says they are still relevant, but circumstances have changed, and those changes carry important implications for the precise character of our current obligations. So these changes have important implications as well.
When I read, again in the first person, so today you are reading a lot of passages that are in the first person narrative, right? When I read Chomsky's political and historical essays 21 years ago, I was a young Christian intellectual, struggling to understand the role and responsibility of the intelligentsia, the intelligent people collectively, in an advanced industrial society. So do you see something? We are talking about specific societies, right? The US's intervention, Western capitalist democracies. Here also, the author is struggling to understand the role and responsibility of intelligentsia, not in an isolated manner, but in an advanced industrial society, right? Chomsky focused on foreign policy of a particular nation and posed his questions to a predominantly white elite, academic and policy based intelligentsia, right? Us time pe these were the people who were in power, right? 1967, of course his questions would be directed towards white elite, academic, policy based intelligentsia. At that time, I do not recall reading any significant discussion or critical notice of the issues he raised in any of the major black scholarly journals or books. Why? Because there weren't probably a lot of black intellectuals to discuss these matters or interpret these matters in the first place, right? So the author is not just telling you a story because the author wants to become your buddy. No, that's not the point of this, right? To develop a rapport with you. The point is the author is trying to show you a gap. Okay, there is a gap. ऑल राइट, तो यहाँ पर एक गैप है. मेजर ब्लैक स्कॉलरली जर्नल्स और बुक्स में नहीं मेंशन था इन इश्यूज़ का, कोई डिस्कशन नहीं था, कोई क्रिटिकल नोटिस नहीं था. I want to suggest to you that Chomsky's points now apply with particular force to the responsibility to tell the truth about the condition of the black poor. Okay, so now the author is saying that these have application. Chomsky's points, they have application. What is the application? They actually speak to the responsibility to tell the truth about the condition of whom? The black poor. So again the discussion is specific, of a specific community, and that responsibility bears especially heavily on black intellectuals at elite universities. Why? Because they are black. Let's see. Because for as a privileged minority, the author is not focused on the fact that because they are black, oh, there's a shared identity. The author is again telling them that you are privileged. You're a privileged minority. For as a privileged minority, black intellectuals have the leisure, the facilities, and the training to seek the truth lying behind the veil of distortion. So, you have the time. We can become intellectual only when we have the time. If we are always busy surviving, just making a living, we can't have these intellectual discussions, you and I both. The facilities and the training, so they have all these things to seek the truth lying behind the veil of distortion, ideology, and class interest. Class interest is something that benefits only specific classes, let's say the white people, right? That is class interest, through which the events of current history are presented to us. So you have to, raise this veil. Okay, you have to remove this veil of distortion, ideology, and class interest. You, black intellectuals, you have this responsibility. You are a privileged minority. More than 10 million, now the author mentions the conditions of Americans, specifically again black people. More than 10 million Americans now face a crisis of catastrophic proportions. Life in the major post-industrial centers in the US is genuinely poor, nasty, brutish, and short. It is often a choice between suffering and abject, extreme misery. The prospects for black males are perhaps a bit more exciting. Oh, exciting makes a comeback in this passage. There is, of course, now here again, tell me, does the author actually think that the prospects are exciting? What does the author say next? The author is being sarcastic. Okay, absolutely.
there is of course death due to homicide or drug related HIV infection, and then there is incarceration, imprisonment, which provides an opportunity to refine the skills required for a career of criminality. You go to jail, you come out as a trained criminal, where you can, after which you can pursue a legit career in it, right? So that's what the author is saying. So I think although the first couple of sentences, they made it feel highly intellectual, it was a comprehensible, pretty doable passage. Yes. Last paragraph, just the author is trying to show you the poor conditions of black people in America. Okay. And while some people say it is better for males, the author is kind of being sarcastic about that as well. Right? Okay. तो चलें अब questions पे. Are we ready? All right. The author's reflection, fourth paragraph once. Okay. So we'll do fourth paragraph again. Don't worry. We have a question on this. In fact, here is the question. So you had to go to the fourth paragraph again for this question, right? The author's reflection in the third paragraph. Wait. 1, 2, 3. Oh, here. Okay. Yeah. This bit is mentioned in the third paragraph, but again, the purpose is something that you see in the fourth paragraph, right? So the author's reflection in the third paragraph on their own intellectual journey and the state of black scholarship. So their intellectual journey and the state of black scholarship, this is summed up here as well. Okay, even after one paragraph. Okay, it serves primarily to, first of all, tell me ये किस type का question है? Is this a question that wants you to focus on the content of the paragraphs or the function of this mention in the paragraph? Tell me. Purpose, function, excellent. ये उसी type का question है. So provide a personal anecdote. Yes, the author does provide a personal anecdote. That is there, right? But the idea, so this part is fine. The former part of the option is okay, option C. But the latter part, the purpose is not to build a rapport with the reader, right? The function, the purpose is where option C goes wrong. The content aspect of it has been captured fine. Okay. Then A says to critique Noam Chomsky for failing to address. Is the author saying कि ये नोएम चोम्स्की की गलती है? क्यों नहीं उस टाइम पे क्वेश्चंस पूछे उसने ब्लैक इंटेलेक्चुअल से? Tell me. No, the author is not blaming Chomsky to critique Noam Chomsky for failing to address the relevance of his arguments to the black community in his original essay. No. Perhaps there weren't many black intellectuals at the time. Such debates were not happening for the black community. So nowhere has the author personally blamed Chomsky. If you are borrowing from Chomsky, tell me, saying that they have lost none of their relevance. Okay, fine, you acknowledge that circumstances have changed, but primarily you are positive about Chomsky. You would not say such a thing about Chomsky then. There is not just, this is not just in a way extreme or exaggerated. There is also a tone mismatch. Perfect. B, condemn the failure of black scholar. Again, author किसी को blame नहीं कर रहा है passage में. No blaming Chomsky, no blaming black scholarly journals, right? So eliminated, right? Okay. Now, see, I have eliminated, so D is the answer. Contextualize. The author is giving you a context that 21 years ago these discussions were not at all. No, in fact, at that time. The author says at that time in 1967, at that time, I do not recall reading. I do not recall reading. 21 years ago, sorry. I do not recall reading any significant discussion. So the situation has changed in these 21 years, right? So the author is contextualizing their current argument as an intervention into a specific scholarly vacuum. What is the meaning of this? Scholarly vacuum.
Vacuum is where there is a lack of something, right? Scholarly vacuum, a scholarly gap, right? A lack of discussion among scholars. Absolutely. So the author is kind of telling you that there was no discussion, there is this gap, so let's address this gap. Let's address this gap. That's what researchers, scholars do all their lives. They identify a gap and then they try to address it through their research, through their work, through the arguments that they make in their research. है ना? So देख लो, PhD करनी है तो. Now, according to the passage, Noam Chomsky pushed MacDonald's question further by doing which of the following? So this part here, what did he do? Chomsky actually asked what are the responsibilities of intellectuals, right? Whereas MacDonald had asked it generally of people. Okay. A says applying the question of war guilt, which MacDonald had not only directed at enemy nations to Western democracies. War guilt, which he had only directed to the enemy nations. Even this part is false. This is false. MacDonald had directed it to both the nations, Western nations as well as the Japanese people, German people. सब पे किया था, right? So ये तो false है. ये किसी को mark नहीं करना था. This is the kind of option that nobody should have marked, right? Shifting the focus from the collective responsibility, yes, of a nation's people, which is what MacDonald was doing, to the specific moral obligations, special moral responsibilities of a privileged class within that society. Yes, that is what Chomsky has done. Right? Does this make sense? Option B. So ये easy. Okay. In your opinion, was it easy or difficult, this question? Okay. I understand, Sunil, but you have to eliminate. You have to compare it. So let's compare it with C and D, right? So C says, arguing that intellectuals have a primary duty to speak the truth. Okay. So they have a primary duty to speak the truth. Who said this? So his answer was, so basically Chomsky said this, right? That intellectuals have a primary duty to speak the truth, especially concerning the actions of their own governments. Okay, fine. Even if I believe this, that okay, this is the answer, but where is the pushing involved? Because MacDonald had not even said anything about intellectuals. So while Chomsky may have said this, that they have a responsibility to speak the truth and expose the lies, MacDonald ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था ना. MacDonald did not say anything of this sort. So how can then I say that Noam Chomsky pushed MacDonald's question further by doing this, when MacDonald hadn't said anything about this? So C cannot be the answer. T, extending the moral responsibility of white intellectuals to include the responsibilities of intellectual. Who is doing this? Did Chomsky do this? Our author is doing this. ठीक है, ये हमारे author कर रहे हैं, Chomsky ने नहीं करा था. देखो, false, does not, it's incomplete, I would say, does not take MacDonald's perspective. Basically it's incomplete, and it's, I would say, something that is tangential, trivial, sidetrack, distractor. जिस भी नेम से मार्क करना है कर दो, ये आपको डिस्ट्रैक्ट ही कर रहा है अल्टीमेटली, राइट? इट्स वेरी टेंजेंशियल. ओके, एंड बिटवीन A and B, of course B has to be the answer. So now you realize that while privileged class may feel general, although the author has used the word privilege twice, privileges, privileged, but still this is our best choice, and this kind of fits the broader thing that is being discussed. ठीक है, is this clear? So these two questions I hope are now clear to you. अब थर्ड के लिए मैं यहाँ आ जाती हूँ ताकि मैं भी दिखूँ, आपको क्वेश्चन भी दिखे, right? So which principle best encapsulates the this is, I think this could be a difficult or a tricky question for you. So in case you found the passage difficult, then you could have attempted 1, 2 and 4 and decided to skip 3. Yes?
That could have been done. So this is how we select questions. Which principle best encapsulates the concept of responsibility as it is developed from MacDonald to Chomsky and subsequently applied by the author? So if you see, there is a chain, something that you also mentioned when we were discussing this passage. MacDonald talked about people. Chomsky talked about intellectuals specifically, a subset. Our author is now talking about minority intellectuals. Intellectuals from a minority. Now, also this discussion is within the ambit of a specific society, and that too the author particularly belongs to an advanced industrial society, right? What is their role in their society? Okay, this is what we are talking about. We are talking about particular societies here. So I hope this is also something that you could gather from the passage. Ronak, it depends. See, if let's say you feel it's a waste of time, when is it a waste of time? When after investing, let's say 1.5 minutes, you still decide, you mark the incorrect option, then it is a waste of time as well as you're losing marks. Here, if let's say within the first minute I am not able to narrow down to 2 options, okay, then that means this is a difficult question for me. If even after a minute I have not been able to narrow down to even 2 options, and then in that case it's wise, not a waste, to perhaps skip this question. You could come to it later if you have the time, right? But not right now, I would say, if you're not even able to narrow down to 2. Okay, I understand, Kaushik. I will explain it. Don't worry, the inward bit. A says the essential duty of an intellectual is to use their training to speak the truth and expose the lies used to conceal inconvenient historical events. While this part of it looks fine, it looks true as per the passage. Okay, first of all, it is not capturing that development. There has been a development. No, there has been a change. Circumstances have changed now. That's what the author says. People to intellectuals to minority intellectuals within a society, right? So inconvenient historical events, we are not just concerned with historical events, we are talking about current events as well. The author ends by talking about the current situation in America, है ना? So training, yes, this is discussed, Ritesh. They have the training, this is mentioned here. They have the leisure, the facilities and the training to seek the truth. Okay, तो है वो वाला part. So I think, is this clear to you that this should be eliminated? Option A. Is this option can be eliminated as D is extreme statement on specific community. Right. D is extreme. You are right. So I hope this is clear to you. This will be eliminated because this is incorrect. I would say false, incorrect, whatever you want to say, contradicting what my passage is saying. Okay, my passage is not just concerned with historical events. Some of you can also call it narrow, right? B, all intellectuals, regardless of their background, have a universal responsibility to address the most pressing moral and political crisis of their time. But is this part correct? Regardless of their background. Aren't we appealing to the background here? We are, in a way, appealing to the background here. So this is not how it has developed. This would become a very broad argument to make. It does not capture this development appropriately. समझ में आ रहा है? And yes, all makes it extreme as well. Okay. C versus D. D says a group's now see, D is an option that everybody should have rejected. Okay, that kind of an option. A group's responsibility is exclusively confined to the problems of their own specific community. Don't look beyond your own community, particularly for minority intellectuals. This is a negative statement. Is the author making such a statement? Exclusively, own specific community, don't go beyond that. What are you doing? Yeah, so no, this is extreme, okay, and has a negative tone to it, which the author does not have. Okay,
tone mismatch and extreme. C. The moral obligation of a privileged group is mainly directed inward, requiring them to confront the injustices perpetrated or tolerated by their own society. How do I grasp that? See, MacDonald first asked the question to German or Japanese people, okay, about the atrocities. See, but the question was about the atrocities committed by their governments, their own governments, right? So this is directed inward only, right? You're not concerned with what was done by the other government. Similarly, he asked the British and American people how they were responsible for what their government did. The intellectuals also, again, these intellectuals enjoy privileges where in Western capitalist democracies. So I am saying that they have an obligation, a moral responsibility towards this society where they enjoy these privileges. So it is mainly directed inward towards your own government, right? Moreover, when we say privileged minority, we are also in a way, although not directly, we are making this argument that you do have a responsibility, okay, towards this minority. So the moral obligation of a privileged group is mainly directed inward, requiring them to confront the injustices perpetrated or tolerated by their own society. Does this make sense? Soumyajit, always, or is that extreme? Are you sure about always? This is paraphrased, absolutely. Ayush, I agree, inward, but is this clear to you now? Inward कैसे हम अपनी खुद की गवर्नमेंट, अपनी खुद की सोसाइटी में देख रहे हैं इनजस्टिसेस, बाहर जाके नहीं देख रहे हैं, दूसरों की सोसाइटीज में, दूसरों की उसमें. No, D, there is a very big difference in the tone. It says exclusively confined, and this says own specific community. It's just making it very, very narrow. It says it is directed inward. Is this clear, Ayush? Marshall, clear. What is not clear in C? Then I'll explain. And it's always good to add please. Oh, no, not our own problems as an individual. Our own problems as in our country's problems, own government's problems, right? Their governments, right? So we are just going inward here. People inward, intellectuals again, look at your own society. Minority intellectuals, your own society, and within that also this minority that you belong to. So isn't there a difference, Ayush? Okay, let's say you hadn't read this passage, would you interpret an intellectual going inward, okay, their moral obligation mainly directed inward, specifically as a community? Inward को और community को क्या मैं interchangeably use कर सकती हूँ? Not at all. Absolutely. Main versus entirely, exclusively. Here it says mainly, but here it says exclusively. It's very easy to actually reject between C and D. Okay. D is the kind of option that is, B and D आपको देखते ही लगता है extreme है. Then when you analyze it further, you realize, oh, B is not capturing the development. D, this is so extreme. C makes sense now. Okay. Not taking into account. C is taking that into account. Okay. When I say it is mainly directed inward, okay, let's go back to the passage, since this is causing a bit of a dissonance among all of you. Inward, what would it mean? That is our issue. Community is something that has come here only. It is not something that is
that will show the development. When I see the question stem is very clear on what it is asking you, how has the concept developed from all these, from this to this to this. So we have to mark something that holds true for all three: Chomsky, MacDonald, and our guy author. Okay, our author. So MacDonald, what did MacDonald do? He didn't ask Japanese people how, let's say, how did the Western democracies, how were they unjust in bombing your place, you know? No. They asked, how were you responsible for the atrocities committed by your own government? So going inward, how were you responsible for the atrocities committed by your own government? Right? Similarly, when Chomsky extended this question, how are you as an intellectual responsible for what is happening in your society? Inward. Now I'm not talking about a community, I'm talking about the entire society that you're living in, the Western capitalist democracy context, right? Then Chomsky, this author, now when the author sees this, the author adapts Chomsky's stance. The author says that while earlier America, let's say this question was asked in America, which is very likely based on the passage. So earlier this was still not capturing the whole of country. It was still capturing, primarily it was directed towards white people, because in 1967 these were the people who were elite. These were the people who were called the intelligentsia. But today the circumstances have changed. So today we have to see that there are poor Americans, there are some Americans that are poor, okay, and there also the black people, the black community is particularly suffering. So again, our society today, our country today has to take into account, and especially who is best positioned for taking this into account, for actually talking about this, has a responsibility to discuss this. Okay, the black intellectuals. So at all the stages, this is inward towards your own country, inwards in asking questions from yourself, what is my responsibility, inwards in seeing that you are also covering the communities. So this is what the author has done, extended it to community. Is this now clear? Why these very, very narrow and just discussing what the author thinks, not what Chomsky and MacDonald talked about? Yes, okay. Thank you, Kaushik. Thank you. I would like to thank my parents. Right. Anyway, so the answer therefore is C. Now that's why I said that this question could have been tricky, and that's why I said that you could have decided to skip it. Okay. Alright. Now the fourth question, and I'll come here because again I don't want to come on the question itself. The author's argument that the responsibility to tell the truth about the black poor bears, now this is something that you found easy. Yes, it bears specially heavily on black intellectuals, is a logical extension of Chomsky's original thesis. Why? How is the author calling it an extension? I think we just discussed this as well. How is it an extension? Yes. So A says, black intellectuals have an inherent obligation to address issues concerning the black community due to their shared identity. This makes everything about being black. That's not the only point. That's not the extension also. No, we have to relate it to their being intellectual as well. Not just about their being black. So this is making it entirely about being black. Right? Extension nahi hai usme. Absolutely. B, in Chomsky's framework, special moral responsibility is tied to the unique privileges a group enjoys. So here also I am telling you, see, you as minority elites enjoy privileges. You have the facilities, the training, the leisure. So the author even lists those privileges for you. और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, right? A condition the author argues is met by elite black intellectuals. ये बिल्कुल straightforward answer है इसका, right? See, the crisis of the black poor is a domestic issue with foreign policy implications that Chomsky's original thesis was designed to address. Has our author talked about foreign policy implications? No. Rather, they have just mentioned that Chomsky talked about foreign policy. Okay. Our author does not.
Both Chomsky and the author believe that the primary duty of any intellectual is to expose the lies and distortions presented by the powerful. While this, broadly speaking, is true, it does not answer the question. Especially heavily, फिर black intellectuals पे क्यों पड़ेगी responsibility? It does not answer the question. So true, but not addressing the question. So we have to see. This is a very insidious, dangerous kind of an option. Please, learn to recognize this. This was the easiest question. Yes, absolutely. I agree with you wholeheartedly. Now, what I'll do is, okay, so far, did today's session, okay, let's go back to the agenda because we have to see whether we were able to see this. Did it help you to understand that passage selection is complex and sometimes we may have to live with our choices, but we can live with our choices with dignity? Yes, we can be smart, be wise, even in the face of tricky questions. Right? Okay. Then question selection, I hope I was also able to tell you that, okay, here 3 out of 5 questions were attemptable. Here 3 out of 4 questions were attemptable, right, for passage 1 and 2 respectively. And we also talked about, okay, how to deal with different number of questions, right, different length of the passages. Okay. Second passage helped, yes. Relationship advice. Oh, I am happy that it applies to both the spheres. We should have chosen the Chomsky passage first. Okay, that's okay. You did the best with what you knew then. Yes, both in passage selection and relationship advice. Right. And the fourth option for Karan, which question? When to know you should leave a passage that you've picked but is very difficult. Ayush, if let's say after reading the first 2 paragraphs you feel nahi samajh mein aa raha ye, right, not able to get it at all, then yes, you can consider moving on to another passage. But if after 2 passages, let's say the second passage, the first passage feels extremely difficult, but then the first paragraph feels extremely difficult, but the second paragraph helps to shed some more light on it, then you should go ahead. Perhaps the third one will shed more light on both the first and second. This especially happens in philosophy passages, this shedding light thing that I'm talking about. Okay. Excellent. Isho sped. Okay. Isho sped. Right. Thank you so much, Vipul. There is one more passage, but Sharwari ma'am's session will begin soon, right? So what I'll do is I'm going to tell you the answers for passage 3's questions. This is your homework passage, right? Attempt it and see how many you get correct. Okay, let me just quickly tell you the answers. Okay, we have to weaken this critique. Okay, all right. So question number 1 is, I'm writing here so that you can just refer to it later on. This will always be there, right? Question number 2, irony of straws. Okay. All right. 3 is B, right? So these are the answers, and not a difficult passage, let me tell you, even though this appears difficult again, right? So I had brought such chameleon passages for you today. Oh, okay, Anshi. All right. Thank you so much, Ritesh. Years and years of practice. And what I would suggest to you, keep swimming. Okay. So even when, you kept swimming from passage 1 to passage 2, and passage 2 rewarded you, right? So when you keep practicing, life rewards you, right? This is not a relationship advice. This is just for these passages. All right. Yes. At 12:15, Sharwari ma'am will join you. Welcome. Welcome all of you.
When can you do the, where can you do the third RC? It will be there on in this video, as part of this video, right? I'll also share its PDF in the Telegram group for those of you who are enrolled with us. You can always refer to this again here. Just pause your screens and attempt it, right? That's what you can do. Welcome, welcome. All 4 RCs. Should we still look for an easy one to start with? Yes, Lakshya, absolutely, there is value in that, because if your very first RC is difficult, you may end up spending an inordinate amount of time on it, and that will actually lead the other RCs to suffer. We don't want that, right? Okay. और मे बी डिफ़िकल्ट में तो ज़्यादा इनएक्यूरेसी हो, ईजी में तो कम इनएक्यूरेसी होगी, तो हमें तो ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, राइट? ऑल राइट, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू. ओह, ब्रिजेश सर देते हैं. ओह, आई डिडंट नो दिस. PDF, okay, all right. How much time per RC is recommended? Akanksha, per RC, if let's say in the exam you intend to do 3 out of 4 RCs, then you do have 10 minutes per RC. If however you feel that you are already at a 95 percentile in VARC and you want to push a little extra, you want to get at least 2 more questions out of the 4th passage or 3 more questions out of it, then you have, I'm afraid, 8 minutes per RC, right? And that will leave you with, 7 to 8 minutes, because we do want 10 minutes at least for VA as well, right? So it depends on what your goals are. Welcome, welcome all of you. Thank you for staying with me for 2 hours. I know it can be difficult to listen to a person for 2 hours, but pats on your backs, and good, you practiced 2 passages right on a Saturday morning, and you will practice more with KD sir today. Okay, so keep watching and I'll see you again. Bye bye. Okay, so I heard that a lot of you all are traveling from great distances. कितने लोग यहाँ पर दिल्ली NCR से आए हैं? Okay, और बाकी के लोग, आप कहाँ से आए हैं? आपका ये ग्रुप पंजाब से आए हैं. Okay, और सब सारे पंजाब, मुंबई, okay, बिहार, okay, साउथ से कितने लोग आए हैं? बैंगलोर, okay, वेस्ट से कितने लोग आए हैं? यहाँ राजस्थान, ओके, हाँ जी, कहाँ से? जमशेदपुर, थोड़ा लाउडर. गुजरात, ओके. वेस्ट, ईस्ट से कोई है? एनीबडी फ्रॉम ईस्ट? उड़ीसा, कैलकाटा, ओके. कोलकाता, राइट, इट्स कोलकाता नाउ. ग्रेट ग्रेट. सो वेलकम एवरीबडी. आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है. मैं आप लोगों को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. मैं वैशाली हूँ.
आपकी होस्ट और आपकी दोस्त आज के इस इवेंट के लिए। और मैं हमारी टीम रोधा की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम और स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले हाउ अबाउट वी ब्रिंग सम एनर्जी टू दिस प्लेस और एक बार जोरदार तालियों के साथ शुरुआत करें। कम ऑन एवरीबॉडी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड जी हाँ, रोधा वेलकम्स एवरीबॉडी हियर। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है और आप सभी की वजह से ये प्रोग्राम इतना खूबसूरत बन पाया है, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। एंड अ बिग थैंक्स फॉर नॉट गिविंग अप। आपने हार नहीं माना, हमारा हाथ नहीं छोड़ा, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा हम हमारी पूरी टीम की ओर से आप लोगों का करना चाहेंगे। आज यहाँ पर जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है दैट दे ऑल आर अचीवर्स। और आपने आज जो मुकाम हासिल किया है, जो अचीव किया है, उसके लिए मैं आपको तो बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी। एंड आई एम श्योर आपके इस अचीवमेंट में हमारे टीम रोधा का एक बहुत बड़ा हाथ है। जो लोग अग्री करते हैं एक बार तालियां बजा के बताएंगे। कम ऑन सी, इतने सारे लोगों को टच किया है, इतने सारी जिंदगियों को टच किया है रोधा ने। तो थोड़ा सा शुरुआत करेंगे हमारे कंपनी को जानकर, रोधा को और बेहतर तरीके से जानकर। इसकी शुरुआत, इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 2018 में। 2018 में हमने शुरू किया था और ये शुरुआत हुई थी एज अ यूट्यूब चैनल। आई वुड से बहुत ही कम समय हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। एंड वी स्टार्टेड मेयर एज अ यूट्यूब चैनल और इसकी शुरुआत ऑफ कोर्स हम सभी के फेवरेट रवि सर ने की थी। एक बार रवि सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कम ऑन एवरीवन, थैंक यू सो मच रवि सर। आपने 2018 में नींव रखी थी। सो यूट्यूब चैनल से हमने शुरुआत की थी और शुरुआत में थोड़ा सा हसल था। जी हाँ, बहुत सारा कंटेंट क्रिएशन, 350 प्लस वीडियोस रिकॉर्डेड, एडिटेड, अपलोडेड, ऑल सिंगल हैंडेडली। और ये क्यों किया गया था? टू रीच बियॉन्ड द 4 वॉल्स ऑफ अ कोचिंग सेंटर एंड हेल्प स्टूडेंट अक्रॉस द कंट्री। यानी कि हमारा उद्देश्य ये था कि हम सिर्फ एक कोचिंग सेंटर बनकर ना रह जाए, बल्कि कोचिंग सेंटर के बाहर, 4 दीवारी के बाहर बच्चों तक पहुँचे, स्टूडेंट्स तक पहुँचे और पूरी इंडिया के लेंथ और ब्रेथ को कवर करे। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी इस बात से ज़रूर अग्री करेंगे दैट वी आर अ वेरी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म। हम एक्सेसिबिलिटी चाहते थे कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट, हर एस्पिरेंट हमें एक्सेस कर पाए और ऑफ कोर्स हम क्वालिटी मेंटरशिप और कम्युनिटी में बिलीव करते हैं। द जर्नी फ्रॉम यूट्यूब टू लीडिंग एडटेक प्लेटफॉर्म। वेल, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू ऑल that 2023 was the game-changing year for us. Yes, in 2023 October, Rodha officially launched a full-fledged paid courses. Well, recent developments में हमने अभी कुछ launches किए हैं, जैसे कि 6+ batches for CAT 2025 and mock portal, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अलावा recently हमने IP मैट 2025 के भी फ्री कोर्सेज लॉन्च किए हैं YouTube और Instagram दोनों पर। और इस पूरे लॉन्च को टेक ओवर कर रहे हैं, इस पूरे लॉन्च का ध्यान रख रहे हैं संचित सर, AVP एकेडमिक्स, कंटेंट हेड क्वांट एंड LRDI। उसके अलावा कुछ माइलस्टोन्स जो हम आपके साथ प्राउडली यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। वेल, मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ दैट वी हैव हिट 400K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस वन। कम ऑन एवरीबॉडी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल योर लव। आप लोगों की वजह से ये 400K का ये वुपिंग नंबर हमें मिला है, हमें यूट्यूब पर। और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमारे 8,500, ऑलमोस्ट 8,500 या उसके ऊपर फॉलोअर्स भी आप देखेंगे। दिस जर्नी कंटिन्यूज, ये कारवा जो है यूं ही चलता रहा है और चलता रहेगा। रोधा इज ग्रोइंग, इवॉल्विंग एंड रीडिफाइनिंग एजुकेशन। हियर्स टू बिगर गोल्स, बोल्डर ड्रीम्स एंड बिल्डिंग द फ्यूचर टुगेदर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम जहाँ पहुँचे हैं, जिस मुकाम पर पहुँचे, आई एम श्योर फैकल्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ये फैकल्टी सिर्फ आपकी फैकल्टी नहीं है, बल्कि ये आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, आपके गाइड हैं, आपके एजुकेटर्स हैं। सो चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। मीट रवि सर।
CEO एंड फाउंडर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन एवरीबॉडी। वेलकम सर एंड थैंक यू सो मच। उसके अलावा वी ऑल नो केडी सर, AVP Academics, content head of VARC. Welcome KD sir. Next we have our favorite Tarun sir, AVP Academics, content head, quant and LRDI. Thank you so much sir. उसके अलावा we have Nikita Mam and she is the manager of academics. हालांकि she is not here, unfortunately she couldn't make it to this event, but we are going to miss her. उसके बाद we have स्वप्ननील sir, AVP academics. एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, come on everybody. We have अपूर्व sir, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, come on, who happens to be the manager. We have Sharwari ma'am, she is deputy manager academics. She unfortunately couldn't make it to this event. And we have Ashutosh sir, senior manager academics. एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, come on everybody. Boys and girls, now I would like to invite a very visionary leader here in front of us. Well, ladies and gentlemen, अब यहाँ पर हमने रोधा की स्टोरी को थोड़ा सा जान लिया है, बैकग्राउंड को थोड़ा जान लिया है। अब समय आ गया है कि हम आप सभी का परिचय उनसे करवाएं जो कि रोधा के आन बान और शान है, और ना सिर्फ रोधा के आन बान शान है बल्कि इस इवेंट के भी आन बान शान है। और इनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो खुद ही माप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, कि वो खुद ही माप लेते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को कहाँ तालीम दी जाती है उड़ानों की। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, वरना खुशबू कहाँ मोहताज होती है कदरदानों की। इन्हीं शब्दों के साथ प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली रवि सर। कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, और एक बार जोरदार शोर फॉर रवि सर। कम ऑन एवरीवन, वेलकम सर, वेलकम। हो गया, चलो, थैंक यू गाइस एंड आई एम डीपली ऑनर्ड। ओके, सो बहुत लोगों से मिला हूँ मॉर्निंग से मैं, एंड बेसिकली बहुत लोग बोल भी रहे थे कि सर बहुत खर्चा हो गया आपका इवेंट में, है ना, आपने बहुत हम लोग ज़्यादा ROI ज़्यादा हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ दैट ना कि ये मेरा एक बेसिकली ड्रीम था। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी 1 साल 1.5 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था यार अच्छा कुछ करिए ना, ग्रैंड अचीवर्स मीट किया जाएगा, ठीक है। सो विल डू अ ग्रैंड अचीवर्स मीट जहाँ सबसे मिलेंगे, विल हैव अ गुड कनेक्ट, lot of guys going in top 20-25 colleges, है ना, of the country. Okay, and obviously you guys are the future leaders, right? तो ये एक मेरा ड्रीम था, so that dream has come true, and वो ड्रीम ट्रू नहीं होता अगर आप इतना ट्रैवल नहीं करते। तो people have come from Bangalore, including me, ठीक है, हैदराबाद, पुणे and all these guys, कोलकाता, कहाँ से आए होगा, चेन्नई से लोग आए, ठीक है। So it was very like thank you guys इसके लिए। So basically सब आपने देख ही लिया। ओके, सो ऑल दैट अबाउट रोधा, हाउ इट स्टार्टेड एंड एवरीथिंग। ओके, सो बट देयर आर फ्यू थिंग्स राइट नाउ जो मतलब मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, बिकॉज राइट नाउ यू गाइज आर गोइंग टू टॉप कॉलेजेस। बहुत लोग टॉप 5 में जा रहे हैं, बहुत लोग टॉप 10 में जा रहे हैं, बहुत लोग टॉप 15 में जा रहे हैं, बहुत लोग टॉप 20 में जा रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ओके, एक ना लाइफ में पहले अभी एक स्टेप लिया है, सो यू हैव टू मूव क्लोजर, राइट। अभी क्या होगा ना, बहुत लोग अभी, बिकॉज आई नो लास्ट ईयर से भी अभी समर जाओगे, बहुत हसल है MBA में। ओके, नेक्स्ट 18 मंथ्स बहुत हसल है, समर प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, एंड आई स्टिल रिसीव कॉल्स। किसी मतलब नवंबर ये अक्टूबर में टाइम, किसी मॉर्निंग में था मेरे को 4 बजे कॉल आ रहा है, 5 बजे मैं सोता ही हूँ 4-5 बजे, ठीक है। 5 o'clock कॉल आ रहा है, क्या किसने कॉल किया, सडनली 2 बार कॉल काटा, 3 बार कॉल काटा, ठीक है। रश ऑफ कॉल्स दैट आई एम लखनऊ का 0 प्लेसमेंट 0 डे था उस दिन SIP का। ओके, सर SIP प्लेसमेंट लग गया, 1.2 लाख मिल रहा है, 80,000 मिल रहा है, ये मिल रहा है, एंड लाइक मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock ऐसे, मतलब वहाँ पे ना ऐसे चलता होगा, आई डिडंट नो। ओके, लाइक मॉर्निंग में 4 o'clock प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती हैं, 5 o'clock। ओके, आई डिडंट नो दैट एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मेरे लिए न्यू चीज़ था। उसके बाद सारे कॉलेज से लाइन से लोग मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, SIP लग गया, एंड बिकॉज दैट ना एक वो बेसिकली क्या था, एक फर्स्ट हिंट ऑफ सक्सेस था आफ्टर दिस आपका जो ये कॉलेज कन्वर्ट हुआ था। बिकॉज लॉट ऑफ गाइज कन्वर्ट कॉलेज, बट सर मेरा अच्छा प्रोफाइल नहीं है,
या आई एम नॉट हैविंग अ वेरी गुड वर्क एक्स, तो वहाँ पे जाके दिक्कत तो नहीं होगी प्लेसमेंट्स में, हाँ ऐसे एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो वो चीज़ क्या होता है ना कि जब वो स्टार्ट होने लगता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। हमें लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन ना ये स्टेप इतना ईजी नहीं है। सो while all of you are here, enjoy today, अच्छे से पूरा enjoy करो आप लोग this event for all of you guys, but always 2-3 things लाइफ में ध्यान रखना, okay? मे बी अगर आपका समर प्लेसमेंट होने वाला है आगे, मे बी इट्स मे बी 0 डे बहुत लोग का नहीं होगा, मे बी बहुत लोग का 1.5 lakhs नहीं मिलेगा, राइट, बट स्टार्ट, ओके। आप यहाँ से गोइंग टू अ टॉप 2025 बी स्कूल इज़ अ फर्स्ट स्टेप, ओके। उसके बाद इस वहाँ इंटर करने के बाद वहाँ का हसल, बिकॉज नाउ यू हैव टू बी इन द टॉप ऑफ योर स्किल सेट, तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, राइट, ऑब्वियसली, बिकॉज यू वांट दैट, पीपल वांट दैट यू हैव अ गुड स्किल, तो स्किल सेट पे ध्यान देना। उसके बाद मे बी वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आएंगे कॉलेजेस में, बट ऑलवेज फील हैप्पी अबाउट इट, ओके। मैं 2 स्टूडेंट को जानता हूँ एंड आई नो 2 गाइज, बेसिकली MBA के बीच में MBA छोड़ दिया, ठीक है, टॉप 10 भी स्कूल से, ओके, लास्ट ईयर, ओके। एक को तो मैंने वापस भेज दिया, बहुत ने बोला मुझे सर आप आ गया था एंड ऑल, में एक नहीं गया वापस। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। सो यू हैव टू बेसिकली, ये तब होता है ना जब आप अपने लिए अच्छा फील नहीं करते हो, आपको लगता है यार फिर मेहनत करना पड़ेगा क्या, यस करना पड़ेगा, ठीक है। यू सी बी वर्किंग हार्ड स्टिल, यू सी माई टीम वर्किंग हार्ड, रात में क्लासेस ले रहे हैं, 3 बजे असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं, सुबह उठ के 8 बजे क्लास ले रहे हैं, टीम्स हैंड सब कुछ कर रहे हैं, यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि वर्क हार्ड वाला पार्ट विल एंड I know that around 40-50% people will understand this, obviously, but rest 40-50% people जिन्हें लगा है कि अब लाइफ में ना सडनली कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एंड यू हैव टू कीप ऑन दी हसल, ये हसल को रेडी रखना पड़ेगा। इवन यू गो, आई एम अहमदाबाद, BC, बहुत लोग हैं, A के लोग हैं, B के लोग हैं, C के लोग हैं, ब्लैक की, आई एम मुंबई, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, बट दैट हसल विल नॉट एंड, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैप्पी रह के कुछ करना है, राइट, नो रोतलू नहीं बनना है। यूज्ड टू से इन क्लासेस, याद है, यू रिमेंबर क्लासेस में आई यूज्ड टू राइट दैट कि रोतलू नहीं बनना है, ठीक है। वेल प्रिपेयरिंग, सर बर्थडे, सर क्या बर्थडे, सर आज बर्थडे, होली आ गया, क्या होली, सर जिंदगी खराब हो गया है, दिवाली है सर, क्या दिवाली है सर, पढ़ाई, वो चीज़ नहीं बनना है, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर जो लोग रोतलू नहीं वो लोग यहीं पे हैं, ठीक है, तभी वो लोग यहाँ पे हैं, ओके। एंड मेक श्योर दैट कि आगे भी आप जाके उस हसल को कंटिन्यू रखोगे, बिकॉज देखो every event we have to fight with it, every 2-3 years में world is changing like 360 degree, कुछ भी हो जा रहा है, कोविड है, कोविड के बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, अभी AI चैट GPT, एनीथिंग इज हैपनिंग, ओके। Okay, hello everyone. Hi. So many of you are watching. Very good. Good afternoon. आयुष, जब ये पूरा स्ट्रीम हो जाएगा ना तो आपको अपने आप दिख जाएगा ये वीडियो, ठीक है। यस, हेलो, गुड आफ्टरनून, हाय। यस, कौशिक आ गई मैं। कौशिक इज आस्किंग मैम आ गई क्या, आई सेड यस आई एम हियर, मैं आ गई, ओके। सो खाना वाना खा लिया सब लोगों ने, जब अचीवर्स मीट का वीडियो चल रहा था तो खाना वाना खा लिया, 15-20 मिनट मिल गए आपको, थैंक यू। यस, आई एम फाइन। खाना खा लिया, हो गए रिफ्रेश, अचीवर्स मीट का वीडियो देख लिया, सर का डांस भी देख लिया, सर ने कमेंट भी कर दिया। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, सो आज ना हम लोग VARC की मैराथन में आज स्पेशली आई विल टेक वर्बल क्वेश्चंस, ठीक है, वर्बल वाले क्वेश्चंस करेंगे आज, ओके। आई हैव गॉट वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। सो व्हाट हैपन्स इन दिस इज वी आर सो मच फोकस्ड ऑन RC समटाइम्स कि VA कभी कभी इग्नोर हो जाता है, राइट, थोड़ा छूट जाता है कभी कभी, एंड VA की जो स्ट्रैटेजीज होती है वो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वेरी स्मॉल थिंग्स, बट यू नो इफ़ वी ट्राई टू फॉलो दीज very small things also, it might actually make a very big difference in the end result, okay. So I feel that you know VA section shouldn't be ignored, so let's start today, okay. Chalo, so
what I have done is I have marked here a quick order for you, okay, for solving RCs. For solving VA questions. Now, why I have made a quick order? Because this question is asked so many times in classes also that ma'am हम select कैसे करें VA के questions? How should we go about selecting the questions? Or how should we decide the order of the questions? Okay. So what I feel is, you know, summary questions जो para summary questions होते हैं आपके, you should try to attempt the para summary questions first. Why? Because they are safe, they are fast, reading is relatively very less, and they are scoring also. Why? Because two options can be easily eliminated in para summary questions. Okay, so this is the order that should be preferred while solving the VA questions. Okay, so summaries first, पहले para summaries कर लो, then odd one out. Why I am saying odd one out? Because there are 5 sentences, and if 3 sentences can be linked quickly together to form a mini para, then you only have to decide between 2 sentences, right? If we are given clear grammatical links, है ना, logical links है अगर हमारे पास, connectors है अगर हमारे पास, so and if we are able to form a mini para of 3 sentences, then we actually only have to work on 2 sentences, correct? So ये try करो, okay? Para jumbles are the riskiest options, right? These are the riskiest things that, you know, can be done in CAT exam, because we don't have any option and we are actually going completely blind in here, right? In para jumbles, my strategy recommendation for you guys is try to find out mandatory pairs, okay? Try to find out mandatory pairs. It's a very useful strategy, okay? Yes, okay, let me take some doubts. VA is ruining your sectional, Siddharth. Okay, 50% accuracy is there. Okay, so that's what I'm trying to tell you, that, you know, let us discuss some actually workable strategies today. Okay, and you know, when you give your sectional test or when you give your mock test the next time, try to follow this order. Okay, and try to follow the strategies that we will do today. Okay, so it might happen that your score will eventually improve, not after first sectional or after first mock, but if you try to apply this strategy continuously in all the sectionals or all the mocks, I am very confident that you will definitely be able to improve your scores in VA. Okay, and sentence placement should be treated as bonus. Okay, I might even recommend sometimes, if you have a very clear pronoun, very clear connector in sentence placement, no, please do it before para jumbles then. Okay, if you are very if the connectors are very visible, then please do the sentence placement questions before para jumbles. Okay, so minimum time that we should give in VA. Okay, so minimum time is, sometimes it happens that your question is solved in 70-80 seconds also, but I won't recommend spending more than 90 seconds on a question. You are spending 90 seconds and you are still nowhere. Okay, if you have started working on a para jumble, 70-80 seconds ho gaye, 90 seconds ho gaye, you are still not getting anywhere, you are still confused, leave it. Not more than 90 seconds. You shouldn't spend more than 90 seconds on a question about which you are still skeptical. Okay, chalo, let's go ahead. Now, what I'm going to do is, I'm going to change the slide. We have one question per slide. I'm going to give you time, okay, say 1.5 minutes or 2 minutes I will give, depending on everyone, okay, because there are many people who are watching, right? So I'll give you 2 minutes, okay, please try to solve the question and then I will take the explanation and I will time you, don't worry. As soon as I change the slide, I will start timing you and I'll give you time to solve these questions. Then I will explain the logic and I'll explain the strategy and I'll explain whether this question was doable or not, okay? Chalo, let's go ahead.
ओके, लेट्स स्टार्ट. सो लाइक आई टोल्ड यू, पैराजम्बल में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मैंडेटरी पेयर्स बनाना. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. अब देखो, वाइल से शुरुआत हो रही है मेरी, करेक्ट. अगर मैं वाइल से शुरुआत कर रही हूँ, दिस कांट बी माई ओपनिंग सेंटेंस, राइट. Let's go ahead. Please don't waste time in reading the entire sentence because since it's starting with while, it might not be the first sentence. Okay, so let's go ahead. Literary agents were and are key players in what we might call print capitalism. Okay, now I have got an idea that this paragraph might be about literary agents. First hint. Second hint is there are no pronouns in this sentence. There are no visible connectors, there are no visible conjunctions in this sentence, right? The good introductory sentence will have minimum connectors and no pronouns, right? This is the identity of a good intro sentence, correct? So literary agents were and are. So I am saying that it's a very generic sentence. It has got no pronouns, it has got no conjunctions, right? So let's place it, try to place it in the beginning. Now, they could operate even under fascism. Who is they? I have very visible pronoun link here. ठीक है, I have very visible pronoun link here. They could operate even under fascism, and their growing presence complicated the publishing industry's professional relationships and power dynamics. So they is the literary agents, they could operate under fascism also, and their presence was complicating things, right? So can I say 2-3 is my mandatory pair? Shadi kara do, 2-3, you can't separate them, just get them married because I have very strong pronoun links here. Okay, let's get them married. 2-3 are done, it's my couple, I can't separate them now. Okay, 2-3 is done. Okay, let's go ahead now. During the 1930s, Milan emerged as the capital of transnational literature in Italy, causing many Italian literary agents to relocate there during that period. Okay, so this comes out as a fact for me. Okay, 4 is a fact. But let's read 1 because we didn't read 1 completely. 1 को एक बार फिर से जाके पढ़ते हैं अभी पूरा, ठीक है. While many publishers resisted the entry of this new player. Who is new player? Literary agents, right? This new player is literary agents again into the field. Many others were receptive, right? Many others were receptive, especially northern Italy and above all Milan. अब Milan का ये जो है ये first reference आ रहा है. This is the first reference for Milan. This new player, I have a very good hint here, right? So फिर अब 3 के साथ मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा फिर से इन दोनों को मुझे पेयर बनाना पड़ेगा क्योंकि I have a pronoun link here now. This new player. Who is this new player? Literary agents. So 2-3 are married. 3-1 is also married now, right? So I can't separate 2-3. I can't separate 3-1. Now placement is remaining only for 4, right? अब सिर्फ किसकी placement बची है? 4 की placement बची है. Now during the 1930s, Milan emerged as, देखो above all Milan बोला है. Above all means सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी या सबसे ज़्यादा एक्शन कहाँ पे हो रहा था? मिलान में हो रहा था. ऑल द एक्शन वॉज हैपनिंग इन मिलान. नाउ वॉट वॉज दैट एक्शन हैपनिंग इज एक्चुअली मेंशन टू अस इन 4, राइट? सो either I can place 4 here or I can place 4 here. If I place 4 here, that Milan flow which is happening in 1 and 4 will be broken, correct? If I put 4 in the beginning, okay, जिन भी लोगों ने 4 को सबसे पहले लिखा है, this is especially for them. If you write 4 in the beginning, you will cut the flow of this idea. You will cut the flow of this idea if you put 4 here. So I can't put 4 in the beginning. I'll have to go at last because then I will have a reference continuation of the idea of Milan. So I'll have to put it here. Okay, I'll have to put it here. 4 can't be the opening because that Milan idea will be cut off then. You can't cut off the idea. The idea should flow, right? The idea should flow. So see here, you could solve this question by mandatory pairings. I am telling you again and again, mandatory pairings, very important thing. Okay, in parajumbles, please try to form mandatory pairings. Okay.
The player is not reference to Milan. Ayush, see, my point is what I've done is I've taken two different ideas. I am not mixing them up. My literary agents idea was in 231 and Milan continuation idea is 1-4. So you know that Milan wala part is what is making me making 1 and 4 as a pair. Okay, is what making 1 and 4 as a pair. Okay. Another very common mistake that students do in solving parajumbles is they are invested too much in understanding the ideas also. Okay. If you are getting your answer without investing too much in logic and without investing too much in ideas, please go for it. Grammatical links are very much credible links for you to form the sequence. Okay. So please don't get over invested in logic and ideas. Okay. Your job is just to make a sequence and leave it. Okay. Let's go ahead. This new player को Milan consider कर लिया. Okay. You see, many publishers resisted the entry they have said, right? Resisted the entry. So that resisted the entry part is our hint here. Okay. Strategy for parajumbles, like I tell you always in my workshops also, in the class also, parajumble pair, mandatory pairs banao. Get them married. Get the sentences married to each other. This is the best strategy for parajumbles. Get the sentences married to each other. Your whole focus should be marrying them. Okay. This is the only strategy that should be followed in parajumbles. Okay. Chalo, let's go ahead. How did you connect 1 and 3? Okay. See, 1 and 3 I didn't connect. I connected 3 and 1. See, 3 had, they could operate under fascism and their growing presence complicated the publishing industry. Publishing industry का reference है मेरे पास. Publishing industry was resistant to literary agents. While many publishers resisted the entry. This publishing scenario, publishing industry's professional relationship and publishers. This was my idea to connect both of them. Plus this new player. I had one pronoun link also. Okay. I had one pronoun link also. Okay. So let's go ahead. The sequence should be 2, 3, 1, 4. Okay. Why not 4, 1? Rishabh, if you do 4, 1, then 3, 1 can't get married. My problem is I can't separate 2, 3, 1. I can't separate 2, 3, 1. So I can't put 4, 1 then. 2, 3, 1 is fixed for me. If 2, 3, 1 is fixed, सिर्फ मुझे 4 को ही चांस है हिलाने का. I can either place it in the beginning or at the end. Okay. Let's go ahead. Basically two idea the right. Yes, your takeaway should be get them married. Your takeaway should be get them married. See, literary agents are plural. I can understand that. But then they are saying that entry of this new player into the field. When you say player singular in one, it signifies the class, not the plurality of literary agents. It signifies the class of literary agents, not the people. It signifies the class, okay, in one. That is the reason singularity plurality का difference आ रहा है, okay? Let's go ahead. Next question, start the time now.
Okay, let's start. Now, para-summary question. Okay, para-summary question, like I told you, should be attempted first, right? Para-summary question mein na, I feel the strategy that should be used is, your para-summary question is like a human being. Okay, your para-summary question is like a human being. You shouldn't be interested in flesh, looks, beauty, clothes. You should only be interested in skeleton. Okay, you should only be interested in skeleton. That is what I feel should be done is keyword skeleton. Okay, what should be done is keyword skeleton. Means what? Only look for bare bones. Only look for bare bones in the para summary. Remove all the unnecessary outer exterior. Okay, remove all the unnecessary outer exterior. Only focus on bare bones. Okay, so the keyword skeleton is the thing that you should be doing. Okay, now how to do that I'll tell you. Okay, as an enfeebled old man, enfeebled is weak. Okay, as an enfeebled old man, more accustomed to, accustomed is used to pure and temperate air of rural Shropshire. Temperate is moderate. Okay, temperate is moderate. Temperate air of rural Shropshire. Parr was also extremely vulnerable, means susceptible to the air pollution that plagued early modern London. Okay, so Parr was an old man who was used to the rural atmosphere and he was very susceptible to air pollution that plagued early London, right? So can we say like this, that Parr, rural, susceptible to London, right? Correct? Now, Harvey explained that the city was full of filth of men, animals, canals and other forms of dirt. Harvey is a philosopher. Okay, even if we don't know, let's go ahead. He's a person of interest. So Harvey explains that the city was full of this, which combined with the not inconsiderable grime is dirt. Okay, grime is dirt, produced by the constant burning of coal to produce unhealthy heavy air, which was at its most unpleasant in the autumn. So, you know, susceptible to London, then I can say that London was, let's write here, London was full of dirt, grime, correct? The diarist John Evelyn, now again this was the first character, this is the second character that I have. The diarist John Evelyn, नाम से ही पता चल रहा है डायरिस्ट मतलब डायरी लिखने वाला, राइट? नाम से ही पता चल रहा है डायरिस्ट इज डायरी लिखने वाला. सो डायरिस्ट John Evelyn, whose 1661 treatise is a formal writing. Okay, treatise is a formal writing. Formal writing Fiume Fungium focused on London's growing pollution problems, had no doubt that Parr's death was caused by the air. Okay, now air means what? AER is Latin ancient word for air, nothing else. Okay, so air, that is air which plainly withered him. Withered means decayed, right? Withered is decayed. The very old man was, it seemed clear to his contemporaries, the embodiment of a better way of life, at least until he succumbed. Succumbed means gave in to the temptations and excesses of London. The point to be noted here is Parr was an old man, he couldn't adjust to London. Opinion of Harvey is given, opinion of John Evelyn is given, and then last important part is he was a rural man, he couldn't come to terms with the urban culture, right? And he gave in to the temptations and excesses of London, right? Now, let's go ahead. Option 1. Parr, an enfeebled old man, was inevitably withered by London's heavy autumn air, confirming city's harshness for rural old people. Can anyone tell me what is the problem with option A? Option A में क्या problem है? What is the problem in option A? Autumn distorted, autumn air, heavy autumn air
very good. We are generally talking about pollution and dirt and grime. We are not focused on autumn. तो आपको एक autumn जो keyword है, it's not limited to the paragraph. So A is gone, right? Autumn, very good. Too specific. Autumn वाला जो part है, it's too specific. Very good. London's polluted air, worsened by coal and filth, killed frail par who symbolized rural virtue, undermined by urban indulgence. What is the problem with option B? What is the problem with option B? Okay. Too direct, virtue, extreme, generic. No problem, no problem. Okay, okay. See, London's polluted air, सही है. Worsened by coal and filth, सही है. Killed frail par, सही है because succumbed बोला है उन्होंने. Who symbolized rural virtue, right. Undermined by urban indulgence, right. I don't have any problem in B. There is no visible problem in B. Is there any visible problem? I didn't find any keyword that would be objectionable in option B. I couldn't find a single word that would be objectionable in B. Yes. Now let's go to C. Experts attributed. Stop here itself. In C, stop at experts. There are no experts given to us. Only two people, Harvey and John Evelyn. Plurality. Experts attributed. This experts wala part goes a little bit extreme here. This goes little bit extreme. C is gone. Okay. Demise to urban pollution, underscoring how rural figures like him embodied ideals undone by city temptations. Not only temptations, excess is also, na? Excess is also, right? So, experts is a problem here, okay? Experts is a problem. So, C is gone. D. Vulnerable to London's coal-grimed filth, Parr died as a symbol of superior rural life. Stop here itself. Superior. Where in the para is it mentioned that rural life is superior? Do we have any indication in the para to indicate that rural life is superior? Is there any indication given? Extreme. Yes, there is no indication of superior rural life. Very good. So there is no indication. So D is also gone. Okay. We don't have anything to eliminate option B. मेरे पास A में problem था autumn, C में problem था experts, D में problem था superior. B में मेरे पास कोई problematic word नहीं है. So I'll go with B. B is the correct answer here. Okay. This is the strategy that should be followed. Try to find out the keywords and match them with the options. Okay. And one more thing to be beware of in para summary questions is sometimes what they do is they take a secondary detail and they make it whole. They take a secondary detail and they make it whole. Like in this case, it might happen that they will give something of Harvey. Okay, they'll take that Harvey wala part and they'll give the whole option about Harvey. Or they'll give the whole option about John Evelyn. Please beware of such options because they are present in the para but they are secondary details. Okay, please beware of secondary details option in para summary. That's the closest trap that students fall in. Okay, let's go ahead. Okay, I am turning the slide. Please be ready for the next question. ओके वेरी गुड. द पोल हैज बीन रेज्ड. अगर किसी को करना है तो आप पोल पे मार्क करो अभी.
Okay, we have started getting answers. Okay, let's start. So I know poll tha, but I said poll and Ananya also said poll, and you guys started answering also. It's a parajumble question, right? It's a parajumble question. We'll do polling in para summary and odd one out, okay? We'll do para summary and odd one out, okay? Let's go ahead. Okay, बहुत सारे आंसर्स आ गए. Guys, आपका ध्यान नहीं था. We were testing you. Were you attentive or not? I didn't start the poll. The group started the poll. Rodha group started the poll. I can't do the polling. I can't start the poll. I can't start the poll. Okay, let's start. चलो, हो गया. Time pass हो गया. चलो, let's start. ठीक है. Okay, I found this question very bizarre, very weird question, right? I found this question very weird because there is no clear flow as such. Okay, so this is a very classic example of a question that if you couldn't solve in 70-80 seconds, please leave it. If you couldn't solve, if you couldn't find mandatory pairs, please leave the question. Okay, it was a very weird type of question. Let's see. I have awoken 3 times in this gloaming to a window blown to its hinges. Gloaming is sundown time. Dusk. You can also say twilight actually. You can also say twilight. Okay. Yes guys, it was a very confusing question. So ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि 70-80 सेकेंड्स में नहीं बन रहा है तो छोड़ दो वाला. ठीक है. So I have awoken 3 times since dusk, okay, or to a window blown from its hinges. Okay, we have booked this place because we only have one life. But now I am skeptical. यार एक one life की बात हो रही है ना. We only have one life. This sort of concluding feel होता है, right? This sort of concluding feel होता है, correct? So let's put it aside. Dad sings to check the acoustics. Okay, acoustics is sound quality, right? Acoustics is sound quality. Someone is always wishing to be in or out of these thin places. Now, this is the first where the place is, mentioned for the first time, right? The place is mentioned for the first time. So, can I say 4 should be my opening sentence? Right, I can say 4 should be my opening sentence because which places? So these thin places we are talking about, right? Then can I go to 1 because I am talking about a specific detail in that place? That window blown from its hinges is a specific detail for a general place, that is these places. So I'll go to 1 then because someone is always wishing to be in or out. Someone wants to come in or someone wants to go out. And I could hear the hinges of the windows. So I am going from generic to specific. Okay, generic to specific. So 1. Then can I say dad sings to check the acoustics. Windows are blowing from its hinges and dad is singing to check the acoustics. Where the noise is coming from. Why is it so noisy? Why the windows are blowing? Is there a presence of some supernatural spirit or something like that? Right? So 3 should be here, and then we only have one life wala part. Why are we doing this? Why did we book the place? Okay, since this place is so spooky, why did we even book the place? We booked this place because we only have one life. But now I am skeptical. So 2. Okay, the construction is very bizarre. Okay, if you ask me, these thin places is the only generic link that we could find for the opening sentence. Because you can't put this as the opening sentence, you can't put this also as the opening sentence because then we are talking about again this place, and even 3 can't be the opening sentence. I put 4 as the opening sentence because 1, 2, 3 couldn't be the opening sentences. Okay, 1, 2, 3 couldn't be the opening sentences. Okay. Acoustics is noise. You to check the noise, sound system of the room. Okay, sound system of the room is acoustics. Okay.
Now, 2 can't begin Angela because the problem with 2 is you are sort of concluding, you know, we booked this place because we wanted to have a thrill, because we only have one life. But now I am skeptical. So you are saying that we booked this place, you are giving the reason, and then you are saying now I am skeptical. Why you are skeptical? Because all these things were happening. Acoustics wala thing was happening. Windows were, you know, getting blown from their hinges. These things were happening, and that was the reason you are skeptical. So for skeptical, you had reasons first, and then you are saying I am skeptical. Okay. So 4, 1, 3, 2 is the only order that makes sense if you ask me, but this is the kind of question that you should actually leave in the exam, because 4 also is not a very clear opener. I couldn't place 1, 2, 3 as opening, so I put 4 as the opener because that was the most generic sentence. Okay, let's go ahead. What if incorrectly? Okay, Tanmay, if the linking part that has to be done has to follow links, that is pronoun, you should have a pronoun link, you should have a connector, you should have a conjunction, or you should have idea connector. So if that logic is followed of pronoun, connector, conjunction or idea, you might not actually make a wrong pair. Okay, the chances are very less. If you follow the procedure properly, there's a very less chance that you're making a wrong pair. But if at all you make a wrong pair, you don't have any source to correct it. Okay, you don't have any source to correct it. Okay. How to find out the opening sentence in these kind of questions? Very good question, Abhinav. Like I told you, I couldn't put 1, 2, 3 as opening, so I had to put 4. Option क्या बचा फिर मेरे पास? 1 can't be the opening, 2 can't be the opening, 3 can't be the opening. तो बचा क्या फिर मेरे पास? Someone generic, okay, to be in or out of these thin places. Place is mentioned for the first time in this case. So someone was generic and the thin places का mention पहली बार आ रहा है यहाँ पे. So I thought 4 should be the generic one and should be placed in the beginning. Okay, चलो let's go ahead. Okay, now can we raise the poll? It's a para summary question. Now can we raise the poll? I don't know how to raise a poll. I can't raise a poll.
Okay, let's start. Now it's a para summary question. Okay, it is commonplace to hear, in a way only slightly muted by the current pandemic. See, I always tell all the students, they say this part is in between two dash, right? This is one dash, this is another dash. So this part is extra information. Okay, so in order to make sense of the entire sentence while reading, please skip this part. Please skip this part while first reading in order to understand the broader sentence. Okay, so it is commonplace to hear that the contemporary world is characterized by the disappearance of boundaries, by limitless connection and flow, by the erasing of the differences between places, by what is effectively the disappearance of place. Okay, so actually when it's a long, very long sentence, please skip the part while reading which is between two commas or two dash. Like in this case, two dash, two commas के बीच में जो भी part होगा, please keep it optional. Read it after the sentence so you will get the extra information. But your understanding of the sentence won't be hampered. Okay, please make sure you follow this. Okay, so see, it is commonplace to hear, okay, that the contemporary world is characterized by disappearance of boundaries. We live boundaryless nowadays. There are no boundaries at all. Okay, by limitless connection and flow. There's so much connection. We are always connected, right? By erasing the differences between places. What are we doing? We are erasing the difference between the places. I am sitting at my home. You guys are sitting at your home. And we are connected. Right, and we have erased the difference in place. You guys might live in different cities all over India, right? But we have erased the difference in places. Effectively, the disappearance of place itself. So when we try to disappear the differences between places, कभी-कभी पूरी जगह ही गायब हो जाती है. Okay, कभी-कभी पूरी जगह ही गायब हो जाती है. Okay, this is the meaning of the sentence. Now, for many, this may well appear as the realization of a certain sort of promise contained within modernity and even as contained in Descartes of a world without boundaries. Now, Descartes is known as the father of modern philosophy. Okay, he was a philosopher, he was a thinker. He is known as the father of modern philosophy. So, author is just giving in a very running, reference here of Descartes here. That is thereby also a world open to a pure and unfettered mode of thinking. So, author says that for some people, this will appear as very nice. People will actually welcome this. See, author is writing here. This may well appear as realization of certain sort of promise contained within modernity. So, we feel that modernity owes us this. Modernity should give us boundaryless access, right? Even as contained in Descartes, in a world without boundaries or places. Descartes always used to say that I am, therefore I can, therefore I am. So basically, he is the father of modern philosophy, and his thinking was that thinking or reflection should come from a place. That was his basic, teaching. So that is the reason author is giving us the example of Descartes here. Okay. See, of a world without boundaries or places, that is thereby also a world open to pure and unfettered mode of thinking. We feel that it is very pure, it is very good, that we don't have limits, but Descartes might not agree with us. Yet, if thinking, now see yet, okay, there's going to be a different point of view now. There's going to be a different point of view. Yet, thinking is indeed bound to its place as the condition of its opening into the world, then what is really presaged? Okay, presaged is not the opening up of thinking, but its closing off. Not freeing up of thinking, but its effacement. Okay, now these are the words. Effacement means erasure, wipe out. Okay, and presaged means foretell. Okay, presage is foretell. So what author thinks that? Author thinks that if thinking is bound to a place, अगर thinking किसी एक place से जोड़ी गई है, okay, then what you can't foretell, then what is really presaged, what is really foretold is not the opening up of thinking, but it's closing. So what you actually do when you erase the place,
by which you are thinking, you are actually closing off. You are not opening up. You are not freeing up thinking. You are actually wiping out thinking. So basically, author doesn't agree with this boundaryless, modernist thing of having limitless access. He feels that thinking is bound to a place. If you wipe that place out, you are not thinking. You are closing up. You are not becoming modern. You are not becoming limitless. You are wiping out your capacity to think. This is the meaning of the sentence. Okay. Now, let's see the options. The global erasure of place fosters unprecedented connectivity and freedom, but overlooks how thought remains bound to its context as its condition for emergence. Okay. See, they are saying that the global erasure of place fosters unprecedented connectivity. यहाँ तक option सही जा रहा है, and freedom तक भी सही जा रहा है, correct? But overlooks how thought remains bound to its context as its condition for emergence. Okay, para says, हमारा पैराग्राफ ये बोल रहा है कि थिंकिंग पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाती है. ये तो बहुत रिवर्स कॉजालिटी हो गई ना, इन्होंने तो रिवर्स ही कर दिया इसको एंड टू मच डिवर्जन डाल दिया. हाफ ऑप्शन सही जा रहा है, हाफ ऑप्शन भटक गया. हाफ ऑप्शन इज गोइंग अहेड, इट्स गोइंग ऑन ट्रैक, दैट अदर हाफ इज डाइवर्ज्ड, अदर हाफ इज गोइंग ऑफ ट्रैक, राइट? सो ए कांट बी माई आंसर देन. Modernity's promise of boundarylessness, once muted during the pandemic, ensures thought's liberation from limits of place, encouraging pure and unfettered intellectual engagement. This is contrary to my para. My para says you are not erasing, freedom and all. You are erasing entire thinking. You feel you are getting freedom, but you are not getting. You are erasing your thinking completely. This is entirely contrary to what our paragraph is trying to tell us, right? Yes, it's not the actual context. Correct. It's not the actual context. Okay. So, B is also gone then, right? The disappearance of boundaries may appear liberating. यहाँ तक सही जा रहा है. But if thinking requires a place, यहाँ तक भी सही जा रहा है. Then such erasure risks closing rather than opening thought. Yes. I don't have any problem in option C. C में किसी को प्रॉब्लम नजर आ रहा है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आया C में. I didn't see any problem in C. Yes, there's no problem in C. See, disappearance of boundaries, correct. Appear liberating, correct. Thinking requires a place, correct. Then such erasure risks closing, this is also correct. Let's, keep C aside. Boundaries and places, once considered barriers of free thought, are paradoxically essential. Okay, stop. I have a very problematic word, paradoxically. I have a very problematic word, paradoxically. Okay, go ahead. Thinking's very possibility, making their disappearance threatening. Threatening. Isn't this exaggeration? Isn't threatening exaggeration? Plus paradoxically also, right? These two words, they are not actually, present in my context. Threatening is again exaggeration. It's an alien term. Threatening is an alien term for me. No aliens required. D is gone. You know what? आप ये चीज़ याद रखना हमेशा while solving para summary questions. Your paragraph is like your home. Okay, your paragraph is like your home. You can't step out of that. You can't step out of that. Paradoxically and threatening is stepping out of your home. Okay, paradoxically and threatening part is stepping out of your home. We can't do that. We can't step out of our home. We have to remain inside. We have to remain in our safe space. So no alien terms allowed. Okay. Do summaries are mostly passive and not extreme? No, Abhishek, depends on the author who is writing the para summary. If the author is in very much anger mood to critique something very harshly, then the para itself might be very extreme. So if the para is extreme, options are allowed to be extreme. Like I told you, that is your home. So if your home allows extremity, please go ahead. If your home doesn't allow it, you can't put it. Okay? Let's go ahead. Okay.
Now this is odd one out, okay? This is odd one out. Okay. Okay, we have got a lot of answers. Let's start. See, this was a kind of question that I was talking about, wherein three, sentences can be linked to form a mini para. Okay, if mini para is formed, it becomes easier for you. Okay, so this was the type that I was talking about. Let's see. In him can't be the opening sentence. अगर आप para jumble form करने की कोशिश कर रहे हो तो. Okay, let's see. In him, the scientific revolution unleashed by Newton's many discoveries converged with the political revolution that would consume the ancient regime. It should be T here. Ancient regime. Okay. The visionary monument was never built, of course. Okay. Bohle's greatest contribution, however, lay in his meticulous attention to practical construction techniques that ensured his buildings could be easily replicated. Okay, but Bohle stands nevertheless as the architect who best embodies the 18th century's revolutionary ideal. Perhaps none was more enamored of the English scientist than the architect Etienne Louis Bohle, who in 1784 conceived the idea of a cenotaph for the great man. Okay, here I have two explicit hints. I'll mark them out for you. Whenever you are talking about in a parajumble, full name should come first, then only name or only surname should come, right? Here only Bohle is coming, here only Bohle is coming, here I have the entire name, okay? Here I have the full name. So Etienne Louis Bohle, I have the first name. Now I have got my introduction, so 5 should come before 4, before 3, correct? 5 should come before 4, before 3. This we have clarified. Full name should be first and only name, only surname should be after that, right? Okay, so if I say this, that perhaps none was more enamored by the English scientist, then I am saying that 5 is my introductory paragraph. Now, go ahead. Who in 1784 conceived the idea of cenotaph for the great man? Who is the great man you think? Great man जो बोला है 5 में, who do you think is the great man? Who do you think is the great man in 5? Answer this. Newton. Very good. Very good. So you have got the reference. Newton is the great man, right? You have got the reference. अगर अभी आपको reference मिल गया है, okay, तो can I say that, the visionary monument was never built, of course. See, I am talking about conceive the idea of cenotaph for the great man. The visionary monument was never built, of course. In him, the scientific revolution unleashed by Newton. Now here Newton is coming. Now here Newton is coming. So basically, 5, 1, 2 are my mini para. 5, 1, 2 or 5, 2, 1 is my mini para. Now 5, 2, 1, 5, 1, 2 order जो भी होगी, they are together. Does everyone agree with me till here? I can't break 5, 1, 2, 5, 2, 1 जो भी होगा वो. I can't break 5, 2, 1. Does everyone agree with me till here?
Why? Because I have two references. Cenotaph, great, the great man. अब who is the great man? Newton. And I am talking about the visionary monument which was never built. Right? So अब आंसर क्या होगा? या तो 3 होगा या तो 4 होगा. राइट? अब आंसर क्या होगा? या तो 3 या तो 4. करेक्ट? अब देखते हैं 3, 4 में से. नाउ सी, Bohle's greatest contribution, however, lay in his meticulous attention to practical construction techniques that ensured his buildings could be easily replicated. यार यहाँ पे बात हो रही है कंस्ट्रक्शन की. Am I right about this? Am I right about this? कि 3 में बात हो रही है कंस्ट्रक्शन की. Okay? Now, okay. Some of you are asking me how is 5 and 2 related. Cenotaph is a monument, okay, built in the memory of someone. In the memory of someone. Okay, cenotaph means a monument which is built in the memory of someone. Like Taj Mahal, yes, Srishti, thank you so much. Like Taj Mahal. Taj Mahal is a cenotaph, okay? Taj Mahal is a cenotaph. So, monument built in the memory of someone, I can say shrine, okay? I can say shrine. Yes, here vocab might be the stumbling block for you. Here vocab might be the stumbling block for you. But I will still tell you, you can solve this without cenotaph also. How? See, scientist than the architect बोला है आपको. He was more of a scientist than architect, right? Architect बोला है. अगर आप architect की बात कर रहे हो तो conceive the idea of cenotaph तो monument होना चाहिए, building होनी चाहिए, construction से related कुछ तो भी होना चाहिए. If I am talking about architect, does everyone agree with me till here? कि अगर architect की बात हो रही है तो cenotaph का meaning आप जोड़ दो थोड़ा सा आगे जाके कि somewhat building type का कुछ होगा, है ना? Building type का कुछ होगा. हाँ, तो अगर आपको cenotaph का मीनिंग नहीं भी पता तो भी आपको ये पता है कि आइटेन लुई बोले was an architect, so cenotaph might be something of a building. Okay, agreed. Okay, people agree with me. Good. So then can I say that 5, 1, 2 are related? अब पता चला 5, 1, 2 related है करके, right? 5 I can say, then I can say the visionary monument was never built, of course. He had conceived the idea. See, conceived the idea, but it was never built. He conceived the idea of the monument, but it was never built. Can I say 5 के साथ 2 आ गया फिर? I can say 5 के साथ 2. Okay. अतुल कौन सा डाउट है आपको? अतुल, which doubt? ओके, सो 5, 2 हो गया मेरा. अब आई हैव टू डू इन हिम. अब मेरा न्यूटन का रेफरेंस आना चाहिए बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेट मैन हु इज न्यूटन. सो इन हिम द साइंटिफिक रेवोल्यूशन अनलीस्ड बाय न्यूटन्स मेनी डिस्कवरीज कॉन्वर्ज्ड विद द पॉलिटिकल रेवोल्यूशन दैट वुड कंज्यूम एंशियंट रेजिम. सी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, ओके, converged means meet with the political revolution. Okay, ये कैसे आइडेंटिफाई? See, the thing is, are you asking me about the name? That is I10 Louis बोले. Are you asking me about the name, अतुल? My point was, पहले पूरा नाम आना चाहिए, उसके बाद में सिर्फ नेम या सरनेम आना चाहिए. ओके, सो आप यहाँ तक अगर आते हो तो आपको पढ़ते, मतलब when you read you will get to know that I10 Louis Boule is a full name. The great man. Okay, see, who conceived बोला है ना? Who conceived? How can he conceive the monument about himself? Boule conceived the idea of a cenotaph for the great man बोला है. Boule conceived the idea of a monument for the great man. So how great man can refer Boule then? Logic ये है कि Boule conceived the idea of a monument for the great man. Then how can great man be Boule? This is the logic. Okay. So चलो 5, 2, 1 सब लोग आ गया, सब लोग यहाँ तक मेरे साथ है. 5, 2, 1. ओके, चलो अब लेट्स गो अहेड.
But Bolle stands nevertheless as the architect who best embodies the 18th century's revolutionary ideal. यहाँ पे भी revolutionary ideal की बात हो रही है. You know, 3 is the only one जहाँ पे construction की बात हो रही है, politics या revolution की नहीं. All the 4 sentences 5 to 1 4 talk about revolution, politics and the monument. 3 is only talking about general buildings, not even the cenotaph. 3 talks about only general buildings, not even cenotaph. मतलब हम cenotaph की बात कर रहे हैं, हम revolution की बात कर रहे हैं, हम politics की बात कर रहे हैं, और 3 बात कर रहे हैं general style की, general construction of buildings की. मेरा focus shift हो गया ना? Isn't my focus shifting? Yes, 3 is the answer. Thank you so much, Navya. 3 is the answer. Got it now? 1, 2, 4, 5 are talking about Bolle as a revolutionary, as a political activist, as a cenotaph, you know, a person who conceived the idea of monument. 4 talks about general buildings. Trap question, yes. That's why I told you it's a very good question. ठीक है, अब देखो, focus, please focus what I'm trying to tell you. This question could be solved only by grammar. I'll tell you how. Please listen, this question can be solved only by grammar. ठीक है, I have this one link, okay? This name वाला link I have, okay? I have name वाला link. I have great man वाला link, which is relating to Newton. I have this cenotaph वाला link. So if I pick up these 3 grammatical hints, mention of Newton, full name and surname, and mention of monument, I can group 5 to 1. अगर आपने 5 to 1 को ग्रुप कर लिया और 4 और 3 को कंपेयर करोगे तो 3 शिफ्ट हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि जैसे ही मैंने 5 to 1 ग्रुप कर दिया आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट किया कि मैम 3 इज द आंसर. सो एज सून एज आई ग्रुप्ड 5 to 1 यू गाइज स्टार्टेड गिविंग द आंसर्स एज 3. सो बेसिकली मिनी पैरा, ओके, मिनी पैरा बनेगा तो आंसर आ जाएगा. ओके, isn't it 5 1 2 4? No, it's 5 to 1 4. It's 5 2 because I am ending 5 at the idea of monument. So I have to start 2 there. I am ending 5 at monument part. So I have to continue the monument वाला part. क्योंकि अगर मैं 1 के बाद डालूंगी तो बहुत odd लगेगा. मेरा मेंशन आ रहा है cenotaph का 5 में, मुझे वो रेफरेंस कंटिन्यू करना पड़ेगा 2 में. ओके, I'll tell you last time, my 5th sentence is ending in the idea of monument. I have to pick up 2 there and then 1. If I put 2 after 1, it will sound very weird about the visionary monument. Okay, let's go ahead. Okay. Okay, I have started getting answers. Let's start. 2 minutes are done.
So sentence insertion है ना. This is the reason I came to get a higher education. Okay guys, again I have a big grammatical hint. This is the reason. Okay, I have a big grammatical hint. This is the reason. तो reason पहले आना चाहिए, right? Reason should come before that. Okay, this is the reason I came to get a higher education after all, hoping my mastering of language and my becoming expert in a field will secure me a job, a white picket fence, a 401k, financial security. Okay, now let's see the paragraph. In the front of the classroom, the tenured professor, tenured means the professor who is a permanent faculty member. Okay, professor who is a permanent faculty member, tenured professor teaching this introduction to literary criticism course my sophomore year of college. Sophomore is second year of college, lectures on Shakespeare's The Tempest. ठीक है, so in the front of the classroom, so he is creating a scene. ठीक है, you know, in the front of the classroom the permanent professor is, you know, teaching literary criticism course and it's my second year of college. He is creating a scene. Please enter the scene. He is creating a scene. Please enter the scene. Okay, now you have entered the scene. अब in one they say this is the reason I came to get higher education. अभी मेरा सीन ओपन हुआ है. My scene has just opened where the professor is standing in front of the class and he is giving a lecture. Can I say this is the reason I came to get? No. My scene has just opened. Okay, my scene has just opened. Now I am the student of language. He, the master of language. Second hint, master. Second hint, master. I have got my second hint. I am the student of language. He is the master of language. Now see, scene is there. Professor is standing in front of the class. He is giving a lecture on literary criticism. I am the student of the language. He is the master of the language. This is the reason I came to get a higher education after all, hoping my mastering of the language. He is the master. So that master reference is continued. Okay, if I put my sentence in two, this is the reason. What is the reason? He is the master. I am the student. This is the reason I came to get a higher education, to master the language. So this reference is coming. Two में if I put my sentence, this is seamless. The beginning part, this is the reason, is also fit, and mastering of language part is also fit. Now let's go ahead. I want to be all knowing like this. See, all knowing. I want to be all knowing is again mastering. I want to be all knowing is again mastering, right? Okay, everyone is with me, right? Okay, so this I want to be all knowing is like again mastering. Okay, like this white professor and my white peers, like the white teachers in high school and the white children in my kindergarten classroom, because they are so smart, I tell myself, because their language is so pretty. अब can I see, ये जो sentence है ना, I want to be all knowing, this sentence is little bit poetic. Does everyone agree with me? This sentence is little bit poetic. It has a poetic flair, right? This has a poetic flair. Poetic flair. Everyone agrees that, you know, this white teacher, white children, then white professor, this has a poetic flair. This desire for mastery is not just academic. It is deeply intertwined with aspirations for social and economic security. Okay, if I put my sentence in three, can I justify this part? Becoming expert in a field will secure me a job, a white picket fence, a 401k, financial security. Can this part be justified after poetic flair? Will this realistic part be in line with the poetic flair part? My, you know, flow, I am talking practically first, then I am giving it a poetic flair. So after poetic flair, I am talking about financial security again. I am breaking the flow then, isn't it? So 3 though is not the answer. 3 can't come.
Okay, 3 can't come. Very clear. Okay, now this desire for mastery is not just academic, it is deeply intertwined with the aspiration for social and economic security. Okay, now see here, deeply intertwined with aspirations. These two words are giving me an emotion. Again, these two words, deeply intertwined and desire and aspirations, they are giving off an emotion, right? They are giving off an emotion. Now again the problem is same. If I put my sentence in 4, I am again going to a practical part after emotional part. I am going to a practical part again after emotional part, right? So see how the flow is: practical, poetic and emotional. How is the flow? Practical, poetic, emotional. And my sentence is very practical. I have to put my sentence in the practical part. I can't put my sentence in poetic part. I can't put my sentence in emotional part. I have to go with the practical part. 1 and 2 are the only options remaining for me. 1 is prematured. 1 is premature. What is remaining is only 2. Okay? Okay, Ravi sir is in the chatting and everyone is busy chatting with Ravi sir. Okay. Guys, sir is there available always for you. This marathon वापस नहीं होने वाला है. Okay, focus on the questions. Sir is always available for you. Okay, like sir told, he is available at 4 o'clock in the night also. Okay, so he will always be available. He is not going anywhere, right? Sir, please हाँ बोल दो कि आप available रहोगे करके. शायद तब बच्चे focus करेंगे. Sir is available. Don't worry. I can guarantee you, sir is always available. Okay. Okay, so as I was saying that, do you guys agree with this analysis that practical, poetic and emotional? My sentence is pretty practical. I have to put it in either 1 or 2. If I put it in 1, it will be premature. I have to go with 2. Okay. Why not 3? Please explain. Okay. 3. I will tell you why not 3. Because I want to be all knowing like this white professor and my white peers, white teachers, white children in my kindergarten classes because they are so smart. Ahmed, don't you think बहुत ही poetic हो जाता है white professor, white peers, बहुत poetic हो जाता है, right? It's very poetic. And my sentence is very practical. My sentence is very practical. I can't put a practical sentence in between of the poetic flair. Okay, in between of the poetic flair. So my problem is I can't put it in 3. Same problem is with 4 also. 4 is before 4 I'm giving off emotions of aspirational, desire, deeply intertwined, right? I'm giving off emotion. So I can't put it in 4 also. I'll have to go with 2 and I have 2 reasons for that. Mastering part and this is the reason part. I have 2 grammatical reasons also. So I have given you tone, flow also and I have given you grammatical reasons also. So 2 is the correct answer. Okay. 2 is the correct answer. Okay. Raghav, if you say 4 होना चाहिए, but how will you explain this part that field will secure me a job? White picket fence, 401k and financial security. आपने ना आपके एस्पिरेशंस, आपकी इमोशन बता दिए, फिर आप फिर से प्रैक्टिकल हो जाते हो. फिर बोलते हो मुझे जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी चाहिए, मुझे 401k भी चाहिए. दिस कांट बी. आप इतने जल्दी मोड स्विच नहीं कर सकते. यू आर स्विचिंग द मूड. Okay, you are switching the mood. So switching of this mood is very abrupt. Okay, Raghav, so we can't do it in 4. You have to follow the tone also. Okay. What about financial security? Financial security, see, he is saying that I want to be all knowing like this white professor. He wants to achieve all these things. So he wants to master. So his reason for mastering and his reason for getting a higher education is mentioned. So financial security is included, but that's a secondary point. That's a secondary point. Primary point मेरा यहीं तक है. Primary point मेरा यहीं तक है. This is the secondary point. Okay.
Please focus on the primary part of the sentence, the larger part of the sentence. Okay? Okay, let's go ahead. The logic seems to be that as placebos, okay, yes, I know, I was muted. Okay, now am I audible, right? शुरू से ओके शुरू से करती हूँ यार, हो जाती है गलती, शुरू से करती हूँ. ओके, गिव मी अ मिनट. द placebo effect is well known to be very powerful. If one believes a treatment will be effective, that belief goes a long way to making it effective. So, if you believe that the treatment is effective, that belief is going to go a long way. Okay. We typically think that the effective use of placebo requires deception. Deception means cheating. Okay. So, whenever we give placebos to any person,
then we don't actually tell them that we are giving placebos. We tell them that these are the medicines, you have to take the medicine. Okay. Now, when you actually give them placebos, they don't know that they are not medicine. So, they believe that we are getting medicine. If we are getting medicine, we will get better, right? This is what the belief is. So, this is deceptive. The author says that, this is deceptive. The logic seems to be that as placebos by definition have no therapeutic properties. Therapeutic means medicinal. Okay, therapeutic means medicinal. Medicinal properties independent of the patient's belief that she is being given effective treatment. If the patient knows that she is being given a placebo, she'll stop believing in its effectiveness and thereby deprive it of its effectiveness, which will confirm the truth of her belief that it is ineffective. यार बहुत लंबा सेंटेंस है, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म हो रहा है. सच अ लॉन्ग सेंटेंस, 4-5 लाइन्स का एक ही सेंटेंस चला जा रहा है. और पॉइंट इसका ये है कि if the person believes he is getting therapeutic benefits, he will heal better. The treatment will be effective. But if you tell that person that you are getting placebo, that belief will shatter. If that belief will shatter, the person will not get better. Very simple. इतना ही बस लॉजिक है इसमें, ठीक है. But we can flip that causal chain around. So we have to flip this causal chain. अब causal chain मतलब क्या? That deception means you are giving placebo and they think they are getting better because they don't know that they are getting placebos. It's a causal chain. One thing is going to create another thing. Now, if we have to flip it means change it. Okay, flip it means change it. If upon learning that a treatment is in fact a placebo, a patient continues to believe in its effectiveness. See, if upon learning that a treatment is in fact a placebo, so author बोल रहा है कि ये सोचो, think, if the patient knows that he or she is getting placebo and he still chooses to believe in that, okay, he still chooses to believe in that, it should remain effective. Vindicating is to acquit. Okay, acquitting their continuous belief in its effectiveness. So author feels that belief should be there. Means if the belief is there that this is going to be beneficial for me, it will be beneficial. There is no irrationality or self-deception here, but rather a rational leveraging of one's. Leveraging is taking advantage. Okay. Leveraging is taking advantage of one's knowledge of the general truth that placebos work. So basically what the author is saying here, author says that placebo देते हो तो deception की ज़रूरत नहीं है. We don't need to decept, we don't need to betray the audience. Tell the person that you are getting placebo and make the person believe that this is also being therapeutic and the medicine will work for you. So if the person knows that he is getting placebo and he believes that he will get better, this is flipping the causal chain. Okay, now let's see the options. Placebo power reflects belief's persistence, whether informed or deceived. यार informed or deceived नहीं बोल सकते ना, whether informed or deceived, we are informing them, isn't it? Whether informed or deceived, suggesting therapeutic success arises from trust itself rather than contextual knowledge. This contextual knowledge is also alien concept, isn't it? Contextual knowledge is alien concept, and whether informed or deceived nahi. First you are deceiving, then you are informing. I can't say or in between. Right? Either you are informing and you are deceiving. There is no or in between. First problem. Second problem, contextual knowledge. It's an alien concept. So A is gone. I have two problems in A. Belief sustains placebo effectiveness, but knowledge of its inertness typically undermines treatment, showing deception remains essential. Deception remains essential for therapeutic impact is contrary to last part. Okay, showing deception remains essential. Author is saying it's not essential. You tell them they are getting placebos and make them believe that.
So contrary to the last part, then B is gone, right? Rational patients can maintain. Okay, stop here itself. Stop here itself. Why? Because I am talking about rational patients, right? I am talking about rational patients. I want to talk about all the patients who are getting placebos. I can't categorize patients as rational and irrational. If I categorize patients as rational and irrational, I am adding a new dimension which is not present, right? I am adding a new dimension. I can't put this class different. Rational patients को अलग डाल दिया, irrational लोगों को अलग डाल दिया. Can I do this? I am making a subset. I can't make a subset. Okay? I can't make a subset. Stop here itself. You don't even need to read the entire option. You don't need to read the entire option. Stop there itself. Even without deception, okay? Placebos can remain effective, okay, when knowledge does not disrupt belief. Correct. Making continued effectiveness rational rather than self-deceptive. Correct. I don't have any reason to eliminate this. All the parts are correct. All the keywords are matching. Right? In D, all the keywords are matching. There is no problem in option D. Okay? So A, B, C are gone. D is the correct answer. Okay? Let's go ahead. Next question. Okay, let's start. So, no doubt there were others as well. There were others as well means someone has to be there before this, right? Someone has to be there before this, correct? No doubt there were others as well. तो इसके पहले कोई होना चाहिए, correct? I still had not written my would-be big book about New York, okay? So I was waiting to write my book. I had still not written it, okay? Can I say no doubt there were others as well? I have just opened my sentence. I have just opened my sentence, right? I can't say I still had not written my would-be big book about New York. No doubt there were others. There's no mention of a person. A person has to be mentioned before this sentence. A person has to be mentioned before this sentence, right? So not yet. Can I say C is gone then? Okay. Guys, please note the options are not in the order. 1, 2, 3, 4 A, B, C, D nahi hai. They are jumbled.
किसी ने ऑब्जर्व किया या नहीं, आई डोंट नो. ऑप्शंस आर जम्बल्ड, 1 2 3 4 ABCD नहीं है, ठीक है. सो ऐसा मतलब ब्लाइंडली मत मार्क कर देना. यस, सो आई हैड merely put off the attempt. So I had not written the book. I had put off the attempt. Put off means postpone. Okay, put off means postpone. Okay, postpone the attempt. In 1972, I put it off a little. फिर से put it off, फिर से postponed. Okay, फिर से postponed off a little further. I went to Cape Canaveral to cover the launch of Apollo 17, the last mission to the moon for Rolling Stone. अब फिर से in 2 also there is no person being mentioned in the previous part. In this part there is no person mentioned. If I'm saying others, there has to be a person mentioned, right? If I'm talking about others, there has to be a person mentioned, which is not coming in 2 also. So option 2 is also gone, right? Yes, it will break the flow also, right? I ended up writing a 4-part series on the astronauts, then decided to spend the next 5 or 6 months expanding the material into a book. The 5 or 6 months stretched into a year, 18 months, 2 years. अब फिर से क्या मैं यहाँ पे डालूँ? No doubt there were others. There has to be a person. I'm telling you again and again the same thing. There has to be a person. There's no person in 3. So 3 is also gone. What is remaining is 4 actually. Okay, what is remaining is 4. Why can't that person be author himself? Okay, see, no doubt there were others as well. Okay, so even if you say that, you know, the author is the person, okay, author is the person, so you want to say here, so according to Utkarsh, what should be the answer then? अगर आपके हिसाब से author is the same person, so what should be the answer then? Because Sahil has also asked the same doubt. फर्स्ट ब्लैंक, ओके, फर्स्ट ब्लैंक में डालना है आपको ब्लैंक 3, ब्लैंक 2. ओके, okay, let's read ahead first. I'll tell you my explanation, then I'll eliminate yours. Okay, so Truman Capote had let it be known that he was working on a big novel about New York entitled Answered Prayers. You know, you are getting the reference of writing a book about New York. The author also wanted to write a book about New York. Now we are introduced to a person named Truman Capote who also wanted to write a book about New York. Do you get the relation? Writing a book about New York was the similar point. Okay, that writing a book wala part was the reference that no doubt there were others as well. Means since I wanted to write a book on New York, other people also wanted to write a book on New York. There were others as well who wanted to write a book on New York like me. This is the reference that I was talking about. Okay, are we good till here now? ये वाला लॉजिक सबको समझ में आया जो मैंने अभी बोला कि ट्रूमन कपोट वांटेड टू राइट अ बुक अबाउट न्यूयॉर्क, आई ऑल्सो वांटेड टू राइट अ बुक अबाउट न्यूयॉर्क, राइट? सो देन कैन आई से दैट यू नो लाइक ट्रूमन कपोट एंड मी देयर वर अदर्स एज वेल who wanted to write a book about New York. This is the reference, so it should be 4, not 1 2 3. Okay, now everyone has got it. Utkarsh, have you got it now? Now, when I put it in 4, no doubt there were others as well who wanted to write a book about New York. The materials were rich beyond belief and getting richer every day. See, materials for the book about New York. Materials for the book about New York. Okay? Okay. So you were confused between 2 and 4.
Okay, so you have understood the reasoning now. See, my reasoning was, author wanted to write a book, Truman Capote wanted to write a book. So author says that like me and Truman Capote, there were others also who wanted to write a book. And you know what? Why they wanted to write a book? Because there were plenty of material available. The materials were rich. See the last line. The materials were rich beyond belief and getting richer every day. Material means the material for the book. So जो book के लिए मुझे material लगने वाला था, that is getting richer every day. So no doubt there are going to be other people who also want to write a book about New York. This is the reasoning. So that reasoning will only fit in 4, not in 1, 2, 3. Okay. Materials is plural. Yes, materials is plural because it grammatically doesn't make any sense. Okay, grammatically doesn't make any sense. But since author is writing about it in the form that so much of wealth New York has, okay, so much of richness, so much of wealth New York has, and you know he wants to highlight that, so he is using materials as plural. Okay, so he is using materials as plural. Now option 4 is the answer. Okay, let's go ahead. Okay, let's start. Most of you have got the answers, right? Okay, let's start. अच्छा आ रहे, अभी भी आंसर्स आ रहे हैं. ठीक है, चलो हो गया सबका. Yes, Utkarsh, you know, let me complete this question. I saw so many queries on previous question. I'll go back to question 8 after I finish this, okay? I saw there are so many queries about question 7. Let me finish this, then I'll go back to question 7, okay? Okay, let's start. So, on detecting an alert, the tool parses cattle transit permit data to identify whether the farms where deforestation was detected are a part of JBS's supply chain.
ठीक है. So on detecting an alert the tool parses the cattle transit permit data. तो वो डेटा दे देता है. ठीक है. Okay. In its current form, IR calls the tool an exploratory exercise to see how data can prompt debate and get people engaged with the information. ठीक है. In its current form बोला है. Okay. Let's go ahead. The tool uses weekly deforestation alerts from Map Biomass, a collaborative initiative between NGOs and universities in Brazil that uses satellite imagery to gather the data. Okay, so uses weekly deforestation alerts. Okay, can I say on detecting an alert? Can I say on detecting an alert? Where a tool, okay. ओके, यहां तक सब लोग आ रहे हैं ना? ओके, सो इन इट्स करंट फॉर्म तो sounds generic but I'm still not sure, right? I'm still not sure. If the tool makes a positive identification, it alerts the team at global witness. See, यहाँ पे देखो alert की बात हो रही है, यहाँ पे deforestation alerts from map biomass. अब can I say on detecting an alert? Okay, on detecting an alert के बाद क्या हो रहा है, right? Detecting an alert के बाद क्या हो रहा है, correct? हाँ, ओके, सो अलर्ट की बात हो रही है. यहाँ पे देखो आइडेंटिफिकेशन, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है ना? तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 आइडेंटिफाई होता है. तो कैन आई से 1 के बाद 4 आना चाहिए. 1 4 इज पेयर. कैन आई से लाइक दिस कि 1 4 मेरी पेयर है, 1 4 मेरी पेयर है. ओके, और एक चीज देखो आप, ठीक है, 3 जो है, 3 says the tool uses weekly deforestation alerts and देखो on detecting an alert. तो can I say 3 के बाद 1 आना चाहिए, because 3 talks about getting alert, 1 says what happens after detecting an alert, right? So there is data to identify and then I am giving the condition if the tool makes a positive identification. Can I say 314 is a group for me? Yes? 314 is a group. Very good. So everyone agrees with me till here. Now I have to put 2 either in the beginning or at the end. 2 मुझे या तो end में डालना पड़ेगा या तो beginning में डालना पड़ेगा, है ना? Right. Now let's study 2 once again. In its current form, IR calls the tool an exploratory exercise to see how the data can prompt a debate and get people engaged with the information. तो ये ना अभी ये जो टूल यूज करना है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी एक्सरसाइज. एंड व्हाई आर वी डूइंग दिस? बिकॉज वी वांट पीपल टू गेट एंगेज्ड. सो दिस साउंड्स लाइक मोटिव ऑफ द टूल यूजेज experiment. Can I say like this? That 2 sounds like a motive for the tool usage experiment, right? It sounds like a motive. Everyone agrees with me till here? 2 is sort of motive. So if 2 is motive, I have to place it here. I can't place 2 in the end, right? I can't place 2 in the end. I have to, so 2 3 1 4 then, right? चलो इस पे सब लोग अग्री कर रहे हैं अभी. एवरीवन अग्रीज. ये वाले क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो आई विल गो बैक. क्वेश्चन 8 में बहुत सारे लोगों को अभी भी डाउट था. सी माई लॉजिक वॉज 2 में मुझे मोटिव पता चल रहा है कि टूल का यूजेज हमें क्यों करना है. वाई डू वी वॉन्ट टू यूज द टूल? दैट इज गिवन इन 2. Why do we want to use the tool? Because we want to start a debate. We want to get people engaged with the information. So 2 जो है वो motive sound करता है, तो motive मुझे beginning में रखना पड़ेगा, right? Okay, so if no one has any problem, can I go back? Question 8 में बहुत सारे लोगों को doubt था ना. Let's go to question 8. 4 sounds like a conclusion. Anyway, 4 is the end, right? So even if it sounds like a conclusion, it's okay then.
Okay, what is the problem, Mudit? Tell me. You have doubts in this? Let me know what are your doubts. I'll clarify them. Okay, Nilesh also has a doubt. Okay, Nilesh, tell me what doubt do you have? 1441. Okay, see, अलर्ट डिटेक्ट हो गया. अलर्ट डिटेक्ट होने के बाद क्या हो रहा है देखो. द टूल पार्सेस कैटल ट्रांजिट परमिट डेटा टू आइडेंटिफाई वेदर द फार्म्स वेयर डिफॉरेस्टेशन वॉज डिटेक्टेड आर अ पार्ट ऑफ जेबी सप्लाई चेन. तो अलर्ट डिटेक्ट होने के बाद आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है. ठीक है, अब हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है वेदर द फार्म्स आर अ पार्ट ऑफ जेबीएसएस सप्लाई चेन और नॉट. Okay, we have to identify whether the farms are a part of JBS's supply chain. If the tool makes a positive identification, if the tool is making a positive identification that the farm is a part of JBS's supply chain, that alerts the team at global witness. Okay, this is the reason. पहले हम बोलेंगे कि अलर्ट मिलने चाहिए, फिर अलर्ट मिल गया तो हम आइडेंटिफाई करने जाएंगे. अगर आइडेंटिफाई हो गया तो हम ग्लोबल विटनेस को बताएंगे. ओके ओके, 1 before 4 का लॉजिक आया समझ में? I put 2 in the end because the data can be justified as, okay, Mudit, you are saying you put 2 in the end, okay, but because you are saying about the data, I know this, the tool, okay, and the data can be a bit confusing here, but आप broad context में ये देखो कि 2 क्या बोल रहा है. 2 is a motive. 2 is a motive कि हमें tool क्यों use करना है. If you put at the end, it's like you are giving everything and then you are telling the motive. Motive should come first, then the exercise should come. Usage of the tool is an exercise. Motive of that exercise is 2. So 2 should come first. Okay? I think I have cleared most of the doubts now. Let's go back to question 8. आपको question 8 में डाउट था, राइट? चलो अब बताओ question 8 में क्या डाउट है. अब मुझे मतलब ये डाउट आया था कि इफ आई पुट दिस, आई हैड मियरली पुट ऑफ द अटेम्प्ट इन 1972. आई पुट इट ऑफ अ लिटिल फर्दर. आई वेंट टू केप कैनावरल टू कवर द लॉन्च ऑफ अपोलो 17, द लास्ट मिशन ऑन द मून फॉर रोलिंग स्टोन. अब आपको लग रहा है यहाँ पे कि आई वॉज नॉट द ओनली वन टू गो एंड कवर द मिशन ऑफ अपोलो 17. देर वर अदर्स एज वेल, राइट? देर वर अदर्स एज वेल हु केम देयर टू कवर. ओके, अगर मैं 2 में डालूंगी, नो डाउट देर वर अदर्स एज वेल. आई एंडेड अप राइटिंग अ 4-part सीरीज. अगर मैं 2 में डाल रही हूँ ये, तो फिर 2 में आपका फ्लो नहीं ब्रेक हो जाएगा कि यू नो आई वेंट टू केप कैनावरल टू कवर द लॉन्च फॉर द मिशन ऑफ मून. आई एंडेड अप राइटिंग. आप गए वहाँ, द ऑथर वेंट देयर टू कवर द अपोलो 17 लॉन्च एंड ही एंडेड अप राइटिंग. He wanted to write a book on New York. He ended up writing a book about Apollo 17 launch. This part, how will you explain this? I ended up writing. If you put that sentence in 2, I ended up writing वाला flow break हो जाएगा. Right? Okay, do you agree with me? 2 वाला लॉजिक मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि 2 में क्यों नहीं डालना है. तो 2 में इसलिए नहीं डालना है कि फिर आई एंडेड अप राइटिंग वाला फ्लो ब्रेक हो जाएगा आपका. जिसने भी मुझे 2 का पूछा था. ओके, अदर्स के बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं है पैसेज में. अदर्स, मुदित, अदर्स मतलब लाइक द ऑथर एंड ट्रूमन कपोर्ट, लाइक दीज 2 पीपल. There might be other people also who wanted to write a book on New York. This was the reference. Okay? This was the reference. Okay, अब 2 का सबको समझ में आ गया. अब बोलती हूँ 3 में. See, I ended up writing a 4-part series on the astronauts, then decided to spend the next 5 or 6 months expanding the material into a book. The 5 or 6 months stretched into a year, 18 months, 2 years. अब यहाँ कैसे डालोगे? नो डाउट देयर वर अदर्स एज वेल. आई डोंट हैव एनी रेफरेंस इन 3.
to put it in 3. 3 में मेरे पास कोई reference नहीं है. Others as well, क्या others? Months, years. Months and years, you can't put that in 3. Okay? That is the reason only 4 works. Have I clarified all the doubts regarding this? With respect to 2 you are asking, Mudit. So others के बारे में कोई discussion भी नहीं है passage में. हाँ नहीं, you asked me, some people asked me that there might be other people who went to cover the launch of Apollo 17. This was the query, I guess. So 4 works the best. Are we good till here now? Okay, very good. So now I have to take other questions. I can take other questions, but the thing is time is very limited, guys. So what I thought was I will discuss some of the little bit of strategy points in the end. Okay, so कुछ strategy points I wanted to discuss with you. So the strategy points are like you guys told कि पैरा समरी में, जैसे कि I told कि पैरा समरी की जो priority है that should be the highest. And why? Because 2 options most of the times is very easily eliminated. 2 options are very easily eliminated in para summary. Remaining 2 options may please make sure that you don't cover the secondary point as the main point, like I told you that Harvey wala example also. So that is a big trap. And make sure that all the points are, most of the points are included. Now someone asked me a query that कि मैम सारे ही points include होने चाहिए क्या? No, सारे points include होने चाहिए ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है. It's not a compulsion that all the main points of the para should be included. The maximum discussed concept, please make sure you focus here, maximum discussed concept जो है वो आनी चाहिए, not all the concepts. Okay, maximum discussed concept जो भी है वो आनी चाहिए. Like for example, 2/3 of the paragraph is discussing one concept, 1/3 is different, 1/3 is different. It's not a necessity that you include the 1/3 part, but it's a necessity that you include the 2/3 parts. Okay, so 2/3 parts आपके आने चाहिए. Vocab retention and sometimes comprehension differ due to vocab. Okay, vocab retention, I will give you only one thing, association. If you have observed shorts also, I posted one short also in that. Vocab retention का सबसे effective method is association. Okay, now association means what? Associate those vocabulary words with people, memories, emotions. Okay, I will give you very small example. Melancholy. Okay, melancholic mood, it's a very sad word, है ना? It denotes gloomy atmosphere, sad mood. So associate this word with something significant, like Virat Kohli announced his test retirement. How did you feel at that time? If you are a Virat Kohli fan, how did you feel? You feel sad, you felt gloomy, you felt melancholic. The entire nation or the Virat Kohli's fans were melancholic because of his announcement. So vocab retention, most effective technique is association, like I did now. Okay, either the main point or, yes, like I told you, if 2/3 of the summary is discussing one point, please make sure that point is there in your option. Okay, what should be the number of right attempts that we could have made out of 9 questions? The 9 questions that we did today. Okay, 9 questions, I feel the right attempt was 5 to 6 questions. Okay, 5 to 6 questions were okay, they were doable questions. Okay, 5 to 6 questions were doable. Melancholic, okay, that was just an example that I gave you because vocab retention is a very difficult task, especially when you have so much bandwidth of vocabulary. So please make sure you try to make associations. Okay, associations is the most effective technique to retain vocabulary. Okay, it's not iconoclast, it's iconoclast. Okay, Tommy, it's iconoclast, not plast. Okay,
You feel melancholic by your performance in VA? Okay, so don't feel melancholic. Please cheer up and go ahead and try to apply the strategies that we did today. Okay? Okay, next session is from 2:15 Raghav. Okay? Next session is from 2:15. यार YT में ना पोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है. लाइक देर इज अ थर्ड पार्टी विल ऑल्सो बी हैव टू इन्वॉल्व इन पोल मेकिंग देन. और प्रॉब्लम ये होता है कि पोल में ना टाइमिंग नहीं दिखता है आपको. जैसे हमारी पोर्टल पे ना टाइम दिखता है आपको, राइट, क्लॉक दिखता है. तो वैसे YT में पोल करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें. लाइक समवन फ्रॉम रोधा हैज़ टू सिट देयर एंड हैज़ टू मॉनिटर दैट. सो दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड मेकिंग पोल्स ऑन यूट्यूब. ओके. Okay, that's it guys. Thank you so much. You were a great audience today. I had lot of fun taking this session. Stay tuned for your next session. Next session is RC session again. Okay. Thank you so much guys. Bye bye. So I used to say in classes, याद है? You remember classes में? I used to write that कि रोतलू नहीं बनना है, ठीक है. वेल प्रिपेयरिंग सर, बर्थडे सर, क्या बर्थडे सर, आज बर्थडे. होली आ गया, क्या होली सर, ज़िंदगी ख़राब हो गया है. दिवाली सर, क्या दिवाली है सर, पढ़ाई. वो चीज़ नहीं बनना है, ठीक है. तो आई एम प्रीटी श्योर कि अगर जो लोग रोतलू नहीं, वो लोग यहीं पे हैं, ठीक है, तभी वो लोग यहाँ पे हैं. ओके. एंड मेक श्योर दैट कि आगे भी आप जाके उस हसल को कंटिन्यू रखोगे. बिकॉज देखो, एवरी इवन वी हैव टू फाइट विथ इट. एवरी 2-3 ईयर्स में वर्ल्ड इज चेंजिंग लाइक 360 डिग्री. कुछ भी हो जा रहा है. कोविड है, कोविड के बाद ये आ गया, उसके बाद ये आ गया, अभी AI चैट GPT, एनीथिंग इज हैपनिंग. ओके. सो इन दैट फेज वी आर बेसिकली, हमें अपने आप को अप रखना है. इन दिस फेज इफ वी आर कॉन्स्टेंट, तो बोलेगा कि हमने कुछ अचीव कर लिया है, अब कॉन्स्टेंट चलेगा. नो. इफ यू आर कॉन्स्टेंट देन यू आर श्रिंकिंग, ठीक है. यू कैनॉट बी कॉन्स्टेंट इन दीज डेज. तो यू हैव टू बी ऑन द टोज ऑलवेज. जिस भी कॉलेज में जा रहे हो, try to be in top 10%, top 20%, try to be good skill set, be happy. जब भी आप समर प्लेसमेंट्स का इंटरव्यू दोगे, ठीक है, कैंपस का, nobody want to see a रोतलू guy there, ठीक है. सर अभी मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए, अभी GDP वगैरह में सर इंटरव्यू, गैप ईयर है, हाँ पूरा मुंह बना के इंटरव्यू, गैप ईयर है सर, क्या हो गया सर, गैप ईयर्स तो क्या हो गया था सर, मेरी 2 काउस थी, 2 काउस मर गई थी, ठीक है. फिर मेरा फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था मुझे, हाँ. उसके बाद पसंद ही नहीं आता. मे बी अ ट्रू स्टोरी, बट इन टूडेज वर्ल्ड ना यू डोंट फील लाइक दैट. ओके. तो लगेगा क्या इंडियन आइडल चल रहा है, हाँ सही चीज़ बताओ. सो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, बी हैप्पी अबाउट इट, जो आप लोग करने वाले हो आगे में. ओके. एंड जब भी आप इंटरव्यूज दोगे, बिकॉज आपको 2 मेजर इंटरव्यूज देने हैं, समर प्लेसमेंट्स एंड मेन प्लेसमेंट्स. ओके. शो दैट यू आर अ हैप्पी पर्सन, वट एवर यू डन इन लाइफ, यू आर हैप्पी विद दैट. ओके. और आगे और हैप्पी रह के आप स्किल करेंगे. ओके. अपने ये नहीं कि कुछ खराब किया उसको कवर अप नहीं करना है. बहुत लोग कवर अप नहीं, कवर अप फाइन, जो हो गया सो हो गया. हाउ नाउ मूव अहेड, यूटिलाइज दैट टाइम. अभी इस टाइम को यूटिलाइज करो. ओके. आगे यूटिलाइज करो टाइमिंग को, एंड बी अ हैप्पी एंड गुड पर्सन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, ऑब्वियसली थैंक यू फॉर दैट. दैट वाज ओवर मी. मैं 11 o'clock में नीचे आया था, एंड लास्ट 4 hours से आई एम जस्ट लाइक विद पीपल. ये वो देना कहाँ गया पार्थ, वेयर इज दैट? वो मतलब somebody made with hand, मतलब it was so touching actually. रोधा का आइकन वो बना के, एंड वो का दिखा देना, हाँ देखो, ठीक है. somebody has spent hours on this. कहाँ गए? who is made this? हाँ, yeah, thank you so much, ठीक है. so these kind of stories I've been hearing. somebody काइंड ऑफ कि आप 46 परसेंटाइल आया था लास्ट ईयर कैट में, 46 से 96 का जर्नी. somebody got 42 परसेंटाइल लास्ट ईयर कैट में, SP जान कन्वर्ट हो गया. सो दीज काइंड ऑफ जो मैं सुबह से स्टोरीज सुन रहा हूँ ना, दिस इज लाइक कि दैट लाइक लिटरली आई एम लेस्ट लाइक, मतलब इससे ज़्यादा मोटिवेशन हार्डली मिल सकता है. ओके. सो आप बोलोगे सर आप मोटिवेट कैसे रहते हो? इन्हीं स्टोरीज से. ओके. So that's the stories like that will keep me motivated. For 42 percentile last year CAT में, okay, SPN converted. It's like there's some kind of dream stories, right? ठीक है. Somebody has got negative marks in quant, -2 से लेकर quant में 99.3 percentile. LRDA में negative marks आया था CAT 23 में, यहाँ पे IIM मुंबई convert हो गया था. So these kind of stories I keep on hearing last 3-4 घंटे से. Okay.
तो दैट्स द रियल गेन एक्चुअली में। ओके वो बहुत ही मतलब मोटिवेटिंग है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, बिकॉज देखो इस वन स्टेप में आई ऑलवेज टेल यू गाइज कीप द प्रोसेस राइट, ठीक है, प्रोसेस पे काम करना है, रिजल्ट तो आएगा। ओके बट जब अपने हाथ में, जैसे मुझे कहाँ गया, अन्वेश बोल रहा था मुझे, वेयर अन्वेश, हाँ, सो ही हैज कमिटेड, आई एम अहमदाबाद। ओके सो व्हाट ही वाज टेलिंग एक्चुअली कि सर आपने पूरे साल हमें ये बोलते रह गए कि डरो नहीं डरो नहीं डरो नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कैट के एक दिन पहले आप खुद नर्वस लग रहे थे कि मुझे डर लग रहा है, ठीक है, इन दैट वीडियो आई टोल्ड एक्चुअली वन डे बिफोर कैट, तो दैट वाज एक्चुअली ट्रू। तो मुझे वो इंस्टेंस अभी ऐसे ही याद आया बात करते करते, एंड दैट वाज ट्रू एक्चुअली, बिकॉज ना कैट तक चीज़ें मेरे हाथ में थी। सो आई जो भी कहीं पे लैकिंग हुआ, क्लासेस करना है कर लेंगे, टीम बनानी है बना लेंगे, मॉक बना लेंगे, सब कर लेंगे, ठीक है, बट कैट के एक दिन पहले अब नाउ आई वाज लाइक अब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो नाउ ऑल द प्रोसेस राइट, तो व्हेन देन आई वेंट टू मैसूर में चामुंडेश्वरी मंदिर, ठीक है, तो लोग बोलता था कि मैं जाना गए मंदिर, ठीक है, सो आई वेंट दैट डे एंड मैं जाते रहता हूँ वहाँ पे, एंड देन बेसिकली कि ऑल थिंग वाज राइट। ओके सो मेरा राइट पावर भी बिहाइंड यू, बट ये आप तब कर सकते हो ना कि आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। ओके सो यू हैव वर्कड हार्ड, देन वो जो एक सक्सेस का वो enjoyment होता है वो बहुत बढ़िया आता है। ओके सो आई एम pretty sure that all of you have worked very hard, and many of you guys I know from 2 to 3 years also. ओके 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, काफ़ी लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल गया है, 6 months 8 months में भी, राइट, बट लॉट ऑफ गाइज आई नो कि 3 साल से प्रिपेयर कर रहे थे, एंड नाउ somebody has converted, आई एम मुंबई, एक SP जैन कन्वर्जन लाइक दैट। ओके सो दैट इज बेसिकली तो समथिंग, दिस इज द ग्रेट थिंग यार। हाँ तो इसीलिए हमने ये इवेंट किया था कि हम लोग सबसे मिल पाएँ एंड एक अच्छी नेटवर्किंग बने। आप लोग देख रहे होगे काफ़ी आपके कॉलेज के ग्रुप्स ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं, है ना, तो एक अच्छी नेटवर्किंग बने, एक हमारा भी अच्छा अलुमनाई बेस बने, ठीक है। सो दैट इज आई वांटेड इन माय प्रीवियस कंपनीज आल्सो, बट किसी ने कभी अप्रूव नहीं किया, बिकॉज एवरीबॉडी फोकस सो मच, लाइक द वर्ल्ड इज दैट ना, इतना शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं ना, ठीक है, अब इतना खर्च कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, देखा इन्वेस्ट, ठीक है, ट्राई टू गेन कनेक्शन, अच्छे लोगों से बातचीत करेंगे बनाएंगे, ठीक है, बट एवरीबडी इज लाइक इस ये ये क्वार्टर कम हो जाएगा, ये क्वार्टर प्रॉफिट कम हो जाएगा, सो समटाइम लाइक छोड़ो खुद का करते हैं, ठीक है, मानते ही नहीं, कोई बात नहीं माने तो खुद से स्टार्ट करो यार, ठीक है, दैट्स हाउ इट इज। सो दैट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ओके सो आई वुड से ऑल ऑफ यू गाइस कि अभी मुझे कोई बोल रहा था बाहर में कि सर मुझे ना अपना वाटी स्टार्ट करना है, मुझे ऐसी ट्रिक बताओ कि 2 महीने में 20,000 सब्सक्राइबर हो जाए। मैंने कहा कौन सा कॉलेज कन्वर्ट किया हो, बोला आई एम लखनऊ। मैंने कहा कैसे कन्वर्ट कर लिया है, ये मैंने कभी सिखाया ही नहीं, मैंने कभी ये चीज़ तो कि 2 months में 20 सब्सक्राइबर हो जाए, जस्ट नेवर, डोंट डू दैट, राइट, ये एकदम। और अगर आप लोगों को लगता है, एंड वन मोर गर्ल वाज देयर कि सर मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, आप वहाँ पे रोधा प्लांट पे अपना कुछ कर दो तो हमारा सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये सब कभी मत करना, आई नेवर डिड दैट। ओके इन माई लास्ट 2 to 3 years, उस पर जब मैं रोधा से स्टार्ट किया है, यू गाइस डोंट नो कि मुझे ऑफर मतलब कैसे कैसे हैं। 5 minutes वीडियोस 7.5 लाख रुपीज़ अगर है, ठीक है, एंड आई लिटरली रिजेक्टेड, ठीक है, एक आध बार मुझे मन लगा यार कर लेते, छोड़ते, देखते क्या होता है, देखा जाए, लेट्स सी। देन अगेन 5 minutes का वीडियो बोलेगा सर आप क्वांट पढ़ाओ, ठीक है, आप मस्त क्वांट की क्लास लो, 5 minutes हमारा वीडियो चलेगा मेरे कॉलेज का 7.5, ऐसे ऑफर्स, ठीक है, एंड जस्ट मतलब दिस वन ऑफ देम, राइट। तो पॉइंट बेसिकली क्या है ना कि आज के टाइम में मतलब आई ऑलवेज देखो, मैं 2018 से लेके 2025 हो गया, सो आई बिन ऑल थ्रू दिस फेज। कोविड आया, प्री कोविड फेज, एटेक का बूम हुआ, एटेक डाउन भी हो गया, कोविड आया, कोविड के बाद आफ्टर फेज, ठीक है, ऑल दिस फेजेस में what has been constant is what is constant is never trusted in this viral वाला content, ठीक है। मैं हमेशा, क्योंकि 2021 में ऐसे बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमने सीए करके क्या फ़ायदा, वो सी इन्फ्लुएंसर बन गई है, उसको 10 लाख रुपये मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वहाँ पे 90 वीडियो। मैंने कहा ये नहीं चलेगा। आई ऑलवेज यूज टू टेल दिस आज से 4 years पहले भी, ओके। एंड देखो एक बार सेबी का रूल आया एंड ऑल बेसिकली ऑल आर गॉन राइट नाउ, वो लोग खुद जाके कोर्सेज कर रहे हैं, ओके, जो कोर्स बेच रहे थे। तो पॉइंट बेसिकली क्या है कि नेवर, आप लोग अभी MBA कॉलेज में जा रहे हो, नेवर एवर मेक वायरल कंटेंट, कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। ऑलवेज बी रॉक सॉलिड, वट एवर यूर थिंकिंग थिंक फाइन, बट इट शुड बी रॉक सॉलिड एज अ प्रोडक्ट, एज एन आइडिया, ओके। कभी भी ये वीडियो डालते हैं ना आज 5,000 आ जाएंगे लाइक, कभी डोंट मेक लाइक दैट, ओके। मेरी स्टार्टिंग में कहाँ है सोशल मीडिया टीम मेरी ये लोग स्टार्टिंग में ये लोग ऐसे ही मेरे पास रील आ रहे हैं
तौबा तौबा गाना विकी कौशल डांस कर रहा है सर, से क्या प्रमोट करेंगे? मैंने कहा डालना ही मत कभी गलती से, नेवर डू दैट। ओके सर व्यूज आएंगे सर, लाइक्स आएंगे, बिकॉज दे वर न्यू इन दैट फील्ड, राइट? अभी मैंने नई टीम, मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट वांट टू बी जस्ट अनदर स्वाइप। मैं रोहित शर्मा का डाल दूंगा एयरपोर्ट पे दिख गया है मुझे, मैं खुद गया था मुंबई दिख गया, अरे डाल दो या 3 मिलियन व्यूज आ जाएंगे उस पर, उससे क्या फायदा? रोधा का क्या फायदा उससे, राइट? तो व्यूज से नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे यू नेवर वांट लाइक तुम एक अनदर स्वाइप हो। ओके देख के लोगों को मजा नहीं, यू हैव टू राइट योर टारगेट ऑडियंस। 500 व्यूज ही आएंगे, ओके, बट दैट 500 में से दैट शुड बी कनेक्टिंग। ओके कि 500 लोग देखेंगे, दैट्स फाइन, इट्स गुड इनफ, हाँ एक अच्छा स्टार्ट है, हाँ, एंड देन मूव। तो जो भी आप जब भी MBA में जा रहे हो आपको अलग अलग टास्क मिलते हैं। मेरे स्टूडेंट था, उसको सैमसंग में मिला था एक न्यू चैनल बनाओ ये यूट्यूब का, एंड देन ट्राई टू ग्रो दैट। ओके ऐसे सबको टास्क मिलते रहेंगे, या आप बहुत कुछ करना चाहते हो, ऑलवेज मेक रॉक सॉलिड लाइक एज एन एजुकेशन कि भाई कुछ भी वायरल कंटेंट नहीं बनाना है। ओके जो हुआ बनता रहेगा, इट्स ऑल फाइन। ओके बी रॉक सॉलिड अपने आप में, अपने प्रोडक्ट में, अपने आइडियाज़ में, अपने एजुकेशन में। बी गुड विथ MBA, बी गुड विथ देयर CGPAs जो आपको वहाँ पे ग्रेड्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है, उनमें सॉलिड रहो। मे बी 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, बट दैट रिटर्न विल लास्ट लॉन्ग, ठीक है? वो नहीं होगा कि आप एक वायरल हुए और उसके बाद फिर कोई पूछ नहीं रहा आपसे, दिस विल नेवर हैपन। ओके सो दैट्स मेक श्योर गाइस कि आप लोगों को काम कर रहे हो, ओके, एंड यू आर एक्चुअली मतलब, एंड एक चीज़ और, हाँ आई वांटेड टू टेल यू दिस कि ऑलवेज टेक रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लास्ट टाइम को बोला था, जब भी आप लोग MBA करने जाओगे ना तो समटाइम क्या होगा कि यू विल फील लाइक कि हो गया अब तो ठीक है, एक अच्छा सा जॉब मिल जाए, एजुकेशन लोन क्लियर हो जाएगा मेरा, एंड आई एम डन विद दैट, राइट? मत करना कभी ये काम। ओके अगेन व्हाट यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी कि जस्ट बेयर मिनिमम, ठीक है, वो मत कभी करना। ओके अगर मैंने किया होता तो मैं यहाँ नहीं होता, बता रहा हूँ, ठीक है? व्हेन आई लेफ्ट माय गवर्नमेंट जॉब इट वाज लाइक हाफ ऑफ बिहार विल डिसोन मी, सच बता रहा हूँ। मेरे को लगा कहीं मेरे को बंद ना कर दे मतलब पढ़ना वढ़ना वाला कि आना तुमको नहीं है पढ़ना, इस टाइप से। हाँ, ऐसा हो गया था। कोई मेरे को पता नहीं कहाँ से मेरे सब 5 साल बाद नहीं हो गए, बुआ का फ़ोन आ गया, लेकिन आप क्यों फ़ोन किए हैं? तुम जॉब छोड़ रहे हो? पागल हो गया हो क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये मतलब स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं होता ये सब, ठीक है? तुम मैंने कैसा रोधा स्टार्ट, कुछ नहीं होता रोधा ठीक है? मतलब ऐसे ऐसे लोग ना, एंड एट दैट टाइम वाज सो, मतलब मैं इतना टेंस नहीं था जितना वो लोग टेंस थे, ठीक है? सो थिंग इज दैट कि यू डोंट नो कि सोसाइटी में क्या है एंड ऑल दैट, बिकॉज दे हैव दैट ओल्ड मेंटेलिटी। इवन अभी मैंने बोला कि फादर मैंने बोला कि मैं ये मीट करने वाला हूँ अभी, ओके तो बोले कितना खर्चा लग रहा है? देखा XYZ, तो बेवकूफ़ हो तुम, अगर तुम ये पैसा FD कर देता ना चिक्कू पड़ जाता इतना में, ठीक है? तो दिस इज सो दिस आर काइंड ऑफ थिंग्स हैव टू डील डेली, ओके? तो सोसाइटी में आपको भी नहीं पता कि बेसिकली, क्योंकि देखो कैनॉट ब्लेम देम ऑल्सो, क्या उनको क्या ब्लेम करूँ मैं, ऑब्वियसली, ठीक है? बट द थिंग इज दैट कि आपको यू हैव टू टेक योर कॉल, टेक रिस्क ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क लेना लाइफ में। ओके रिस्क इज नॉट बेसिकली कि जॉब छोड़कर एंटरप्रेन्योर बन गया, वो रिस्क नहीं। आज मजा नहीं आ रहा है कल कुछ और कर लिया, वो नहीं भाई। कहीं स्टेबल कंपनी में हो, टेक दैट, मूव टू सम स्टार्टअप्स, कुछ नया ट्राई करते हैं, ओके कुछ अगर लग रहा है कि ये फील्ड स्टेबल हो गया है, राइट, ये कांस्टेंट है, कुछ और नया ट्राई करते हैं। तो रिस्क इन दैट सेंस, तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है। सो व्हेन यू डोंट टेक रिस्क देन बेसिकली फिर वही हो जाएगा। इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा था ना अभी, बीच में देखो पूरा यूट्यूब भर गया, पूरा एक्टिव हो गया था जनता, ठीक है? दिन भर बैठ के यूट्यूब लड़ाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, फाइन, क्या फायदा? उससे कंट्री कैसे स्ट्रांग होगी? मेक योर कंट्री स्ट्रांगर। मेरी क्लास में ऑडियंस आधी हो गई थी, मैं 400 लोग हैं, 200 लोग लाइव आ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं? सब टेलीग्राम पे लड़ रहे हैं, टेलीग्राम पे, ठीक है? इंडिया अच्छा पाकिस्तान अच्छा कर रहे हैं बैठ के, क्या फायदा उससे? वो तो 2 दिन का लड़ाई खत्म हो जाएगा, ठीक है? यू हैव टू मेक योर कंट्री स्ट्रांगर। तो अगर तुमको सच में सपोर्ट करना है तो भाई अच्छा जॉब करो, अच्छे अच्छे टैक्स दो, हाँ एंटरप्रेन्योर बनो, राइट, मेक योर कंट्री स्ट्रांगर। ये तो पाकिस्तान श्रीलंका का क्या कि ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप किसी कंपनी का नाम नहीं जानते हो एक्सेप्ट फ्रॉम अल ठीक है? तो आप किसी का नाम नहीं जानते हो ना पाकिस्तान श्रीलंका किसी कंपनी का, इसलिए ना बिकॉज दे डोंट, वहाँ पे कोई कल्चर नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कंपनी कल्चर नहीं है, ओके ये सब इशू होता है। सो मेक योर कंट्री स्ट्रांगर। ये सब फालतू के बकवास में ये अच्छा वो अच्छा कहीं मत पड़ना, ठीक है? यूटिलाइज योर टाइम, टेक रिस्क इन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये रिस्क आपको बहुत आगे ले जाएगा, ओके? सो जब भी लगे कि कुछ स्टैग्नेंट सा हो गया है, टेक रिस्क, इट्स परफेक्टली फाइन। मैं सच बता रहा हूँ, आप एट द मैक्स से आपको पता क्या होगा, आपको लगेगा ना कि क्या होगा अगर कुछ नहीं होगा। आप एक अच्छे कॉलेज से MBA पास आउट किए हो, आप ना लाइफ जी लोगे,
ओके आप आराम से जी लोगे, आपको पैसे मिल जाएंगे, सैलरी मिल जाएगी, ओके बट एक स्टेप उसके बाद आगे बढ़ना है हमेशा. सो ऑलवेज थिंक कि अब इसके बाद क्या कर सकते हैं. सो टेकिंग फ्यू रिस्क इज नेवर बैड इन लाइफ. ओके सो टेक फ्यू रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क. हाँ ऐसा कुछ नहीं जो आता है, ऐसा कुछ नहीं कि आज मेरा पैशन मैंने अपना फाइंड कर लिया, जॉब से रिजाइन कर देंगे, ठीक है मेरे को मेल लिख दिया, आज से मेरा पैशन मुझे मिल गया, वो नहीं, वो कभी काम नहीं आता. दैट इज अगेन वेरी काइंड ऑफ बहुत कम टाइम के लिए रहता है वो, ठीक है. एंड इवन मतलब मैंने अगर अपनी जैसे रोधा स्टार्ट किया, सो आई बेसिकली हैव अ ग्रेट टीम. अब सबने मेरी टीम में भी रिस्क लिया है, सो ऐसा नहीं कि कोई इससे रिस्क नहीं लिया है. बोलोगे जैसे फॉर एग्जांपल केडी सर है, ओके अब ही हैज़ बीन लाइक इन 15-20 ईयर्स ही इज़ इन ऑफलाइन एरिना, ओके स्टेबल कंपनीज में काम कर रहे हैं. ही केम, ही टुक दैट रिस्क, ठीक है. सर देखो कितने फेमस हो आप. ठीक है तो रिस्क लेना जरूरी है. ये हैव टू. स्वप्निल सर हैं, ओके मुझे उनको लाने में 6 महीने लग गए. जनवरी से तुमको पता है, जनवरी से बात करें, अगर ज्वाइन किया अक्टूबर में इन्होंने 10 महीने हो गए सर, 10 महीने, ठीक है. इतना नहीं मैं बच्चा चल रहा सब कुछ यहाँ पे, क्यों छोड़ूं मैं, ठीक है. अच्छा सरकारी जॉब टाइप लग रहा है मेरे को, ठीक है यहीं से रिटायर हो जाऊंगा. तो सबने रिस्क लिया, ओके एफर्ट वाइज कि भाई नई जगह जाएंगे तो नया काम करना पड़ेगा. बट वो एक चैलेंज भी है, दैट ऑफलाइन टू ऑनलाइन ट्रांजिशन ऑल दैट, ठीक है. अपूर्व एंड एवरीबडी, अपू ऑल्सो टुक दैट रिस्क. महाराष्ट्र से पहले लखनऊ आया, फिर दिल्ली आया, ऑल दैट थिंग, ओके तो सबने किया ये काम. तो बेसिकली सो इसलिए रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कैलकुलेटिव रिस्क लो, अपने आप को अप स्किल करो एंड नेवर बी कॉन्स्टेंट, बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग एवरी 2-3 ईयर्स में पूरा, ओके. तो वेरी हैप्पी टू इंट्रोड्यूस माई टीम विथ राइट नाउ केडी सर, आइए प्लीज. सो देन स्वप्निल सर. केडी सर को आप सब जानते हो, ही हैज बीन इन ऑफलाइन इंडस्ट्री फॉर 20 ईयर्स. Swapnil sir, again 15 plus years, okay, and then he has joined us. Tarun sir, headed the best of the mocks in the country in last 14 years, okay, और अभी इन्होंने हमें ज्वाइन किया है लास्ट 1 साल पहले. एंड whatever mock you name, the best of the mocks is headed in the country in last 10 years, ठीक है तरुण सर, okay, back end person है. मतलब बेसिकली माई पॉइंट इज कि वी हैव टू मेक अ वेरी, मेरा पॉइंट क्या है ना, कभी भी यू विल नेवर फाइंड दिस गाइज इन्फ्लुएंसर्स, कभी नहीं, ठीक है. ऑलवेज अ वेरी कोर अकेडमिक टीम. निकिता मैम नहीं है अभी, निकिता मैम भी से वेरी लाइक VRC में उनके पास पता नहीं कितनी सारी डिग्रीज हैं, ओके तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर अकेडमिक टीम. वो बहुत, अब मैं एटेक में हूँ, ठीक है तो हमें अकेडमिक टीम चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंटली ब्रिजेश सर है ज्वाइन दस. ब्रिजेश सर आइए, अब वो सीनियरिटी वाइज, ठीक है. नाउ ब्रिजेश सर यू वुड नो कि ये आप जानते हो पहले बोधि प्रेप, ऑल ऑफ यू लिसन हर्ड ना, बोधि प्रेप राइट. तो ही इज द ओनर ऑफ बोधि प्रेप, अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तो अगेन तो आपने बस इनकी वॉइस सुनी होगी, इन्होंने आपने कभी ये इनका वीडियोस नहीं देखा होगा, ठीक है भाई फेस, ओके. अपूर्व वन ऑफ द वेरी यंग फैकल्टीज एंड आई लुक क्लियरली कि ये रोधा को काफ़ी आगे ले जाएगा अपूर्व, ओके. एंड संचित, रिसेंटली संचित हैज ज्वाइंड IP मैट. मैंने कहा कि IP मैट मैंने स्टार्ट किया, IP मैट आई वांटेड टू स्टार्ट, पता है 6 months बैक, ओके. बट अगेन ना सबने बोला कि IP मैट स्टार्ट कर दो मिल जाएंगे. मैंने माई अप्रोच इज ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है. पहले सॉलिड प्रोडक्ट बिल्ड करना है, फर्स्ट यू नीड पीपल फॉर दैट. सो वंस आई फाउंड कि हाँ संचित इंटरेस्टेड इन वर्किंग, उसको मिला IT से पास आउट है, डन BTech फ्रॉम IT जोधपुर, ओके एंड पढ़ाता भी है, ओके. सो somebody solid academicians, those who were solid academicians, मतलब पढ़ने वाले लोग हों, पढ़ाने वाले लोग, ऐसे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके. देन आर्यन रिसेंटली ज्वाइन. आर्यन इज फ्रॉम आवर pre-MBA कोर्स. आई एम अहमदाबाद रैंक 5 बंदा है ये, ओके. सो ये पूरा अभी हमारा pre-MBA कोर्स आर्यन हैंडल कर रहा है एंड आर्यन इज डूइंग इट ग्रेट. स्मिता, फिर स्मिता, स्मिता Now again ये भी स्टोरी है, because Smita has also taken a huge risk. She was 2012 से वो पब्लिक सेक्टर बैंक में बैंक PO थी, ओके. एंड शी वॉज बेसिकली अ ब्रांच मैनेजर, हाँ, इन 2022 टिल लास्ट ईयर आई थिंक, ओके. और उसने अपना स्केल 3, आई थिंक शी वॉज स्केल 3 मैनेजर. कौन से बैंक में थी? कैनरा बैंक में बैंक मैनेजर थी वो, ठीक है. एंड शी हैज़ जॉइंड अस नाउ, ओके. तो she is handling all the HR and all the operational, मतलब basically काफ़ी again solid people or what I told, right? Because I know कि बैंक मैनेजर
है, तो ऑपरेशनल काम अच्छा होगा काफ़ी. शी इज़ वेरी गुड एक्चुअली. ओके. एंड मी, माई वाइफ एंड स्मिता, वी आर कॉलेज फ्रेंड्स. ठीक है. सो हम लोग कॉलेज टाइम से फ्रेंड हैं. ओके. सो यू कॉमन फ्रेंड्स ऑल्सो. सो दिस सॉलिड पीपल, सो वी ऑल आर बेसिकली वी आर हैंडलिंग द टॉप मैनेजमेंट, और पूरी हमारी पास टीम है, बाकी ऑल कंटेंट के लोग हैं. आशुतोष सर कहाँ हैं? आशुतोष सर, हाँ, आशुतोष सर रिसेंटली ज्वाइंड अस. तो आशुतोष सर ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया एंड ही इज़ लाइक अगेन बैक एंड. ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स के लिए काफ़ी साल से मॉक्स बना रहे हैं. आप तो देखते हो इतने अच्छे LRDI सेट्स, अच्छे क्वेश्चंस आते हैं दूसरे इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है, पहले के. आशुतोष सर ने काफ़ी बनाया है उनको, तो मैंने बोला सर साथ में ही आ जाओ. ठीक है, अभी जस्ट ज्वाइन किया इन्होंने अभी. ठीक है. So this is how I wanted to be my team, like all good people, good academicians, solid academicians. Okay. तो जब तक academics ही हमारा edtech का core strength होता है, okay, तो जब ये अच्छा रहेगा, then all we can build up a good team, hopefully a very good edtech, जो मतलब बहुत edtech में बहुत companies नहीं कर पाई, ठीक है, for many reasons, right? So I wanted to fill that gap. अभी start किया, देखते हैं कहाँ चलता है और क्या. Let's see. Okay. So, just a small 2 minutes intro and everything. बहुत तो नहीं जानते भी. Hi everyone, I'm KD. Okay, so I just had a couple of things actually. I just wanted to actually talk to you guys. तो पहले तो ये कि आपके जितने भी relatives हैं, उनको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी आपके सिलेक्शन की. यस और नो? नहीं बताया है तो बता देना, और यहाँ की वीडियोस और फिर बाद की वहाँ की वीडियोस भेजते रहना. इस टाइम का इंतज़ार आपकी फैमिली बहुत टाइम से कर रही है, तो मेक श्योर यू डू दैट. नाउ रिमेंबर, यू आर सिटिंग हियर राइट नाउ, बट this looks like an overnight success, right? But the process started like 20 years back when you were in class 1. वहाँ से कुछ ना कुछ you guys have been doing differently. That is why you are here. Let's accept that, right? Now just make sure that in the coming years you keep on doing that. Having some non-negotiables in your life is very important. मेरी life में the only non-negotiable I have is about my classes. First is class timing. So if my class is at 10 o'clock, I start it at 10 o'clock. Right now, some students pointed out also, sir, आपकी class 10 o'clock ही शुरू होती है. Sometimes they say, sir, आप 1 minute late हो गए. Sometimes. Now the point is, why do I do that? Because when you have a non-negotiable that class time पे शुरू होगी, then back end में सारी चीज़ें accordingly काम करती हैं. So accordingly you have to prepare for the class. Accordingly you have to prepare the PPTs or the PDFs. So what happens is, when you have a non-negotiable, just have one non-negotiable. कि this is a line I won't cross, right? People should know that this person can be trusted on this at least, कि ये इस वाले काम में तो ये line draw कर चुका है और ये cross नहीं करेगा. If you have something like that in your life, chances are very, very high that your life would run around it and you would build that brand value, right? Second thing I think I need to very quickly talk about is that, or rather the last thing, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे. All of you are sitting here, you would be going to the best of the colleges, you would have a very exciting life ahead. At the same time, what I want to say is that have a sense of gratitude, okay? That's what I have realized, that we achieve things and then somewhere we start believing that we are special. We are not special, we are different. You did things differently in last 20 years, therefore you have reached here. But make sure that deep down have some sense of gratitude. Don't let this success come to your head. I think you guys are smart enough to understand that. And lastly, stay curious. Make sure you try, keep on trying newer things. Don't let that sense of settling that we have in India, कि भाई अब MBA तो कर ही लिया, right? दहेज भी अच्छा मिल ही रहा है, तो settle ही हो जाओ, right? या abroad चले गए, फिर शादी होगी वगैरह वगैरह. Just keep on make sure that you keep on trying something or the other new things. You have something that 99.9% people in India do not have. You're going to have degrees. You have degrees. You are educated. बहुत लोगों के पास ये opportunity नहीं होती है. All right. So thank you so much everyone for this
Amazing opportunity. Thank you so much. All the very best. Hi, everybody. Some of you might not be knowing me. I'm Swapnil. Everybody has said, KD sir and Ravi sir already said everything, whatever need to be said. The only thing I would say is many of you might be feeling that, I could have done a little better. But let me tell you one thing, consistency will beat everything, okay? So if you're consistent, persistent with the, whatever you're supposed to do, I can promise you where you are going to go, will definitely achieve something which probably, you might not be able to think right now, okay? So, be consistent, study as much as you have done for CAT, if not more. Second thing is, ये hangover यहीं खत्म करके जाना, है ना? क्योंकि जब हम बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हैं, I've seen many students, they get through good B schools and first 3 months they are not able to realize that they are actually into the B school, है ना? उनका honeymoon period खत्म नहीं हो पाता है. तो, you have to work really hard, and this is beginning of everything which you dreamed of. Okay, so make most out of it. All the best. Thank you so much. Hi guys. Okay. Thank you. And obviously we worked very, very hard. और आज आप लोगों को देखकर जो मतलब खुशी अंदर से मिली, right? That's a different level. I mean, many people told me that last time -2 score था, -3 score था, and this time we cracked 96 percentile, 99 percentile. So वो जो एक वर्क हार्ड हमने इतना किया, सब पूरी टीम ने किया, 3-3, 4-4 बजे तक बैठकर हमने सॉल्यूशंस बनाए, क्वेरी सॉल्व की, टेलीग्राम पर सॉल्व किया, वो सब एफर्ट जब इस तरह से फ्रूटफुल होता है ना, तो वो एक खुशी जो मिलती है वो शायद आप बाद में बिलीव करोगे जब एक्चुअली इस चीज़ को देखोगे. बट या दैट्स योर फर्स्ट स्टेप. अभी बी स्कूल में एंट्री हो गई, अच्छा बी स्कूल मिल गया है, ये पहला स्टेप है. ध्यान रखना कि अंदर जाके 2 years में जो आप वर्क हार्ड करोगे वही इफेक्टिवली आपका पाथ सेट करेगा फॉर द नेक्स्ट ईयर जर्नी. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. Hi, so my name is Brijesh and Bodhi Prep मैंने ही start किया था and many of you must have watched some of the videos and gone through the website. So I am new to the team. एक चीज़ जो मैंने सीखी है over a period of time, काफ़ी साल मुझे भी coaching industry में हो गए हैं, तो मैंने देखा है कि one thing that you must value is people. तो मैंने देखा है कि हम compete करना बहुत सीखते हैं, compete करो, इसको पीछे करो, उसको पीछे करो. आई बिलीव दैट कोलैबोरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. मतलब मैंने देखा है कि जैसे भी मैं रवि सर से मिला, सो व्हेन आई मेट हिम आई फेल्ट कि अरे यार दिस इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू हेल्प अदर्स. एक जो अच्छा टीचर होता है, जो रियल टीचर होता है टू द कोर, वो मैंने रवि सर में देखा था. तो मुझे लगता है कि वेन एवर यू गो टू अ बिग प्लेस लाइक टॉप IIMs, वहाँ पर आप compete करने की स्पिरिट से ज़्यादा कोलैबोरेट करने की स्पिरिट अगर बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म में आपके जो रिलेशंस बनेंगे, जो आपका एक सोशल कैपिटल क्रिएट होगा, वो ज़बरदस्त होगा. सो यू वुड बी एबल टू रीच आउट टू अदर्स, एंड व्हेन वी कोलैबोरेट एंड वी कम टुगेदर, व्हेन द बेस्ट पीपल कम टुगेदर, ग्रेट थिंग्स आर पॉसिबल. सो दैट्स ऑल आई हैव टू से. मैं तो खैर नया आया हूँ अभी यहाँ पर, बट होप टू कॉन्ट्रीब्यूट माई बेस्ट इन द कमिंग डेज. थैंक यू सर. Good evening, everyone. First of all, okay, put your hands together for each one of you. You have achieved a milestone. Please clap for yourselves, everybody. All right, so I think everybody has received most of the motivation, the knowledge that is required going forward. But I would say that, all of you have really, when you walked into Rodha, you had a lot of doubts, a lot of concerns, right? But Abhi, I see a lot of clarity in you. I also spoke to so many since the morning, and I think everybody has some clarity. But trust me, going forward, life will have its own share of challenges. B-school life, especially the first 3-4 months, is not going to be a cakewalk. You'll have to hustle, like Ravi sir said. Okay? And it's all about, not giving up. So whenever you feel that, you're hitting the rock bottom, know that what brought you here. It was again the year of hard work. This journey has come to an edge, right? And everybody has put
equally amount of hard work. Somebody is going to ABC, somebody is going to SPJAN, NMIMS. It's not about the effort. It's maybe a bit of luck here and there, but then everybody has put equal efforts, right? And now it's an opportunity that you guys have, the 2 years at B school. Whatever profile XYZ, whatever you're working with, you have 2 years to change that. Okay? So please make the best of it, and all the very best to each one of you. Hi everyone. First of all, I would like to congratulate all of you for this big achievement. And मैं यही कहूँगा, also I am new to the team of Rodha. मैंने भी अभी इसी month join करा है, especially for the IP Mat program. आप लोगों को IP Mat के बारे में थोड़ा idea है या नहीं है? So काफ़ी सारे IIMs में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको IPM वाले students भी मिल जाएंगे, जैसे IIM इंदौर हो गया, IIM शिलोंग ने भी अभी launch करा है, कोझिकोडे में भी आपको मिल जाएगा, right? एंड जम्मू, बोधगया, हर जगह आपको काफ़ी सारी जगह IPM स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, है ना? तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि मेहनत करना मत छोड़ना, आगे भी अच्छे से मेहनत करना जैसे आपने अभी तक करी है, एंड अपनी मॉरल वैल्यूज़ भी बना के रखना है ना. ऐसा ना हो कि कंपटीशन के चक्कर में आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे फोकस ना करें. आगे बढ़ना है, दूसरों की हेल्प भी करनी है, एंड एज अ कम्युनिटी सबको ग्रो करना है ना. ये मोटिव से, अच्छी इंटेंट से हम काम करें और आगे भी मेहनत करें, है ना. सो दैट ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू. Hi everyone, my name is Aryan. I recently graduated from IIM Ahmedabad, batch of 23-25. I will soon be joining the Boston Consulting Group as a consultant. Let me bring this to you at the outset. The next 2 years are going to be the best time of your life, and I would want all of you to embrace it. एंड मैं बेस्ट टाइम इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि सबको बहुत पार्टी करने को मिलेगी, बट बेस्ट टाइम इसलिए है क्योंकि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है. इट इज मोर ऑफन देन नॉट सेड कि जब आप MBA करने जाते हो आपके पास 3 S होते हैं जो आपको बैलेंस करने होते हैं: स्लीप, स्टडी एंड सोशल लाइफ. और सब लोग ये कहते हैं कि आप इन 3 में से आपको सिर्फ 2 ही मिलेंगे, या आपको स्लीप और स्टडी मिलेगा, या सोशल लाइफ और स्टडी, या स्लीप और सोशल लाइफ. अब हाउ यू chart out the path is upon yourself, but one thing, as sir also pointed out and I would like to reiterate, is that ये 2 साल आपके लिए path define करेंगे आपकी life का, where you are and where you want to be. Nonetheless, it is going to be a life-changing experience. It is going to be very good. The first year is going to be the most hectic. Second year में बहुत मस्ती करोगे आप लोग, बहुत पार्टी करोगे, but first year is the most crucial one. The first 3 months of your B school, when you enter, you are going to be the most overwhelmed. And why is that? That is because firstly you step into a new environment. You are burdened with a lot of things. इतनी सारी classes आ जाती हैं, इतनी सारी assignments आ जाती हैं, नया environment है, 4 बजे तक आप सो रहे होते हो, फिर सुबह 8 बजे आपको फिर क्लास पे जाना होता है. And that's not just it. Once you're acclimatizing yourself to that new environment, you're also exposed to making your CV. You're also exposed to building your profile. And then तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब समर इंटर्नशिप्स आपको आके हिट कर देंगी विद इन द फर्स्ट 3 months. तो वो सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग पीरियड होता है आपके MBA का, फर्स्ट 6 months, जब आप सेट इन करते हो और आप समर इंटर्नशिप्स के लिए जाते हो. माई ओनली एडवाइस टू ऑल ऑफ यू टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स दैट यू विल फेस इन द फर्स्ट 6 months is to do 2 things, and to do those 2 things from today, from tomorrow only. The first thing is upskilling yourself. अपने आप को जितनी नई चीजों से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जितने नए टॉपिक्स से, रेलेवेंट टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस कर सकते हो करो. अपने आप को जितनी नई एवेन्यूज, नए कॉन्सेप्ट सिखा सकते हो वो करो. द सेकेंड इज प्रोफाइल बिल्डिंग. समर इंटर्नशिप का सबसे इंपॉर्टेंट लीवर होता है आपका 1 page CV. वो 1 page CV ही आपकी शॉर्टलिस्ट डिटर्मिन करता है, और उसके बाद आपका आता है इंटरव्यू. एंड वो 1 page CV में अपने आप को अपस्किल करने के लिए आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी होती है. Keeping this in mind only, Ravi sir thought of going a step forward beyond the conventional CAT coaching and launch a course to bridge the gap between the skill sets that a student has versus the skill sets that are required for you to crack your dream job. It is called the pre-MBA batch. Most of you know about it, some of you might not. But the idea of that batch is to, the idea of that pre-MBA course is to bridge whatever skills you have, uplift your profile as much as possible. 4 pillars identify करें हमने कि आपको upskilling करनी है, profile building करनी है, resource toolkit करनी है, और उसमें हमने 12 modules launch करे
जिसमें आपको IIM अहमदाबाद के पास आउट्स के साथ 50+ आवर्स ऑफ इंटरेक्शन मिलेगी. आपको सारे दिव्या नहीं, अभी सर इज कमिंग इन 15 मिनट्स. तो वो आपको सब कुछ बताएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, मोस्ट रेलेवेंट स्किल्स. बिकॉज आपके अकेडमिक सब्जेक्ट्स तो एक चीज़ होती है, बट उसके अलावा बहुत सारी स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, फॉर एग्जाम्पल PPT, फॉर एग्जाम्पल AI टूल्स को यूज़ करना, चैट GPT को यूज़ करना. उसके अलावा प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है. आपको केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आपको सर्टिफिकेशंस लेने होते हैं, कोर्सेज करने होते हैं. तो वो सब का एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया है. दैट्स द आइडिया ऑफ द प्री MBA बैच. So if any of you is not already a part of it, I would strongly advise just have a look at the outline that we've laid out. I am sure it will add a lot of value for you, and the learning curve that you'll have in those 3 weeks will be unparalleled, and that will act as a stepping stone as well as a springboard for you to navigate the first 6 months of your MBA journey with ease. Thank you. ये बताओ कल से बैच स्टार्ट हो रहा है. The second batch of the pre-MBA course is starting tomorrow only. कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहले जो दिव्या की बात कर रहे थे वही ले रहे हैं on how to effectively use AI tools. तो हम लोगों के पास कुछ AI tools डिजाइंड भी हैं जिससे आप बहुत impactful CV पॉइंट्स बना सकते हो. CV पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप क्वांटिफाई करो आपका सारा इम्पैक्ट. तो हमने कुछ AI टूल्स बना रखे हैं जिसमें आप अपना काम डालोगे कि आपने क्या किया था और आपको एक इम्पैक्टफुल CV पॉइंट मिल जाएगा. इसके अलावा फिर ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 3 वीक्स एक्सेल, PPT, केस कॉम्पिटिशन्स, हाउ टू मास्टर इंटरव्यूज, समर इंटर्नशिप इंटरव्यूज भी मास्टर करना सिखाते हैं आपको, रिटन कम्युनिकेशन सिखाते हैं, ओरल कम्युनिकेशन सिखाते हैं. सो इट्स बेसिकली एन अम्ब्रेला कोर्स, अ वन स्टॉप शॉप फॉर enabling you to navigate the next 6 months of your MBA journey. Hi guys. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन. तुम पता है इसमें ये लोग का प्रीवियस ड्रीम मैक्सिमम लोगों का था गवर्नमेंट जॉब करना. ठीक है, तुम उस ड्रीम के पार्ट ऑफ बैंक PO करना है मुझे. बैंक PO इज रियली गुड. ठीक है, शी हैज इन ब्रांच मैनेजर, सो फुल रिस्पेक्ट टू हर ऑफ दैट यार. ठीक है गाइस, अगर एक तो तुम में से कोई नहीं सोच रहा होगा अब ऑब्वियसली बैंक PO, अब तो MBA करने जाएंगे. बट इवन इफ यू आर थिंकिंग, आई वुड सजेस्ट नाउ डोंट थिंक, बिकॉज it's not that kind of job now. It has become very hectic and all. Another issue. Let's continue here. Congratulations पहले आप सबको. So a huge round of applause. Okay, and this event is organized for you guys. So have fun. आज बहुत मस्ती मारो. DJ होगा थोड़ी देर में, डांस करो and enjoy the whole night. Just keep in mind to have the same attitude in life, to have the same mindset जो आप लोगों ने अभी तक रखा है. बिकॉज लाइफ में आगे अभी काफ़ी कुछ होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हैप्पीनेस, मेनी थिंग्स विल बी देयर. हैविंग दिस माइंडसेट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ऑल्सो इंजॉय लाइफ. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सजेशन जो मैं देना चाहूँगी, चूज योर पार्टनर वाइजली. बिकॉज जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ ना हु आर सक्सेसफुल, बीट रवि सर ऑल्सो, he is also successful because yes, रितिका का भी बहुत बड़ा योगदान है उसमें. वाइफ रितिका. Yes. Same ways, see, I am here because I have a family, I have a husband who can support me. I am here with a 18-month-old son. तो yes, आप कैसा पार्टनर चूज कर रहे हो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे, एंड हाउ योर करियर पाथ विल गो ऑन दैट ऑल्सो. So choose that very wisely. ठीक है, enjoy अब आज की night. All kinds of suggestions you got today. स्किल से लेके पार्टनर तक. रोधा मैट्रिमोनी लॉन्च करेंगे हम लोग. ठीक है. Hello everyone, I'm Ashutosh and congratulations to all of you. यहाँ पे तो सबने सब कुछ कह दिया. एक सजेशन है, तुम अपने करियर को ना ऐसे चूज करो कि लाइक डाउन द लाइन 10 years डाउन द लाइन कहाँ पे रहोगे, क्योंकि अभी 2 साल में नहीं डिसाइड करो. बिकॉज कई लोग हैं जैसे मैंने भी कई बैंक एग्जाम क्वालिफाई किया था, लेकिन मैं वो कर नहीं सकता था, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया जॉब. बहुत सारे, तुम्हें 10 साल बाद तुम कौन सा जॉब कर सकते हो. ऐसा नहीं कि तुम्हें सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है तो तुम मार्केटिंग में चले जाओ, तुम्हें जबकि करना फाइनेंस है, तुम्हें ट्रैवलिंग नहीं पसंद है. सो बेसिकली अभी नहीं, बाद में जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तब तक के लिए सोचो डाउन द लाइन, क्योंकि तुम सब अचीवर्स हो.
ठीक है ना, तुम लोगों ने सबने बहुत अच्छा किया है। मैंने देखा बहुत लोग अफसोस कर रहे हैं कि मेरा ये हो सकता था। इट मीन्स कि तुम में भूख है, हंगरी हो, क्योंकि तुम और अच्छा कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स जो भी चूज करोगे वो तुम पाथ एकदम से ले लोगे। तो मेरे हिसाब से ये है कि डाउन द लाइन सोच के तुम जॉब मतलब उसके अकॉर्डिंग जॉब चूज करो, कोर्सेज चूज करो, आगे स्पेशलाइजेशन चूज करो। बाकी तो सबने सब कुछ बता ही दिया। थैंक यू सर इज़ अ ब्रिलियंट माइंड, बहुत अच्छे अच्छे एल आर डी सेट बनाते हैं सर, ठीक है। सो आई फाउंड समबडी, जो मैं बनाता एल आर डी सेट, समबडी टू टेक ऑफ माई लोड थोड़ा ठीक है सर, रियली गुड. So that's that guys is our top management team and I think सब इसलिए मैंने बोला कि सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना experience share करेंगे, right? So somebody what KD sir said, few people absorbed, what Smita said, few people absorbed, what Ashutosh sir said और तरुण sir said, तो ना absorb किया था, what Apur said, right? अब आपको अपना उसमें से 5 choose करना है and then you have to just go and let's enjoy today evening. आज evening enjoy करते हैं, okay? And over to you, ma'am. Yes, sir. Over to Yeah. you. So लॉट ऑफ गाइज आर टॉकिंग आउटसाइड अभी कि सर अच्छा लग रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है. सो एक छोटा सा एक बताता हूँ एक चीज़, एक बहुत फेमस यूट्यूब वीडियो है, आपने शायद देखा नहीं होगा, ठीक है. उसमें ना एक कोच होता है एंड एक रेस का कंपटीशन होता है, ओके. एंड जब वो रेस का कंपटीशन था ना, सो इन दैट सबने ना बोला तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो, ऐसे खड़े हो जाओ. सो ऑल वे वेरी कंफ्यूज कि क्या कर रहे हैं, रेस करना है ना, तो रेस तो हम लोग
Hey everyone, good afternoon. Welcome to VARC Marathon. I think सुबह से ही सब लगे हुए हैं. And so good to see you all. All right, I'm so glad. Utkarsh कह रहा है, just listen to your speech. Yes, exactly. Next year Achievers Meet करेंगे. We are planning a bigger Achievers Meet this time. 2-3 होटल बुक करना पड़ेगा. And इस बार मैं अपना स्पीच प्रिपेयर करके लाऊंगा. लास्ट टाइम थोड़ा ऑन द स्पॉट टाइप हो गया था. हेलो एवरीवन, गुड टू सी यू ऑल. एब्सोल्युटली बोल्ड ओवर बाय द रिस्पॉन्स. बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को भी, बिकॉज रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है. इफ़ यू आर वॉचिंग मी आफ्टर द सेशन इज़ ओवर, प्लीज़ नो दैट a lot of students are right now watching this live. All right, good afternoon everybody. President's Garden. देखो वैसे I generally believe that I have a quote that I believe, and that is never say never. है ना, क्या पता हो ही जाए. We just don't know, right? Okay, I'm good everybody. I hope you're good too. सुबह से वैसे 2 सेशंस कर चुके हो. अर्जुन गुप्ता डेफिनेटली 100%, है ना. तो थोड़ी थकावट तो हो गई होगी, बट सो व्हाट आई एम डूइंग इज, आपने आरसी का एक सेशन कर लिया है, वीए का सेशन भी कर लिया है. सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल स्टार्ट विद अ कपल ऑफ यूजुअल क्वेश्चंस, बिकॉज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं. अभी भी एक आ गया. सो यूजुअल क्वेश्चंस, राइट, कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. सो आई एम स्टार्टिंग विद 5-6 questions which I have been getting very frequently. I will quickly answer them in like 5 minutes, and then I move on to the RC part, है ना. तो I hope in case you are not a student of Rodha, you have not watched us before. My name is KD. I am taking care of VRC section for CAT. So शुरू करते हैं, right? All right everyone, लेट स्टार्ट. अपना पेज रिफ्रेश ज़रूर करना है एवरीबडी. बीच बीच में अगर आपको लगता है कभी लैग हुआ या स्टक हो गया, तो पेज रिफ्रेश करना. मोस्टली इट इज़ इंटरनेट का इशू रहता है. बहुत जगह पे इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा स्लो रहता है. अभिषेक सिंह इज एक्स रोधा. क्या बात, एक्स रोधा क्या, तुम रोधा के पार्ट हो. हम अपनी लाइफ में किसी को एक्स नहीं बनाते, है ना. ऑल राइट एवरीबडी, लेट स्टार्ट. लाइट ज़्यादा है मेरे फेस पे. हो सकता है. फेयर एंड ग्लो बहुत बढ़िया होता है. सो आई हैव यूज दैट एंड आई थिंक इट इज़ वर्किंग. राइट, लेट मी चेक इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट द लाइट. आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट, बट थोड़ी ट्राई करता हूँ. आई डोंट नो, नॉट वेरी गुड एट इट, बट कोशिश करके देखता हूँ. नहीं, आई एम बिकमिंग ऑफ डिफरेंट कलर. आई वुड रादर कीप इट दिस वे, है ना. ये भी ठीक ही है वैसे, आई थिंक, राइट, लुक्स बेटर, राइट. ओके, चलो. सो आर्यन, दैट्स ओके, डोंट वरी. सो लेट्स बिगिन. छोटे मोटे चीज़ें होती रहती हैं, बड़ा देश है ना. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गेटिंग nowadays a lot, and I am unable to answer to all the questions. Let's be very clear everybody, it's very hard for anybody to respond to, like, you know, let's say 50 messages in a day, right? बहुत मुश्किल होता है. So what I thought was, okay, let me quickly take the questions straight away. So first thing I have been getting a lot is that my accuracy is stuck. What do I do? Now I will not take 2 hours of class on these questions. I'll be very very quick. तो ये बहुत आ रहा है कि सर my accuracy is stuck, 40-50% के ऊपर नहीं जा रहा. If I attempt 10 questions, I get 5 right, 6 right. If I attempt 14 questions, I get 8 right. क्या करूँ? So first thing, remember this, I have been almost repeating it on a daily basis. 75% average accuracy is what you should look for in VARC. 75% plus. Beyond that, it becomes very hard. You can make mistakes in the passage, interpretation of questions, interpretation of options. तो ये थोड़ा सा, unlike quant and LRDI, VARC accuracy would be slightly on the lower side.
So if you're stuck at 40-50%, understand two things. First is taking it to 75% is not a 25% increase. I hope you understand. बहुत important point है. If you're stuck at 50%, you want 75%, it is not a 25% increase. It is, if you understand percentage, it is a 50% increase in accuracy, right? Which means if you keep on doing what you have been doing, you will not increase your accuracy. You have to increase your efforts by 50%. So if you have been giving 2 hours to it, give 3 hours. If you have been giving 4 hours to it, give 6 hours. If your efforts are not going up by 50%, your accuracy is unlikely to go up by 50%. I hope you understand. 50% से 75% करना not easy but doable. Correct. तो ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है. I hope you understood the point I'm making here. Do active reading. Predict and track author's intent. Try to find out where the author is making a claim, where the author is stating opinion. If you see a lot of details, data, facts, figures, try to skim, try to go fast, don't try to retain, don't try to understand every single word of the reasoning part. Any paragraph typically is written in the form of point, reasoning, and explanation or example part, right? So the author typically writes a point, gives you reasoning, gives you example. Catching this is your game, this is your target, right? So do some active reading, analyze why your options are wrong. Just don't leave a question because you got it wrong. थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा analyze करो. For example, did I miss the interpretation of the sentence? Did I not interpret the option properly? Did I misread the question? Did I miss any word in the option? Am I doing it repeatedly? Correct. And then of course, journaling. Remember, I am a big fan of journal writing. Always note down, create an error log, right? Create an error log. This is a very psychological kind of thing. Just write down after practice what kind of questions you are getting wrong mostly. I'm unable to eliminate options. I am not able to recognize narrow options. I'm not able to recognize extreme options. I am not able to interpret questions. I'm not good at strengthening the argument question. I'm not good at assumption questions. Error log. What happens is when you write it down every single night, जब बाद में आप revise करते हो, when you're practicing, preparing, you are like, okay, I know 5 question types where I am weak. Let me work on those 5 question type. If you don't have an error log, if you don't write it down, what happens is you don't bother. आपको पता ही नहीं चलता. You are not aware where is the problem, so you don't work on it. I hope you understood this point, everybody, right? It's a very simple pain point and it happens all the time. Correct? All right. So, okay. Chalo. So let's go to the next question because I don't want to spend too much time on the questions. हाँ, यहाँ पे तो मैं हूँ, है ना? यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए. But लिखते वक्त मुझे दिखता है, मैं अपने आप को देख नहीं सकता. कोई बात नहीं. Now I'll remember. Now this one I'm getting a lot. Sir, when I am doing RCs without a timer, I am perfect. I'm getting 3 out of 4. When I am doing it under time pressure, I panic. I start getting, I can't breathe. I get stuck. I'm unable to understand the main idea. I'm unable to eliminate choices. Theory मुझे सब पता है, practice में सब अटक जाता है. Whenever there is a timer on. So what do we do? Face your fear. Start practicing more under time. Okay? Give yourself harsher, stricter time limit. You'll be surprised how fast you can become when you push yourself. तो यहाँ पे याद रखना, बहुत बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि टाइमर अगर आपको अंडर टाइम प्रेशर प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट सेकेंड एवरीबडी, लेट मी वर्क ऑन द माइक इशू. माइक मेरे हिसाब से तो मैक्स पे है, बट आई डोंट थिंक आई कैन डू एनीथिंग अबाउट इट. Now, is the voice better everybody or is it still the same? एक बार confirm करना. It's fine.
ओके, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं अपने लेवल पे तो इंक्रीज नहीं कर सकता, आई थिंक। नो, है ना? ऑल राइट, चलो ठीक है। सो गिव योर सेल्फ लेस टाइम, all right, you'll be able to push yourself, right? That is one. And second, remember author's main idea, that is your primary goal. When you are under time pressure, just let me give you a similar example. Netflix हो या बहुत तरह के और भी सोशल मीडिया चैनल पे you guys watch movies, right? You watch web series, भगा के देखते हैं ना यार, ये बोर कर रहा है, मैं गाने आ गए. Same happens in RC also. When you have less time, you learn to focus on the main points. If the author says global warming will severely impact the world, for example, you know what example will come. Another way of looking at it. So author is going to repeat the same point. No, that is why it's another way of looking at it. So if you have understood the previous point, why bother about this point? Thoda fast pad lo. Try to do this. If you are struggling to understand RCs under time pressure, practice under time pressure. And I always say this, buy a watch, right? Stopwatch खरीदो. श्रद्धा सबके लाइफ में नहीं होती है, आपको गिफ्ट मिले ज़रूरी नहीं है. 12th फेल देखा है ना? सबकी ज़िंदगी में उम्मीद यही होती है कि कोई तो गिफ्ट देगा, बट परचेज इट. अमेजोन में मिल जाता है 400-500 रुपये का. यूज स्टॉप वॉच फॉर मेजरिंग एवरीथिंग. LRDI सेट टाइम, क्वांट क्वेश्चन टाइम, VARC क्वेश्चंस, VA क्वेश्चंस, पैराजबल, time everything, every single thing for next 100 days, 90 days, and you would be able to do a much better job. Put yourself under time pressure. At this juncture, remember, I can't tell you, okay, read an RC at a pace you are comfortable in and then do questions, 20 minutes le lo. I can't say that. I have to push you. So this is what you have to do. I hope this point is clear. है ना? हाँ, all right. आप किसी का नाम श्रद्धा हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी, डोंट टेक इट पर्सनली, ओके? ऐसा नहीं कि कमेंट में फिर कोई गुस्सा हो गया. स्टक बिटवीन टू क्लोज RC ऑप्शंस, ये दर्द तो वैसे भी खत्म नहीं होता है ना. एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट इट लाइक अ जिलियन टाइम्स बिफोर, बट आई विल रिपीट. Please read the questions properly. I have seen this in my classes, I have seen this in my workshops. Most of the time students are unable to understand the question itself. उनको question ही समझ नहीं आता. Question is asking why is the author using this example. Students are marking the option. That is the meaning of the example. Understand? In a class I asked India's ranking, GDP per capita ranking in the world. पहले तुम बताओ, वैसे तुम ही लोगों से पूछा है मैंने. And I got 80% wrong answers. इंडियाज GDP पर कैपिटा में रैंकिंग क्या है इंडिया की? 80% भारतीय युवा ने रॉन्ग आंसर दे दिया है ना. दे सेड सर हम 4th पे हैं, कोई कह रहा है सर वी आर एट 3rd पोजीशन. अरे बाबा, GDP पर कैपिटा पूछा है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, करेक्ट है ना. सो व्हेन somebody asks you क्या करते हो, राइट, डोंट से गाने सुनता हूँ. The question's meaning is different there, right? So stuck between two choices, chances are very high you have not understood the question properly. Read the question, interpret the question. Is it asking for the purpose of writing? Is it asking for the conclusion of the author? Is it asking for the interpretation of the author, assumption of the author, inference made by the reader? Everything can be different. Trap signals पे ध्यान दो, extreme words, distortion, scope shift, you know all this. And most importantly, please look for differences between the choice. If there are two people who are very similar, right, Judwa movie, how do you recognize who is who? Pay attention to what is the difference between two choices. Students typically tell me, sir, both options looked similar, so I marked C. They looked similar, they were not same. There must have been differences, you did not recognize them. दो के बीच में डिफरेंस होता है, अदरवाइज बोथ ऑप्शंस वुड बी एग्जैक्टली सेम, एंड टू एग्जैक्ट सेम ऑप्शन मीन्स क्वेश्चन इज रॉन्ग. तो कुछ ना कुछ तो है विच यू आर मिसिंग आउट ऑन, यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट, करेक्ट? ऑल राइट.
पैसेज फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट. आई स्टिल गेट दिस क्वेश्चन इन माई DM. इंस्टा पे भी आता है, टेलीग्राम पे भी आ जाता है, कभी कभी व्हाट्सएप पे भी आ जाता है. सर स्पेशली बाई न्यू स्टूडेंट्स, है ना, ऑफ कोर्स. सर पैसेज फर्स्ट और क्वेश्चन फर्स्ट, डू आई हैव टू आंसर दिस एवरीबडी, है ना? हाँ. ड्रूएल सेज ऑफ कोर्स क्वेश्चंस. The default answer is passage first. In exams like CAT, XAT, it's practically impossible to answer questions without reading the passage. Please don't waste your time. Okay? Is there any exception? Maybe exams, Varun Dhawan of entrance exam may be helpful, may not be helpful. NMAT may kabhi kabhi helpful, but CAT, XAT, no, don't do it. And दोबारा मत पूछना, right? What is the correct answer to this question? कोई पूछता है थप्पड़ मार दो उसको. Passage first. No questions on this. No further questions. Correct? काम खत्म. Okay. Next question. This one I am getting now a lot. एकदम दिल से आवाज आ रही है. सर आपने वही किया, हमने वही किया जो आपने बोला सर. राइट, पर 100 दर्द खत्म ही नहीं हो रहे. राइट, क्या करना है? सर आई हैव सॉल्व्ड ऑल द इजी आरसीज, मॉडरेट आरसीज, कुछ नहीं हो रहा. करेक्ट. नाउ रिमेंबर, these are two very important points. One is, you know the rule that I follow, I make you guys follow a lot. 3 RCs per day, or if you're not doing VA questions, then 4 RCs per day is what you are doing, right? But suppose you see there is no improvement. Now remember, as you know, we always analyze questions. By no improvement, what do you mean exactly? If for you improvement is I get 4 by 4 in every RC, then that target is a little impractical. 3 by 4 is my target, right? You did 1 RC in the morning, you got 2 by 4, 1 RC in the afternoon, you got 1 by 4, 1 RC in the evening, you got 3 by 4. Typically, you remember this RC, correct? And then you keep on whining, 1 by 4, 1 by 4, what do I do? No improvement. No. Always, whether it's mock, sectional, or even RC practice, always look at average of 3 RCs. The last 3 RCs, the last 3 mock, the last 3 sectional, the last 3 topic test. For example, you have done 12 questions here, right? You got 6 out of 12 questions you did, correct? 50% accuracy. Now, if you say I have not improved, then you go back and check where were you earlier. Now, suppose you were earlier at 50%, then you have not improved. But earlier, if it was only 25% accuracy, then you have doubled. I don't know what you mean by improvement, right? If this is your target on an average, then also the passage, the question type can make this go up and down. ये भी हो सकता है. Passage is super tough, questions are super tough. This 3 by 4 will come down to 2 by 4, 1 by 4. What do you mean by improvement? Improvement in general means that if I attempt 3 RCs, I am likely to get 75% questions that I attempt correct. This is my first target, है ना, यही करना है मुझे. तो 75% accuracy अगर मुझे आ रही है, I should be very, very happy. If I'm getting about 50-60%, I should be a little concerned, keep on practicing. But don't let this I am not improving mindset stop you from practicing, because ये बहुत होता है कि भाई improvement ही नहीं हो रही. Don't do that. But if you still think, okay, I'm not improving, what you do is, then in place of doing 3-4 RCs, for next 10 days, take 1 RC, don't go to the questions, read the RC and try to explain to your imaginary friend. कोई तुम्हारे ग्रुप में जो सबसे बेवकूफ़ है उसको बोलना मत, उसका इमेजिनेशन कर लो and try explaining the RC to your most idiotic friend. You would realize that probably you are not able to understand the passage. The problem is with the passage and you are attempting every single day. Therefore, there is no improvement. Now, how would you check whether your explanation is correct or not? You can use
वीडियो सोल्यूशंस वी मेक, राइट, अगर अवेलेबल है तो क्लासेस के आरसीज पे यू कैन टेक अप अ क्लास आरसी लेटर, वॉच द एक्सप्लेनेशन पार्ट इन द क्लास, ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू. आजकल वैसे एआई शेआई भी है, यू कैन यूज दैट एज वेल, बट इफ पॉसिबल प्लीज डू दिस टू द एक्सटेंट पॉसिबल. प्लीज ट्राई टू एक्सप्लेन टू योर इमेजिनरी फ्रेंड. इफ यू आर स्टक, डीप रिव्यू करना अच्छा होगा बजाय के बल्क सॉल्विंग के. मेक सेंस? करेक्ट? ऑल राइट. माई ब्रदर, ये चैट ब्रदर ने पढ़ा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. ओके, दिस इज अ वेरी यूनिक क्वेश्चन आई रिसेंटली गॉट फ्रॉम अ स्टूडेंट. मैंने इसको छोटा कर दिया है, इट वॉज अ लॉन्ग मैसेज. से द स्टूडेंट सेड, सर इट लुक्स लाइक वीएआरसी में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. आई एम डूइंग क्वांट एलआरडीआई, आई एम स्कोरिंग अ लॉट, वीआरसी में आई एम नॉट स्कोरिंग. तो क्या करें? we'll have to find VARC B schools where VARC is not required, right? But those colleges are likely to be अब्बा नहीं मानेंगे colleges, है ना? तो देख लो, मर्जी है आपकी, आखिर जिंदगी है आपकी, है ना? करेक्ट. मनाली में ही वेकेशन मनाना है पूरी जिंदगी की, मिलान जाना है, तुम देख लो. बिकॉज VARC more or less remains super important. So please don't make up this mindset right now that it's a black hole, I'm wasting a lot of time doing VARC. You have to do VARC. It's like joining Indian Army and saying I don't like fighting, can I do something else? Gardening कर लूँ क्या, है ना? कैप्टन अमेरिका बन के गार्डनिंग तो नहीं होगा बाबा, नहीं कर सकते. करेक्ट. तो ये दिस क्वेश्चन वाज वेरी फनी, बट आई थिंक, आई डोंट नो, तुम लोगों के दिमाग में चल रहा होगा शायद, है ना? सो प्लीज रिमेंबर, इफ यू रियली थिंक ओके आई एम नॉट एबल टू मैनेज इट, आई एम ओवरवेल्म्ड, नहीं हो रहा मेरे से, मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ, तो प्लीज ट्रैक योर वीकली एक्यूरेसी एंड फिक्स 45 to 60 minutes एवरी डे फॉर VARC. 3 RC करो, खत्म, इतना कर लो, बट डोंट स्टॉप डूइंग इट, डोंट गिव अप ऑन VARC. Otherwise, getting a good college would be very challenging. Unless you can buy your own college or start your own college, talk to your parents. बहुत मुश्किल है, VARC करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें. करेक्ट. थोड़ा कम कर लो, 45 minutes 60 minutes कर लो, बट यू हैव गॉट टू डू इट, है ना? नाउ, 100 दर्द है मोस्ट फेमस, सर फिलोसफी पैसेज नहीं हो रहा, मत करो. दैट्स द फर्स्ट आंसर. इफ यू लुक एट लास्ट 7-8 year CAT paper, on an average 1 RC on an average is abstract, right? Will this happen this year? I don't know. Can they give you more than 1 RC is abstract? Yes, it is possible, but you still have the other 2, other 3, other 4 RCs which are non-abstract, right? बिल्कुल नहीं हो रहे सर. What you cannot do is give up on it. आप गिव अप मत मारो अभी से, राइट? आप वो नहीं कर सकते. तो एक डेंस पैसेज रोज का पढ़ लो, राइट? दिस यू कैन डू अ लॉट. जॉनरा टूलकिट्स बिल्ड करो. क्या मतलब? फिलोसफिकल टर्म्स, फेमस फिलोसफर्स, राइट? निकिता मैम ने बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो लिया था ऑन फिलोसफीज, राइट? वॉच दैट. बिल्ड ऑन योर वीक एरियाज, डोंट गिव अप ऑन इट. क्या पता डुएबल आरसी आ जाए. 2007-8 में देयर वाज एन आरसी, आई रिमेंबर, स्टार्टेड बाय सेइंग फ्रेंच फिलोसफर वोल्टेयर. वो देख के ही स्टूडेंट्स भाग गए, दे रैन अवे, वोल्टेयर नहीं होने वाला. इट वाज सच एन इजी आरसी, इट बेसिकली हैड वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस. तो हो सकता है आपको फिलोसफी भी करना पड़े. डोंट गिव अप ऑन इट. यू हैव 3 months. 3 महीना बहुत होता है ना? कभी जी के देखो उसके बिना, बहुत लंबा टाइम है. डोंट गिव अप ऑन इट, कीप ऑन डूइंग. बट येस, when you are writing a mock etc, if you can't get a grip on it, let it go. बिना समझे आरसी आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, राइट? बट वो एग्जाम की बात है, अभी गिव अप नहीं मारना है. रीड 1 dense passage. You can watch a video I have taken also on abstract passage, कैसे abstract पढ़ते हैं, but don't give up on it, keep on trying, right? Okay. महीनों से जी रहा हूँ. ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन. सर मॉक दिया था और अब पेरेंट्स सही लग रहे हैं लाइफ में फर्स्ट टाइम.
बट अमेरिका में भी अब ट्रक ड्राइवर बनना मुश्किल है, इंडिया में ओला उबर की हालत बुरी है, क्या करें? माई परसेंटाइल इज स्विंगिंग वाइडली. आई ट्राइड 3 मॉक्स, VARC 85 फर्स्ट मॉक, 56 सेकेंड मॉक, थर्ड मॉक 37 परसेंटाइल. क्या करूं? छोड़ दूं? Please remember 30 plus mocks is what is your target. 35 plus sectional is your target. Hundreds of topic tests, यही तुम्हारा टारगेट है ना. तो why are you letting 1 or 2 mock shake your confidence? Mock word को ध्यान से देखो. It is supposed to mock you. Bad joke, but you understand. Mock का काम है तुम्हारा confidence हिलाना. But remember, we are Indian kids. Our parents couldn't do it. वो हमारा कॉन्फिडेंस नहीं हिला पाए. Our education system could not do it. Right? Mocking is part of our life. उड़ाओ मजाक कितना उड़ाते हो. We don't care. Right? लगे रहना है. 3 महीने और है, घिस दो. All this will stop. Don't worry about it. This will happen. If this is not happening, you're not alive. Obviously. Right? This will happen. What you need to do is, ये बड़ा important point है. Write 3 learnings and 1 fix this after each mock. हर mock के बाद 3 learnings from the mock and 1 fix this. This one students come back and tell me, sir, ये बहुत help करता है. Fix this. Find out इस mock के basis पे what is it that I have to work on. एक. So create a page उसमें 3 learnings, 1 fix this. 3 learning, 1 fix this. Aim for consistency, don't push for percentile. Try to get into 75 percentile VARC first, 85 percentile second, and then only push it to 95 and beyond. Consistently, if it's not sticking between 75 85 first, you are already doing it wrongly. Correct? तो initially try करो 75 to 85 बैंड में आ जाओ. अगर उस बैंड में आ गए तो फिर बाद में पुश कर लेना. But पहले try to be consistent. And of course, use sectionals as much as you can for practice between mocks. Right? Broadly यही करना है. So tell me everybody. अभी बहुत सारे ऐसे questions हैं which I have not answered, of course. I can't, cover everything, you know that. अभी RC पे चलेंगे, but I hope you understood. A lot of your queries also got answered in brief, right? वैसे each question can take 1 घंटा आराम से, है ना? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर. But I hope you understood that, okay. I took up these questions primarily because I wanted to show you that a lot of people are facing the same problems that you are facing. आप अकेले नहीं हो, आपकी problems actually जनता की problem है. You may not be asking this to everybody, but हो सबके साथ रहा है. Correct? Okay. Ayush Modi, it happens. Exactly. That's what I said, no? Last 3 mocks. Always look at the average. Please remember everybody, always look at the average, never look at individual scores. है ना? पलक, don't worry. 3 months बहुत होते हैं. 3 महीने बहुत कुछ हो जाएगा. आदित्य, last year CAT में 15 marks in VARC got you 75 percentile. सार्थक, अभी एक पे ही फोकस करो. Later on add. हम और क्लासेस लेंगे और वीडियोस लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना? अभी तो मैराथन कर रहे हैं, अभी थोड़ा भागेंगे. रितेश 75%. म्यूजिक बीस्ट, यू आर डूइंग वेरी वेल. अब और पुश मत करो. LRDI सही चल रहा है? ओके, चलो. कृष्णा, आई अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली. शौनक देशमुख, यू आर रॉकिंग इट. क्या बात. द नेशन वांट्स टू नो कैसे कर रहे हो ये. सिद्धांत, एब्सोल्युटली you can do that, no problem. Okay, all right everyone, so what do we do now? We practice a little, है ना? आराम से Saturday है, chill करके. So in the next RC I will show you 2 slides. Okay, you read slide 1 and once you have read the slide, please write done, DONE, done. Okay, then I'll take you to the next slide. After reading that, write done. Do take reasonable amount of time, don't have to hurry. Read at your own comfort pace, whatever comfortable pace you have. Once you have done that, then we would look at the questions. Once you have done the questions, then I would come back and we would discuss what could have been done, approach, etc. etc. है ना? ये करना है. Okay, all right everybody. चलो, ये रहा आपका पहला slide.
प्लीज एंजॉय द पैसेज. जैसे ही फिनिश होता है यहाँ तक पहुँचते हो, राइट डन. ओके. किड्स टीवी किस प्रकार का नाम है? क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा सेम स्लाइड पे, डोंट वरी, बिंदास. अब इसे पढ़ना है. ओके. Let me try to change the color. I don't know if it would be helpful, but एक बार मैं try करता हूँ color change करने का. Okay. एक बार देखना, is it better now? Is it better? Okay. Chalo, I can't keep on changing it. I'll wait for a couple of minutes. Don't worry. Take your time. Dark Belmont. So good to see your message. Ayush Singh, write one mock and don't tell anybody. That's it. चलें आगे. Done. Okay. Let's go to the next one.
That's very nice to know. Hi Chaitanya. Try to just focus on the author's main claim. That's it. Rest is all explanation, reasoning, details. Fictional writer writes. Thank you. Remember everyone, your competition is not with the others in this class. Okay, you have to just see, are you doing better than what you were doing earlier? In order to be the first to answer, impress others, we become very fast and we make very silly mistakes. If and remember, if you think on cat day you will not do it, ऐसा नहीं होगा. Remember, it's not one day, 24th May or 30th May. It is every single day. What you do today will reflect on that day also. Okay, make sure you take every single day as a day to practice to perfection. Don't leave anything for the final day. भूल जाओगे फिर. You'll not remember anything. Okay, let's move on. Chalo. So let me take you to the next part of it, which is the question part. Okay. Now, even if it flickers a little, I think you'll be able to manage, है ना? I think it is because of the color scheme. ऐसा हो रहा है. I don't know. अभी too much flickering. Okay, give me a moment. कोशिश करता हूँ करने की. हो गया शायद. ओके, आई डोंट नो. पॉज करके वी कैन अटेम्प्ट. पॉज करके अटेम्प्ट करके देखो एवरीबॉडी, शायद बेटर हो जाए. आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग. Abhishek, no, I have a very stable internet connection. Okay. Ambuj, my Wi-Fi is working at 200 Mbps. अब पता नहीं इससे ज़्यादा क्या हो सकता है. Okay, do something if possible. Pause करके देख लो, stuff like that. चलो, let me see. D 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 B B B A D. People are saying pause करके बिल्कुल visible. I think because of the minute changes in the internet connection problem हो रही है. So far I have got A and D, A and D, A and D. किसी किसी ने B बोला है. Okay, अम्बुज हो सकता है.
D-A-D-A-D-A. So I can see D-A. Okay. चलो, let me first tell you the answers, okay? और फिर उसके बाद we'll come back to it. चलो. So first question, correct answer is D. सबने बोला और A भी बोला है. Correct answer is of course D. Very good. Well done. I think almost 70% people have said D so far. Correct? Confused between A and D. Okay, well done. D is the correct answer. बहुत बढ़िया. All right, let's move on. Majority of the students are saying pause करने से video reading becomes easier. तो आप pause करके देख लेना question को, है ना? नहीं, यहाँ बोल तो नहीं है. Okay. A. A. A C C D A C C C A और C में लड़ाई चल रही है. Let's see. D A C A C. Okay. A C too opinionated. Okay. A C पैसेज याद रखना एवरीबॉडी. समझ नहीं आया. व्हेन यू से पैसेज समझ नहीं आया, कुड नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज, इट बेसिकली मीन्स यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द ऑथर्स मेन पॉइंट. पैसेज समझ में नहीं आया क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस. करेक्ट. You ask anybody, do you understand Gita? People will say no, but we understand what the Gita's crux is. Crux. पूरा line by line थोड़ी समझना है. You have to understand the crux. That's it. So I'm very happy that most of you could eliminate B or D. I'm very happy about it. जैसे D is like, just a Shashi Tharoor type option. D is that option which has no relevance here, but just trying to be relevant, right? शादी में होते हैं ना जैसे फूफा जी. So I'm very happy B or D you guys eliminated. You got stuck between A and C, and that's exactly what was expected from you, है ना? And 50-50 है class A C में. The correct answer is of course C, not A. And this tells me that yes, you guys need to work on your elimination skills, है ना? We'll come back to it. Next question try करते हैं. Let me see. दो ऑप्शन में लड़ाई चलती, पूरी जिंदगी चलेगी ये लड़ाई दो ऑप्शन की, है ना? ये तो होना ही है. All right. Richa, the entire recording would be available once the marathon is over. अभी भी आप देख सकते हो अगर बैकवर्ड जाओगे तो. चिराग सिंह, नॉट एट ऑल. ओके. बी ए बी 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 जो जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, दोज ऑफ यू हु ज्वाइन लेट, there is some flickering issue with the, if you see flickering issue with the question or the text, you can pause and read it. Okay, बस बता दे रहा हूँ. मैं रिज्वाइन कर दूँ.
रीस्टार्ट करूँ सेशन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ACB, ACB, ओके, ACB, ACB. Oh, Siri has started answering. Siri, I didn't tell you anything. Shut up. ओके, ACB चल रहा है. चलो मैं बता ही दूँ तो करेक्ट आंसर क्या है ना. द करेक्ट आंसर इज D फॉर दिल्ली. वेरी वेल डन. अभी अभी आपने एक क्वेश्चन पूरा का पूरा गोल घुमा दिया. यू डिड नॉट रीड द ऑप्शंस प्रॉपरली, यू डिड नॉट डू एनी इंटरप्रिटेशन, राइट. मोर और लेस यू डिड नॉट डू एनीथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, है ना. तो कभी कभी ऐसा लगता होगा ना कि पेरेंट्स सही थे, है ना. रौनक मुरारका, वेरी गुड, यू आर स्मार्ट, यस. बट रिमेंबर एवरीबडी, if one or two people out of 500 students live right now are getting it right, you should not worry about it at all. Tension ही नहीं लेने का. Please remember something that most of the people, 99% people are not able to do. You should never worry about it. You should not feel anything about it. For example, most of my friends have never climbed Mount Everest. I have not climbed Mount Everest. Does it make me jealous, sad, or demotivated? No. Depressed? No. But if a friend of mine travels to Brazil or goes to probably New Guinea or Antarctica, am I jealous? Absolutely. Super. तो जो नहीं कर पा रहा कोई, तुम भी नहीं कर पा रहे. You have not been to Mars, I have not been to Mars. What's the problem? No problem, है ना. पर बाकी लोग कर रहे हैं और तुमसे नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है. All right. Ayush Modi, no problem. That is why this marathon, है ना. चलो अगला सवाल. ये 3 करोड़ रुपए का सवाल है. You can always pause and attempt, okay, अगर आपको दिख नहीं रहा तो. Murli, you spotted the right thing and then you got the wrong answer. Rish says A, Tabish C, Megha, sorry, Raghav B, fictional B, Akshat A, Anushika B, Ayush Modi B, Ayush बहुत सारे, यश, ओके, B C A B C, ओके, A B C, D को कोई पूछ नहीं रहा, चलो अच्छा है, ओके. नहीं 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 नहीं, साई स्वरूप says D, okay, D also has been marked. Ritesh says D. Chalo, I'll tell you the correct answer. The first correct answer, actually Rish got the first correct answer. Well done. The correct answer is option A. None except means only one which is correct, है ना. I won't go to a movie with anyone except, with none except means I'll go to the movie with only one person. So the question is asking which of the following is correct, right? Simple elimination game. The question is not tough. Correct? Okay. So let me see. 2 by 4, 1 by 4, 3 by 4.
Rishabh says game over. All right, 3 by 4, 3 by 4, 2 by 4. Siddharth, that's the point. 2 by 4, 1 by 4, 1 by 4. If you look at cat passages almost follow the same trick, right? They intimidate by the language of the passage. Passage से डरा देते हैं, है ना? And then questions are doable. Cat के questions are not very challenging most of the time. They are doable. They are pretty doable, right? So I can still see a lot of people getting 1 by 4, 0 by 4 also, right? Now the question is, suppose this passage comes in the paper. How do you read it? I'll take you back first. पहले थोड़ा उल्टा जाते हैं. So suppose you come across this passage. Now very clearly, if you look at the very first line here, it tells you almost immediately that it is discussing an idea, right? It is not very factual. It doesn't start by saying in World War II Hitler attacked Britain. In the American imagination, the animal scream has long signified more than pain. It has indexed a civilization's self-conception. Indexed basically means it has more or less shown how a civilization looks at itself. For example, does a civilization think it is a good civilization? Does a civilization think that it cares for everyone? Does it say that okay, everybody is important, including animals? For example, if you read about 17th, 16th, 15th century Europe, amazing level of cruelty was considered morally right. For example, bear betting, okay? So what they would typically do is they'll get a bear, right, bhalu, and they would tie the bhalu in the middle of a market, and then they would get very ferocious dogs, very khatarnak types, and they would attack the bear and the bear would fight them, and naturally the bear would get tired eventually and then the dogs would tear him apart and eat. People would pay money, they would bet on the fact that how long the bear would last, right? How many dogs would get killed before the bear is killed. Cat burning, for example, cat burning was a regular time pass in European markets in 13, 14, 15, 16th century. A cat would be brought and then they would light a big fire and they would throw the cat in the fire and the cat would scream and would try to come out and they'll push it back. And then they'll be like, Taliya, let's go home, let's have tea, right? It was a regular affair. Correct? So author is saying that, you know what? In American imagination, animals scream. Animal scream means what? Suffering of animal. Suffering of animal or animals has long signified means pointed, has been equal to, more than pain. Now question is, what is American imagination? What is American imagination, everybody? Is America really imagining? What do you think? It's American people's sentiment, right? Sentiments of Americans, right? The very first line of any passage generally is very important. Generally, it at least gives you where the passage is going. From the very first line, try to be as attentive as possible. Start looking for claims. Where is the author making a claim? For example, मान लो first line में होता है during 1945, summers of 1945, Germany was still trying to
recoup its from its damages during the World War II. It is a historical event the author is talking about. So probably the author would go on and talk about that particular event, or the author would use it as a preface, as an introduction, as a basis for some other point, right? Always pay attention to the first line. First line says, in American people's sentimental mindset or American people's sentiments, suffering of animals has long indicated more than pain. It in fact has shown how American civilization takes itself in terms of morality. So in American sentiments, if you look at it from American people's perspective, suffering of an animal or suffering of animals has shown more than pain. It is about how Americans look at animal suffering as a whole, right? So this passage is going to be about what? Suffering of animals, how America has reacted to it, how America sees it, what people of America think about it. Now, this is where you start the expectation game, right? Anticipation. Now think. So probably the author would say, and Americans have been extremely careful about animal suffering. They don't allow any animal to suffer, है ना? मतलब animals को इतना प्यार करते हैं, suffer ही नहीं करने देते उनको. But if you look at it, Americans are very paradoxical from that angle. Americans have the largest number of pet dogs in the world, largest number of pet cats in the world. Every family will have 2-3 pets, and every family would be more or less meat-eating family also. They'll be eating chicken, pigs, cows on a regular basis. So the author is probably going to say that, you know what, Americans are amazingly animal loving. They don't harm any animal. Or it would say Americans basically don't care about the suffering of people, of animals. Or it would say, you know what, Americans care about the suffering of animals, but not as much as they should. Now pause here everybody and pay attention. This is how you should be reading the passage. After reading the very first line, you should pause and think about these things for 15 seconds. Or at least immediately have in your mind these questions which are anticipation questions. पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाना चाहिए. Read and it should be instantly in your head. Okay, so author is saying this, it probably means this. Probably the author would say this. And then you read the next line. But what do we do? In American imagination, animals belong to the from 19th century legislator. क्या बोल रहा है ये? What is it saying? And that is why we need to go back. We don't understand. We zone out. We don't like reading it. We don't understand anything, and the story goes on and on. Active reading is the only possible way. Correct? यही तरीका है everyone, कोई और तरीका है ही नहीं. Right? Now read the next few lines. From 19th century sentimentalists to mid 20th century reformers, the insistence that livestock is animals, pig, cows, chicken, do not merely register non-susceptive stimuli but suffer terror, has structured campaigns to yoke industrial methods to moral vocab. Now one thing is very clear everyone, that the author has gotten access to a thesaurus. Whoever wrote this was probably sitting with Shashi Tharoor having a cup of tea and writing, or he had access to synonym.com. भाई सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकता था, या बहन जिसने भी लिखा, आई डोंट नो, बट उसने लिखा नहीं. He was like, no, I will make sure that you remember this passage for the rest of your life. Now question is that, sir, if something like this comes in actual paper, what do I do? How do I understand? Learn the art of ignoring what you can't understand. Okay? What do I mean by that? Come back to this line.
from 19th century to this, that the insistence that livestock do not merely register but suffer terror has structured campaigns to industrial methods to moral. Now just imagine you don't know the words which I have cut out. Okay, मान लो तुम्हें आता ही नहीं है words. एक बार इसको पढ़ के देखो. Can you not figure out broadly what the author is saying? From 19th century, mid 20th century, the insistence that livestock do not merely register X but suffer terror has structured campaigns to industrial methods to moral something. Can I say the author is broadly saying that, you know what, more or less from 19th century sentimentalists to the reformer, they have insisted that animals suffer, animal को तकलीफ होती है, and this has more or less done something to the industrial methods to moral something. So industrial methods have become more moral, less inducing suffering, or less moral, in more cruel. Can you figure it out? इतना समझ में आ रहा है क्या कि इंडस्ट्रियल मेथड्स क्या हो गए होंगे? ज़्यादा क्रूअल हो गए, कम क्रूअल हो गए? क्या लगता है एवरीबॉडी? रौनक सिंह 3/4 इज गुड फॉर दिस पैसेज. तुम भारतवर्ष के आधे युवाओं का मजाक उड़ा रहे हो हैं? अरे अगर insistence that livestock do not merely register X but suffer terror, अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि एनिमल सफ़र करते हैं टेरर, तो इंडस्ट्रियल मेथड्स जो हैं वो मॉरली बेटर हो जाएंगे, यानी लेस क्रूअल हो जाएंगे ना, ज़्यादा क्रूअल थोड़ी हो जाएंगे. यही तो आप गड़बड़ करते हो, आप फोकस ही नहीं करते वर्ड्स पे. इंसिस्ट कर रहे हैं कि लाइवस्टॉक टेरर फेस करते हैं, तो इंडस्ट्रियल मेथड्स क्या हो जाएंगे उसका ध्यान रखेंगे ना. दे विल फोकस ऑन द फैक्ट दैट ओके, एनिमल्स कैन सफर टेरर, एनिमल्स ऑल्सो गेट टेरराइज्ड, दे आर नॉट पीस ऑफ brick or stone that they would not get terrorized. So industrial methods would be morally something. This is what you need to do, everybody. I hope you understand what I'm saying here. You're not able to understand non-sceptive stimuli, yoke, vocab. No problem. Try to figure it out. If you can't understand it, ignore it. Then look at this, the Federal Humane Slaughter Act. What do you think this is doing now here? It must be supporting what the author said earlier. Humane slaughter. What is the meaning of humane slaughter? Humane word is a well-known word, you know that. So author must be talking about better way of, less cruel way of killing animals. है ना? Humane means इंसानियत वाला. Correct? Music beats, don't do that. Skim, but don't skip. है ना? So the author is saying, you know what? Because they accepted that okay, animals also suffer terror, and industrial methods started being more morally right, Federal Humane Slaughter Act of 1958 was passed. Okay. Now remember, whenever something says X-Y-Z, this is extra information, right? We have talked about it. Steve Jobs the CEO of Apple, who died at the young age of 56, whatever, -Z was a prodigy, was a visionary. So basically this is extra information. You can read X and Z, it will make sense, right? The Federal Humane Slaughter Act of 1958 emerged from this insistence. And then you see snake bite yahan pe, colon. Wherever colon is there, be very careful. More details will follow, which means you can be fast. Author just said that from 19th century to mid 20th century, livestock can suffer terror was insisted upon. People said जानवरों को भी डर लगता है, दुख होता है, तकलीफ होती है. Correct? So the industrial methods became more
morally right, and as a result the Federal Humane Slaughter Act was passed. And यहाँ पे there is a snake bite. Colon means more information about it. About what? Slaughter Act. That cattle hoisted conscious. Cattle, let's say you're slaughtering a cow. So what happens in slaughterhouses is they take ropes and they make the cow go up. They pull the cow up and then they cut it. Now when you pull a cow up, cow is a very heavy animal, right? You're not supposed to bind it and haul it. When you do that, you hoist it conscious. When it is conscious, it feels extreme pain. Sometimes they are hoisted by their hind legs. पीछे के पैरों से उनको उल्टा लटका देते हैं. It's extremely painful for them. Emerge from this insistence on what? That animals can suffer terror. That cattle hoisted conscious, pigs bled while squealing, right? And the routinized spectacle of distress were not merely inefficiencies, but a disrespect to national ethic. If you could read till here and could figure it out broadly 50-60%, you would understand the author is saying that, you know what, in America, animals suffer terror was accepted, laws were passed, correct? Legislators and editorialists trafficked in a lexicon of anguish. Lexicon basically means words of anguish, fear, and unspeakable torture, thereby refusing the Cartesian. Rene Descartes was a philosopher. He used to say that animals don't feel pain. कितना बेवकूफ आदमी था. He used to say animals don't feel pain. They are like objects, like chair. When you sit on a chair, does it feel pain? You have to be the idiot of the finest sort to say that. Thereby refusing the Cartesian concept of the animal machine. He used to think that animals are machine, and replacing it with more troubling figure, a creature whose state of mind and body mattered. If you just understand what the first paragraph is saying, half your job is done. Don't try to understand every single word. Now, I will not explain like this every single line, but मैं समझा रहा हूँ. मान लो you're reading from here to here, okay? And you are unable to understand the hard words. Does it make a difference? Legislators and editorialists trafficked in a lexicon of anguish, fear, and unspeakable torture, thereby refusing the Cartesian. Conceit means haughtiness, arrogance of animal machine, replacing it with a more troubling figure, a creature whose state of mind and body mattered. What is the author saying? Author is saying legislators and editorialists said, that animals had a state of mind and body and it mattered. ये बीच में कार्टेजियन लेक्सिकॉन ये वो नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ब्रॉड आइडिया फोकस करो. Legislators and editorialists said that creatures have a state of mind and body and that mattered. Now the first paragraph is saying animals mattered, they could feel terror. अब paragraph 2-3 में क्या होगा? Author would say, and this was built upon, so more things were done, animals were made safer. Or he would say, but it was not followed, animals were still slaughtered. यही सब होगा. अब आप आगे पढ़ के देखो. Now if you read, I will not read it line by line because that would take too much time. But the very first word, wherever you see a counter word, be very careful. Something opposite is coming. Yet, the scientific regimes tasked with adjudicating such matters often bogged precisely at the point where advocates pressed hardest. Advocates are supporters. Scientific regimes, bog basically means to refuse to act. Scientific regimes did not act where the advocates pressed hardest. What do you think the author is saying? क्या लगता है everybody? Author क्या बोल रहा होगा? Author पक्का बोलेगा कि you know what, the scientists somehow did not accept that animals can feel pain. Right? They must have said, they feel pain, but we can reduce the pain. We can find better ways of killing them. We can find better ways of raising them without making them suffer too much. You know?
Absolutely, they failed to comply with what was expected from them. है ना? Now the point I'm making here, everybody, is even if suppose you're facing a passage, आपको लग रहा है vocab मुझसे नहीं हो रहा, I don't understand it, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करो इसी लाइन को. Yet the scientific regime tasked with, मुझे ये word नहीं आता, adjudicating such matters often bogged precisely at the point where advocates pressed hardest. Now read again. Yet the scientific regimes tasked with such matters often precisely at the point where advocates pressed hardest. Now just imagine, everybody, if supporters are pressing something, asking for something, and the scientific community agreed to it. Scientific community said, yes, you are right, animals can suffer, let's not kill them. Would the author use yet? Author would not use yet. Why is the author using it? Because they did not do it. They did not agree. They did not do what they were supposed to do. This is all you need to focus on when you're reading RC. But हम क्या करते हैं? We do it like this. Yet the scientific regime tasked with adjudicating such matters often bogged precisely. Bogged, वो भी अगर तुमने पहले पढ़ा हुआ है तो वरना तो balked, often balked, precisely at the point where advocates, ये माधव मिश्रा कहाँ से आ गया? Advocates pressed hardest. Pressed what? Hardest what? And then you're like, nahi, I can't do this. This is pakwas. Right? So if you read the passage, okay, you would understand that the author is saying, you know what? America accepted that animals feel terror, but they did not do it. They did not save animals. They did not make it less painful the way they were expected to do. है ना? The paradox sharpened as the post-war meat industry scaled beyond anything people could have recognized. Mechanical stunners. Stunners क्या होते हैं? They stun animals before they are killed. For example, cows or buffaloes, they are stunned. So they बेहोश हो जाते हैं. They faint, and then their heads are cut. Mechanical stunners replaced pole axes. Pole axes are basically big axes. पहले they used to use big axes to cut off animals' head. Then they started using stunners. So they would give electric shock to animal. It would faint. Then their head would be cut. Long lines, crowd pens, restrainers multiplied. The metrics of humane slid towards what maximized flow and minimized carcass damage. Author is simply saying that, you know what? In America, the expectation was that they would make animal slaughter more humane, but it did not happen. But something very interesting happened. They did not make the slaughter more humane. They just little bit change happened. But they used a lot of marketing. Did you notice that? Marketing में क्या ले आए? Happy cow, they're dancing, right? All fat cows smiling. Have you seen butter के ads में क्या होता है? बटर के एड में हैव सीन काउ इज ईटिंग ब्रेड. काउ ने खुद ही बटर लगा के काउ बटर खा रही है, ब्रेड खा रही है ना? वो दिखाते हैं ऐसा, खुद ही चीज लगा के चीज खा रही है स्लाइस में. काउ इज लाइक, व्हेन वाज द लास्ट टाइम इट हैपेंड? मेरे को कब पूछा लास्ट? सो ऑथर सेज कि दे डिड नॉट डू अ लॉट अबाउट improving the slaughter of animals, but they spent money on campaign में humor डाल दिया, correct? Courts declined to do anything about it, but the controversy exposed the same gaps that runs through the slaughterhouse, a culture that wants animals to be both compliant matter and moral subjects, and an apparatus that alternately occludes and mobilizes their feeling as needed. Author says, you know what, the controversy exposed gaps that we want the animal, we recognize that animals have feelings, they can think, but we don't want to accept it. We want animals to go and die for us, but we at the same time also say animals have feeling. If they have feeling, don't kill them.
And if you're killing them, don't say they have feeling, then you are ignoring the feeling. Thus, the politics of slaughter bleeds into the aesthetics. Aesthetics I don't have to explain, right? The beauty of packaging and back again to declare that humane methods prevent needless suffering is to concede that some suffering is needful. To market cheerfulness is to admit that centrality of mood in an economy of flesh, what persists beneath the toggling between denial and acknowledgement, is a tacit anthropology of the human. Anthropology means the evolution of human. पूरे पैसेज में ऑथर ने ये शशि थरूर लेवल के वोकैब यूज करके व्हाट डिड द ऑथर से बेसिकली दैट इन अमेरिका slaughter of animal happens, they believe animals can suffer but they haven't done a lot about making it very humane. In fact, they have introduced these ad campaigns that make it look like very nice way of raising cows and whatnot, but this thing goes on, the suffering happens. They talk about needless suffering. What is needless suffering? Is there something called needless suffering? Suffering is suffering. Can you tell a person that okay, I'll have to cut off one of your legs? It is a little bit of suffering, but it is needed, right? If you understood only this line, that animals are still not slaughtered in a very humane manner, advertisements try to show that they are all happy but they are not, इतना भी समझ गए तो काम more or less हो जाता है. Please remember, abstract passage में आपको इतना ही करना है, करेक्ट? इतना ही करना होता है ना? तो एक जरा क्वेश्चंस देखें एक बार जल्दी से. दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ क्वेश्चन इन आरसी. आरसी का सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है. ये आरसी की बारात का दूल्हा है. आरसी की बारात आई है तो ये आएगा ही मोर और लेस, करेक्ट? नाउ वेयर इज द प्रॉब्लम? All options can be purpose, but I have to find the primary, main. Now, what is the meaning of the word purpose? Purpose means why did the author write it? Author ने लिखा क्यों? Correct? Now, think about it. If somebody asks me, why did they make the movie Sayyara? So the answer would be to give us a message, right? कोई message देना होगा. I have not seen the movie. I don't know the message, but I'm just taking example because you guys are what Gen Z, पता नहीं क्या क्या. You guys must have watched it, gone to the theater with IV drop and whatnot. Must have cried also. So what is the primary purpose of the movie? We have to talk about the central message. What is the author trying to show? ये दिखाना है ना. To map how law, science, industry and marketing alternately deny and use animal feeling, and to read humane discourse and design as cultural self-description. What is the first problem we see in A option, everybody? It says use animal feeling. Has the passage anywhere talked about using animal feeling? अब सब कह रहे हैं नहीं नहीं सर, ये मूवी का नाम हमने क्लास में सुना था. सब पता है हमें, देख के आए हो, बट अब थोड़ी शर्म आ रही है बताने में, है ना? एनिमल फीलिंग डिस्टॉर्शन आउट टू क्लेम दैट बिहेवियरिज्म stands on subjective feeling. Behaviorism has been introduced a little in the second part, but the question is it the primary purpose? No. In fact, if you read this properly, behaviorism stands on subjective feeling, blocked recognition. So it's an extreme word also, very clearly out. To argue that humane design mainly optimizes flow and carcass integrity, reframing welfare as efficiency. The passage is not about human design. It starts here, not here. This is called a narrow option. To show that alternating between denying and acknowledging animal feelings
across multiple domains yields an overall argument that reveals an implied view of the human. To show that alternating between denying and acknowledging animal feeling across multiple domains leads to an overall argument which shows the hidden view of humans about animals. वो लास्ट में लिखा भी है. Tacit का मतलब होता है unspoken, hidden. So what is the paragraph saying? Paragraph says that the way Americans have treated animal slaughter, sometimes denying it, sometimes accepting it, this and that, it shows what is our internal feeling about animals. We believe that animals have sense, we believe that they have sentiments, but at the same time we believe they can be consumed, they can be made to work for us. तो थोड़ा पैराडॉक्सिकल है हमारा ये ओपिनियन. यही पैसेज के अंदर निकल के आया है. दिस इज वाई द आंसर इज ऑप्शन डी. एक बार देखो समझ में आया क्या सबको? Correct? Okay. Now this one, now I want you guys to pay attention to option A. Okay. Which option best shows how beauty related or people who care about beauty, है ना, stage the passage's paradox about animal feeling. Stage basically means shows. So question is asking which option best shows how concerns about beauty show the passage's paradox about animal feeling. In other words, what is the passage talking about? The paradox of animal feeling. So very clearly we talk about it, no? We have talked about it. पैराग्राफ में लिखा है यहां से यहां तक, a culture that wants animals to be both compliant matter, मतलब animals should listen to you, they should go and die for you, but we also believe they have their own morality. We believe they are a device that alternately occludes and mobilizes their feeling as needed. So they sometimes hide their feelings, sometimes they can come up with their feeling. So what is the author talks about the paradox about animal feeling? That we believe animals have feeling. We also believe, but they can still be killed. We believe they have their own opinion about things, but we don't want to listen to it. We don't want to respect it. That's the paradox. Now, look at option A and tell me, why is it not the best option? Happy cows humor normalizes a feel good veneer means mask that reframes routine distress. Reframes मतलब happy cow humor जो है वो it normalizes the distress that animals go through. But what is wrong with this option? I'm asking about what is wrong with option 1. Yes, very good. Yes, Durga Mishra. Yes, absolutely. Narrow. इसी को बोलते हैं narrow. What is the question asking? Question is asking about the paradox about animal feeling. Is it mentioned only in terms of happy cows? Is it in fact talking about happy cows as such? Is it not talking about pigs or chicken or buffaloes? बात समझ आ रही है? Now look at option C. This is called the appropriate option. The question is about animal. The option is about animal, not campaign about cows. Narrow versus appropriate. Option C says calm factory designs and cheerful ads shape feelings while hiding the reality of animal suffering. Exactly. That is what is the paradox. We believe they have feeling, but we don't want to care about it. We let them die. We have ad campaigns that make us believe that cows are very happy, right? एग के डब्बे देखता हूँ मैं, उस पर लिखा होता है चिकन की फोटो होती है, वो ऐसे बैठा है मस्त, उसके आसपास 20 eggs and then small chicks also. They're also very happy. But that is just ad campaign, hiding the reality. B and D are very clearly not even relevant here. बात समझ में आई सबको? Now, suppose you are practicing this question. घर पे practice कर रहे हो or you got this wrong.
you go to the video solution, whatever you are using solution, and you discover that, okay, this was a narrow option I missed. You write it in your error log. Narrow option I could not recognize. Next time what happens is when you're looking at 4 options, you'll be like, okay, narrow option is something I miss. Let me check, is there any too narrow an option? ये आपके दिमाग में धीरे धीरे चीज़ें छप जाती है. ये वाला क्वेश्चन बहुत सरप्राइजिंग था. I was genuinely surprised in this question. Which option best captures the author's perspective on laws governing humane slaughter? Author ने बड़ा clearly बोला है that we make humane slaughter laws, but are they really humane? Because we acknowledge that animals can suffer, but we don't do much about it. नहीं? That's what the author's point is. अब देखना जरा आंसर फिर से. I think you guys can understand better now. चेक करो. It's a very easy question. I was very surprised by the response. Author's perspective on humane slaughter. Laws on humane slaughter. Law is largely sidelined in practice. Yes, true, true. Market narratives, more than statues, shape treatment. Law is largely sidelined in practice. Sideline को मैंने highlight किया, practice को highlight किया. But we can't ignore even a single word. So check everybody. Law largely sidelined means laws are not followed. Does the passage really say that laws are not followed, that too largely? Or does the passage say that laws are made but they don't reduce suffering, they only hide it? Designers learn to quiet balking by eliminating visual cliffs, fluttering shadows and high-pitched whine. Designers learn to quiet refusal by the animals by eliminating one animal seeing the other animal suffer. Right? They made sure that animals के shadows ना दिखें. They made sure कि high pitch जो आवाज़ होती है ना animal को जब काटते वाटते हो तो they make a lot of noise. पता नहीं क्यों. So the author says designers made sure that they are hidden. So were they sidelining the law? No, they were following the law. They were just making very nice tiny changes. They learned, in short, to manage fear. बात समझ आ रही है? Whether one called this the engineering of welfare or optimization of compliance depended upon one's moral temper. बात समझ आ रही है? Author does not say laws were not followed. Author says laws were followed. A little bit not followed here and there, but they were circumvented. They were avoided. They were dodged by designers and all. इंडिया नहीं है ना कि अब लॉ फॉलो नहीं करोगे चल जाएगा काम. I hope it is clear. Fictional, yes. Now option B, everybody. Laws decisively centers animal minds, forcing science and industry to adopt welfare over efficiency. If this becomes true, the author will start dancing. Author will say, that's exactly what I want. But ये हो ही तो नहीं रहा. Law adopts humane rhetoric, but chiefly codifies technical procedures industry already follows. This one is irrelevant according to the passage. Law codifies technical procedures or not? Passage does not talk about it. Law hints that animals are sentient. Sentient means they can suffer, they can feel pain, they have feelings, but it's only symbolic. Actually, nothing much happens. क्या बात समझ आई सबको? Right? None except means only one is correct. Now, look at the factual mistakes. Behaviorists, scientists routinely collaborated with advertisers. Check information in the passage.
what you have done in this option is, a lot of you have done the Tinder option thing. Remember Tinder option class में बात करते हैं हम. Whenever we see information matching from the passage, we mark it right. This is a human thing we do. Behaviorist, scientist. Behaviorist, I read behaviorist somewhere. है ना? So wherever I see behaviorist, I remember I read it somewhere. So I simply go and mark it. Happy animal, happy cow I read somewhere. Happy cow, happy cow. Campaign, matching. Read the information. Behaviorist scientists routinely do this or that, not supported by the passage at all. Strict wording in the Humane Slaughter Act was widely read as evidence that most on-site animal distress had been solved. Hardly. Yes or no? Post-war plant redesigns were publicly credited. We don't know. They did raise per animal yield, but were they publicly credited? We don't know. Only possible answer first. क्या ये question clear हुआ everybody? Please don't match words. Very very important. So जल्दी से बताओ क्या सीखा, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? टाइम खत्म होने वाला है हमारा. Right? Now next passage में of course I would not be able to. Sahil says, sir, why do you think we all fall for Tinder option? I'll tell you, in fact इसका reason है, ये सुनने में अजीब लगता है but इसका actually reason है. The reason is that we humans are made for pattern recognition. Okay? We have evolved to recognize pattern. अगर मैं कहीं पे लिख दूँ ना 1 1 2 2 2 3 3 3 3 एंड देन आस्क यहाँ क्या आएगा, आंख बंद करके मैंने छोटा बच्चा विल टेल यू 3 आएगा. वी स्टार्ट रिकग्नाइजिंग पैटर्न इमीडिएटली. दिस हेल्प्ड अस ड्यूरिंग आवर years in jungle, thousands and thousands of years in jungle. By recognizing pattern, you could see which tree will have which fruit in which month, right? When would the rain come? When would the sun come out? Pattern recognition is everywhere. If I make this and if I say what is this, it is only 2 dots and a C, and 99% of you would say it's a human face. Human face का कुछ लेना देना actually नहीं है beyond 2-3 dots. In fact, if your face looks like this, you would sue God. Yes or no? ये क्या बनाया, 2 आँख, ये इसका क्या करूँ मैं? What is this exactly? Ear नहीं बनाया. Where are my ears and eyebrows? कुछ भी नहीं है. Nose, chin, jawline. But we immediately say it's a face. है ना? Smiley बना के भेजते हो DMs में. Pattern recognition is part of our genes. इसी का भर के फायदा उठाते हैं these examiners. लिख दो behaviorist, it is there in the passage, पक्का फंसेंगे. It happens. So everyone, we have to wrap it up. Right? Option A बहुत clear है. It says regulators tend to avoid intervening in cheerful animal imagery, treating such portrayals as figurative rather than factual. इसमें लिखा भी है. Critics pointed out to the added lots and mechanical milking parlors where the bulk of dairy life transpires, insisting that humor cannot annul material conditions. Regulators shrugged, courts declined to police metaphors. Cheerful animals were shown to be metaphor. Metaphor means symbolic. Even court said if they are showing happy cows, we can't do anything because they are showing happy cows in a symbolic manner. It's not factual. You understand? That's what option A is saying. Right? All right. तो अगले पैसेज में क्या करेंगे everyone? I will not have enough time to explain. I want you guys to try. Okay? No matter what the language level is, just focus on the author's main point. ध्यान से पढ़ना, author का main claim पकड़ना कि ये mainly क्या कहना चाहता है. More or less you should be able to answer questions. और ये करते रहोगे ना अगले 90 days तक, chances are very high your half the problems would be over. If you're watching me after the session is over, you can always write in the comment box what other areas I should take up in the coming YouTube sessions.
and we'll take it up, no problem, है ना? Chalo, let's try. Please read till here, then write done, then I'll take you further. I'll wait for some more time. I can see a lot of you are reading. Take your time, no problem at all. Just focus on the main idea. Okay, 30 more seconds. इस बार का टारगेट है 4x4. Okay, let's try. Done? Okay. Venom, it's a very good score. You're doing very fine. 90 plus percentile. Definitely.
Venom, yeah, of course, why not? Most welcome to that. Just focus on where the author is trying to make a claim. The rest is all description, examples, facts, figures. I'll wait for a minute. Take your time. आराम से कर लो. No हड़बड़ी. If you guys are doing these sessions back to back, I'm sure by now most of you would be tired. Let me know when you guys are through with this. A little, ठीक है, expected. Murli Kumar, you're doing well, Murli. Brain is not braining. Okay. अभी CR बाकी है, स्ट्रेटजी सेशन बाकी है ना? कोई बात नहीं. अभी इसके बाद तो ब्रेक होगा आई थिंक थोड़ी देर. हाँ, AC में बैठ के मत करना, नींद आ जाएगी. RC's CR, see, honestly speaking guys, doing CR and RC is not the best way of having fun, right? But then 6 महीने की बात है, थोड़ी मेहनत कर लो, फन का लेवल चेंज हो सकता है, राइट? देन योर इंस्टा पिक्चर्स वुड बी रियली इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स, है ना? अभी तो थ्रोबैक थर्सडे, थ्रोबैक मंडे ही चल रहा है, पुराने पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, तो वो थोड़ा तो हो जाएगा. ओके, चलो. So let's go to the questions now. पॉज करके सॉल्व करना एवरीबडी बेटर होगा, राइट? अब कलर चेंज करना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है. सो लेट्स स्टार्ट. CD चिल्ड इंसान. ADCCCA challenge yourself with सांची. AACCC. ओके. AACCCA AACC. ओके. AC ज़्यादातर हैं, B और D को इज्जत नहीं मिल रही है ना?
चलो बी और डी को कोई इज्जत नहीं दे रहा है, ए और सी में ही लड़ाई चल रही है। आई टेल यू द करेक्ट आंसर इन 3, 2, 1। करेक्ट आंसर इज, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, डोंट टेल मी नहीं देखा है ना। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। वेरी वेल डन। बी और डी प्रैक्टिकली नोबडी केयर्ड अबाउट देम, है ना। इनको वैसे ही इग्नोर किया जैसे डीएम में तुम लोगों को इग्नोर करते हैं लोग, है ना। तुम क्यूट एंगल को रोज़ मैसेज करते हो और क्यूट एंगल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ओके एवरीवन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। चलो नेक्स्ट वन। ओके, अंकित कह रहा है पर्सनल अटैक, मतलब ऐसा हो रहा है अंकित, हैं डीएम्स जा रहे हैं। चलो, व्हाट इज द आंसर एवरीवन? मुदित कह रहा है सर आपको ही डीएम करते हैं, तो हाँ मैं कौन सा जवाब दे देता हूँ। ओके, ए डी ए सी ए ईशिता सरकार, थोड़ा सा वोकैब पे ध्यान देना, यू आर स्ट्रगलिंग विद वोकैब, आई कैन सी दैट। ए डी ए ओके, Saurabh Bajaj, that's a good one. Okay, I'll tell you the answer in 3, 2, 1. एक बात तो तय है that you guys are doing well. Despite Shashi Tharoor Pro Max level, you guys have managed well. Very good. And remember, this is the confidence I want in you. I can clearly see that a lot of you somehow start internalizing it that you are not good enough yet. You are good enough. You just have to start with the belief that okay, I'm good enough, but I have to be better. बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ही ऊपर नहीं जाता है, right? Because of various reasons. But if you can manage this question, you're doing pretty well, honestly speaking, है ना? A is the correct answer. बहुत बढ़िया. Next one. प्रभु कल्याण, always look at last 3 RCs का average. Never 1 or 2 RCs in total. Ayush Singh, yes, exactly. Akshat, that's okay. Always look at last 3 sectional, last 3 mock. कभी भी एक पे नहीं ध्यान देते. Marshall Ketan, that's exactly the point of the author. You have done a good job. Safin Saeed. Okay. B, C, D, मतलब ये थोड़ा मुश्किल है. A, D, C, ये थोड़ा गड़बड़ सा क्वेश्चन है. A, C, D. ओके. A, B, C, D चारों आ गए. ऑल राइट, चलो मैं I'll help you with the question, okay? Which of the following best supports the claim that whenever a question has the word that, pay double attention. Whatever comes after that is very important. You have to support the claim that more sanctions बोले तो strict law, ban, right? Strict law, punishment. अमेरिका लगाता है ना, अमेरिका keeps on putting sanctions on this or that country. More sanctions, more X
reduce pure non-violent means. Reduce y. The argument is, question is, interpret the question. Support more x means less y. Out of these four, just find an option where more of x will lead to less of y. ढूंढो. Tough fraud laws. Faster deals, but only under threat of legal action. Tough fraud laws, faster deals. More of x is leading to less of y or more of y, everyone? A बोलने वालों जरा जल्दी से जवाब देना. A is sure. मुरली कुमार, बात समझ आ रही है? It's not A. More of x means less of y. Weak fraud laws. Less of x means more of y. Absolutely वाहियात. More of x. Talks end with lawyers, not private agreement. More of fraud laws, more of x leads to less of what? If you have more lawyers, you have less private agreement. More of x leads to less of y. Therefore, the correct answer is C. Expanded means you already have it, you're making it more. Expanded sanctions means earlier, let's say you had put a ban on 20%, now it's 30%. People feel safer. More of this, more of that. D is also out. The correct answer is C. Simplifications of question is a very very important art. We will talk about it someday. Comment box में लिख के जाना अगर session करवाना है तो I'll try to bring a session on that. रोमान हक बिल्कुल. विभूति पाठक यस. Akanksha Chaurasi, absolutely. That makes sense. Only if it is the last passage, you have no other option left. Okay. So question basically said more of ban, strict law, punishment will reduce pure non-violent mean. We have to support it. Support basically strengthening the argument questions. Have you done? You have to find extra information which helps, which makes the argument more convincing. More of this, less of that. Which option says more of this, less of that? More of this, less of that is only there in option C. But you have to simplify and see it like that. जब तक simplify नहीं करोगे ना, तब तक इन ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे. Okay. All right. Try next one. राघव, सो फास्टर डील्स आर देयर, लेस थोड़ी ना है, देयर है, लेस थोड़ी ना है. हमें लेस चाहिए. Yours truly. Not really, it's a strengthening the argument question. It was third question. ये बहुत आसान क्वेश्चन है. यू गाइज कैन गेट इट राइट. फिर छुट्टी है ना. ओके लेट्स सी. सी ए बी ए बी. ओके ए और डी हैं दो आंसर. श्वेता बी ए. ओके लेट्स सी. Why does the author emphasize? Question पढ़ो question. Why did the author stress on the fact that there is no sanction? No sanction means punishment for lying. Author ने क्यों emphasize किया that there is no punishment for lying in a conference? What was the author's intention? Why did the author stress on the fact that there is no punishment for lying? What was the author's intention? What was the author trying to point out? ये सवाल है. Correct? ये आंसर निकालना है आपको.
आप सोच के बताओ आंसर क्या है ए बी सी डी में से. झूठ बोलने पे पनिशमेंट नहीं होता. ऑथर इज एम्फसाइजिंग ऑन द फैक्ट कि व्हेन यू लाई देयर इज नो पनिशमेंट. ऑथर इज सेइंग दिस. व्हाई इज द ऑथर सेइंग दिस? नाउ I'll tell you the correct answer, then we'll come back to it very, very quickly. The correct answer is A, which I think 40-50% people marked. The rest have not marked it. तो एक बार एक काम करते हैं. I'll quickly take you back to the passage. Okay? क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं मेरे पास, तो मैं काम करता हूँ. मैं आपको पहले पैसेज का मेन क्लेम, we just see the main claim. Is any non-violent resolution of conflict possible? Without doubt. Author is making a claim. बिना सर फोड़े हाथापाई किए भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पॉसिबल है. राइट? Author has not visited Delhi NCR. That is very obvious, but no problem. Is any non-violent resolution of conflict possible? Without doubt. The relationship among private persons are full of examples of this. So what can we expect next? We can expect examples, right? Courtesy, sympathy, peaceableness, trust, whatever else might here be mentioned are there subjective preconditions. Subjective preconditions of what? Of this. Author says if you have courtesy, sympathy, peacefulness, trust, then non-violent resolution of conflict is possible. But if you want to see the non-violent resolution of conflict in action, then you have to look at the laws. Okay? That says unalloyed means not mixed, without mixture. Means are never those of direct solution but always those of indirect solution. Laws solve problems through indirect solutions. Correct? Non-violent resolution of conflict is possible. बिना मारा मारी के भी conflict resolution हो सकता है, without a doubt. Sympathy, courtesy, peacefulness, trust is required. Law determines how non-violent conflicts can be resolved. Law से भी हो सकता है, right? But they are indirect solution. They therefore never apply directly to the resolution of conflict between man and man, but apply only to matters concerning objects. The sphere of non-violent means expands into the realm of human disputes involving goods. So author is explaining more and more. अगर आप ये पूरा पैसेज पढ़ोगे, you would notice that author starts by saying resolution of conflict by non-violent means is possible, right? Then the author says, I'm just reading from the middle. Let me start where A शुरू करता हूँ. For whereas the legal system at its origin is satisfied to defeat law breaking wherever it happens to appear, on the principle exempt from punishment in Roman and the law of a later period no longer felt itself a match for that of all others. Rather, fear of the latter and mistrust of itself indicate its declining vitality. Fear of latter and mistrust of itself indicate its declining vitality. What is declining? Law's power to resolve conflict. It begins to set itself ends, spare law preserving violence, more taxing manifestations. It turns to fraud, not out of moral consideration, but for fear of the violence that it might unleash in the defrauded party. Since such fear conflicts with the violent nature of law, such ends are inappropriate to justified means of law. If you read, keep on reading, author basically क्या कहना चाहता है? यहाँ पे देखो snake bite है, जहाँ पे snake bite हो ध्यान देना. To induce men to reconcile their interest peacefully without involving legal system, there is, in the end,
One effective motive that often enough puts into the most reluctant hands pure instead of violent means. It is the fear of mutual disadvantages that threaten to arise from violent confrontation, whatever the outcome might be. Author ने शुरू कहाँ किया था? Author starts by saying non-violent resolution of conflict is possible. Then the author says laws are required. Why? Because there are disputes and indirect resolution of conflict is required. इसके लिए law चाहिए. But author says कि more or less law is not that effective. Okay? And that is why law uses violence. Correct? Law is one effective way of ending conflict and more or less people fear that if they don't resolve the conflict between them, then very clearly it can lead to problem for both parties. That is why people resolve their conflicts. So it starts by saying non-violent conflict resolution is possible, but it also talks about law and where law is required. Law puts the fear of violence in people and therefore they more or less resolve their conflict. यही दो बातें ऑथर ने की हैं. क्या ये बात समझ में आई थी सबको पढ़ते वक्त? एवरीवन, बात समझ आ रही है कि नॉन वायलेंट रेजोल्यूशन हो सकता है, लेकिन लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वायलेंस की जरूरत है, उसके बिना लोग मानेंगे ही नहीं. Now look at the questions. If you could just understand this basic point. True peace works indirectly through trust and voluntary exchange, not by force. ऑथर ने लास्ट में क्या बोला है? फोर्स की जरूरत पड़ती है. म्यूचुअल डिसएडवांटेज के डर से लोग लड़ाई नहीं करते. फ्रॉड इज पनिश्ड मेनली आउट ऑफ फियर ऑफ वायलेंट बैकलैश, नॉट फ्रॉम मॉरल ड्यूटी. हमें इन्फर करना है as true as per the passage. Law-based peace is fragile. Law-based peace is weak. Has the author mentioned this or talked about this anywhere? This is going against the author's point, right? This is going against the author's main point. Just a second. Just a second, my mistake. मैं इन्फ्रेंस ढूंढ रहा था, एक्सेप्ट ढूंढना है, माई मिस्टेक. इन्फ्रेंस ये और ये इन्फ्रेंस होगा. लॉज लेटर रोल इन कॉन्फ्रेंसेस इज डिस्क्राइब्ड इन शेपिंग पीस. लॉज लेटर रोल इन कॉन्फ्रेंसेस. इफ यू लुक एट दिस आर्ग्यूमेंट, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस आर्ग्यूमेंट इन द पैसेज एनीवेयर. मैं वो ये एक्सप्लेन करने की जगह कुछ और एक्सप्लेन करने लग गया. एंड दिस इज द करेक्ट आंसर देयरफॉर. करेक्ट. एक्सेप्ट वाला पार्ट आई मिस्ड, माई मिस्टेक. हाँ, आई मिस द एक्सेप्ट वर्ड. ठीक है, नो प्रॉब्लम. वी आर रीचिंग द टाइम पार्ट ऑल्सो. Which of the following best captures the central tension between law and non-violent means? Central tension means the main point of conflict. Correct. What was the first and the last line? Non-violent resolution of conflict is possible, but why do we need law? The last part says we need law because law puts the fear of force in people and that is why they follow law. Correct. So what is the main point of conflict? अगर question आएगा तो क्या आंसर हो सकता है? Let's check it out. Pure means rely on virtues but lack the stability of laws backed by penalties. Pure means rely on virtue. Is this point covered as the main point of conflict by the author? Anyone? In the passage? Is just out of scope वाला question है. Conferences allow free talk
but always, extreme word, need supportive law to secure outcomes. Can we support this from the passage? Indirect solutions cover goods but often leave personal grievances unresolved. Second line पे ध्यान दो. So whatever I have underlined, just try to find this in passage. And you would notice that these have not been covered in the passage anywhere as the main point of conflict. Main point बड़ा simple है. Non-violent resolution possible है, but डंडे का डर लोगों को चाहिए, वायलेंस चाहिए लोगों को, अदरवाइज वो बात मानेंगे नहीं. है ना, गुड्डू भैया का यूएसपी. These have not been supported by the author as main point of conflict. Therefore, the answer is A. देख लो एक बार, क्लियर है? All right. This I have explained already, right? This one also I think I have explained. Why does the author emphasize that there is no punishment for lying in a conference? Okay. I am underlining words. You guys find out, is it supported by the author? ये वाला पोर्शन ट्राई करना, ऑथर ने कहीं पे मेंशन किया है या बताया है क्या? ऑथर ने कहीं पे इसको पॉइंट आउट किया है या नहीं किया है? Why does the author emphasize that there is no sanction for lying? झूठ बोलने की सजा क्यों नहीं होती है? To note such forums are flawed in a conference. To show that such forums are flawed. Has the author tried to hint at it anywhere? To argue later, laws corrected this gap. कहीं पे भी author has hinted on this. चेक करके देखो. To contrast free language with law's fear-based prohibition. To contrast free language with fear-based prohibition. Just try to find out where did you see any of this mentioned in the passage. You would notice author ने इनमें से किसी को भी कहीं पे भी hint नहीं किया. I'm not even saying mentioned, I'm saying not even hinted. And therefore, only one possible answer. Why does the author emphasize that there is no sanction for lying in a conference? Remember, author ने ये वाली जो बात बोली थी ना, author basically कहता है that for whereas the legal, no, here, I'll just show you. यहाँ पे आ जाओ. Courtesy, sympathy, peaceableness, trust, and whatever else might here be mentioned are the subjective preconditions of what? Non-violent resolution के. Trust is a preconceived subjective precondition for non-violent resolution of conflict. मतलब अगर आप झूठ बोलते हो तो झूठ बोलने की as such कोई सजा नहीं होती है. Conference means when you people come together. क्यों? Now come to the question again. To show agreement that there rests only on understanding, not force. The moment, just think about it, the moment झूठ बोलने को आप पनिशेबल बना दोगे तो फिर लोग आपसे सच क्यों बोल रहे हैं? थिंक अबाउट टू फ्रेंड्स. आईपीसी के हिसाब से झूठ बोलना दंडनीय कानून है, 5 साल की सजा होगी. तो अगर आपका फ्रेंड आपको सच बोल रहा है तो वो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे बोल रहा है या फोर्स के बेसिस पे? थिंक एंड आंसर. बात समझ में आ रही है? फिर तो वो इसलिए सच बोल रहा है क्योंकि उसको डर लग रहा है जेल जाना पड़ेगा. वेयर इज द ट्रस्ट? दैट इज वाई नो सैंक्शन फॉर लाइंग. किस बात को एम्फोसाइज करने के लिए बोला ऑथर ने? ये दिखाने के लिए कि हम झूठ बोलने को हम बैन नहीं करते, सजा नहीं देते, बिकॉज देन ट्रस्ट इज नॉट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, इट्स बेस्ड ऑन फोर्स. बात समझ में आई? दिस इज वाई द आंसर इज ए. Wait. So before I let you go, very quickly,
30 seconds. Both the passages were super tough to read. Questions were moderate difficult. Some questions were easy. एक आध तो बिल्कुल surprising question था जो मुझे लगा था सब कर देंगे, हुआ ही नहीं. So what I can see is interpretation of passage. If it's difficult, look for the central idea. Central idea more or less पकड़ लिया तो हो जाएगा. But it should always be your last choice RCs में. Factual RCs, doable RCs, readable RCs पहले करना है. ये आपके last choice होंगे. And interpretation of questions very clearly is a major problem जहाँ पे भी काम करना है अगले 90 days. So I'll see you again. I am ending it here everybody, right? और आप अगले सेशन का वेट करना. All right, yes. So if you got 75%, you have done a fantastic job. 50% is my expectation. 4/8, pretty good. 5 onwards, you are rocking it. Okay. चलो, I'll see you again everybody because next session will start. मैंने already काफ़ी देर कर दी है. Okay everyone, thank you so much. I'll see you again everybody. Thank you. 7/8, रौनक सिंह नहीं, मोहित गर्ग, well done. Pujuga. Bye everyone, thank you so much.
किया है, कल से वापस काम में, ठीक है। परसों फिर से बच्चे डांट सुनेंगे, पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप लोग फिर से जब काम में चलोगे, हम लोग रात में 2 बजे 3 बजे काम करते हैं, 4 बजे काम करते हैं, 3 बजे मेरा तरुण सर बात करते रहते हैं मॉक के बारे में, ये वो एंड ऑल दैट, राइट। सो बहुत एक डिफरेंट हमारा वर्क कल्चर है, एक हैप्पी हमने स्पेस बनाया है। एंड I hope that all of you continue this great hustle and fight throughout your life. ठीक है, whenever you feel like I'm always available. ठीक है, मैंने हमेशा बोला है, थोड़ा कभी लेट रिस्पॉन्ड हो जाता है, बट स्टिल आई एम ऑलवेज अवेलेबल। कभी भी कोई इशू लगे, कभी भी कोई प्रॉब्लम लगे, प्लीज गेट इन टच विथ मी, एनी ऑफ द फैकल्टीज, राइट, वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है, इट्स नॉट फॉर वन डे, इट्स नॉट फॉर कैट, इट्स नॉट फॉर दिस अचीवर्स मीट, इट्स फॉर द होल लाइफ। ठीक है, हमें
मैंने बहुत डांस किया था। Hi, hi, good evening everyone. Hello, hello, क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी? बहुत दूर हैं आप लोग। क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी? बहुत दूर हैं आप लोग। क्या आवाज़ आ रही है कि नहीं मेरी? Great, 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 great. Hi, hi, hi. Good evening everyone. So all set for the day. कैसा लग रहा है? पार्टी अटेंड करने के बाद में? Very excited. That's great. Excitement should be there, है ना? आई थिंक अब एको नहीं हो रहा होगा बिकॉज वो मैंने अपना यूट्यूब ऑन किया है ना जस्ट टू चेक मेरी आवाज़ मुझ तक पहुंच रही है खाली तुम तक पहुंच रही है। ठीक है। चलो तो शुरू कर देते हैं फिर, है ना? बढ़िया से एकदम क्रिटिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन लाया हूँ। सो आई वुड ट्राई टू सर क्या लाइटिंग सेट कर रही है आप? लाइटिंग बढ़िया है ना? आई थिंक सब कुछ बढ़िया दिख रहा है ना? देर इज़ नो इश्यू विथ द लाइटिंग। खाली क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन दिख जाएगा तब चलो सो आज का एजेंडा है कि वी विल टेक सम क्वेश्चंस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग। मिक्स वैरायटी है ना? हाँ आज का शायद 10 के 10 मार दोगे। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से हल्के से डिफिकल्ट होंगे, बट मोर और लेस द क्वेश्चंस आर क्वाइट डिसेंट, है ना? और लेट्स स्टार्ट विद दी सेशन। बिफोर आई गो अहेड, एक तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ देना चाहूँगा, मैं इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आई विल गो टू द नेक्स्ट दिस। एक मिनट। CR has direct application in RC। ये मैंने आपको पहले बोला भी है कि CR का डायरेक्ट एप्लीकेशन RC के अंदर है। दैट्स वाई RC में क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे आएंगे आपको। एक खास करके इन्फरेंस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज वेरी कॉमन, द अदर इज स्ट्रेंथनिंग, करेक्ट, एंड द थर्ड इज वीकनिंग। ये these three are the type of questions that you will find mostly in the CAT RCs। ठीक है, ये तीन ही होते हैं, इसके अलावा बहुत कम ऐसे आते हैं। So these are इसमें there is one variety which we call as except। Many of you must have seen कि all of the following are true except none of the following is true except none of the following can be inferred except so on and so forth। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। So except questions come as a part of except questions are framed among these varieties. Apart from this, you will find that CR questions directly come in that as independent CR की तरह आते हैं वो लोग, है ना? हाँ, if not true, एक और चीज़ जो उसमें आती है जो RC में जनरली आता है, आई थिंक वी हैव नॉट सीन दैट इन CR, इज दैट if false। तो एक तो if false लिखा होता है, और the other thing that you see is if true। So if true तो खैर we are used to it, if false is just the opposite of it, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना पड़ता है। दिस इज़ यूनिक टू कैट, ये और किसी एग्जाम में किसी और जगह मैं देखा नहीं है। ये इफ फॉल्स खाली अपने कैट में ही आता है, कैट के क्वेश्चंस में ही आप देखोगे तो इफ फॉल्स कम्स एंड ऑफ कोर्स उस तरीके से। बट ठीक है, कैट के आरसीज बहुत कम ऐसे हैं जिसमें इफ फॉल्स आया है, बट वी विल टेक दोज आरसीज टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। जनरली आप देखोगे तो इन्फरेंसेज में इफ ट्रू नहीं आता है। वेरी रेयरली डू यू सी इफ ट्रू काइंड ऑफ अ केस इन इन्फरेंस। Inferences are generally a type of question in which you have to draw whatever is given. You have to draw your inference from whatever is given to you.
तो इन्फ्रेंसेस में ना इफ ट्रू जनरली आता नहीं है. कभी आप देखोगे कि इन्फ्रेंस में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड, ऐसा आता है. आप देखोगे स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग में ना ज़्यादातर इफ ट्रू आता है. एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में ना कुछ तो ऐसा रहता है कि जो आपको इट इज गिवन दैट ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन और वीकन द आर्ग्यूमेंट. सो वॉट एवर इज गिवन यू हैव टू बिलीव दैट इट इज ट्रू. वो शायद पैसेज में ना दिया हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली बोलते हैं कि यू हैव टू बिलीव इट इज ट्रू. उसका मतलब ये होता है ना, कि आपको मान के चलना है कि जो दिया है वो ट्रू है, तो मैं ट्रू मान के चलता हूँ. इन्फ्रेंसेस में है ना ऐसा कभी लिखा नहीं होता विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, बिकॉज इन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि यू हैव टू स्टिक टू वॉट इज गिवन इन द पैसेज. उसके बाहर नहीं जाना होता. ठीक है, तो चलो हम लोग है ना अभी क्वेश्चन लेते हैं. वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन को मैं एक ऑर्डर में लाया हूँ, बट वी विल स्टार्ट विथ डिफिकल्टी वाइज. थोड़ा सा इजी से हम फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स टेक ऑल ऑफ यू क्वेश्चन नंबर 5 है ना. ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल. लेट्स टेक अराउंड 2 minutes. सो टाइमर तो यहाँ लगा नहीं, बट 2 minutes पे आई विल स्टॉप यू. प्लीज टेक दिस क्वेश्चन. चलो ऑल ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू सामने आ गया आपके. मोस्ट सीरियसली अंडरमाइंस, है ना. तो अंडरमाइन का मतलब क्या होता है, यू ऑल नो. वीकन करना होता है. प्लीज टेक दिस क्वेश्चन. चलो स्टार्ट करो. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट करेक्ट. ऑप्शन ढक दिए हैं क्या मैंने? कौन सा ढक गया है ये? एक मिनट. सो जस्ट अ मोमेंट. जस्ट आई विल राइट द वर्ड विच इज नॉट विजिबल यहाँ पर. ठीक है, इम्पॉसिबल. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पॉसिबल टू नो वॉट क्लोथिंग और आर्मर. ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन है. और पहला वाला जो है वो है रिगार्डलेस ऑफ प्रोफेशन. ठीक है, और नाउ यू ऑल कैन सी राइट. 2 मिनट में दे दिया हूं, आराम से आप करो एंड देन वी विल गो अहेड एंड चेक. ये है रिगार्डलेस ऑफ प्रोफेशन और. ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ प्रोफेशन और मिलिट्री स्टेटस. हाँ, कैमरा थोड़ा बीच में आ गया, बट ठीक है, आई वुड नॉट एडजस्ट इट राइट नाउ. ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, है ना. एक बार टाइमर ख़त्म हो जाएगा फिर मैं फट से आ जाऊंगा. So I have become invisible. Okay, once 2 minutes are over, I will be back. My visibility would be back. ओके, सो आई एम बैक. क्वेश्चन बहुत इजी था. वार्म अप बॉल नहीं होता, पहला डिलीवरी. चलो बढ़िया, सबने अच्छा किया. सो इजी क्वेश्चन आई थिंक. चलो रीड करते हैं एक बार, है ना. फॉर ऑल दोज हु कुड नॉट गेट इट, द आंसर इज सी बाय द वे, है ना. एक मिनट, या है ना. आंसर इज
सी फिफ्थ का आंसर सी, इजी क्वेश्चन है एक्चुअली, बट अगर आपका आंसर, इफ यू हैवंट गॉट द आंसर एज सी, देन मे बी वी विल चेक व्हाई. सो ये ट्रायल बॉल था ये, ठीक है सबने. आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ऑफ द लैटिन प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंटियोक report that fallen cavalry officer were typically interred face up. What is fallen cavalry officer? Fallen means dead, right? Dead cavalry. Cavalry means some sort of officer जो होते हैं ना घोड़े पे. So they are military people, cavalry officers, but typically interred. What is the meaning of interred? किसी ने सुना है word interred का मतलब क्या हो सकता है? Interred का मतलब क्या होगा? Interred means buried. ठीक है, बैरिड इन द अर्थ को इंटर्ड बोलते हैं हम लोग, हाँ, जिसको बैरी करते हैं मिट्टी में. सो आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ऑफ द लैटिन प्रिंसिपैलिटी रिपोर्ट दैट फॉलन cavalry officers were typically interred face up with arms crossed over the chest and ankles bound. During a dig at fortified hillside necropolis approximately 4 miles north of ancient Antioch, excavators uncovered the skeleton of a woman placed face up, her forearms crossed and her ankles bound. The site director concluded that the remains are those of a female cavalry officer who died in combat. Which of the following, if true, most seriously undermines the site director's conclusion? So the very first thing that you have to understand is कि यहाँ पे conclusion क्या, मैं हमेशा बोला है आपको कि conclusion is something that we have to focus on. So कभी भी आप strengthening और weakening of argument करते हो, so you have to focus on the conclusion, because the author's conclusion is nothing but the author's argument. और यहाँ पर क्या पूछा है आपने को, site director's conclusion. That means it is telling us that you have to go and see what is the site director telling, and उसके conclusion को अपने को क्या करना है, अंडरमाइन करना है. The site director concluded that the remains are those of a female cavalry officer who died in combat. That means we have to show that the remains may not be necessarily of a female cavalry officer. ठीक है. So what is the evidence? Evidence is basically the word premise. मैं बार बार ये यूज कर रहा हूँ because some people might be new to this. तो जब भी हम कोई argument बनाते हैं, so we use premise or maybe evidence, correct? That becomes the basis. So यहाँ पे लिखा हुआ है, archaeological surveys of some place report that fallen cavalry officers were interred face up with arms crossed over the chest and ankles bound. During a dig at some place approximately 4 miles north of this place, excavators uncovered the skeleton of a woman placed in the same position, and from this these people concluded that it was a female cavalry officer who died in combat. ठीक है, अपने को अंडरमाइन करना है. So the right answer is C. Of course, we will see that first. Inhumations from this region and period often place the deceased with their arms over the chest. So when you say often place the deceased, मतलब regardless of कि वो लोग कौन है, anyone who died. See, the deceased means anyone who died, and often means, of course, more so the case. So inhumations from this region and period often place the deceased with their arms over the chest regardless of profession or military status. तो इसका मतलब ये है कि just because the dead has been placed in a certain position, it does not mean that it necessarily has to be a cavalry officer, because inhumations का मतलब वही होगा, burial of people. तो इसका मतलब ये है कि it is not necessary. This statement C, if true, तो if true का जो मतलब है ना, वहाँ पे सामने क्लियर आ रहा है अपने को कि out of these 4 options, which of the following if true, यानी कि अपने को मान के चलना है कि C option true है कि people generally when they died in this part of the world, they were placed in this kind of position. तो अगर ये generally सबके लिए होता है, most of the people के लिए, that means it is not necessary that the person whose remains have been discovered has to be a female cavalry officer necessarily. ये कोई और भी तो हो सकता है ना. Did you understand everyone that how C comes and questions the site director's conclusion? समझ में आया कि नहीं? We will then go and check the other options. Option A कहता है several other skeletons at the same necropolis were buried in the same position but with no weapons, armor or indicators of military service. Several other skeletons at the same necropolis were buried. But see, the argument tells us that the woman is a cavalry officer because of certain reasons. What is the reason? That the arms were crossed over the chest and the ankles were bound and the face was up. So this is meant that it could have been a cavalry officer. But here you have said several other skeletons are at the same necropolis were buried in the same position. Maybe these were different people. So this is not going to weaken the argument. भाई वहाँ पर cavalry officer buried है,
वहाँ पर कोई और भी buried हो सकता है, and the cavalry officer or someone who is a cavalry officer would have this kind of burial, and someone who is not a cavalry officer will have different kind of burial. तो A जो है ना वो challenge नहीं कर रहा है, A आके ये बोलता है कि maybe several other skeletons are there, they were buried with no weapons, no armor, no these things, and from this we get to know ठीक है they were no officers, and maybe that's the reason why they were buried like this. So this is not coming as a argument which is weakening the director's conclusion. You can take it anyways, several other skeletons. अब ये कौन है? This could be common man, common people. So if they were common people, maybe so you can use it to strengthen or weaken. अगर ये common man है तो ये strengthen कर देगा. If these people are cavalry officers, ये weaken कर देगा. But we don't know who these other skeletons are. They could come from either of the categories. तो A तो अपने को weaken strengthen दोनों नहीं कर रहा है. Did you understand all those who fell for A? ठीक है, नहीं, ये अपने को ये बता रहा है कि several other skeletons at the same necropolis. अब ये skeletons किसके हैं? This could be common people. So because these are common men, they had no weapons, no armor, nothing. And if these are military officers, then it is going to weaken. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई ये कौन लोग हैं. Depending upon who these people are, you go and you use this to weaken or strengthen. But then my option should not go both the ways. कि यहाँ भी चला जाए, वहाँ भी चला जाए, कहीं भी चला जाए. समझ में आ रहा है सबको? The option has to do the jobs 100%. समझ में आ गया सबको? Did you understand why many marked A? B कहता है contemporary chronicles from Antioch record that majority of cavalry officers were men rather than women. Majority were men, that means some could be women. So this could be the woman, and therefore the director's conclusion can be strengthened. भाई उसने ये तो नहीं कहा है ना कि all of them are men. If all of them were men, then this conclusion would have been misplaced. But the chronicles from Antioch record कि भाई majority जो है ये men थे, इसका मतलब ये है कि कुछ कुछ women भी रहे होंगे, and therefore definitely not weakening. In fact, it might come and support. D option कहता है the soil composition at the necropolis has prevented preservation of textiles, making it impossible to know what clothing or armor she was buried with. See, the textile may not be possible, but there are other things. तो अगर आप option D को देखोगे तो option D tells us that the textile preservation is such that it makes it impossible to know what clothing or armor she was buried with. But then there are other things the passage talks about. Passage ने अपने को क्या बोला है कि आप देखोगे तो उसके arms crossed over हैं, they are the ankles bound, face up है. So from the position of the arms and the body, they are concluding about the fallen cavalry officer. So even if the textile and other things are क्या बोलते हैं not have been prevented very well, whatever it might be, can I say D is out of scope of the passage? हाँ बिल्कुल बाहर चला गया ना यार. They are not using textile stuff to come to the conclusion. They are using the position of the face, the arms and the ankles. है कि नहीं? समझ में आ गया सबको कि ऑप्शन डी जो है ये स्कोप से बाहर जा रहा है, because the director has not come to any sort of conclusion on the basis of the textiles, and therefore उसका preservation से अपने कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. क्लियर हो गया सबको अच्छे से? So this question was not very difficult. I think this was a doable question. हाँ, it was about cavalry officer rather than. चलो, so let's take अभी थोड़ा सा हल्का सा मैं difficulty बढ़ाने वाला हूँ. So we will see थोड़ा सा, ये बहुत बढ़िया question है. This will take some sort of discussion, but मुझे लगता है कि you all should try it very seriously. मैं अपना मुंह छुपा लेता हूँ, ठीक है? So that you can read the question. चलो, I will give you 3 minutes for this question. Let me see how many of you get it. बहुत बढ़िया question है. It's a nice question. I will hide my face. चलो मैंने मुंह छुपा लिया अपना. मुंह छुपाया मतलब टाइम मिल गया आपको. चलो. Yes, I am hiding my face now. When I hide my face, the timer has started. And when I show my face, the timer has stopped. चलो, please take this question. In between, I can drink. Water, I mean.
Okay, I am back. I am back. You all can still see the question, right? Question सबको याद है ना? Okay. So people are giving almost, I think मुझे लग रहा है कि हर ऑप्शन लोगों ने मार्क किया है. Everyone has marks. I mean, all the options have been marked. CB mark हुआ, BB mark हुआ, AB mark हुआ, DB mark हुआ है, right? क्वेश्चन नंबर सी का आंसर तो वैसे सी है. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी है, ठीक है. It's a good question, and many of you who have got it wrong, we will see why this was a catch. ठीक है, start करूँ? Should I start now? Look at the question. It says most disposable. Disposable means what? Something that you can throw away. है ना? Most disposable plastic containers are now labeled with a code number from 1 to 9, indicating the type or quality of the plastic. Plastic with the lowest code numbers are the easiest for recycling plants to recycle and are thus the most likely to be recycled after use rather than dumped in landfills. Did you understand this statement? You have to combine these two statements to understand what exactly it is trying to say. It says that disposable plastic containers are code numbered 1 to 9. So let's say 1, 2, 3 ऐसा है, 4, 5 and it goes on like this, correct? So these are the numbering done. This is the numbering done, है ना? And the lowest code means easy to recycle and are thus the most likely to be recycled after use rather than dumped in landfills. So can I say that if this is 1, then recycling chances are very high? I mean, easy to recycle, and as you go, so 1 is easy to recycle and the code number 9 is, let's say, difficult to recycle. Agree all of you? Plastics labeled with the highest numbers are only rarely recycled. So can I say that the ones with lower numbers would be recycled and the ones with higher numbers, very high or highest number, would go to what? Landfills. I will do that. Did you understand? So the low code numbers will be recycled, whereas the high code numbers would go to landfills. Are we clear on this, everyone? So you tell me this yes, and then I will go to the next part. We will take it one by one. So low code numbers means easy to recycle, and high code numbers means difficult to recycle, and therefore it will go to landfills. If you can't recycle, what will happen? It will go to landfills, right? Consumers can make a significant long-term reduction. This is the conclusion of the author. All of you agree? This is the conclusion, that consumers can make a significant long-term reduction in the amount of waste that goes unrecycled. Therefore, by refusing to purchase those products packaged in plastic containers labeled with the highest code numbers. Yes or no? Consumers can make a significant long-term reduction in the amount of waste. How? If their package has 9 number to it, they will not use it, 8, 9 number to it. They would not buy in that, right? वो बोलेंगे plastic वापस करो भाई, नहीं चाहिए हमको. They would prefer going with low numbered plastic, है ना? If it is 1, 2, 3, 4, they will go with it. The higher ones, they will not go, and therefore the author says that there would be a long-term reduction, and it is logical. भाई अगर लोग buy नहीं करेंगे तो वो पड़ा रहेगा ऐसे ही, and then definitely and the ones that people buy would go to recycling. So this looks very nice conclusion. Which of the following, if true, most seriously undermines the conclusion? So what is the conclusion? That consumers can make a significant long-term reduction. अपने को ये दिखाना है कि that they may not be able to make a long-term reduction. Correct? So let's look at the option. Now the option right is C. It says a plastic container almost always has a higher code number after it is recycled than it had before recycling, because the recycling process causes a degeneration or degradation of the quality of the plastic. Did you understand this statement? For example, I am a customer, I go and buy something in a plastic bag, code number 1. So what happens? I use the plastic, I throw it away. Because the plastic is coded number 1, it will go for recycling, not to the landfill. And if it goes for recycling, what will happen? In the recycling process, generally the
degeneration happens, right? क्या बोल रहा है? Degradation happens. So when it comes back again into the market, can I say its number will change to 2 or 3? Please understand this. Huh? When the recycling has happened and the plastic is back into the market, can I say the plastic's code will change from 1 to 2 at least? All of you agree? That means each time the plastic bag goes for recycling, the code will increase. And can I say this is eventually going to happen for all plastic? Eventually all plastic will end up with high code. जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, I am writing, but don't you think that eventually all plastic will end up with high code, yes or no? Please look at it, very, very important statement. If the plastic goes for recycling and comes back with a higher code, then eventually whatever plastic you have will eventually have a higher code, and therefore they will eventually go to the landfill. यानी कि सब plastic landfill में जाने वाला है. The process would be slow, but can I say eventually all the plastic will go to landfill? So can I say a long term जो reduction की बात हो रही है, this might not happen. One by one, slowly and steadily, all the plastic bags will end up with a higher code because they all would be recycled until we reach a point where no further recycling is possible, and therefore they will all go to the landfill. And therefore, if this is true, then the long-term reduction which the author feels will happen because the customers would buy is not going to be possible. This would ultimately lead to the same problem that we have right now. The reduction point in the long term is getting attacked by option number C directly and very badly. अच्छा, न्यू प्रोडक्शन से क्या होगा भाई? देखो, रिसाइकल करोगे या फिर लैंडफिल में जाओगे, दो ही ऑप्शन है. Either you recycle or you go to the landfill. Even if you produce new plastic, eventually the old plastic will go somewhere or the other. Are you getting my point? Now I will come to B. ठीक है, I hope C is clear to everyone how C is attacking the author's conclusion directly. Even if you manufacture new plastic, the old plastic has to go somewhere. Either you will use it and recycle it, or you will put it in a landfill. Now see, many consumers are unaware of the codes that are stamped on the plastic containers. Now, in critical reasoning, we say that this many is a big problem because many consumers, ठीक है, many consumers are not aware, but equally there are many who would be aware. So the many consumers awareness is not going to make a huge difference. Why? Because first of all, this many is not known to me as to what number do you have in mind, and secondly, there could be many in many cases there are many people, you know. So this numerical basis of option number B is questionable and is not substantial enough to defeat the argument. समझ में आ रहा है कि नहीं? Let's look at all the options first and then we will pick. समझ में आया कि नहीं? आपने कहा many consumers are unaware, that's fine, but many could be a very random, you know. You say many people came to attend the party. Now many could be 5, 6, 10, 12, 100, 1000, 1 lakh. We don't know. So many is not going to actually give any support to your argument because it's a very subjective number. You always support or weaken your arguments or conclusions by using something substantial. B में तो कुछ भी substantial नहीं है. Yeah, even if consumers are unaware, can I say they will always remain unaware? अगर आप बोलते हो कि many consumers are unaware, does it mean that they will always remain ignorant? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, will they always remain ignorant? तो आप ये मान के क्यों चल रहे हो कि आज अवेयरनेस नहीं है बट कल भी ये अवेयरनेस नहीं रहेगी? ये भी तो प्रॉब्लम है ना. Are you getting my point? So just because today they are unaware, and it is highly likely that today they are unaware. Why? Because coding नया फंडा आया है, but gradually they might become aware because of lots of other mechanisms, and therefore even without many word, this option is not going to weaken the argument. Doesn't matter, you can give any number you want, but the problem is that this is not going to be there as a permanent condition. You are giving permanency to it because you want to ensure that that option B is right.
समझ में आया कि नहीं? आपको अगर इंश्योर करना है बी राइट है तो आप मान लो कि हाँ लोग हमेशा गधे रहेंगे, बट दैट इज नॉट द वे रीजनिंग इज डन. Are you getting my point, all of you? Whether you use the word many, whether you use the word unaware, you have to understand that this condition is not going to be perennial. तो B तो काम नहीं करेगा. और फिर A बोलता है the cost of collecting, sorting and recycling discarded plastics is currently higher than the cost of manufacturing new plastics. Well, the government might bear the cost, no problem. And let the cost be borne by the companies. Why has the customer to worry about it? है ना, आउट ऑफ स्कोप हो जाता है ना यार. ठीक है, कॉस्ट बेयर करते हैं लोग, लॉट्स ऑफ पीपल बेयर कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस एंड ऑल. सो दिस गोज आउट. नाउ वन थिंग दैट D says is products packaged in plastics with the lowest code numbers are often more expensive than those packaged in the. ठीक है, it's good that they are often more expensive. But what if the customer is willing to pay for it? It has not said that products packaged in plastics with low code numbers are more expensive and customers don't buy expensive thing. Then I would have said that this option might have made sense. But as long as the customer's willingness to buy or not buy is not disclosed, how can I take option D as the right answer? Are you getting my point, all of you? Did you understand? D बोलता है कि भाई बहुत महंगा होता है, लोग पैसे नहीं निकालेंगे. लोग पैसे नहीं निकालेंगे ये भी नहीं बोला है उसने ये बोला है कि भाई लो कोड नंबर प्लास्टिक्स आर मोर एक्सपेंसिव देन द हाई नंबर्ड प्लास्टिक्स. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? नहीं तो कस्टमर नहीं बाय करेगा ये कहां से लिख के आ रहा है? इफ ट्रू इज मेकिंग सेंस, एब्सोल्युटली आई एग्री विथ इट, बट इफ ट्रू इज नॉट टॉकिंग अबाउट कस्टमर्स प्रेफरेंस. In option D, it says that the lower is more highly priced, is more expensive than the higher numbered plastic. But what if the customer goes ahead and buys it? Did you understand, all of you, that D is also not making sense? Why? Because in D you are adding something from your own pocket. In D you are coming and telling me that you are assuming that if it is more expensive, customers won't buy. Did you understand? In D, you are assuming that if it is more expensive, customers won't buy. There are so many things which are expensive and people still buy. So can I say D is going out? सबको समझ में है? All those who had marked D. Many of you had marked D and I think now you understand why D goes out. Please reasoning of which option? C option. अरे भाई सी पता है क्या बोलता है? देखो सी वापस आई विल अगेन रिपीट सी बिकॉज मेरे को थोड़ा लगा था इट वुड बी डिफिकल्ट. मेनी पीपल हैव नॉट गॉटन सी. आपने क्या कहा कि यू आर एक्चुअली कोडिंग द प्लास्टिक्स फ्रॉम 1 to 9. ठीक है, एंड द लोअर द कोड द हायर द रिसाइक्लेबिलिटी, राइट? व्हाट इज plastics with lowest code numbers are the easiest for recycling, correct? So that means customers would go and buy 1 and 2 plastic wala saman, right? But what option C says? A plastic container always has a higher code after it is recycled. So let's say I go to buy something, I buy something in plastic bag, coded one, I take it home. अब मैं इसको फेंकूंगा तो ये रिसाइकल होगा ना. जब रिसाइकल होके आएगा तो इसका कोड बढ़ जाएगा, बढ़ते जाएगा. Yes or no? Either you recycle or you throw it out in the landfill. There is no other option. So इसका मतलब क्या हो रहा है पता है क्या? Every plastic that you get will eventually have a higher code. धीरे धीरे सब लोगों को मरना है ठीक है. We all are definitely going to. Of course we will slow down. So eventually what will happen is all the plastics that people are buying will end up with a higher code, and once it reaches a higher code it will go to the landfill. So long term reduction is not going to be possible. Did you understand this? Badhiya question. It's a very nice and intelligent question. हाँ, जो भी खरीद रहा है वो भले कोड लो होगा, बट अल्टीमेटली जब रिसाइकल होके वापस आएगा तो कोड उसका हाई हो जाएगा. तो लॉन्ग टर्म में ऑल द प्लास्टिक्स विल एंड अप हैविंग अ हाई कोड. और जब सबका हाई कोड हो जाएगा, सबको लैंडफिल में ही जाना है, तो लॉन्ग टर्म में कहाँ से आपका रिडक्शन होने वाला है? आर वी क्लियर एवरीवन?
अच्छा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया सबको? हाँ, सो इवेंचुअली ऑप्शन सी में सब जाएंगे ही ना बाहर. When you go with option C, eventually you are telling that no long term. Saurabh, मेरे को I'm not getting. I think your comment has gone up, so I do not get your reasoning. So what would you mark, Saurabh Bajaj? If you don't mark option number C, what else would you mark? हाँ, that में ऐसे आते हैं थोड़े बहुत, है ना? ठीक है, चलो. नहीं तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जब से देखो, जब आप नया कोड लेके आओगे तो आप बोलोगे नया कोड आएगा, बट नया कोड आप रिसाइकल भी तो करोगे ना. एलओडी हाई, इसका हाई है. सी मेनी पीपल से कि हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इकट्ठा तो होगा ना. सी द प्लास्टिक्स ईदर यू मैन्युफैक्चर द प्लास्टिक्स. सर, इफ आई यूज कोड 1 plastic and I use 2 first before recycling and then after it. So if I use code 1 plastic, I use 2 times, first before recycling and then after it. ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे? कहीं ना कहीं तो जाने है ना उसको. देखो यार, प्लास्टिक आप कोई मैन्युफैक्चर करो, यूज करो, ऐसे प्लास्टिक हैज टू गो समवेयर. See, you are Saurav Bajaj. What you are doing is you are not looking at the long term. How what will happen in the long term? You are taking one condition and then you say that okay, ये condition हुआ तो क्या होगा? But long term में क्या होगा? Long term में तो भाई प्लास्टिक को तो कहीं ना कहीं see in what will happen to the plastic that is manufactured today? The plastic that is manufactured today will either remain with you कि भाई ठीक है, आज प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हुआ, कोड 1 है उसका, तो या फिर वो लैंडफिल में जाएगा या फिर वो रिसाइकल होगा. If the plastic remains code number 1 for a very very long time, it is not going to, ultimately the plastic is going to accumulate. We are trying to reduce the number of amount that goes unrecycled. Did you understand? अगर आपको अमाउंट रिड्यूस करना है जो that goes unrecycled, you are buying, you are manufacturing more and more of lower codes and you are still accumulating the plastic. So eventually या फिर वो लैंडफिल में जाएगा या फिर आप नया मैन्युफैक्चर करोगे. So eventually the plastics is mounting. Whatever way you look at, many people are just stuck on the option. But आप देखोगे अगर, so argument long term reduction का हो रहा है ना, long term reduction that goes unrecycled. That means क्या हो रहा है कि आप रिसाइकल करोगे बट इवेंचुअली रिसाइकल करके भी वो इकट्ठा हो जाएगा. आप मैन्युफैक्चर करोगे वैसा भी इकट्ठा होने वाला है. सो वॉट एवर हैज बीन सजेस्टेड इज नॉट गोइंग टू वर्क. नाउ आई कम टू इन्फरेंस. ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. चलो, टेक 3 minutes फॉर दिस क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ, आई थिंक माई, इसमें शायद दिखेगा. चलो, टेक दिस क्वेश्चन, 3 minutes फॉर ऑल ऑफ यू. फटाफट लो. क्वेश्चन नंबर 7. या सॉल्व दिस क्वेश्चन. फोकस करो इस पे. Okay, ether 2. I will get the name. Where is this word? कहाँ है?
B, C, और क्या है? D कोई नहीं आ रहा है क्या? हाँ, D कोई नहीं मार्क करना चाहिए. D मार्क कर दोगे तो फिर गड़बड़ है फिर तो. ओके, ABC. इजी पीजी नहीं है ये लगता है इजी है ये. If you want to check the difficulty of a question, see how frequently. B, C. ठीक है. हाँ अभिषेक, yes. Now see, let's look at this. Are we done? Question तो छोटा है, but this is going to give you trouble. You can take your time. Time is not an issue in these kind of questions. Should I give the answer? Should I reveal the answer? Answer is A. आंसर ए है. चलो देखते हैं क्यों है. ठीक है. हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स, द क्वेश्चन इज इन्फर्ड. एंड इन्फर्ड में इफ ट्रू वगैरह नहीं आता, इन अनलेस द क्वेश्चन इज चेंज्ड. हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स फ्रीक्वेंटली नीड टू बी रिवाइज्ड. अग्री ऑल ऑफ यू? स्टेटमेंट है. द रीजंस फॉर दिस आर क्लियर. ये कोलन से मतलब क्या है ऑथर का? व्हाई इज द ऑथर यूजिंग द कोलन हियर? What is the purpose of the colon? After colon, you have the reasons. So the reasons for this are clear. क्या क्या reasons है? New discoveries of documents and remains, बहुत बढ़िया. The discovery of mistaken inferences in prior histories, और भी अच्छी बात है. The discovery of previously unnoticed relationship among data, and the application of hitherto undiscovered principles of natural science all may indicate inadequacies in current history text. Any of these considerations may require that the past be reinterpreted in a manner that is new and more illuminating. Do you understand? Question क्या कह रहा है? The question says that history textbooks frequently need to be revised. And why? Because you discover documents, remains मिल जाते हैं, नए नए मिल जाते हैं, and you discover that in the prior histories there were some mistaken inferences, so you have to revise the book again. Maybe the discovery of previously unnoticed relationship among data. So कुछ तो डेटा था जो पहले लोग नहीं समझे, अब समझ गए हैं बेटर, है ना? And sometimes even undiscovered principles of natural science. So natural science का मतलब जैसे for example है we measure time period, कैसे कार्बन डेटिंग होता है ना. So कार्बन डेटिंग is primarily a scientific method. So कार्बन डेटिंग का नया कुछ तरीका आ गया, या फिर हो सकता है कि something which is there in the natural science that you might get, and that also may make you change the history textbook. So the author from this, he says that history textbooks frequently need to be revised. Any of these considerations may require that the past be reinterpreted. है ना? समझ में आ गया पूरा passage? Are we getting? Now, which of the following can be inferred from the argument? Now, let's look at all the options. One thing I will tell you, inferences have to be 100% true. Inferences have to be 100% true. Yes or no? There should be no doubt about it. So the worst option is D, which says natural scientists also function as historians. From where do you get this inference? I know historians are writing history text, but from where do you get natural scientists? Natural scientist, you might have got this word from natural science. See,
you get to know some principles of natural science, and because of that you might get to know that the earlier history was something which was wrong. Does it mean that the one who is working as in natural science has become a historian? Natural scientists can help historians, right? Agree or not? All of you. Natural scientists can help historians. That doesn't mean that natural scientists, they also function as historians. So this sort of inference is far-fetched. It is nowhere derived from what we have in the passage. Agree all of you? I have mentioned inferences have to be 100% true. Some natural scientists might be historians, but they also function as historians. This might be a possibility, but not a certainty. And because it's not a certainty, it is not 100% true, and therefore it is not the inference. Agree all of you? So option D has gone out very easily. History textbooks are outdated as soon as. When you say as soon as, can I say it is slightly awkward? आज लिखा मैंने book, market में परसों आया और after 1 month it is outdated. People would not write books, correct? It is extreme. Just imagine. Okay, you are writing a book and the moment the book comes out in the market, within 2 weeks it is outdated. ये WhatsApp जैसा है बिल्कुल, ये आप WhatsApp का वो आता नहीं है अपने को. Everyone is clear about how option C is extreme. They might become outdated, but we can't say that it happens as soon as. Did you understand? Now many of you might have said, sir, यहाँ पे as soon as is given, and here you have frequently need to be revised. Do you mean to say that frequently is the same as soon as? Is frequently the same as soon as? No, they are not. Frequently is not the same as soon as. They frequently need to be revised means, again, this is very subjective. I frequently go to temples. When you say you frequently go to temples, does it mean that you go every 3 days, 4 days, 1 week? We don't know. Frequently means it could be once in a week, twice in a week. It all depends upon the event. And frequently, first of all, is not as soon as. Please, let's not equate things. Are we clear that C is also not right? It is way too far-fetched. Hannah, everyone agrees? Should I go to the other two options now? So that we can finish all the questions. Hannah? How will I eliminate B? The past is constantly renewed because of illuminating rain. The past is not renewed. The interpretation of the past is renewed. That is the right way to put it. You don't renew the past. The interpretation of the past, and that too, it is not constantly renewed. है ना? See, you have put the wrong word here. Lots of things go wrong. Did you see in this question? The past is reinterpreted in a manner that is new and more illuminating. Did you understand? In fact, what happens is the documents, the mistaken inferences, the discovery, and secondly, who says it is constantly renewed? Just because, see, if you say as soon as is incorrect, here constantly is incorrect because constantly is not the same as frequently. When you say constantly, it means at a regular interval. है ना? हर 2-3 साल में renew हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है. Constantly has been used here as a replacement for frequently, but they both are different things. Did you understand? Are we clear? So constantly भी तो problem है ना. First of all, you say the past is getting renewed. No, the past is not getting constantly renewed. Did you see, all of you? Subtle difference है. I frequently go to temples and I constantly go to temples. में बहुत फर्क है. I mean,
you would not be using them interchangeably for sure. When you say constantly means there is regular time interval. When you say frequently means ठीक है, बार बार जाते हो, but not necessarily. The option is distorted for sure. And you will realize this when you see how A has been put. The interpretation of historical events is affected by natural science. So when you say is affected by natural science, that means the undiscovered principles of natural science may indicate inadequacies in current history text. So it means that the interpretation of historical events or maybe past events, whatever it may be, is affected by natural science. What is, see, if you say, look at this, if I remove this, it changes the meaning, right? If I remove this, it changes the meaning. Similarly, in option B, it should not be the past, it should be the interpretation of the past. यहाँ पर interpretation of the past होना चाहिए, the way you have the interpretation of historical events. Are we clear, everyone? हाँ, reinterpretation illuminating हो जाता है. Lots of things are wrong with B, you know. I mean, you can keep on finding mistakes. Everyone is clear कि how A is the answer. It's the best that we have. Crystal clear, एकदम A can be inferred from what is given. All the others are, D is the first to go out, C says as soon as, B has lots of problems in it. बढ़िया, सबको समझ में आ गया. Ananya Sharma ने कहा है, sir, can you repeat? Which option should I repeat, Ananya Sharma, for you? I will repeat that option. Option 1. I don't know how to delete, but एक बार delete मार देता हूँ मैं सब कुछ, ठीक है? थोड़ा cluttered हो गया है. People are asking how option 1 is correct, है ना? So here it is now becoming clear. See, it says here, history textbooks frequently need to be revised. And the reason is what? Reason is what? The application of undiscovered principles of natural science may indicate inadequacies. Can I say, you read what I have underlined. History textbook need to be revised because of the application of undiscovered principles of natural science that may indicate inadequacies in current history text. So can I say from this sentence that the interpretation of history or historical events, is one and the same thing, is affected by natural science? Yes or no? Just look at underlined part of the passage. Everyone, all those who have doubt. If undiscovered principles of natural science, they become clear to us, and because of that, you have to revise the history textbook, can I say then the interpretation of historical event is affected by natural science? If it is not, then why would this play a role in revising a book? Simple like that. Once you see things clearly, everything becomes clear. बढ़िया, ठीक है, चलो. थोड़ा डिफिकल्ट है ये. लेट्स टेक अ इजी क्वेश्चन. थोड़ा ब्रीदर देता हूं आपको मैं. ठीक है, चलो. लेट्स टेक वन इजी क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट इट करेक्ट. वेरी इजी. आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड गेट करेक्ट. आई विल हाइड माई फेस. ठीक है, चलो. क्विकली मार्क योर आंसर्स. हाँ, O2 चाहिए. मैं चुपके से पी रहा हूँ पानी. You also keep something with you. Please try this question.
Easy question, all of you. राहत की सांस आई ना. That's why, देखो क्या होता है ना, you should always solve questions of mixed difficulty. Some people think that automation which allows making more with less is bad overall. ठीक है, I think, okay. Some people think that automation which allows making more with less is bad overall. They say that if there are fewer jobs in car factories, there are fewer people getting paid. But at the same time, better technology is a big part of why the economy grows. This leads to higher wages and a better way of life for workers who stay in their jobs. So, what does the author say? Some people think automation is bad. They say that if there are fewer jobs in car factories, there are fewer people getting paid. So automation से क्या होता है? The number of jobs goes down, right? But the author says at the same time, so he takes a U-turn here. Better tech is a big part of why the economy grows. This leads to higher wages and a better way of life. Workers who lose their jobs can learn new skills, and these new skills help them use their abilities in more useful and productive ways. We have to pick the inference. A says automation may reduce the number of jobs in some factories. Can I say we get this from this particular sentence? है ना? These two help me arrive at the first part. Yet it also contributes to economic growth that improves overall living standards. This comes from second part. है ना? So answer A makes sense because both the parts can be inferred. The long-term economic benefits of automation are greater than the hardships caused by job losses. See, what is greater and what is smaller? Is there any comparison? Please tell me. The points of view have come. One guy says that the jobs go down. The other guy says that no, there are higher wages. But can we say who is more stronger in terms of numbers? See, when I use the word greater, I need to have some sort of numbers. Some sort of numbers or some sort of comparison to come to this kind of conclusion. यहाँ पे तो कुछ भी बोला नहीं है. Both the parties are giving their opinions. And simply by comparing their opinions, you don't get to know what is happening in the long term. Agree or no? So we don't have evidence for B. All workers displaced by automation will eventually learn new. Who says all workers? Of course, many of us, did you understand? I mean, AI is replacing many people at the workplace. But how can we be sure that all workers who are displaced by AI will eventually learn a new skill and they will get into somewhere? Correct? So C is also far-fetched. Without technological advances such as automation, workers' wages would not have improved over time. Who says that automation is the only factor that is contributing to workers' wages? Maybe, see, the workers' wages might increase because of government mandate also. Workers' wages might increase because of the company profitability also. The company is doing well. It is very profitable. It might increase the wages. So who says that without technology advances, workers' wages would not have improved over time? Again, this is little far-fetched. बहुत ज़्यादा बोल दिया उसने, उतना evidence है नहीं अपने पास. Did you understand? Automation may reduce the number of jobs, yet it also contributes. Correct, perfectly balanced, and A is the right answer. All of you had marked A. I think hardly anyone I saw marking anything except for A. So that shows कि भाई ठीक है, when the question is easy, people do well. A big hand to all of you. फोड़ दिया भाई बच्चों ने. सबको समझ में आ रहा है ना? Easy question आता है ना तो अपने को लगता भी कि easy है. And that sense कि हाँ ये easy है, ये बहुत important होता है. चलो अब इससे बेटर एक और क्वेश्चन ला रहा हूं मैं. थोड़ा डिफिकल्ट है बट सी इन्फरेंसेस आर ऑलवेज माइल्डली वर्डेड. ये भी मैं लिख देता हूं. इन्फरेंसेस आर माइल्डली वर्डेड. हल्के से उसको वर्ड करते हैं. ठीक है, but that is not necessary always. So may hai, yes, chances hai. I mean, that is what it says. But ठीक है, if the evidence is very strong, it can also be a certainty also.
I want to give you a tough question now, है ना? थोड़ा सा एक काम करते हैं, अपन ये वाला लेते हैं. Please try this. 3 minutes I'm going to give you. It's very nice. It can be inferred from the passage that the author would most likely endorse which of the following proposals. Endorse means support. Huh? Please try this question. Take 3 minutes. बढ़िया question है. Please read the question carefully. Huh? If you've got the main idea, easy हो जाएगा ये क्वेश्चन. सही बात है. I think most of you are done with the question, so now I will reveal the answer. Challo. है ना? The answer to this question is A. A versus C, confused. We will check all the options, don't worry. Although its purpose is laudable. What is laudable? Praiseworthy, है ना? Laudable means praiseworthy. Although its purpose is laudable, the exclusionary rule which forbids a court to consider evidence seized in violation of the defendant's constitutional rights has unduly hampered law enforcement efforts. समझ में आया सबको ये? लंबा sentence है, but did you understand the meaning? Although its purpose is laudable. किसका purpose? The exclusionary rule. Although the purpose of exclusionary rule is laudable, and what does the rule say? The rule forbids a court to consider evidence seized in violation of the defendant's constitutional right. It has unduly hampered law enforcement efforts. Can I say the author says that the exclusionary rule has hampered law enforcement effort? This is the main message. अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है ना, it is primarily because you have misinterpreted the sentence. समझ में आ रहा है? Although the purpose is laudable, the exclusionary rule unduly hampers law enforcement. And what is the rule? The rule is something that forbids a court to consider evidence seized in violation of the defendant's constitutional rights, even when the rights violation was a minor one or a technical one.
turning on a detail of procedure rather than on the abrogation of some fundamental liberty, and even when it has been clear that the police officers were acting in good faith, the evidence obtained has been considered tainted under this rule and may not even be introduced. In consequence, defendants who were undoubtedly guilty have been set free, perhaps to steal, rape, or murder again. So, what is the tone of the author? Does the tone suggest complete abandonment of exclusionary rule or some modification in the rule? Please tell me. If you look at the tone of the author, if you look at the tone of the author, does he suggest, so he says that the exclusionary rule is laudable. उसने पहला ये कहा. But something of it, even when the rights of violation was a minor one, turning on a detail of something, and even when it has been clear that the police officers were acting in good faith, the evidence obtained has been considered tainted. ऐसा नहीं होना चाहिए था. So can I say the author would favor this sort of proposal, that change of the rule to admit evidence obtained by officers acting in good faith? At least कम से कम ये तो करो. Now, if you look at B, it tells me that a constitutional amendment curtailing some of the protection traditionally afforded to those accused of crime. What kind of protections do you think? In fact, the author is against the protection given to them, against some protection. Agree or not? So a constitutional amendment curtailing some of the protections traditionally afforded those accused of crime. Now the problem is when you say some of the protections, what exactly it is? This becomes unclear. Agree or not? भाई clarity तो होनी चाहिए ना. आपने कहा change of the rule to admit evidence obtained by police officers in good faith. It is very much relevant to what the author has discussed. आपने यहाँ पे कहा कि a constitutional amendment, this becomes a big problem. And secondly, curtailing some of the protections traditionally afforded those accused of crime. Now this becomes very much shady. क्या ये जा कहाँ रहा है option B? It goes beyond the rule in question, or it goes beyond what the scope of the passage. किसी ने पूछा है sir, can you please explain where the author hinted to change the rule? देखो author ने क्या बोला है? Although its purpose is laudable, the exclusionary rule has unduly hampered law enforcement effort. इसका मतलब author ये बोलता है कि purpose तो अच्छा है इसका, but इसने what the rule has done is it has hampered law enforcement efforts. Even when the rights violation was a minor or a purely technical one, or even when the police officers were acting in good faith, the evidence obtained has been considered tainted. Can I say that the author of the passage is telling us that at least in these cases you should have allowed the minor violation of the exclusionary rule? Agree or not? When you look at this sentence, when you look at this part of the sentence, can I say the author says that even when the police were acting in good faith, the evidence obtained has been considered tainted? इसका मतलब क्या है? The author is telling us that when the police were acting in good faith, at least we should have not considered those evidence tainted. What happens as a result? The defendants have been set free to perhaps rape and murder again. That means, can I say that from this sentence we get to know that the author would endorse का मतलब क्या है? Support this particular option. अब समझ में आया ना? The author is not directly telling us, but his tone and manner is telling us that even when the police officer were acting in good faith, the evidence was considered tainted. So the word even is telling us that at least in this case, समझ में आ गया सबको? So the tone and the style of writing suggests that the author has not preferred this. Clear हो गया सबको? Why only minor criminal offences? A statute limiting the application of the exclusionary rules to cases involving, why not major? भाई major में भी तो आना चाहिए ना, क्यों ना आए? So it's not about major and minor. It's about allowing certain evidence which is purely technical one, or in which the officers are acting in good faith. उनको तो allow करो ना आप. So this also goes beyond the scope to allow any evidence. Extreme. D तो extreme है. Not allow any evidence. At least those evidence which has been obtained in good faith. Clear everyone? Compare A versus D and you will realize how A is better and sticks to the scope of the passage.
B goes well beyond the scope, and C says only minor. Why not major? So from all this, we conclude that A is something which the author would definitely endorse. In fact, we are inferring that A option would be endorsed by the author. बढ़िया समझ में आ गया सबको? बढ़ जाए आगे. गलती हो गई ना, ऑथर ने प्रेस भी तो किया है ना. ऑथर बोलता है ऑल्दो इट्स पर्पस इज लॉडेबल, सो द ऑथर इज नॉट कंप्लीटली अगेंस्ट द एक्सक्लूजनरी रूल. एंड इफ यू से चेंज ऑफ द रूल टू अलाउ एनी एविडेंस, इसका मतलब पता है क्या होगा? द ऑथर हैज एक्चुअली गॉन कंप्लीटली, रूल को तोड़ दिया उसने. वो ऐसा नहीं काम करने वाला. वो बोलता है थोड़ा तो इंप्रूवमेंट करो उसके अंदर यार. ठीक है. सो एक 10th क्वेश्चन भी लेते हैं, फिर अब पीछे. प्लीज टेक दिस. इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है यार, डिफिकल्ट नहीं. आई डोंट नो, आई फाउंड इट लिटिल on the easier side. Chalo, please take this. I will hide myself. Take 2 minutes. इजी. सी कैसे मार्क हुआ? लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. इजी डी होगा ना इसका आंसर. तो by early April 2017, Nintendo's YU, I don't know how to pronounce it, but ठीक है, Nintendo's YU had sold roughly 15 million consoles worldwide and counted about 7 million Nintendo network active accounts, up 28% from December 2016. So what is given to us as data? By April 2017, Nintendo's YU had sold roughly 15 million consoles worldwide and counted about 7 million Nintendo network active accounts, up 28% from December 2016. Correct? ठीक है, we have the figures with us. 15 million schools and 7 million, 15 million consoles and 7 million active accounts. ठीक है, जो भी है, up 28. Even with that momentum, the Wii U was trailing Tony's PlayStation 4, which had surged in December after a temporary holiday discount and several bundled first-party titles. So even with this sort of momentum, it was trailing Tony's PlayStation 4. Okay. So Tony's PlayStation 4 was ahead in terms of sales and active accounts, perhaps. This is what we get to know. तो अपने को inference पूछा है. Let's look at option A.
Some of the PlayStation 4 consoles purchased during the December surge included bundled first party titles. Can we say that some of the PlayStation 4 consoles purchased during the December surge, so this December surge, correct? I think this is the December, sorry, ye hai. How can we say that it had first party titles? बचपन की याद आ गई ना. Even with that momentum, the YU was trailing Tony's PlayStation 4, which had surged in December after a temporary holiday discount and several bundled first party titles. We don't know, we don't have the figures with us. ये बोलता है कि which had surged in December after a temporary holiday discount and several first party titles. And look at D. So we can compare. It says the surge in PlayStation 4 sales in December was influenced, at least in part, by holiday discounts and bundling promotions. Possible. So this is one possibility. And this is the other possibility. In part basically means what, you know, कि अगर ये surge हुआ है तो maybe the discount could have played some role. That's why it says at least in part. Can I say B and C are easy to eliminate? Since the YU was trailing, the PlayStation 4 had higher cumulative sales by early. See, it had higher cumulative sales, but by early April 2017, we still don't know. See, YU was trailing. Correct. Even with that momentum, the YU was trailing Tony's PlayStation 4, which had surged in December after a temporary. So it says since YU was trailing, the PlayStation 4 had higher cumulative sales by early. इसकी कोई एविडेंस अपने पास नहीं है ना. Since the YU was trailing, the PlayStation 4 had higher cumulative sales by early April 2017. Time period clear नहीं है ना. We don't have any evidence. We know that by early April 2017, Nintendo's YU had sold 15 million consoles worldwide and counted about 7 million Nintendo networks, up 28% from December 2016. Even with that momentum, the YU was trailing Tony's PlayStation. Time period का कोई clarity नहीं है, है ना. टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करना चाहिए था ना, बिकॉज यहाँ पे कहीं पे दिसंबर है, कहीं पे अप्रैल 2017 है. So at exactly what time period the surge happened and then the accumulation happened, we don't have any evidence for that. मैं उस पे आता हूँ. अभी सी हम डिस्कस कर रहे हैं. It says that since the YU was trailing, the PlayStation 4 had higher cumulative sales by early. See, we can't be very sure कि ये by early April जो है, because time period is not clearly given to us here. ये बोलता है by early April 2017, Nintendo's had sold 15 million, बढ़िया है, and counted 7 million network active accounts, up 28% from December 2016. This up 28% is basically YU का December का 2016 and then April 2017 वाला figure. Even with that momentum, the YU was trailing Tony's PlayStation 4, which had surged in December after a temporary hot discount. तो सर्जिंग तो हुआ है टोनी प्लेस्टेशन का, but it says that the PlayStation 4 had higher cumulative sales by early April 2017. Early April, mid April, end of April, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, you know. Did you understand? तो at least C तो मैं C will go out. All of you agree? And cumulative sales is again a problem, you know, because unless we have the comparison, 15 million तो है इसका वर्ल्ड वाइड, बट अगेन वी डोंट नो व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, तो वो भी समझ में नहीं आ रहा ना. क्यूमुलेटिव सेल्स मीन्स व्हाट? आर यू टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ मेनी ईयर्स और वन स्मॉल टाइम पीरियड? तो वो भी क्लियर नहीं है. तो ऑप्शन सी कैनॉट बी इन्फर्ड. Nintendo network account growth between December and April was due entirely to new consoles being sold during that period. Nintendo's
a growth from December or between December and April was due entirely to new consoles? How can we be sure about it? न्यू कंसोल्स ही होंगे, इसमें पुराने नहीं होंगे, इसका भी तो कह नहीं सकते ना. Did you understand? So for both B and C we don't have enough evidence. पता नहीं यार भी न्यू कंसोल्स कितने थे कितने नहीं थे. Something must have been new, something must have been old. Did you see? See, cumulative का जो है ना वो define नहीं हो पा रहा है exactly. We don't know whether cumulative sales is there for only this time period or some other time period. B and C, we don't have enough evidence to eliminate हो गया, right? All of you agree? Answer D है ना यहाँ पे लिखा हुआ. And answer D होगा because a temporary holiday discount and several bundled first party titles भी आए हैं. D makes sense. My only concern is that how would we eliminate A? It's D versus A. In दोनों, because for others we don't have enough evidence. Entirely to new console we don't know. देखो 7 million जो active accounts होंगे ना, इसमें पुराने ही बहुत सारे होंगे. An active account means the people are still using it. That is what it means. It is A versus D that is going to be a decider now. Because A also I found it very close. Some of the PlayStation 4 consoles purchased during the December surge included bundled first party titles. देखो इसमें हो क्या रहा है पता है क्या? It says that even with the momentum the Vayu was trailing Tony's PlayStation 4 which had surged in December after temporary holiday discount and several bundled first party titles. But then we don't know some of the PlayStation 4 consoles purchased during December surge included the first party title. ये थोड़ा सा है ना, we don't know whether they were there, not there. Temporary discount का कुछ तो impact हुआ होगा तो sales तो surge हो गया है. But the PlayStation 4 which sold, see this is one particular item. हो सकता है कि several first party titles हो, but उसमें बहुत सारे हों, इसमें ये वाला part ना हो, है ना? It may not be, maybe it may not be. There is no clear evidence. Because PlayStation 4 consoles तो है, अब several bundle first party titles है, हो सकता है कि उसमें see we don't have the figures to compare, problem वो है. So if inference आएगा नहीं इसलिए. Are we clear? And more so, it is already some of the PlayStation 4. See, we don't know how many first party titles were there and how many were the old titles. We know that they were offered, but how many were sold and what figures we have, इसका evidence नहीं. We don't have the numbers actually. हो सकता है कुछ बिका, हो सकता है ना बिका, हो सकता है कि सब numbers नहीं है ना, तो बोल नहीं सकते ना. That is the problem with option A. समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा मतलब वो है, शेडी है, बट ऐसा लगता है कि सर इतने सारे बिकेंगे तो क्या उसमें से फर्स्ट पार्टी टाइटल नहीं बिकेगा? बट देन बिकॉज द नंबर्स हैव नॉट बीन गिवन टू अस, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आर वी क्लियर? एक मिनट, आई विल कम टू द रिविजन पार्ट ऑल्सो. जो डाउट है अपन ले लेंगे बाद में. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन, 2 मिनट्स में हो जाना चाहिए. हाँ लीव ने, हाँ मतलब लीव तो नहीं कर सकते, थोड़ा सा ऐसा है कि एविडेंस बहुत क्लियर नहीं है. बट लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 3 एंड आई विल कम बैक अगेन आफ्टर फिनिशिंग एवरीथिंग बैक टू द रिवीजन पार्ट. ठीक है, चलो ट्राई दिस क्वेश्चन प्लीज. आई विल गिव 3 मिनट्स, 2 मिनट्स ले लो. आई विल हाइड माई सेल्फ, है ना. एक मिनट प्लीज ट्राई.
एक मिनट, इजी क्वेश्चन, एक्सेप्ट आया है इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा, है कि नहीं? It says a neighborhood group plans to protest the closing of the neighborhood's only recreation center on the grounds that to do so would leave the neighborhood without local access to a recreation center. So it says a neighborhood group plans to protest the closing of the neighborhood's only recreation center on the grounds. क्या है grounds का मतलब क्या है? On the reasons. On the reasons that to do so would leave the neighborhood without local access. ठीक है, our neighborhood already has the most residents per center of any neighborhood in the city, complain one resident, and closing this center would make the situation unacceptable since access to recreational facilities is a necessity for this neighborhood. Each of the following, if true, weakens the residents' argument, except. So we have to weaken the argument. Whose argument? The argument of the residents, है ना? ये है उनका argument, right? So they are speaking, they're protesting against the closing, and we have to show that their protest is actually a waste of time. So let's look at option by option. Programs that are routinely filled at other recreation centers must be cancelled at neighborhoods recreation center due to lack of interest. So programs that are routinely filled at other recreation centers must be cancelled at neighborhoods recreation center due to lack of interest. So if this is the case, can I say it is weakening? How many of you believe it is weakening and not weakening? सही लग रहा है? If the programs that are routinely filled at other recreation centers must be cancelled at the neighborhood's recreation center due to lack of interest, का मतलब है कि फिर यार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो जब लोगों में इंटरेस्ट ही नहीं है? Often the recreation center in the neighborhood is open but not being used. Again, the problem is that first of all you have lack of interest, so there is no point keeping it open, and there is, if it is not being used, again there is no point keeping it open. Children, the main users of recreational facilities, make up disproportionately small segment of the neighborhood's population. So the main users are children, and they are a very small proportion of it. So that also goes against the people who are protesting the closure of this. Ultimately, we are left with A. It says a large number of neighborhoods residents are unable to travel outside their locality to gain access to recreational. That means if they are unable to travel outside, they need something near to them, and in that case, the people who are protesting would get support. So this option supports the protesters. It's a very, very easy question. None of you have marked anything except A, and therefore easy question आपने सही किया है. Easy question सही बनना चाहिए, इसका मतलब है कि ठीक है यार, थोड़ा बहुत दिमाग ठिकाने पे है. ठीक है, let's take one nice question. आगे बढ़े हो? चलो, एक मिनट. Please take this one. We'll try to finish all. एक मिनट, I will hide myself. I will give you 2.5 minutes. चलो, start. ये sometimes options may include neutral options. कुछ नहीं करेंगे options. मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि the option is not doing anything, neither weakening nor strengthening. तो वो accept में आंसर बन जाता है. नहीं, we have not done this, I think. पहले किया है क्या? अरे ये लो, कोई बात नहीं, मैंने फिर से, मेरे क्लास में तो नहीं किया होगा ना? आई थिंक आई गॉट. ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं. फिर मुझे बताओ एक्सप्लेन. सो नाउ यू प्लीज. वी हैव नॉट, आई थिंक निकिता मैम ने कराया होगा, मैंने नहीं कराया. चलो मुझे बताओ एक्सप्लेनेशन क्या होगा फिर. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिमेंबर. नहीं, मैंने वर्कशॉप में नहीं कराया. नहीं, मैंने नहीं कराया. मैं 4 ऑप्शन वाले नहीं कराता, मैं 5 लेके आता हूँ. आंसर तो याद है, लेकिन रीजनिंग भी याद होनी चाहिए. क्या पता आंसर भी चेंज हो गया हो. डोंट जंप टू दिस कंक्लूजन. Let me see how many remember the reasoning.
I would like all of you to compare A with B, है ना? ये बहुत important comparison होगा. So I will come back again. I think you all have solved the question. चलो. Let's see. Now, if you look at this sentence, I know that many of you must have boiled down to A and B. क्या आपको इन दोनों में से लग रहा होगा, right? है ना? A और B में ही confusion होगा most of you. किसी का right भी अगर है because the answer is A. But even if you have got it wrong, at least you must have got stuck between A versus B. So you were very close to the right answer. That is not a problem. Answer इसका A है. Answer is A. Now the point is that how many of you would say, sir, ये B कैसे बाहर जाएगा? I mean, so scientists have long. Let's see, because ये if true है. If true का मतलब ये है कि we have to believe it is true. So there is nothing like inference कि passage में दिया नहीं है. But confusion सबके अंदर. So if many of you have got confused, अपन discuss करते हैं कि why this confusion must have come and how to sort it out. Scientists have long noticed small grooves near the gums on some early human teeth. Small grooves near the gums. तो गम्स आपका नीचे होता है ना, और टीथ के वहाँ पे गम्स होता है. सो यू नो वेयर द गम्स आर एंड वेयर द टीथ इज. सो द ग्रूव्स आर नियर द गम्स. करेक्ट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Small grooves, because location is very critical for you to arrive at the right answer. Scientists have long noticed small grooves near the gums on some early human teeth. Since modern toothpick use does not produce such grooves, researchers once thought that the marks were unrelated to toothpicks. सो हम मॉडर्न डेज में टूथपिक यूज़ करते हैं और टूथपिक में ऐसा कोई मार्क आता नहीं है, तो उनको लगा कि यार ऐसा कोई मार्क टूथपिक से नहीं आया होगा. इनफैक्ट what they have arrived at is that small grooves not by toothpicks. This is what, who has arrived at this? Researchers. A newer hypothesis. So this is the old version of the discussion. This is a newer version. क्या newer बोलता है? A newer hypothesis proposes that early humans may have used blades of grass or reeds to clean between their teeth. These plants contain silica particles sharp enough to scratch enamel, potentially explaining the grooves. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हो सकता है कि the newer hypothesis says that they did use grass or reeds to clean, and these plants contain silica particles, and that is the reason why the grooves might have come. And we have to support what? The new hypothesis. That means we have to speak in favor of what? Speak in favor of grass and reeds. And for what purpose? To clean between their teeth. इसी के बारे में बात कर रहा है, right? अब ऑप्शन बी को देखो, very important. B says remains of grasses and reeds have been found in the stomach contents of well preserved early human fossils, showing that these plants were regularly consumed. Now the problem is, if you consume the plant as food and if you use it to clean between the teeth, would you use them in the same way? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझो इस बात को. अगर मैं कोई चीज़ यूज़ करता हूँ खाने के लिए और वही चीज़ अगर मैं यूज़ करता हूँ टूथ पिक करने के लिए, will the usage be the same? No. Because when you are eating it, you are eating with the help of teeth. And when you are picking the tooth, you're not using it on the surface of the teeth, but actually below near the gums. So if you are using it to clean between the teeth, the location will change. And if you are using it for consumption, again, the location will change. Are you getting my point, everyone? They would have different ways of using it. Because when you are using grass to eat, you would actually be using your molars and the corner teeth, and maybe you would be chewing or cutting and doing this. It will not go near the gums where you are actually picking your tooth. Did you understand? So if you are picking your tooth with a toothpick, you don't start eating it. In fact, rarely कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने टूथपिक खा लिया होगा. ये समझ में आया सबको? I am coming to that. Showing that these plants were regularly. So the point is that option B becomes a problem for us. Why? Because we feel that because they were eating it. But many people might come and say eating is not the same as picking a tooth. Archaeological digs at early human sites have uncovered grass and reed stems with worn, frayed, and understand this.
worn frayed ends that suggest repeated use as cleaning implements. So, relevant, correct? And if true, it is strengthening as well. Are we clear? नहीं, वो क्या बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि which of the following if true most strongly supports the new hypothesis. So we have to find an option that is very close. समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो यार, दूसरी चीज है ना, when you are eating grass, you don't eat grass raw. So when you consume something, you will not consume things as it is. You would boil them, you would try to somehow at least कुछ तो change करोगे ना उसके अंदर. Like an animal, you will start grazing the grass. So there are many problems with bee. First of all, eating is a different process, है ना, than using it to dig your tooth. Are you getting my point? And secondly, if you are consuming it, this consumption can have modifications in the plant. Maybe they will cut it. Maybe they will, remove the sharp edges. ये भी तो हो सकता है ना यार, कितनी सारी possibilities हैं. A is the best that is supporting the hypothesis. Apart from A, B is actually an option that will put you in trouble, because people would raise the question that if something is found as a part of diet, then it has a different use, and when something is used to dig tooth, it's a different use. समझ में आ रहा है ना, दोनों का यूज अलग हो जाता है. And secondly, when you consume something, you don't consume it raw. I imagine that when they are using it as reeds and stems to as a toothpick, this must be hard. The grass must be hard and the reed must be hard. If it is not hard, it would not be it could not be used as a toothpick. On the other hand, when you are consuming something, it has to be soft. समझ में आ रहा है कि नहीं? Are you getting my point? बी को लेके जाओगे तो केस, हाँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर करने पड़ेंगे. हाँ, च्यू करोगे तो यू विल च्यू इट विद द हेल्प ऑफ द surface of the teeth, not below the gums. That is again a problem. So if you go with this to the court case, वो बोलेगा यार लेकिन are you getting my point? So B के फेवर में बहुत एलिमेंट्स है ही नहीं. On the other hand, A says yes, if this is the case, then it can be. Are you getting my point, everyone? So B does not have many elements in its favor. First of all, we go with the assumption that the way you pick tooth is the way you eat. There is a huge difference between picking tooth and eating something. So there it goes away. Secondly, consumption need not always happen raw. So it might soften out. There could be some way by which it can soften out. In fact, actually मैं देख रहा था, I wanted to see if the cooking activity was there in ancient humans. And people said that ancient humans started using fire to cook as let's say, as far as 2 lakh years ago. तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाँ यार अर्ली ह्यूमन का मतलब ये है कि खाना बनाते नहीं थे, रॉ खाते थे. हाँ, और क्या, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना यार. Lots of things go off the direction in B. That's the reason why A sense बनता है, मतलब सपोर्ट के लिए आता है. हाँ, बट क्लीन इम्प्लीमेंट यूज हुआ होगा. ठीक है, are we clear? What about C? Marks resembling grooves are largely absent from the teeth of animal species that lived alongside early humans. So if they are absent, maybe they did not use any toothpick. That's the reason why they are absent. What has this to do with the argument? Fossilized human teeth often show multiple types of wear tear. ठीक है यार, we're not concerned with all these. हाँ, we don't know ना, तो A is the best. A is सही है. क्लियर हो गया सबको? एक और ले लें, टाइम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, समझ में नहीं आता. आज फॉर्म में हूँ सर, बढ़िया. आज थोड़ा मैंने इजी क्वेश्चंस हो गए हैं एक्चुअली, सही बताऊँ तो. आई डोंट गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द क्लास में तो बराबर. एनीवेज, आई गॉट दिस, थोड़ा चेंज किया था मैंने, बट आई थॉट ठीक है, बढ़िया है. सी, वंस यू हैव सॉल्व हार्ड क्वेश्चंस ना, तो इजी क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी बनने लगते हैं. दैट इज वन गुड थिंग. प्लीज टेक दिस क्वेश्चन. प्लीज ट्राई दिस वन. दिस कुड वेल बी द लास्ट, आई थिंक. जल्दी जल्दी खत्म करते हैं. Take 2 minutes, 2.5, 3 minutes. I will hide myself.
नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे कि आज चेहरा छुपा रहा हूँ इसलिए आप लोगों का आंसर सही हो रहा है. आई एम हाइडिंग माई फेस. सर आप मनहूस. अच्छा, ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर पक्का रॉन्ग हो जाएगा, मैं आ जाता हूँ. चलो आ गया फिर से मैं. हाँ, इसमें हाइड करने की ज़रूरत नहीं है. फिर से आ गया, चलो. इसमें भी दो ऑप्शंस क्लोज हैं. आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंपेयर दोज टू ऑप्शंस, ठीक है. ए वर्सेस डी, आंसर तो ए है. 5 मिनट. अच्छा, माय क्वेश्चन इज ए versus D. You have to support the argument. Why did you mark not D but A? Most people assume that diamonds and rare earth metals are the pinnacle of value. So diamonds and rare earth metals are of great value. Seasoned founders, however, price something else far more. And what is they price? What is that they price? A precise understanding of where opportunities lie. Consequently, in competitive markets, timely insight is the most valuable asset. Most people assume that the diamonds and rare earth metals are the pinnacle of value. Seasoned founders, however, price something else far more. A precise understanding of where opportunities lie. है ना? Consequently, in competitive markets, timely insight is the most valuable asset. So this is the conclusion, that timely insight is the most valuable asset. And where it is the most valuable asset? Competitive market के अंदर, right? So D says tech firms that possess abundant rare earth metals often depend on strategic insights from the leadership teams before they can successfully convert those metals into profitable products. बढ़िया है ना? So they should support. Startups led by founders who act on timely insights regularly outperform. Can I say competitive market का relevance यहाँ पे आता है? Did you see this? The comparison has come here. They might convert profitable products, but in a competitive market, see, the passage says that you have resources, है ना? You have rare resources which are very expensive, but in comparison to these rare resources, what is more important is timely insight. So this becomes the comparison in the passage. कि resources होना ठीक है, अच्छी बात है, but timely insights are very important. And the comparison when it comes,
becomes a stronger way of. So यहाँ पर क्या बोलता है, startups led by founders who act on timely market insights, they regularly outperform better funded rivals who focus on accumulating scarce visible resources. That means if I compare two people or two entities, the one who are accumulating rare resources and the ones who are actually using timely insights, then the author says that startups led by founders who act on timely insights, they regularly outperform, not occasionally but regularly. देखो ये if true है तो इसमें extreme का फंडा नहीं आएगा, आपका स्कोप के अंदर है, if true है तो so regularly is not, किसी ने कहा regularly extreme है, अरे यार इन्फ्रेंस में हम देखते हैं. Did you understand? So this comparison that those who are focusing on accumulating resources are outperformed by those who act on timely market insights means competitive market में ये जो author ने बोला है ये argument से relevant हो जाता है. Yes or no? That's why option D, though it is very positive, is not having any comparative tone to it. That's the reason why it goes out. Otherwise काम तो वो भी कर रहा है. But author ने जो argument है ना, argument एक comparison है. That there are those who are having valuable resources with them and there are those who are having the insights with them. But then the insights are priced much more. है ना? That is what the conclusion is. And option A comes and gives you additional evidence. It says that जिसके पास insights होता है वो outperform भी कर रहा है. So this comes and adds to the argument. एक मिनट, सी पे कंपनीज विद स्टडी एक्सेस टू रेयर कैन स्टिल सफर फाइनेंशियल, ऑप्शन सी, companies with steady access to rare earth can still suffer financial losses if they fail to anticipate shifts in customer demand. I would want the word insights is a better word, you know, comprehensive है ना. I mean customer demand is one small. I would rather use the word market insights. Market insight में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. Customer demand, innovation, change in this, you know, marketing techniques, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. Only customer demand इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत नैरो हो जाता है ना, बहुत नैरो हो जाता है. A is better in fact, wider, because market insights is starts tech firms that possess abundant. नहीं ठीक है, वो तो कोई इश्यू नहीं है. मुझे लगता है टेक फर्म्स ठीक है, टेक फर्म्स है, कोई और फर्म है, स्टार्टअप एंड टेक फर्म को लेकर कोई इश्यू तो नहीं होना चाहिए. मे बी टेक फर्म्स आर ओल्डर, मे बी स्टार्टअप्स आर न्यू, बट ठीक है. मतलब क्या स्कोर रहा सबका आज? टुडे द सेशन वाज, आई थिंक मुझे लगा थोड़ा सा क्वेश्चंस इजी हो गए थे ना, बट ठीक है. In comparison to what we have been doing in the class, this is a little shade easier, but ठीक है. मतलब हाँ, टेक फर्म तो देखो, टेक फर्म नैरो है, बट मुझे मेन क्या है ना कि सी द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट कंपनीज दैट एक्यूमुलेट रिसोर्सेज vis-a-vis कंपनीज दैट यू नो टेक कंपनीज दैट वैल्यू इनसाइट्स. तो वो टेक फर्म हो या कोई ऐसा फर्म हो या कोई स्टार्टअप हो, वो थोड़ा ठीक है. मतलब दैट इज़ नॉट द पॉइंट, बोन ऑफ कंटेंशन. आज तो लोगों ने फोड़ दिया एकदम. मतलब मुझे लग रहा है कि पीपल हैव डन रियली वेल. एंड दोज हु ठीक है सर, अच्छे क्वेश्चंस के लिए कोर्स खरीदा था होगा सब. नहीं, बहुत डिफिकल्ट भी होता है तो फिर क्या होता है ना कि फिर बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं. ये भी समझो इस बात को. When you get very high difficulty question, 3 क्वेश्चन आप डिस्कस करो 1 घंटे में, क्या फायदा है कि नहीं. So it is not a good idea always कि आप बहुत सारे क्वेश्चन टफ लेके आ जाओ, उसके बाद में आपसे सिर्फ 2 बने तो फिर आप रोने लगो. You should have on certain days easy question, certain days difficult, but most of the time आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको मिक्स्ड बैग लेना चाहिए. दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस. जब क्वेश्चंस आपके मिक्स्ड बैग के होते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ठीक है, चलो देन, आई होप यू ऑल गॉट समथिंग आउट ऑफ इट, है ना, समथिंग वर्थ. चलो देन गाइज, है ना, अभी एक और सेशन है
फाइनल है ना, यहाँ तक बैठे हो तो एक और बैठ जाओ, ठीक है। Thank you, thanks everyone. All these questions are easy to moderate, nothing very difficult. Thanks Priyansh. All these questions are easy to moderate, कोई भी बहुत difficult नहीं है except maybe one or so. चलो बाय, अभी वापस डांस होने वाला है तो ठीक है। गुड बाय एवरीवन, एंजॉय योर डे, है ना। सो लॉट ऑफ गाइज आर टॉकिंग आउटसाइड अभी कि सर अच्छा लग रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। सो एक छोटा सा बताता हूँ एक चीज़, एक बहुत फेमस यूट्यूब वीडियो है, आपने शायद देखा नहीं होगा, ठीक है। उसमें ना एक कोच होता है एंड एक रेस का कंपटीशन होता है, ओके। एंड जब वो रेस का कंपटीशन था ना, सो इन दैट सबने ना बोला तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो जाओ, तुम वहाँ खड़े हो, ऐसे खड़े हो जाओ। सो ऑल वे वेरी कंफ्यूज कि क्या कर रहे हैं, रेस करना है ना, तो रेस तो हम लोग करेंगे, अभी सब सेम लाइन होना चाहिए। तो व्हाट ही सेड कि इजंट दिस लाइफ, कि लाइफ में सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग नहीं होता है क्या, और लाइफ में सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग नहीं होता है क्या। तो दैट इज अ वेरी डीप थिंग एक्चुअली में, और यही चीज़ यहाँ पे भी हमारे साथ है, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ द पीपल, आप लोगों को लगेगा कि बहुत लोगों को लगेगा सर उनको IIM अहमदाबाद मिला तो उनको SP जान मिला, तो सर मुझे IIM रांची मिला, या सर मुझे ये मिला वो मिला, राइट। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ सक्सेस, ओके। यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, कि ये चीज़ आप लोग सबको इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नेवर एवर फील दैट यू आर लिटिल लेस। और हमें देखो, इवन देर आर मोर गुड कॉलेजेस, बट हमें कहीं ना कहीं कैप तो लगाना है ना, ठीक है, ये इवेंट करने के लिए, राइट। बट डजेंट मीन दैट वी डोंट रिस्पेक्ट। सो आई रिस्पेक्ट लॉट ऑफ पीपल, और बहुत हम क्या पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है जो हार्ड वर्क करता है, राइट। सो बेसिकली सबका स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, सबके लिए सक्सेस का मीनिंग अलग है। समबडी हु इज ऑलरेडी इन IIT, उसको एक बार सक्सेस मिल चुका है, नाउ ही वांट्स IIM ABC, और ही और शी वांट IIM ABC। हाँ, आई हैव समबडी राइट नाउ, उसको कैट में 20 से 24 परसेंटाइल था, ओके। एंड उसकी मदर जो है वो गोलगप्पा सेल करती हैं, ठीक है, फादर जो है पार्चून का शॉप चलाते हैं, ठीक है, एंड ही इज गोइंग टू लेट्स से IIM काशीपुर राइट नाउ, ओके। तो ये भी एक सक्सेस है ना यार, ऐसी फैमिली से अगर कोई IIM पहुंच जाता है तो उसकी भी सक्सेस है ना ये, ओके। सो नेवर एवर एवर अंडरमाइन, डोंट नेवर नो, यू डोंट नो कि आगे क्या हो सकता है। मैंने बताया पहले क्लास में दैट आई वाज स्टूडेंट इन 2022 पास आउट, IIM उदयपुर, उस समय उतना अच्छा नहीं हुआ करता था, ठीक है, एंड ही वाज द सन ऑफ अ न्यूज़पेपर सेलर। उसने IIM उदयपुर में एडमिशन लिया, ठीक है, एंड उसने वो 2 साल MBA किया, उसने साथ में CFA L1 L2 क्लियर किया, ठीक है, एंड ही केम आउट द पैकेज ऑफ 32 LPA, IIM उदयपुर से, समझ रहे हो। फादर न्यूज़पेपर सेल करते थे, समझ रहे हो। दैट इज द काइंड ऑफ, तुम बोलोगे सर IIM उदयपुर क्या, तो कोई सक्सेस थोड़ी है सक्सेस कॉलेज है, पहले भी अच्छा कॉलेज था, बट हर एक पर्सन के लिए सक्सेस का मीनिंग डिफरेंट है, बिकॉज सबका स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट होता है, राइट। समबडी has a good family background, they get less risk in life, okay. So let's everyone, and basically a huge round of applause for all of you, सबको अपने लिए clap करो, ठीक है। So all this thing, yeah. हाँ, Divya is from as our pre-MBA का mentor है, इसने बैचलर के लिए इनिशिएटिव लिया था, and he has just passed out from IIM Ahmedabad, McKinsey ज्वाइन करा ना, McKinsey is joining right now, okay. So thank you sir, thank you for the introduction. So this is not a speech, this is more like a letter to myself. So this is a letter to myself 2 years younger. So the first thing, your MBA is going to be like a mela, a fair. You're going to go there and it is going to get over in 2 years. That is in साथ में CFA L1 L2 क्लियर किया, ठीक है, एंड ही केम आउट द पैकेज ऑफ 32 LPA, IIM उदयपुर से, समझ रहे हो। फादर न्यूज़पेपर सेल करते थे, समझ रहे हो। दैट इज द काइंड ऑफ, तुम बोलोगे सर IIM उदयपुर क्या, तो कोई सक्सेस थोड़ी है सक्सेस। अभी भी अच्छा कॉलेज है, पहले भी अच्छा कॉलेज था, बट हर एक पर्सन के लिए सक्सेस का मीनिंग डिफरेंट है, बिकॉज सबका स्टार्टिंग लाइन डिफरेंट होता है, राइट। समबडी हैज अ गुड फैमिली बैकग्राउंड, दे कैन टेक मोर रिस्क इन लाइफ। somebody has not a good family background, they can take very less risk in life, okay. So let's respect everybody, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। You never know कि 2 साल 3 साल बाद आप लोग क्या करोगे, कितना अच्छा करोगे, किसी को नहीं आइडिया, ओके। सो फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट अमंग योरसेल्फ कि आपने कोई अच्छा अचीव किया है, ठीक है।
स्टार्टिंग बाहर लोग जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आप जिस कॉलेज के पास आए हो वहाँ के टॉप 20 एटलीस्ट कम से कम टॉप 20% ले लो, ठीक है, जो भी कॉलेज आप अभी कन्वर्ट किए हो, उस कॉलेज के टॉप 20-25% का एवरेज पैकेज मिनिमम 22 से 25 LP है, ओके, और बाहर अभी 3 LP की जॉब नहीं लग रही किसी को, तो ये आपने एक बहुत अच्छा जंप लिया है, राइट। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि आपका ये आप स्टार्टिंग पॉइंट को कितना आगे ले जाते हो, ओके। सो इफ यू आर नॉट गुड फाइनेंशियली एंड अगर आप बैच के वहाँ जाके बैच के बिल्कुल लास्ट 10% में हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, राइट। यू हैव टू बी इन टॉप 20%, टॉप 30%, गेट अ गुड पैकेज, एक अच्छा फाइनेंशियल स्टार्ट बनाना पड़ेगा, फाइनेंशियल हर्डल कम करना पड़ेगा, एंड देन 10 years डाउन द लाइन आप एक अच्छा रिस्क लेने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे, हाँ भाई हम रिस्क ले सकते हैं, आई माई ड्रीम ऑफ स्टार्टिंग सम एंटरप्रेन्योरशिप, सम कंपनी कर सकते हैं, बट वो हसल का पार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, सो लेट्स रिस्पेक्ट एवरीवन एंड बेसिकली a huge round of applause for all of you. सबको अपने लिए क्लैप करो, ठीक है। So all this thing, yeah. हाँ, दिव्या is from as our pre-MBA का mentor है, इसने बैचों के लिए इनिशिएटिव लिया था, and he has just passed out from IIM Ahmedabad. McKinsey ज्वाइन करा ना, McKinsey is joining right now, okay. So Thank you, sir. Thank you for the introduction. So this is not a speech. This is more like a letter to myself. So this is a letter to myself 2 years younger. So the first thing, your MBA is going to be like a mela, a fair. You're going to go there and it is going to get over in 2 years. That is inevitable. Your MBA is going to get over in 2 years. And 2 years down the line, if you are someone who will be standing here, you will want to go back to the time. And I envy all of you. I'm jealous of all of you who are about to start your MBA, because your MBA is the most amazing 2 years that you are going to have. Ab isme there will be a lot of struggle, there will be a lot of sleepless night, there will be a lot of things that you will perhaps not enjoy. But more than that, afterwards, when you will look back at your time, this will be the most beautiful and the most cherished time that you will want to go back to. So my message to my younger self would be that make the most out of it. Because जो मेले के साथ होता है ना कि मेला आप जाते हो वो खत्म हो सकता है और वो खत्म होगा, ये इनएविटेबल है. The only thing is कि कितना आप उसमें बाहर के बारे में सोच रहे हो, कितना आप ये सोच रहे हो कि MBA के बाद क्या होगा, और उसी में अपना आप अगर मेला निकाल दोगे तो you'll not make the most out of it. So in your MBA, what you need to do is to live one day at a time, one moment at a time, and you will make the most out of it. Second, and the most important aspect, I went into an MBA school as a lawyer, and I was afraid of a lot of things. Quant कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा. But one thing that I realized was that MBA or post-MBA jobs were not about these hard skills. This was about one very core skill, and that is about people. You will meet a lot of people. Abhi, most of you have come from a UG background, जहाँ पर आप लोग जब गए थे, तो you were in your 12th. You went and became like the most of the other people there were, and most of them were like you. But in an MBA college, you will have people who are completely different, who have come from a completely different UG background, who have done something different in life, who have done probably a work that you have probably never heard of. And my message will be, please, please, please learn as much from your friends, your roommates, your colleagues as much as you can. MBA में जितनी learning class में होती है, उससे कहीं ज़्यादा learning बाहर जाकर के होती है. And it will be up to you कि अब आप क्लास में कितना समय बिताते हो, क्लास के बाहर कितना समय बिताते हो. Not to say कि क्लास में समय नहीं बिताना है, but क्लास के बाहर भी थोड़ा बहुत समय प्लीज बिता लेना. उसके अलावा the final thing will be कि अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी काफ़ी कुछ होना बाकी है. So I'm not sure what all your aspirations are, and I'm not sure whether you will meet them or not, but I'm sure you're going to have an amazing journey. And I am really rooting for you, because I know you, all of you, really want me to end this speech right now. But my message will be कि please make the most out of this 2 year, क्योंकि 2 साल बाद जब आप यहाँ पे खड़े होगे तो आपको मेरी तरह regret नहीं होना चाहिए कि शायद वो 2 साल वापस से जीने को मिल जाए. Thank you. And with this, boys and girls, we start off with the reward part, the recognition part, and we want to share it with the world
और हम शुरू करने वाले हैं. Are we all excited? Can I hear some excitement? Hi guys, welcome to Rodha and welcome to this very special last leg of Rodha VARC marathon. आज की मैराथन सुबह से चल रही है. आई सी अ लॉट ऑफ यू आर ज्वाइनिंग इन दिस मैराथन लाइव एंड आई एम वेरी ग्लैड टू सी दैट सो मेनी ऑफ यू हैव डन एक्सीलेंट सो फार टुडे. लेकिन जैसा कि होता है हर मैराथन में कि लास्ट में आते आते हम सब लोग काफ़ी थक चुके होते हैं. आई हैव नेवर रन अ मैराथन बट आई हैव हर्ड इट फ्रॉम अदर्स दैट मैराथन्स आर डिफिकल्ट थिंग्स एंड टुडे यू कैन टेल मी हाउ डिफिकल्ट आर यू फाइंडिंग इट. बट लास्ट लेग है, अभी मैराथन पूरी नहीं हुई है, 1.5 घंटा बाकी है बिफोर वी रीच आर फिनिश लाइन एंड आई होप कि हम सब लोग मिलकर के इस फिनिश लाइन पर पहुंचेंगे. आर यू गाइज डूइंग? कैसे हो आप सब लोग? वेलकम टू द क्लास गाइज एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल रोधा VARC मैराथन. जस्ट एक बार कमेंट में मुझे लिख करके बता दो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू प्रॉपर्ली एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू जॉइन ऑल ऑफ यू हियर. आई एम जनरली आई थिंक स्पीकिंग इन अ slightly a louder voice because so is my excitement. Are you there too? How many of you are here? Yes, I see a lot of you. Ankit, Save, Ayush, Utkarsh, Cherry, Manish, Soumya, Ronak, Palak. Yes. All right, thank you so much. I am good and I hope all of you are great as well. चलिए तो शुरुआत करते हैं without any further ado. Rodha VARC marathon. Let me set my phone. Here we go. Yes, okay. All right guys, तो सबसे पहले a lot of you will be joining me live today for the first time. तो let me tell you briefly about myself. मैं कौन हूँ, क्या हूँ, है ना. मेरा नाम दिव्य कुमार गर्ग है, अगर आपने यहाँ पे भी शुरुआत में पढ़ा हो तो. आई एम अ alumni of IIM Ahmedabad. I recently graduated. I have worked with McKinsey and Company, did my summer internship there, got a PPO, worked there for a few months before joining Rodha full time. I am a CAT 99.93 percentiler. And obviously a good part of it is due to a good score in the VARC section where I scored 99.95 percentile once and 99.89 percentile the second time. I've also received my admission offer from 14 different IIMs and I've been able to clear all the interviews. But that was about me, है ना. अब what is the purpose of this session today? तो आज हमारे पास 6 पर्पस हैं इस पूरी मैराथन के, इनफैक्ट इस मैराथन के लास्ट सेशन के. सबसे पहले, how do we prepare for the VARC section? Second, what should be the attempt strategy in the mock? Third, how should we analyze the VARC section? फिर हम एक लाइव सेक्शनल अटेम्प्ट करेंगे, लाइव सेक्शन का एनालिसिस करेंगे और जो कॉमन VARC FAQ आप सारे लोग पूछते हो उन पर भी हम लास्ट में बात करेंगे. आप लोगों को केडी सर का एक शॉर्ट वीडियो याद है जिसमें उन्होंने बोला था कि VARC मैराथन शुरुआत होगी 10 बजे और चलेगी प्रभु इच्छा तक. सो दिस इज़ व्हाट आई इंटेंड टू डू इन टुडेज क्लास, दैट परहैप्स वी आर गोइंग टू क्रॉस द मैराथन बाय 9 PM. ठीक है, ऑल राइट.
शुरुआत करें कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है ना। सबसे पहले जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हमारा कि VARC के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये एक क्वेश्चन है जिसने बहुत सारे लोगों को ट्रबल करा है। तो आज हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे VARC सेक्शन को और समझेंगे व्हाट शुड बी द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट सेंसिबल स्ट्रेटजी। Obviously, preparing for VARC section is a nightmare for a lot of individual, especially ऐसे लोग जो ऐसे किसी बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बचपन से बात नहीं करी है, या वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। और VARC सेक्शन एट द एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो हमारी लैंग्वेज टू टेस्ट करता ही है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट करता है। तो अगर इंग्लिश में हाथ हमारा कमज़ोर है तो ऑटोमेटिकली हमारे VARC में स्कोर कम आने लगते हैं। दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ पीपल, है ना, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो अब इसको कैसे रिजॉल्व करें बिकम्स आर क्वेश्चन। ऑल राइट, यस, ओके, यस। तो देखो, सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द VARC सेक्शन टेस्टिंग। क्या कोई मुझे बता सकता है, आप में से कोई, कि VARC सेक्शन आखिर में टेस्ट क्या करता है? जैसा कि हम सबको पता है, इसका नाम है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। ये दो चीज़ों को टेस्ट करता है ना। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि पहली चीज़ तो सबको पता है कि इट इज़ अबाउट कॉम्प्रहेंशन, ठीक है, ये सब लोगों को पता है। बट देर इज अनोदर थिंग दैट सम ऑफ यू आर पॉइंटिंग आउट, ठीक है। व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग, एंड दैट इज वेरी करेक्ट। ठीक है, तो द VARC सेक्शन टेस्ट योर कॉम्प्रहेंशन, आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है, और दूसरा सिर्फ समझ में ही आ रही है या आप उस पर थोड़ा बहुत सोच करके, समझ करके उसको कहीं पर अप्लाई भी कर सकते हो। तो अगर आपने अपने कॉम्प्रहेंशन पे और क्रिटिकल रीजनिंग पे काम करा तो इसका ये मतलब होगा कि आपका VARC सेक्शन ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जो हमको एस्टेब्लिश करनी होगी कि VARC सेक्शन जो है वो कॉम्प्रहेंशन को, क्रिटिकल रीजनिंग को टेस्ट करता है। अगर ये बात हम मानेंगे तो इसका ये मतलब भी होता है कि इन दोनों चीज़ों को एक एक करके इम्प्रूव कर लिया तो हमारा VARC सेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, फ्यू ऑफ यू आर आस्किंग मी टू स्पीक इन इंग्लिश। All right, I'll try to speak in English at some points during the session. So essentially what we are saying so far is that in order to improve VARC section, we must really understand what are the components that the VARC section is testing. According to me, there are two components that the VARC section is testing. One is comprehension and the second is critical reasoning. Hence, it follows that if you were to improve the comprehension and critical reasoning aspect in your daily life, you would automatically improve the VARC section, but that has to be improved in the English language. It will not matter if you are great at comprehension and critical reasoning in any other language apart from English. That will help, but that will not help as directly in your CAT exam. Okay, yes, so ये मैंने इंग्लिश में बोल दिया। I hope anyone who was asking me to speak in English has gotten satisfaction now. ठीक है, क्लियर है? चलो, तो सवाल ये हो गया ना हमारा कि कैसे कॉम्प्रहेंशन डेवलप होगा, कैसे क्रिटिकल रीजनिंग डेवलप होगी, यही सवाल हो गया। चलो इसको भी समझ लेते हैं। पहले से शुरू करते हैं कॉम्प्रहेंशन से। ऑल राइट, यस, देखो अब यार बात यहाँ पर आती है कि अगर मुझे कॉम्प्रहेंशन डेवलप करना है तो एक बार जरा सोचो, व्हेन यू वर अ लिटिल किड, हाउ डिड यू डेवलप कॉम्प्रहेंशन फॉर विच एवर लैंग्वेज यू लर्न फर्स्ट? फॉर मेनी ऑफ अस दैट लैंग्वेज कुड बी हिंदी, फॉर मेनी अदर्स इट कुड बी मराठी, तमिल, तेलुगु और एनी अदर लैंग्वेज दैट वी स्पीक एट आवर होम। हाउ डिड वी डेवलप इट, है ना? अगर आप देखोगे तो कॉम्प्रहेंशन के दो कॉम्पोनेंट होते हैं। वी आर डीकंस्ट्रक्टिंग एवरीथिंग, है ना, हर कॉम्पोनेंट के अंदर का कॉम्पोनेंट हम लेकर के जा रहे हैं। यस, तो डब्बे के अंदर डब्बा है, और यहाँ पे अभी सौम्यजीत बोल रहे हैं बंगाली। यस, अलग अलग लैंग्वेजेस हो सकती है। तो कॉम्प्रहेंशन जब एक बच्चा शुरुआत करता है अपनी, तो वो दो चीज़ों से सीखता है, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर और दूसरा वोकैबुलरी। यस, तो क्या होगा,
अगर आप एक बच्चे को देखोगे तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोसेस टू सी अ किड गेटिंग रेस्ड। और जब वो बोलना सीखता है तो आप जनरली देखोगे कि वो कुछ कुछ सेंटेंसेस मिमिक करने की कोशिश करता है, जो उसकी मम्मी ने बोला, पापा ने बोला या घर के दूसरे लोगों ने बोला, वो सेंटेंसेस को वो बोलने की कोशिश करता है। द सेम थिंग हैपन्स कि जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको नई नई चीज़ों के शब्दों के मतलब समझ में आने लगते हैं। ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंड ही समटाइम्स आस्क कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है, उस चीज़ का मतलब क्या होता है। और जब वो मीनिंग पूछता है तो धीरे धीरे उसका कॉम्प्रहेंशन ऑफ दैट लैंग्वेज इम्प्रूव्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने VARC में कॉम्प्रहेंशन को इम्प्रूव करना है और अगर मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर 1 और दूसरा वोकैबलरी दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर लिया तो मेरा कॉम्प्रहेंशन इम्प्रूव हो जाएगा। डू यू एग्री विद मी सो फार कि अगर मेरे को कॉम्प्रहेंशन को इम्प्रूव करना है तो मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर और वोकैबलरी को इम्प्रूव कर लिया तो मैं ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इम्प्रूव कर लूँगा। मैं कहाँ से हूँ इस पर काफ़ी सारी बातें चल रही है, लेकिन शायद आप लोग मेरी बातों को कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपका अगर ध्यान चैट की बातों को कॉम्प्रहेंड करने में रह जाएगा तो यहाँ पे कैसे कॉम्प्रहेंड करोगे भाई। ठीक है, तो कितने लोगों को चक दे इंडिया याद है? दिव्य कुमार गर्ग, इंडिया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझना है और वोकैबलरी को समझना है। अब ये चीज़ें कैसे आएगी? सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा सबसे पहले बाय रीडिंग अलॉट। ठीक है, एज यू विल कीप ऑन रीडिंग, जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते रहोगे वैसे वैसे यू विल गेट फेमिलियरिटी विद सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और आपको आगे चल करके उनको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। जैसे एक बच्चे को उसकी जगह पर जो जो चीज़ें बोली जाती है उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर वो अगर सुनता रहता है तो उसको समझने में उसमें आसानी हो जाती है। और अब वोकैबलरी हम कैसे इम्प्रूव करेंगे उसके लिए मैं थोड़ा डिटेल्ड आपको प्लान बताने वाला हूँ 2 मिनट बाद। अब एक और चीज़ ध्यान रखना सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि अगर एक बच्चे को उसके घर पे कोई दुकान है ना, इफ़ दैट पर्सन हैज़ अ बिजनेस एट हिज होम, ही विल ऑब्वियसली गेट बेटर एट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज अराउंड दैट बिजनेस। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक बच्चा एक ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ पर उसके पास एक जनरल स्टोर है, तो वो क्या करेगा, जनरल स्टोर से रिलेटेड जितने सेंटेंसेस होते हैं, जितनी बातें होती है, वो उसको बहुत नेचुरली समझ में आएगी बिकॉज ही इज़ गेटिंग एक्सपोज टू दैट लैंग्वेज अगेन एंड अगेन। बट ही मे नॉट बी दैट कंफर्टेबल व्हेन ही वर टू गो टू अ इंजीनियरिंग वर्कशॉप। वो एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में जाएगा, वहाँ पर कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जो उसने कभी पहले नहीं सुनी है। तो इवन दो ही मे नो द वर्ड्स, है ना, उसको मतलब पता हो उन चीज़ों का, बट उस स्ट्रक्चर में वो नहीं समझ पाएगा। यानी कि हाउ डू वी इम्प्रूव आर कॉम्प्रहेंशन ओवरऑल, नॉट जस्ट बाय रीडिंग बट ऑल्सो फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक तो हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कहाँ से? हम डाइवर्स सोर्सेज से पढ़ेंगे, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरी तरह से इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो हमारी फेमिलियरिटी बढ़ेगी। अब आते हैं हम वोकैबलरी पर। वोकैबलरी को कैसे इम्प्रूव करना है? अच्छा, जब सबसे पहले आप लोगों ने अपनी वोकैबलरी इम्प्रूव करने की कोशिश करी थी, व्हाट डिड यू यूज टू डू? जब बचपन में आप लोगों को चीज़ों के मतलब नहीं पता होते थे, मम्मी पापा ने कुछ नया शब्द बोल दिया जिसका मतलब आपको नहीं पता है, टीवी में कोई नया शब्द सुन लिया जिसका मतलब आपको नहीं पता है, तो आप क्या करते थे? आई एम श्योर आप लोग उस समय डिक्शनरी तो नहीं देखते थे। देयर मस्ट बी समथिंग दैट यू यूज टू डू। व्हाट वाज इट? पूछते थे, है ना, रिलेट कर करके। अनुशिका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जाती थी, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ अनुशिका आपको, व्हेन यू वर 2 year old you used to open the Oxford dictionary, है ना, while you were 3 year old, तब आप पता नहीं क्या करते होंगे, बट जनरली आई हैव सीन दैट पीपल वुड आस्क, है ना। हाँ, आयुष का क्लियर है, हम छोड़ देते थे तब, नहीं समझ में आ रहा है, जीवन में वैसे भी बड़े हो जाएंगे, इतना लोड होने वाला है, तो बचपन में क्यों लोड लेना और शब्दों का, जो समझ में आ रहा है वहाँ तक ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो ठीक है, ठीक है, यस। अब देखो यार, क्या सेम चीज़ हम कर सकते हैं? कैन वी स्टार्ट आस्किंग समवन? तो यस, डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट आस्किंग समवन, लेकिन अच्छे तरीके क्या होंगे वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए?
तो वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप प्लान बता सकता हूँ। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए एक किताब का करना विच इज़ नोन एज वर्ड पावर मेड ईजी। वर्ड पावर मेड ईजी इज़ अ वेरी फेमस बुक। ये लाल कलर की कवर में किताब आती है और ये एक ऐसी किताब है जो मैंने खुद ने 2014 में आई वेंट थ्रू दिस बुक एंड इट इम्प्रूव्ड माई वोकेबलरी सिग्निफिकेंटली एंड एवरी ईयर मिलियंस ऑफ पीपल स्टिल, है ना, दिस बुक वॉज रिटन लॉन्ग बैक, बट आज भी लाखों लोग इस बुक को रेफर करते हैं टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी। इस बुक में 47 सेशंस है और आप अगर हर सेशन को एक दिन भी लगाते हो तो अगले 47 डेज में आप एक किताब को कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि दिवाली तक आपकी वोकेबलरी चेंज हो सकती है, इम्प्रूव हो सकती है। तो जो आयुष मोदी जो ध्यान ही नहीं देता ना शब्दों पे, वो जब पैसेजेस पढ़ेगा तो कई सारी चीज़ों की जिनको मतलब उनको नहीं पता है वो भी उसको पता होंगे। ठीक है, अब इस बुक के साथ एक दिक्कत है कि शुरुआत के 5 सेशन इसके थोड़े से बोरिंग है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा मोमेंटम लेकर के आना पड़ेगा और ये एक टारगेट बनाना होगा कि आई विल डू दिस बुक एवरी डे। हर दिन मैं इस किताब को करूँगा, एक सेशन में करूँगा। और अगर आपने एक सेशन 5 दिन तक कर लिया तो धीरे धीरे आप 47 सेशन भी कंप्लीट कर लोगे एंड यू विल स्टार्ट नोटिसिंग अ डिफरेंस। आई स्टार्टेड नोटिसिंग अ डिफरेंस इन माई वोकेबलरी फ्रॉम द 5th सेशन ऑनवर्ड्स। 5वें सेशन के बाद मुझे जो बुक में जो शब्द सिखाए गए थे ना, वो शब्द दिखने लगे थे अलग अलग पैसेजेस में, तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो आपको भी ये फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो यस प्रियंका, आई नो कि आपने 3 सेशन करे और उसके बाद स्टॉप कर दिया, तो ये गलती मत करो यार, प्लीज़ स्टार्ट डूइंग दिस। ठीक है, तो 47 सेशन वर्ड पावर मेड ईजी के करना है। ये बुक इतनी हाईली रिकमेंडेड क्यों है? बिकॉज इट नॉट ओनली टीचेस यू some words but it also teaches you the way to learn the book, to learn vocabulary, and that becomes very interesting and very important for you. ठीक है, तो vocabulary हम ऐसे improve करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। चेरी पूछ रही है उसकी PDF से कर सकते हैं क्या? हाँ यार, हर चीज़ डिजिटली कर सकते हो, PDF से कर सकते हो, उसके YouTube पर वीडियोज़ देख करके कर सकते हो, किसी भी तरह से कर सकते हो। पॉइंट क्या है कि करना है ना। मीन्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते। हाँ, उसमें भी प्रायोरिटी हो सकती है कि आई रादर प्रेफर अ हार्ड कॉपी ऑफ द बुक बिकॉज इट इज़ अ वर्क बुक काइंड ऑफ अ बुक। वहाँ पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी होती है विच इज़ नॉट एज इजी टू डू इन अ PDF फॉर्म। सिमिलरली वीडियोज़ में भी उतना इफेक्टिवली नहीं हो पाता जितना कि एक्चुअल बुक में होता है। ठीक है, चलो, तो गरिमा देखो, अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं बनी है तो कुछ चीज़ें क्या करना होगा, कुछ चीज़ें तो करनी होती है, और कंसिस्टेंसी नहीं बनती है तो खुद को फोर्स करके करनी होती है। बिकॉज देखो, आप जिस भी जर्नी में हो वहाँ पर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सक्सेस कैन नेवर कम बाय डूइंग ईजी थिंग्स, है ना। अगर ईजी थिंग करने से सक्सेस आती तो सबको वो सक्सेस मिलती, और वो सबको सक्सेस मिलती तो वो सक्सेस ही नहीं कहलाती। जैसे कि हम सब लोगों के लिए सांस लेना काफ़ी ईजी है, खाना खाना काफ़ी ईजी है, तो इसको कभी भी हमारी सोसाइटी में सक्सेस नहीं बोला गया। सक्सेस उन चीज़ों को बोला गया जो कम लोग कर पाते हैं बाय डेफिनेशन, है ना। तो दैट एक्सक्लूसिविटी वी कैन ओनली बी मेंटेन इफ़ यू आर रेडी टू पुश योर सेल्फ बियॉन्ड वॉट यू आर करेंटली डूइंग, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, यस, ठीक है। वर्ड पावर मेड ईजी विल बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। सेकेंड will be you will be using your RC passages to improve your vocabulary. ठीक है, every time you are doing your RC passages, जितनी बार आप अपने RC के पैसेजेस कर रहे हो, हर RC पैसेज में आपको देखना कभी 2 वर्ड्स तो कभी 10 वर्ड्स मिलेंगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता है। अब एक तरीका तो हो सकता है कि आप क्या करो ना, आप उन वर्ड्स को मिटा दो, छुपा दो, और उस तरह से आप उनके मीनिंग ही मत देखना, लेकिन ये कोई सस्टेनेबल तरीका नहीं है ना। अगर आपको उन शब्दों का मीनिंग पता होता तो आपको वो RC पैसेज बेहतर समझ में आया होता। तो इसलिए डोंट डू इट ड्यूरिंग वाइल यू आर रीडिंग द RC पैसेज। आप जब RC पैसेज पढ़ रहे हो, जब सॉल्व कर रहे हो, उसको डू इट एज इट इज़, बट वंस यू आर डन सॉल्विंग इट, वंस यू हैव सीन द आंसर्स, देन मार्क ऑल द वर्ड्स दैट यू वर नॉट फेमिलियर विद एंड देन लुक एट देयर मीनिंग। वो मीनिंग आप कहाँ से देखोगे? आइडियली
आई रिकमेंड कि आप उसको एक डिक्शनरी से देखो, ठीक है। यस, अ लॉट ऑफ टाइम्स आयुष इज़ राइट, है ना, कि आप लोग क्या करते हो, कंटेक्चुअली उस चीज़ के मीनिंग को समझ लेते हो, दिस इज़ ग्रेट। और ये फ्लो कहाँ से करती है, ये फ्लो करती है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर से, कि अगर आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है तो इवन व्हेन यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ वर्ड्स यू मे बी एबल टू गेट द जिस्ट आउट ऑफ इट, बट इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, है ना। दिस इज गुड फॉर द डे ऑफ द कैट एग्जाम. Is it good for today when I am preparing? The point of preparation is to be ready. And how do we become ready? By doing things that we are unfamiliar with, right? अगर आज हम ये सोच करके बैठ जाएंगे कि यार इसका कंटेक्चुअल मीनिंग मेरे को समझ में आ गया तो मैं अब नहीं करता हूँ, तो हो सकता है कल किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज़ किया जाए जहाँ पे आपके लिए उसको समझना उतना आसान नहीं हो, और तब आपको ये दुख नहीं होना चाहिए ना कि काश मैंने उस दिन उस वर्ड को देख लिया होता. यस, तो अब क्या करना है, वर्ड पावर में डीजी करना है, आरसी पैसेजेस करना है, और आरसी पैसेजेस को आपको डिक्शनरी से करना है. आई नो कि डिक्शनरी से देखना बड़ा कठिन हो जाता है आप लोगों के लिए. मैंने क्या किया था, अब जब मैं अपनी क्लैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, आई यूज़ टू हैव अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी, और जब भी कोई वर्ड आता था जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता है तो मैं क्या करता था, उस वर्ड को देखता था उस डिक्शनरी के पेज पर और उसको अंडरलाइन कर लिया करता था, ताकि अगली बार जब मैं उस पेज पर आऊँ तो मुझे पता हो कि ये वाला वर्ड भी मैंने पढ़ा है और वो ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाए. मुझे पता है कि ये सब करना और एक्सपेक्ट करना कि आप लोग करोगे थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है ना, क्योंकि शायद आज जितने रिसोर्सेज हमारे पास है और जितना पेशेंस हमारे पास कम है वहाँ पर ये सारी चीज़ें करना शायद उतना पॉसिबल नहीं है. इसलिए डू इट इन एनी अदर ऐप वेयर यू कैन कीप अ रिकॉर्ड, एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आर वोकैब बिल्डिंग एक्सरसाइज. ठीक है, ऑल राइट. व्हाट डू यू हैव टू डू. आप क्या करोगे दोस्तों, आप जिस भी ऐप से अपने वर्ड्स को देख रहे हो वहाँ पे उन वर्ड्स को स्टार मार्क कर दोगे ताकि आपके पास एक लिस्ट ऑटोमेटिक खुद की क्रिएट हो जाए. देखो हाँ, मुझे पता है कि केडी सर ने भी लिस्ट दी है, आपको इंटरनेट पे भी आप सर्च करोगे तो ढेर सारी लिस्ट मिल जाएगी, बट वो लिस्ट जब आपको मिलेगी ना तो वो किसी और की लिस्ट होगी. बेस्ट क्या होगा कि आपकी खुद की लिस्ट बने और ऑर्गेनिकली बने, धीरे धीरे बने. हर दिन आप 2 से 10 वर्ड्स देखोगे, आरसी 4 कर लिए तो 40 वर्ड्स भी हो सकते हैं या 20 वर्ड्स हो सकते हैं, तो हर दिन आपकी एक लिस्ट क्रिएट होती जा रही है. इसके लिए मैं एक ऐप रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, फ्री ऐप है ना, आपको ऐप स्टोर प्ले स्टोर में मिल जाएगा, एंड इट्स कॉल्ड इंग्लिश. मतलब शब्दों की बात कर रहा था वो ऐप और उसको एक खुद के लिए अच्छा शब्द नहीं आया तो उसने अपना नाम इंग्लिश रख लिया. तो ये इंग्लिश ऐप है, इसमें क्या होता है, आप वर्ड की मीनिंग देख सकते हो, और वर्ड के मीनिंग के साथ साथ एक बढ़िया फीचर होता है इसमें कि आप उस जिस भी वर्ड का मीनिंग देख रहे हो ना उसको स्टार कर दो. तो जब आप उसको स्टार कर दोगे तो एक लिस्ट बन जाएगी, और वो लिस्ट आप कभी भी रिविजिट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, या नेक्स्ट टाइम आपने सेम वर्ड देखा जिस पे स्टार था तो आपको पता होगा कि ये वर्ड मैंने कहीं तो देखा है. साथ ही में एक और चीज़ आप क्या करोगे, जब आप आरसी पैसेजेस कर रहे हो और आपको क्या हो गया, आपको ऐसा शब्द दिखे जो आपको नहीं आता था, है ना, और आपने उसको इस इंग्लिश वाली डिक्शनरी से या अपनी डिक्शनरी से या कहीं और से गूगल से करके देख लिया, तब आपको क्या करना है, जस्ट ऑल्सो इमीडिएटली मेक सम सेंटेंसेस आउट ऑफ दैट वर्ड. सो फॉर इंस्टेंस अभी मुदित ने बोला इंट्यूटिव, है ना, आई मे नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंट्यूटिव, but let's say I refer to the dictionary to understand the meaning of the word. But how do I ensure कि मेरे को उस वर्ड का मीनिंग याद रहे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना. यस, कोई और ऐप भी हो सकता है. देखो अगेन, देखो आप लोग सब कंपेयर करोगे कि इन्होंने ये बोला था आप ये बोल रहे हो, सबकी बातें ठीक है ना, सबके मीन्स अलग अलग है, बट असेंशियली उन्होंने क्यों बोला था, उन्होंने तो सिर्फ इसलिए बोला था ना कि आपको मीनिंग पता चले, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो, है ना. तो इट कुड बी एनी अदर डिक्शनरी यार, कोई और डिक्शनरी भी हो सकती है. यस, अब ओके, शिवम जैज ट्रैवलर बोल रहे हैं कि सर मेरे को पूरा इग्नोर कर रहे हैं. देखो शिवम भाई, आप एक तो ट्रैवलर हो, दूसरा आप जैज वगैरह पसंद करते हो, तो मुझे लगा कि इग्नोर करना ही ठीक होगा, क्योंकि अभी ट्रैवल, जैज, म्यूज़िक इनका समय नहीं है. ठीक है, लेकिन कुछ डाउट था आपका, मैं भूल गया हूँ, तो वापस से सॉरी है. आप एक बार जल्दी से आपका डाउट पूछ लो, ठीक है, तो डाउट पूछ लो और मैं बताने की कोशिश करूँगा. लेकिन कई बार ये होता है
कि क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो डाउट रह जाता है, तो हमने उसके लिए लास्ट में कोशिश करी है कि डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से थोड़ा समय निकाला जाए और उसमें सारे डाउट हो जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो देखो यार, कहाँ गए आप? अच्छा आप सर वो मेरे चैनल का नाम है, इसका मतलब नहीं कि मैं ट्रैवल करता पूरे टाइम। दैट्स करेक्ट शिवम, दैट्स करेक्ट, है ना। उत्कर्ष मेरे फ़ोन में तो है, आई विल चेक अगेन, मैं अपना वापस से एक बार ऐप का नाम चेक कर लूँगा। बट द पॉइंट इज़ द ऐप शुड हैव वन बेसिक फंक्शनैलिटी दैट इट मस्ट बी, you must be able to bookmark on that app, है ना। you should be able to bookmark on the app. If you are able to bookmark on the app, then you will be able to revisit your bookmarks again, ठीक है। yes, all right, yes. Now going back again, that even when I understand the meaning of some words, ये मेरे साथ बहुत बार होता है, क्या मैं ऐसा करूँ जिससे वो वर्ड मुझे हमेशा याद रहे? क्योंकि पहले भी आप लोगों ने कई सारे ऐसे वर्ड्स देखे होंगे जिनका मीनिंग आपने देखा हो, लेकिन क्योंकि वो रोज़ आप यूज़ नहीं करते हो, रोज़ आपको दिखते नहीं है, तो आप उनको जनरली भूल जाते हो। एंड दैट इज़ वेरी नेचुरल कि कोई चीज़ को अगर आप यूज़ नहीं करोगे बहुत दिनों तक तो आप उसको भूल जाओगे। अब इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए वी विल नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ टाइम आवर माइंड वॉज एक्टिवली इंगेजिंग विद द वर्ड। आई रिपीट दिस, है ना। इन ऑर्डर टू रिटेन द वर्ड for long, we need to increase the time our mind was actively engaging with the word. How do I do that? I will do that simply by framing sentences around that word. So I was giving you the example of intuitive. अगर मुझे intuitive का मतलब नहीं पता था, then what I'll do, I'll go to the dictionary, search the meaning of intuitive, and then once I have understood what intuitive means, I'll make 2 fresh sentences out of it. So initially, if I were only looking at the meaning of the word, I would spend only 10 seconds with the word. But if I were to make 2 more sentences with the word, तब मैं क्या करूँगा? तब मैं क्या कर लिया मैंने उस पर, है ना, 30 सेकंड बिताए, मतलब मैंने 3x टाइम बिताया उसके साथ। अब मेरी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेंबरिंग इट इंक्रीजेज। अब इससे क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली द अमाउंट ऑफ टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन वोकेबलरी बिल्डिंग इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो इससे हो सकता है कि आपका जो आरसी पैसेज आप पहले 10 मिनट में फिनिश कर लेते थे, उसको पढ़ के समझ के मार्क करके आंसर देख कर सॉल्यूशन पढ़ के वोकेबलरी भी देख लेते थे, है ना, और 10 मिनट में ज़्यादा बोलते थे, 15 मिनट में ख़त्म कर लेते थे। अब क्योंकि आप इसको इस तरह से देखोगे, हर वोकेबलरी के वर्ड्स को सेंटेंसेस बनाओगे, तो हो सकता है 15 की जगह 17 मिनट लगे, बट दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। तो आज ही से, और ये बड़ा कठिन होता है करना, आपको पता है। सेंटेंसेस मन में बनाने, लिखने भी नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, हम मीनिंग देखेंगे वर्ड का। कई सारे लोग तो मीनिंग भी नहीं देखेंगे, लेकिन जो मीनिंग भी देखेगा ना, उसमें से बहुत छोटा सेट होगा पीपल का जो एक्चुअल में उसे सेंटेंसेस बनाएगा, और वहाँ पर आप देखना कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आपने मीनिंग देखा, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, आपने उस मीनिंग को देखने का सेंटेंस बना दिया, यू आर क्रिएटिंग अ लार्जर डिफरेंस। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। बट हम क्या करते हैं, हम कई बार चीज़ों को आसान बनाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, या आलस के चक्कर में ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो आई होप, है ना, मैं होप कर रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करोगे। ऑल राइट, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? कहाँ आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, पक्का आ रहा है? चलो बढ़िया है फिर। ओके। अब यार हमने बात करी थी कि VARC में 2 चीज़ें हैं, कॉम्प्रहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग। तो कॉम्प्रहेंशन में हमने समझा कि वोकेबलरी आ जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा, अलग अलग सोर्सेज से हम पढ़ेंगे तो हमको चीज़ें समझ में आने लगेगी। लेकिन चीज़ें समझ में आए और उसका आप क्वेश्चन कर पाओ, ये सेम चीज़ें नहीं होंगी। अगर आपने कॉम्प्रहेंड कर भी लिया तो इट इज़ पॉसिबल दैट यू आर इवन देन डिस्पाइट कॉम्प्रहेंडिंग यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, एंड दैट इज़ वेयर द रोल ऑफ प्रैक्टिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। है ना, तो इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस: प्रैक्टिस, एनालाइज, इम्प्रूव।
बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है आप सब लोगों का कि दिव्य हम पैसेजेस आरसी के सॉल्व करें या एयन के आर्टिकल पढ़ लें, द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ लें, है ना। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है। मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूँ कि ये जो जनरल रीडिंग है अगर आपको करनी है तो आप तभी करना जब आपके दिन के एक सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ आरसीज हो गए। यू शुड ऑलवेज प्रायोरिटाइजिंग प्रैक्टिस। वाई? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। whenever you are reading an RC, you are reading an RC with a view कि इससे मुझे 4 सवाल आने वाले हैं, तो योर फोकस इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। बट अगर आप उसको एयन का आर्टिकल पढ़ रहे हो, द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ रहे हो या कुछ और पढ़ रहे हो ना, तो उससे आप क्या है कि आपका वो फोकस नहीं होता है। आपको पता है कि इससे कोई सवाल तो आने नहीं वाला, तो दिमाग बीच में 1-2 बार कहीं और भी चला जाता है, किसी और की यादों में भी खो जाता है और हम उसको उतने अच्छे से समझ नहीं पाते और उससे हमको ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है कि यार इंग्लिश ही ख़राब है। हमारी इंग्लिश ख़राब नहीं है, हमारा फोकस थोड़ा ख़राब है। इसके लिए यू शुड डू प्रैक्टिस, ठीक है। अगर आप रीडिंग का टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आई अंडरस्टैंड क्लासेस बहुत होती है, मॉक भी देना है, सेक्शनल्स भी देने हैं, तो प्रायोरिटाइज किसको करना है? प्रैक्टिस को करना है। यानी कि आप हर दिन आरसी की प्रैक्टिस करोगे, है ना। और कैसे करोगे? सेक्शनल से इसको करने वाले हो। अब यहाँ पर आप जब सेक्शनल करोगे तब आपको दिखेगा कि एक तो हो गया कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट कि सेक्शनल ऑलरेडी इंश्योर करेंगे रोधा के सेक्शनल एटलीस्ट कि आपको डाइवर्स सोर्सेज से पैसेज मिले, है ना। वी डू एन एनालिसिस ऑफ ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट हैव कम इन कैट के अलग अलग पेपर्स को हम अलग अलग तरह से एनालाइज करके उस तरह के पैसेजेस, उस तरह की चीज़ें आपको ला करके देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड आई एम श्योर बाकी कोचिंग वाले भी करते होंगे, ऐसा नहीं है कि हम ही कोई तुर्रम खा बैठे हुए हैं जो हम ही कर रहे हैं। एवरीवन मस्ट बी डूइंग इट, ठीक है। तो क्या होगा, सेक्शनल में आपको ये डाइवर्स सोर्सेज से चीज़ें मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा और आई एम श्योर कि आप वोकेबलरी वगैरह करके मतलब उसका कॉम्प्रहेंशन भी इम्प्रूव अपने आप का कर लोगे। बट अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ मिलती है, दोज 4 क्वेश्चंस, वो 4 क्वेश्चंस मिलते हैं ना जो आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। जिस क्वेश्चन को पढ़ के आपके मन में क्वेश्चन आ जाता है अपने आप के बारे में, वो वाले 4 क्वेश्चंस आपको मदद करेंगे आपकी क्रिटिकल रीजनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उन 4 क्वेश्चंस के बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, है ना। तो कैट की एग्ज़ाम में बड़ा 4 से प्रेम है, 4 पैसेजेस देंगे, उनमें 4 क्वेश्चन दे देंगे, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दे देंगे, है ना। और हर क्वेश्चन, हर ऑप्शन को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में 4 बातें तो आ ही जाती है कि क्या कहेंगे 4 लोग। अब ये जो 4 ऑप्शंस हैं ये क्या करेंगे, वेन एवर यू विल रेफर टू देम, इन क्वेश्चंस को आप रेफर करोगे, यू विल रियलाइज कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपने जो समझा था वो शायद इस क्वेश्चन में तो कवर नहीं हो रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपके समझने में तो कवर नहीं हो पा रहा है। जब आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली योर क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट विल ऑल्सो इम्प्रूव, बिकॉज यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द गैप्स इन योर कॉम्प्रहेंशन। अगर मान लो, देखो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आपके सामने एक क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन आकर के या तो उसका आंसर आपको आता है ना, क्लियर है आपके दिमाग में, या उसका आंसर नहीं आता है। आंसर आता है इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ना जिस पार्ट से रिलेटेड है वो हम कॉम्प्रहेंड कर पाए। नहीं आता है इसका मतलब है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई गैप रह गया था, राइट गाइस, कि हमारी अंडरस्टैंडिंग में क्या था, कुछ गैप तो रह गया था, और वो जो गैप रह गया था वही तो हमको कवर करना है ताकि हमारा कॉम्प्रहेंशन धीरे 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 करके इम्प्रूव हो जाए। तो सेक्शनल से हमको ये फ़ायदा होता है। इसके बाद ऑब्वियस है कि एक होता है क्वेश्चन आना, एक होता है क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन दूसरा एक और चीज़ होती है क्वेश्चन आना मगर गलत हो जाना, और ये बड़ा बुरा होता है। और यहाँ पे हमारा एनालिसिस हमारे काम आता है। क्वेश्चन आता था, लगता था कि आता है, समझ में भी आ रहा था, लेकिन धोखा दे गया वो क्वेश्चन, है ना। अब देखो कई सारे लोगों को धोखे की आदत होती है, देने की नहीं, धोखा मिलने की, लेकिन जब भी मिलता है बुरा तो लगता है। तो अब भाई धोखा मिलेगा तो बुरा लगेगा, और अगर यहाँ पे धोखा मिला तो कैट में तो MBA कॉलेज पूरा ना हमको ख़राब मिलेगा। इसके लिए आपको ये देखना है कि क्या आप जो सोच रहे थे, अगर आपने A को मार्क किया तो देयर मस्ट बी समथिंग यू मस्ट बी थिंकिंग, है ना। अगर वो गलत हुआ है तो आपको ये भी पता होगा कि देयर मस्ट हैव बीन सम अदर ऑप्शन दैट यू आर डाउटफुल एट,
लेट्स से इट वाज ऑप्शन बी, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक तो ए जो है वो गलत क्यों है। भले ही आपने मार्क किया है लेकिन मार्क करने के बाद वो गलत है ना, तो वो गलत क्यों है वो आपको उसका सोल्यूशन देख करके समझ में आएगा कि ये मैं सोच रहा था लेकिन ये मैंने गलत कर लिया। गलत क्या हो सकता है, या तो मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया या मैंने ऑप्शन गलत पढ़ लिया, है ना, या मैं पढ़ा तो सही समझा गलत, यही चीज़ें हो सकती है। तो ये आपको सेक्शनल सोल्यूशन से समझ में आएगी। और इसके लिए ना सिर्फ आपको वो सारे ऑप्शंस देखने हैं जो सही आंसर है, बल्कि आपको वो सारे ऑप्शंस भी देखने हैं जो आपने मार्क किए थे लेकिन गलत निकले, ताकि आपको समझ में आए कि जो आप मार्क करके आए हो, जो आप सोच रहे थे, उसमें वेयर वॉज दैट गैप इन अंडरस्टैंडिंग। एंड देन यू विल स्टार्ट noting them down. Note down your mistakes. Again, the hardest part of everything. नहीं होता किसी से भी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना, बहुत कठिन है मिस्टेक्स को नोट डाउन करना। तो अब आपको क्या करना है, अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है, और मिस्टेक्स को नोट डाउन करने के बाद अगली बार जब आप सेक्शनल देने जाओगे तो अपनी मिस्टेक्स को पढ़ के जाओगे, तो आप देखना ऑटोमेटिकली आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा। अब जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पर कही है आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होगा, यू हैव टू डू इट फॉर ईच क्वेश्चन दैट वाज इनकरेक्ट कृष्णा, ठीक है, यू डू नॉट हैव टू डू इट फॉर ऑल द करेक्ट क्वेश्चंस, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू विल रियलाइज दैट देयर आर कॉमनैलिटीज, that you have been committing the same mistakes over and over again. So you have to make that mistake log not question wise but mistake wise, that this is the mistake that I am committing, and you will realize when you will read the solution. Maybe you have marked option A, but you realize when you are reading the solution that A was an overgeneralization. So you will then note down that overgeneralization is one of my mistake, कि मैं कभी कभी overgeneralize कर देता हूँ, ठीक है। और देखो, अब आपने मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लिया, लेकिन वो मिस्टेक्स अगर आप उनसे कुछ सीखोगे नहीं ना तो कोई काम की नहीं है। तो आपको क्या करना है, अगले सेक्शनल देने से पहले अपनी उन मिस्टेक्स को पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ने के बाद ही सेक्शनल देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी क्रिटिकल रीजनिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बार बार उन क्वेश्चन से एनकाउंटर करोगे अपने आप का। एंड नथिंग इम्प्रूव्स एज मच एज प्रैक्टिस डज। प्रैक्टिस से बेहतर कोई और आपको नहीं सिखा सकता। तो आपको जाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। सेक्शनल बेस्ट तरीका है क्योंकि वो टाइम्ड प्रैक्टिस होती है ना। लेकिन इसके अलावा क्या तरीका हो सकता है, इसके अलावा क्लासेस हो सकती है जिसमें आप फैकल्टी के साथ मिल करके कर रहे हो। तो आप जो सोच रहे हो फैकल्टी इमीडिएट बेसिस पे आपको करेक्ट कर सकती है। लेकिन सेक्शनल ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है क्योंकि एक लाइव क्लास जो हो रही है उसमें बहुत सारे और स्टूडेंट्स हैं और आप अपनी पेस पे नहीं कर पा रहे हो। तो यू मे बी फास्टर देन अदर्स एंड हेंस यू हैव टू वेट फॉर अदर्स। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। बट अगेन क्लास इज एन एक्सेलेंट वे बिकॉज वहाँ पे हमको कोई समझा रहा है। तो इफ़ यू आर एट द इनिशियल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन यू मे प्रायोरिटाइज क्लासेस। बट इफ़ यू हैव लेट्स से डन 100 RCs ऑलरेडी, तब आपको क्या करना है, सेक्शनल पर ज़्यादा फोकस करना होगा एंड दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या बात करा, हमने ये देखा कि VARC में कॉम्प्रहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट होती है। कॉम्प्रहेंशन हम कैसे इंप्रूव करेंगे और क्रिटिकल रीजनिंग हम कैसे इंप्रूव करोगे, और ये दो चीज़ें आपने इंप्रूव कर ली तो आपका ऑटोमेटिकली यू विल रियलाइज यू आर इम्प्रूविंग योर एंटायर VARC सेक्शन। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस गाइस, कुछ 800 से 1000 वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग से आप एक्सपोज हो गए ना तो आपके लिए VARC बहुत आसान हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। क्योंकि कई बार VARC सेक्शन में पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, पॉलिटी के पैसेजेस आते हैं, फिलोसॉफी के पैसेजेस आते हैं, और उन चीज़ों से हमारा उतना एक्सपोजर नहीं है। इट इज़ सेम लाइक दैट किड जो कि एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिसके यहाँ जनरल स्टोर था। जब वो इंजीनियरिंग वर्कशॉप में गया तो उसको चीज़ें समझ में नहीं आई क्योंकि उसको उसकी फेमिलियरिटी नहीं थी, और उसने जैसे जैसे फेमिलियरिटी बिल्ड करी वो वहाँ पर भी एक्सेल करने लगा। एंड द सेम सिचुएशन विल हैपन टू यू। Now, while this is applicable to RC kind of question, it is also equally applicable to all other kind of questions. कैट को अगर आप रिसेंट एनालिसिस करोगे तो अभी हमने देखा है कि कैट ने ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछना बंद कर दिए। व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट कैट इज आस्किंग? ठीक है, VA में दे आर आस्किंग पैरा समरी। ठीक है, ये क्या टेस्ट कर रहा है, आपका कॉम्प्रहेंशन टेस्ट कर रहा है पूरी तरह से। यस, फिर आप देखोगे कि ऑड सेंटेंस आउट है ना, कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है, चेक आपका सेंटेंस या पैराग्राफ स्ट्रक्चर
टेस्ट कर रहा है कि किस चीज़ से थीम नहीं बैठ रही है। ऑलराइट, इसके अलावा पैरा जंबल्स होते हैं। अगेन यहाँ पे सेंटेंस पैरा स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस कहाँ पे फिट होगा, ये भी सेंटेंस और पैरा स्ट्रक्चर ही आपके आ रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि कॉम्प्रहेंशन, पैरा समरी चेक कर रही है, आरसी चेक कर रहे हैं, बट ये बाकी जो है ना, ये सेंटेंस और पैरा स्ट्रक्चर आपके हो रहे हैं। और इन सबको देखो, दो ही तरीके, रीड अ लॉट फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज एंड प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगे, लेकिन सिर्फ क्या प्रैक्टिस करने से इंप्रूव होगे? नहीं, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको उनका एनालिसिस भी करना होगा और उससे इंप्रूव होगे, ठीक है। अब सवाल आता है कि ये सारी चीज़ें तो थ्योरी की थी, बड़ा अच्छा लगा सुन करके, लेकिन काम की बात करते हैं। आप ये बताओ कि करना क्या होगा। आप तो टारगेट दे दो हमको और हम वो टारगेट कर लेंगे और उस टारगेट से बढ़िया सक्सेसफुल हो जाएंगे और बढ़िया बढ़िया कॉलेज में हम जाएंगे, ठीक है। तो इन पे भी बात कर लेते हैं कि क्या करना होगा आपको, किस तरह के टारगेट्स होने चाहिए आपके। यस, कलर चेंज करते हैं, अब बहुत देर हो गई था सेम कलर से। यस, देखो, आई विल रेकमेंड एट दिस पॉइंट, इफ टाइम परमिट्स, you should be doing at least one sectional per day. ठीक है, ये आप करोगे, 40 मिनट का सेक्शनल दोगे, उसके बाद उसका एनालिसिस करोगे और इम्प्रूव भी उसको करोगे। तो वन सेक्शनल पर डे, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग एवरी डे स्टार्टिंग नाउ। अगर आज देखो लगभग 100 डेज बाकी हैं और आपने 100 सेक्शनल कर लिए, तो you would have done 4,000 questions. Do you realize this? एक सेक्शनल हर दिन कर लिया आपने तो आपकी 4,000 क्वेश्चंस हो जाएंगे। दिस यू हैव टू डू, ठीक है। इफ यू हैव नॉट डन वर्ड पावर मेड इजी, वन सेशन पर डे, ठीक है, समझ में आ रहा है? यस, आनिया टॉपिक टेस्ट दे दो, बट अगर आपका सेक्शनल टेस्ट हो गया है तो, सेक्शनल टेस्ट हो गया है तो टॉपिक टेस्ट देना। अच्छा हाँ, सॉरी, यू वर करेक्ट कृष्णा, मेरे को 40 क्वेश्चन ध्यान रहेगा, इट इज़ 24 क्वेश्चन। यस 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 यस, 2400 क्वेश्चन हो जाएंगे। वर्ड पावर मेड इजी करोगे आप, और उसके अलावा, ठीक है, आप एटलीस्ट इंश्योर करना कि यू आर डूइंग 20 न्यू वर्ड्स एवरी डे। और वो कैसे करोगे? इट विल ओनली फ्लो फ्रॉम योर सेक्शनल ओनली। आपको 20 नए वर्ड्स हर दिन मिलेंगे, ठीक है। अब क्या हो, किसी दिन 20 वर्ड्स आपको नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं यार, ये तो अच्छी बात है कि अब आप इस स्टेज पे पहुंच गए हो कि आपको 20 वर्ड्स नहीं मिल रहे। बट आई एम क्वाइट श्योर कि अभी आप जिस स्टेज पे होंगे, फॉर मोस्ट एस्पिरेंट, मोस्ट एवरेज एस्पिरेंट वुड फाइंड 20 न्यू वर्ड्स एवरी डे। एंड इफ यू वर टू फाइंड 20 न्यू वर्ड्स एवरी डे, बाय द एंड ऑफ कैट प्रिपरेशन यू वुड हैव 2000 न्यू वर्ड्स। इतने होंगे नहीं क्योंकि फिर रिपीट होने लग जाएगा, बट दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट नंबर। ये आपके बढ़िया ग्रेट नंबर हो जाएगा। अच्छा, जतिन, इट्स नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज डू वीडियो एनालिसिस, है ना। आप सेक्शनल के टेक्स्ट सॉल्यूशन से भी समझ सकते हो। बट केडी सर सेज टू गिव एंड कंप्लीट टॉपिक टेस्ट फर्स्ट। हरिप्रिया, देखो, यस, सबकी रिकमेंडेशंस अलग अलग होती हैं। आई प्रेफर डूइंग सेक्शनल टेस्ट फर्स्ट, है ना। यस, येट्स किड्स टीवी, व्हेन विल द बैच फॉर कैट 2026 स्टार्ट? इट विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। सब पोर्टल पे मीडियम आरसी कंप्लीट करने के बाद दे रहे हैं सेक्शनल। उत्कर, मैं कहूँगा कि आप शुरुआत से देख सकते हो सेक्शनल, ठीक है। देखो, अ लॉट ऑफ टाइम्स फैकल्टीज डू सजेस्ट कि आप पहले टॉपिक टेस्ट कर लो, उसके बाद सेक्शनल करना। अब आप उसके पीछे का रीज़न समझना कि वाई डू फैकल्टी से दिस, है ना। वो इसलिए कहते हैं कि मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर सेक्शनल येट, कि अगर सेक्शनल में आपका कम स्कोर आएगा तो आप लोग क्या करोगे? घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे। बट आई एम अज्यूमिंग कि अब आप लोग, क्योंकि सिर्फ 3 महीने बचे हैं आपकी कैट प्रिपरेशन को, है ना, कैट की एग्ज़ाम को, तब आप लोग इस स्टेज पे आ गए हो कि अब अगर आपको कम स्कोर भी आता है तो यू सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप कुछ ऐसे लोग हों कि आपको कम स्कोर आएगा, सेक्शनल टेस्ट में 8 का स्कोर आ गया, 6 का स्कोर आ गया, 5 का स्कोर आ गया, और उसको देख करके आप घबरा जाओगे और प्रिपरेशन करना बंद कर दोगे, 2 दिन सदमे में चले जाओगे, है ना, तो फिर आपको समझ में आ रहा है वेयर आर दिस फैकल्टीज कमिंग फ्रॉम।
ठीक है। तो सेक्शनल यस इट इज़ टू बी डन, बट कैसे करना है वो आपको देखना होगा। ऑल राइट, समझ में आया आप लोगों को? तो स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है VARC हम कैसे करेंगे? यस, ऑल राइट। नाउ मूविंग टू द व्हाट शुड बी द अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी इन द मॉक। मॉक में हमारी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए? यस आयुष, देखो आप बोल रहे हो कि मुझे तो 1 नंबर भी आया है, और मुझे भी पता है कि आपने बचपन से एक आदत थी कि नए वर्ड आप सीखते ही नहीं थे ना, आप तो ध्यान ही नहीं देते थे, कोई शब्द नहीं समझ में आया तो पूछा ही नहीं। फिर मैं अब इसके बारे में बोलूँगा तो फिर मेरे ऊपर लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं रोस्ट करने लगा हूँ, रोधा में रोस्ट करना सिखाते हैं, रवि सर KD सर की आत्मा आ गई, इस तरह की बातें करेंगे लोग, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, चुप हो जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ। आदित्य बोल रहा है जो RC चोर देते हैं सेक्शनल या मॉक में उसको कैसे एनालाइज करें? अच्छा छोड़ देते हैं, हाँ उस पर हम बात करेंगे। मेरे को लगा चोर देते हैं, ये क्या बोल रहे हो? आई अंडरस्टैंड, इंग्लिश की थोड़ी तो प्रॉब्लम है, इंग्लिश बेस्ट लैंग्वेज तो नहीं है ना? यस, स्पेशली जब हम इंग्लिश में हिंदी लिखने का ट्राई करें। ओके, व्हाट शुड बी द अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी इन द मॉक? मॉक में सेक्शनल में या कैट में व्हाट शुड बी द अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी भी? ओके यस, ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस करी है, इसको हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखो मेरा पर्पस होगा कि मैं सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करूं कि एम आई गुड इन VA और एम आई गुड इन RC। ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं 2-3 सेक्शनल में दोनों चीज़ करके देखूंगा, कभी VA पहले करूंगा, कभी RC पहले करूंगा, और उससे मैं ये देखूंगा कि मेरी एक्यूरेसी किस सेक्शनल में ओवरऑल ज़्यादा आती है, और एम आई मोर एक्यूरेट इन RC और एम आई मोर एक्यूरेट इन VA। अगर मैं VA में ज़्यादा स्कोर कर रहा हूँ तो मैं VA पहले करूँगा, अगर मैं RC में ज़्यादा स्कोर कर रहा हूँ तो मैं RC को पहले करूँगा। तो दैट इज़ द फर्स्ट लेग ऑफ माई स्ट्रेटेजी। मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूं तो मैं RC में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल पाता हूं, इसलिए मैं RC है ना, RC पहले करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड कैसे करता हूं? तो मैंने एक डिवीजन कर रखा है कि आई विल डू 25 to 30 मिनट फॉर RC एंड 15 to 10 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स फॉर VA। दिस इज़ माई स्ट्रेटेजी। ठीक है, मुझे पता है कि मेरा ये एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं 4 RCs करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपको हो सकता है आपको लगता हो कि अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 4 की जगह 2 RCs से शुरुआत कर सकते हो कि मैं अभी शुरुआत में सिर्फ 2 ही RC करूँगा 25 से 30 मिनट में। काफ़ी समय होता है, 12.5 से 15 मिनट एक RC करने के लिए। फिर 2 को आप 3 पर लेकर के जाओगे और फिर आप 4 पर उसको लेकर के जाओगे। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट। सेकंड, फिर मैं उसके बाद VA करता हूँ और मैं VA लाइन से करता हूँ। चलो, अब अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यू विल गो थ्रू इन द फर्स्ट 2 मिनट, है ना। इसको कोशिश करना कि धीरे धीरे ये 1 मिनट पर आ जाए। आप पहले के 2 मिनट में चारों जो RCs हैं उसकी फर्स्ट लाइन पढ़ लोगे, है ना। ये क्यों करोगे आप, फर्स्ट लाइन क्यों पढ़ोगे? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि मैं किन RCs से ज़्यादा फेमिलियर हूँ। ठीक है, विच RCs एम आई मोर फेमिलियर विद। तो इट कुड बी यार कि भैया मैं जो हूँ 3rd RC पहले करूँगा, 2nd RC उसके बाद करूँगा, 4th RC 3rd नंबर पे करूँगा और 1st RC उसके बाद करूँगा। तो ये ऑर्डर मेरे पास बन जाना चाहिए। द ऑर्डर शुड नेवर बी द सेम एज द कैट हैज़ गिवन यू। कैट ने आपको कोई ऑर्डर दे दिया है ना, एक रैंडम सा ऑर्डर उसने दे दिया, वो ऑर्डर होना ही नहीं चाहिए। जो अब हमारा वो बच्चा है ना, जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, जो जनरल स्टोर वाली फैमिली में पैदा हुआ है,
अब उसको एक जनरल स्टोर का पैसेज मिला है, एक इंजीनियरिंग वर्कशॉप का पैसेज मिला है, वो जनरल स्टोर वाले पैसेज में 4 में से 4 लेकर के आएगा, वो इंजीनियरिंग वर्कशॉप वाले में नहीं लेकर के आएगा, क्योंकि जनरल स्टोर से ज़्यादा फेमिलियर है। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए कि आप इन चारों में से किस में ज़्यादा फेमिलियर फील कर रहे हो, और उसको आपको प्रायोरिटाइज करना होगा। CAT is not only about solving the questions correctly, it is also about picking the right set of questions. And that picking is not the same for everyone, it is extremely personalized. You may know a few things thanks to your UG background, some other people may not, and hence you should choose those things over others. ठीक है, यानी कि ये लिस्ट आप 2 मिनट के अंदर बना लोगे, और उसके बाद आप बाकी के समय RC सॉल्व करने में लगा दोगे। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप VA के क्वेश्चंस करोगे, और VA के क्वेश्चंस ना 1 बाय 1 करोगे। इनको स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। इनको क्यों स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको स्कैन करने से हमारा नुकसान हो जाएगा, समय बहुत लग जाएगा। और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप एक रूल बना लेना कि यू विल नॉट स्पेंड मोर देन 2 मिनट इन थिंकिंग अबाउट अ क्वेश्चन। ये बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं पैरा समरी के क्वेश्चन में। पैरा समरी के क्वेश्चन में 1-2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन बाकी के ऑप्शंस पे ना हम बहुत ध्यान लगाते हैं, यार ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो C और D में वो हो जाता है, शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट। C होगा, नहीं D लग रहा है, नहीं C होगा, नहीं D होता है, नहीं यार मेरा D से नाम शुरू होता है तो पक्का D होगा, भगवान भी इशारा कर रहे हैं, मेरे को समझना चाहिए। नहीं लेकिन मेरा घर का नाम तो चीनू है, C से स्टार्ट होता है, और शायद जो मुझे प्यार ज़्यादा करते हैं वो तो C से चीनू बोलते हैं, यार चीनू हो सकता है, C हो सकता है। ये नहीं करना है। 2 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 2 मिनट में सॉल्व हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि हम इतना ही कर पाते हैं, हमसे उतना ही होता है। और देखो, मेरे को पक्का पता है कि आप में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको 15 मिनट लग रहे हैं एक पूरा RC पैसेज पढ़ने में। तो समय जा कहाँ रहा है, समय जा रहा है ये शी लव्स मी नॉट में। और अगर आपने किसी क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा बिता दिए तो चांसेस है कि अब उसके बाद कुछ नया नहीं सोच लोगे आप लोग, फिर आप 4 बार उस पैसेज को पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा भाई। ठीक है, क्लियर हुआ? 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे नहीं लगाने हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं समझ में आ रहा है तो भी बता दो, है ना। ये हमारे कुछ नियम होंगे। तो मैं फटाफट से आपको अटेम्प्ट स्ट्रेटजी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या होगी मेरी अटेम्प्ट स्ट्रेटजी? फर्स्ट, आई विल डिटरमाइन मैं VA में अच्छा हूँ या RC में अच्छा हूँ, उसके हिसाब से मैं अटेम्प्ट करूँगा। अगर मैं RC में अच्छा हूँ तो मैं स्कैन करूँगा फॉर 2 मिनट्स and spend 25 to 30 minutes attempting it. VA करूँगा मैं 1 by 1, ठीक है, but I'll make a rule that I'll not spend more than 2 minutes. सिंपल रूल। 2 मिनट से ज़्यादा मेरे को किसी भी सिंगल क्वेश्चन डिजर्व ही नहीं करता। हम प्यार करेंगे क्वेश्चंस को, लेकिन 2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा समय नहीं है यार हमारे पास। आप चाहो जितना प्यार करो ना एनालिसिस के समय, वो अनलिमिटेड टाइम है, क्वेश्चंस के समय बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अब अगर हमने ये सब कर लिया तो अगला सवाल आता है कि एनालिसिस कैसे करें, ठीक है। बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन है, एनालिसिस कैसे करना है VARC सेक्शन का, देखते हैं। देखो, एनालिसिस करने के सबसे पहले आपको ये देखना है कि कुछ चीज़ें होंगी जो आपने छोड़ी होंगी, है ना। जो क्वेश्चंस, जो पैसेजेस आपने छोड़े, उनको अटेम्प्ट करना है। अच्छा, बाय द वे, रियली सॉरी गाइस, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया। VA में यू विल मार्क ऑल टीटास। टीटा पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो कुछ रैंडम मार्क करके आ जाना, बट मार्क करके आना, ठीक है। ऑल राइट, मैं जो क्वेश्चन छोड़े थे उनको मैं अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं ये करूँगा एनालिसिस के वक्त। उसके बाद आई विल गो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। बट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि हम एनालिसिस कब करें।
एनालिसिस मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ इट शुड ऑलवेज बी डन, है ना, और एज फार एज प्रैक्टिसेबल मस्ट ऑलवेज बी डन इमीडिएटली आफ्टर गिविंग द सेक्शन, ठीक है। इट ऑब्वियसली स्ट्रेचेस यू, 40 मिनट का सेक्शनल दिया है, अब थोड़ा तो ब्रेक ले लेने दो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, नहीं थोड़ा ज़्यादा ले लेने दो, वो ना बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ जाते हैं, उनको रिप्लाई भी करना पड़ता है। देखो मतलब कैट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ लाइफ में बहुत कुछ और भी है, तो रिप्लाई नहीं करेंगे तो बुरा भी मान सकते हैं सामने वाले। हाँ, मत करना यार, इमीडिएटली एनालाइज। एंड वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? देयर इज़ अ रीज़न वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देखो सिंपल सा कारण है कि जब आप उस आरसी पैसेज को पढ़ रहे थे, वीए क्वेश्चन को कर रहे थे, while attempting and marking a particular question you had a certain thought in mind, ठीक है, आपके पास एक certain thought थी ना मन में कि मैं इसको इसलिए मार्क कर रहा हूँ, वो thought आपको भी याद है, वो इवेंचुअली आप भूल जाओगे। और जब आप भूल जाओगे तो कई बार अगर आपने देखा है कि मैंने अगर मॉक का एनालिसिस 3 दिन बाद करा है तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा था जिसके कारण मैंने उसे मार्क किया था, और मेरा समय भी ज़्यादा लगेगा एनालिसिस में, क्योंकि मेरे को वो फ्रेश पैसेज को वापस से पढ़ना है क्योंकि मैं भूल चुका हूँ। बट अगर मैं इमीडिएटली कर रहा हूँ तो वो पैसेज भी लगभग मुझे याद है, अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर है, तो मैं कॉम्प्रहेंशन में गैप भी ज़्यादा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मैं क्या सोच रहा था मैं वो देख सकता हूँ। तो इसलिए एनालिसिस हमारा इमीडिएटली होना चाहिए, है ना। 40 मिनट का सेक्शनल दो, 10 मिनट 15 मिनट ब्रेक ले लो, लेकिन उससे ज़्यादा ब्रेक मत लेना, एनालिसिस कर लो। और इनफैक्ट कोशिश करो अब से कि आप ना 2-2 घंटे के चंक्स में स्टडी करो। अ लॉट ऑफ पीपल रेकमेंड पोमोडोरो टेक्निक की 25-25 मिनट काम करो यार, लेकिन कैट 25 मिनट का एग्जाम नहीं है, कैट का एक सेक्शन भी 25 मिनट का नहीं है भाई, कैट 2 घंटे का एग्जाम है। ये 2 घंटे का स्टेमिना बिल्ड करना होगा हमें। 2 घंटे काम करो, 2 घंटे मेहनत करो, उसके बाद लो आधे घंटे का ब्रेक, 1 घंटे का ब्रेक, 3 दिन का ब्रेक मत लेना प्लीज़, ठीक है। 2 घंटे का स्टेमिना तो बिल्ड करना होगा। कोशिश ये देखो ओवर टाइम क्या होगा कि कम होता जाएगा, ऐसा कोई रेसिपी नहीं है कि इतना समय लगता है एनालिसिस में। ठीक है, अब एनालिसिस कैसे होगी। अब आपके एनालिसिस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, प्लीज़ मेरे को 2 मिनट दो, मैं पहले एनालिसिस की प्रोसेस आपको समझा देता हूँ, उससे हो सकता है कि आपके ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आंसर हो जाए, नहीं होंगे तो हम देखते हैं। ठीक, देखो एनालिसिस में मैंने क्या किया, सबसे पहले जो चीज़ें मैंने छोड़ी हुई थी उनको अटेम्प्ट कर लिया, तो दैट वाज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ एनालिसिस। सेकंड इज आई गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस दैट आई अटेम्प्टेड करेक्टली बट आई वॉज नॉट श्योर, यानी कि आई विल गो टू ऑल माई फ्लूक्स जो सही हो गए, है ना। देखो एक तो थे जो मेरे को पक्का पता था सही है, वो सही हो गए, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो कैट में भी आएंगे, हम सही करेंगे। लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि हम ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज थे, हमने बी लगाया, है ना, और बी ही सही निकला, तो था तो फ्लूक कहीं ना कहीं। तो हम जाएंगे उसकी ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे जस्ट टू इंश्योर कि जो मैंने सोचा था वही सही है ना, ऐसा तो नहीं कि सही हो गया लेकिन गलती से सही हो गया। तो मैं अपने करेक्ट फ्लूक्स को पहले पढ़ लूँगा। सेकंड, मैं उनको पढ़ूंगा जो मेरे इनकरेक्ट हुए, रॉन्ग वाले। ये वो क्वेश्चन थे जो मुझे लग रहा था सही होंगे, है ना। ऑब्वियसली जब भी आप किसी चीज़ को मार्क कर रहे हो इन एन एग्जाम दैट हैज़ नेगेटिव मार्किंग, यू वर थिंकिंग कि ये करेक्ट होगा लेकिन वो गलत निकला, तो अब यहाँ से मेरे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि इससे मेरे को 2 चीज़ें पता चलेंगी। एक तो मैं क्या गलत सोचता हूँ, और साथ ही में ये भी पता चलेगा कि यार कोई ऐसे क्वेश्चन है क्या जो मैं कंसिस्टेंटली गलत कर रहा हूँ। तो बेहतर होगा कि इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बेहतर है छोड़ ही दूँ इनको, क्योंकि तो मैं कंसिस्टेंटली ये वाला क्वेश्चन तो हमेशा गलत करता हूँ, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, रॉन्ग वाले को सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप वहाँ पर होगा। मैं उनको देखूंगा, समझूंगा कि क्या गलत है। तो रॉन्ग में क्या देखना है आपको, सबसे पहले तो देखना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पूरा सॉल्यूशन पढ़ना उसका कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा था। डिड आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करेक्टली, आस्क योरसेल्फ कि क्या मुझे क्वेश्चन सही से समझ में आया।
पहली चीज़ क्वेश्चन सही से समझ में आया, तो जो मैंने आंसर ऑप्शन मार्क किया था मेरे को वो आंसर ऑप्शन सही से समझ में आया, ठीक है। मेरे आंसर ऑप्शन में मिस्टेक क्या थी, जो सही था, जो करेक्ट था, वो मैंने क्यों डिस्कार्ड करा था? कोई कारण तो दिया होगा ना आपने उसको डिस्कार्ड करते वक्त कि यार ये क्यों सही नहीं है ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि ABCD में से मैं C कभी नहीं लगाता, क्योंकि C से मेरे दुश्मन का नाम चालू होता है, वो थोड़ा है ना, तो मेरे को वो C पसंद नहीं आता है कभी। या फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने C इसलिए मार्क नहीं करा क्योंकि पिछले 3 में C ही सही था, तो अब 4 तो C सही नहीं हो सकते, ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि आप जो करेक्ट ऑप्शन था उसकी अंडरस्टैंडिंग समझोगे कि क्या वो, एक तो आपने क्यों रिजेक्ट किया था उसको, वाई डिड यू रिजेक्ट इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट स्टूडेंट्स डू, और आप लोग बहुत सारे लोग करते होंगे कि बस समझ लोगे कि वाई इज इट करेक्ट, दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू दोस्तों, वो तो आपको करना ही है ना। बट इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको करनी है, ये समझना है कि आपने उसको डिस्कार्ड किया था ना, यू डिस्कार्डेड इट। तो अगर आपने उसको डिस्कार्ड करा था तो वो क्यों करा था डिस्कार्ड, कोई तो कारण था। वो डिस्कार्ड करने का कारण, और ये यहाँ पे इमीडिएट मॉक एनालिसिस हमारे काम आता है, क्योंकि कई बार ना हम भूल जाएंगे कि हम क्या सोच रहे थे, और जब हम भूल जाते हैं कि हम क्या सोच रहे थे, ये दिक्कत क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो उसके डिस्कार्ड क्यों करा था हमने, उसके रीज़न को भी समझना है, एंड दैट इज़ हाउ यू विल ओवर टाइम इम्प्रूव इन योर VARC सेक्शन। इन सारी चीज़ों को प्लीज़ एक अपनी लॉग बुक बना लेना, एरर लॉग बोल सकते हो, मिस्टेक लॉग बोल सकते हो, इम्प्रूवमेंट लॉग बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप उसमें करोगे। अब दोस्तों हमारे पास ये एनालिसिस हो गया। अब या तो हम कुछ कॉमन FAQs ले सकते हैं, या फिर वी कैन गो टू एन अटेम्प्ट। मैं एक सेक्शनल टेस्ट आप लोगों के सामने दूंगा। मैंने उस सेक्शनल टेस्ट को इसके पहले कभी नहीं देखा है, मैं किस तरह से उसे अप्रोच करूंगा, क्या क्या मेरे दिमाग में चल रहा है, आई विल ट्राई टू वर्बलाइज एवरीथिंग। तो व्हाट वुड यू वांट, FAQ पहले करना है या सेक्शनल अटेम्प्ट पे चले? Attempt, let's go to the attempt part. Yes, all right, I'll be doing one sectional, you need not attempt the sectional with me, आप मत sectional attempt करना, you can have a look at what am I doing, मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उस पर आप खुद एक बार देख लेना। मुझे अराउंड 30 सेकेंड्स लगेंगे उसको सेटअप करने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाए, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ख़राब नहीं हुआ है, मैं सेटअप कर रहा हूँ। ऑल राइट गाइज, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? क्या मैं विजिबल ऑडिबल हूँ? ये कौन सा टेस्ट है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है ये कौन सा टेस्ट है, ठीक है। ये RCS है, कोई तो RCS है, मेरे को पक्का याद नहीं है यार अभी, ठीक है। शेल वी स्टार्ट? मेरे को ये अपना देखो, हो सकता है ये पढ़ते, जब मैं RC पढ़ूंगा तो हो सकता है मैं आपकी कमेंट उतनी नहीं पढ़ूँ, मत बोलना ये कि आप हमारी कमेंट नहीं पढ़ते, आप नाराज़ हो गए, आप रूड हो, प्लीज़ ये मत बोलना यार, ध्यान भटका दोगे आप मेरा। ओके चलो स्टार्ट।
ऑल राइट, ठीक है, तो मेरे पास अपनी हायरार्की क्लियर है. आई विल डू 4 1 2 3. ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड है, मुझे अच्छे से आ जाएगा. और उसके बाद फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला और थर्ड वाला मुझे अभी तक का सबसे कठिन लगा है. ठीक है, यस. स्टार्ट करते हैं इस पैसेज को पढ़ने से. ओके, टर्न्स आउट कि मैंने गलत पैसेज चूज़ कर लिया था, क्योंकि जितना मैं समझ रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा कठिन ये पैसेज है. बट ठीक है, अब पढ़ लिया है तो इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे. देखते हैं मैं सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मेरे को अभी रियलाइज़ हो गया कि ये मेरा उतना, जितना मैं समझ रहा था उतना ईजी नहीं है. सेकंड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. वेलफेयर माइग्रेशन की डिबेट भी नहीं था. मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल कंसर्न्स, टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी थी. तो दिस एंशिएंट रोम वाज प्रॉब्लम इन. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली प्रेजेंट रोम इन सोसाइटी कैन फील फेमिलियर, मतलब कुछ तो वो ड्रॉ कर रहा है. ठीक है, to assess the validity of the author's analogy between Rome's migration crisis and modern migration, it would be most useful to know. अच्छा, इसने कोई एनालॉजी दी है तो मुझे इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे एनालॉजी है, तो बेटर डिटरमाइन कि इसने क्या बोला था एग्जैक्टली. तो तो अच्छा यहाँ पे, अच्छा इकोनॉमिक माइग्रेंट और पॉलिटिकल फ्रॉम नॉर्दर्न रोमन हैड नो बेटर आइडिया हाउ टू डील विद दिस. तो उन्होंने बोला कि सेम सा ट्रीट करते थे और थोड़े कम ह्यूमन थे वो लोग. ठीक है, तो अथर की एनालॉजी के लिए हमको क्या यूज़फुल होना चाहिए. इवेंचुअली इंटीग्रेटेड इनटू द रोमन सोसाइटी, इससे कुछ फ़ायदा होगा पता नहीं. रोमन अथॉरिटीज़ इम्पोज टैक्सेस ऑन सिटीजन टू फंड. Whether modern nation with large migrant have experienced similar political instability, whether the migrant to Rome spoke language related to Latin. चलो थोड़ा और आगे पढ़ते हैं. All right. The Western. ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इवेंचुअली वो ख़त्म सा हो गया था. तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी. चलो, आई एम नॉट श्योर ऑफ द लास्ट 2 क्वेश्चन, काफ़ी डिफिकल्ट सा पैसेज था. पैसेज इज वेलफेयर डिबेट विच सिचुएशन बेस्ट अप्लाइज द रोमन कंजर्वेटिव लॉजिक. अच्छा, तो वेलफेयर डिबेट है यहाँ पे कहीं. ठीक है, यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में ये है, और हमको अप्लाई सिचुएशन बेस्ट अप्लाइज
द रोमन्स कंजर्वेटिव का लॉजिक। ठीक है, समझ गया। तो बेस्ड ऑन द पैसेज वेलफेयर सिचुएशन बेस्ट अप्लाइज द रोमन विल क्लेमिंग टैक्स बैक वाइल क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सोशल प्रोग्राम। ठीक है, बट अवॉइड नहीं, ये तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, ए क्लियरली इसको तो यार थोड़ा मेरे को जल्दी कर लेना था। आई एम डिसअपॉइंटेड इन माई सेल्फ। ठीक है, टू वुड लीड द ऑथर मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद। अच्छा, और अब ये देखो, ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड लीड द ऑथर मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद। अब स्टडिंग रोम ऑफर्स इंसाइट इनटू द रिकरिंग पैटर्न्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड, इससे तो डिसएग्री, इससे तो एग्री करेगा। लाइकली टू डिसएग्री एक्सेप्ट। ठीक है, से डिसएग्री कर सकता है। आई हैव डिफरेंट सोशल, इससे भी डिसएग्री करेगा। जनरल पब्लिक ये भी है ना। चलो, तो ये हमारा हो गया, 4 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, ऑल राइट, 4 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। अब मेरे को जाना है पहले पैसेज पे, ये मैंने डिसाइड किया था। चलो, अब यार ये होपफुली थोड़ा इजी पैसेज आए। 8 मिनट बीत चुके हैं मेरे और मेरा एक ही पैसेज हुआ है। ठीक है, और इमेजिन मैं कमेंट देखूं। ठीक है, हाउ डू इमेजिन इक्वानिमिटी इन योरसेल्फ और अदर्स। ठीक है, स्लाइटली इजी पैसेज। ठीक है, ओके, आप लोग क्या बोल रहे हो? ऑल राइट, स्लाइटली इजी देन द लास्ट वन। पता नहीं क्वेश्चन कैसे होंगे, देखते हैं।
more accurately exemplify the kind of equanimity the author advocates. और मेंटेनिंग बिल्कुल भी नहीं है, पर्सनल रिफ्लेक्शन जॉय विद एन इंटरप्रेटेबल अवेयरनेस दैट रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस, ये हो सकता है। कंसिस्टेंट इनर साइलेंस थ्रू मेडिटेशन टू अचीव, नहीं ये माइंडफुल है, पर्सनल एक्चुअली लिसनिंग है, नहीं बिल्कुल नहीं है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। व्हेन अंडरस्टूड एज अ डाउ प्रोसेस, डाउ का मतलब प्रोसेस है, इम्प्लाइज वॉट, मतलब अचीविंग इमोशनल डिटेचमेंट, नहीं फिक्स सेटअप दैट प्रिडिक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, और नेविगेटिंग एक्सपीरियंस, ये सही लग रहा है। एलिमिनेटिंग जजमेंटल टेंडेंसीज, ये भी हो सकता है, बट से सिंपली वन पॉसिबल डायमेंशन, ठीक है, तो ओपन एंडेड ही होगा। थर्ड, द ऑथर्स प्राइमरी क्रिटिक ऑफ द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वानिमिटी सेंटर्स ऑन इट्स। अच्छा, प्राइमरी क्रिटिक तो उसने ना सेकेंड पैराग्राफ में, नहीं थर्ड में बोला था कि ये होता है, और मिस स्टैटिक गोल रादर देन अ डायनामिक, इनएबिलिटी टू अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इवैल्यूएटिव रिस्पॉन्स, नेग्लेक्ट कल्टिवेशन कंपैशन एंड काइंडनेस। नहीं, ये तो फोर्थ तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, यूजुअली अ स्टेट ऑफ स्टिलनेस दैट एम्स एट द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, तो स्टैटिक गोल हो सकता है। इंक्लूड अ काउंटर टू डिसआर्म वन वे डिफाइन आवरसेल्फ। प्राइमरी रोल ऑफ माइंडफुलनेस टेक्निक्स, नहीं ये माइंडफुलनेस तो हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, माइंडफुलनेस है ना। चेंजिंग एनीथिंग, ये थोड़ा कठिन हो रहा है दोस्तों। नेग्लेक्ट ऑफ द कनेक्शन, ठीक है सर। इट लाइक व्हाट इज इट नॉट सिंपली टेकिंग अप व्यू, तो ओवर हाँ यही होगा यार, पहले उससे तो मुझे यही लग रहा है। चलो, ऑथर्स आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट इक्वानिमिटी इज इनकम्पासिंग नॉट एक्सक्लूजनरी, मोर अंडरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, तो इसमें मेरे को बताना है कि इक्वानिमिटी शुड बी एक्सक्लूजनरी एंड बाय प्रैक्टिसिंग इक्वानिमिटी इंटेंशनली अवॉइड इंगेजिंग विद इमोशनली डिस्ट्रेसिंग कॉन्टेंट, ठीक है। posit a natural hierarchy of emotion response but certain emotion being inherently negative, hierarchy हो सकती है, तो hierarchy exclusion तो नहीं करती होगी। psychological studies that demonstrate the effectiveness of selective attention in managing emotional distress, demonstrate the effectiveness of selective attention। अच्छा, cultural practice that prioritize the suppression of certain emotion to maintain social harmony। शायद अंडरमाइन तो ACD सब कर रहे हैं यार शायद, ओके। अरे यार दोस्तों, ये तो बहुत गलत हो जाएगा अगर आप लोग मेरे को आंसर बताओगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, ये आप ये सब चीज़ें मत करो यार, ये फेयर भी नहीं होगा, मैं आपकी कमेंट छुपा रहा हूँ अब, बट द प्लीज़ यार अच्छा एक काम करो आप लोग, है ना, आप लोग मेरे को गलत आंसर बता दो, तो कोई सही बताएगा तो 2-3-4 लोग ना उल्टे सीधा ऑप्शन बता दो, ABCD सब होने चाहिए, ताकि मेरे को पता ही नहीं हो कि सही आंसर क्या है, ठीक है। सब लोग सब बता दो, तो मुझे पता ही नहीं होगा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। उत्कर्ष ई बोल रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सॉल्व हो गया हमारा इशू, है ना, यस। अब ठीक है, द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट दैट इक्वानिमिटी इज एनकम्पासिंग नॉट एक्सक्लूजनरी। मेरे पास समय भी कम है, मैंने क्या 2 मिनट से ज़्यादा इस पर बिता दिए हैं। इंडिविजुअल एक्सक्लूजन कहाँ पे हो रहा है, एक्सक्लूजन पहले भी हो रहा है, ये हो सकता है, इस पर मैं मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ, मेरे को कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब मेरा ये अगला पैसेज था 7 नंबर, ठीक है, चलो इसको करते हैं, ठीक है। अब मत बताओ यार, अब तो मैं पैसेज पढ़ूँगा आराम से। अब मेरे 2 पैसेज हो गए, मेरे पास 15 मिनट बिता चुका हूँ मैं, मेरे पास 10 से 12 मिनट है 2 पैसेज और करने के लिए। लेट्स स्पीड अप यार, स्पीड अप करना पड़ेगा, समय कम बचा है। लेट मी स्पेल आउट व्हाई। गाइस 1 मिनट मुझे दो, आई हैव आप लोग टेक्स्ट पे क्या क्या बोल रहे हो कुछ। गाइस लेट सर अटेम्प्ट सेक्शनल विद ऑल फोकस प्लीज, ठीक है, ये तो कभी यूज़ नहीं किया है बस गाइस, ठीक है, ओके। up and running the child
in a process of formation or education in the broadest sense. वाओ क्या मैसेज है। समझ में नहीं आ रहा यार, ये पहला पैराग्राफ पढ़ के लगा कि समझ में नहीं आ रहा है उतना, तो बेटर होगा कि मैं मूव कर जाऊँ अभी दूसरे पैराग्राफ पे। 13 पे जाते हैं। ओके पहला ये लग रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इट इज ओनली रेशियो तो डी तो डेफिनेटली नहीं है ना। अब समय भी कम है, 3 ऑप्शन में डाउट हो रहा है। रेशियो इज मोर मैथमेटिकल। अच्छा थस यहाँ पे आंसर है गिवन रेशियो समथिंग दैट कैन बी द रिलेशन बिटवीन टू हाइट्स, टू वॉल्यूम और टू टाइम। रेशियो इज जस्ट व्हाट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल एंटिटीज शेयर। अच्छा डिफरेंट इस थस मैं अच्छा विदाउट रेफरेंस टू अदर देन इट डिस्क्राइब द रिलेशन प्रोपोर्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नहीं 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 नहीं, डिफरेंट क्वांटिटीज हाइट और उसमें थोड़ी बता देगा, सी तो नहीं हो सकता, बी होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल पैसेज द फोर्थ पैराग्राफ प्लेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग रोल एक्सेप्ट फोर्थ। कौन सा है भाई? ये वाला। एनी डाइग्रेशन भाई फोर्थ पैराग्राफ तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था। In the context of the whole passage, the fourth paragraph, it broadens the discussion from specific to wider range of mathematical limitation. By highlighting that many are not confined to abstract realms. It emphasizes the practical application of mathematical bridging theory with real world observation.
ये भी है, हाँ हो सकता है। इंट्रोड्यूस लिमिटेशन कंडीशन ऑन द प्रेजेंस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज इन द इंट्रोड्यूस ऑन द प्रेजेंट, नहीं ये नहीं है, हाँ ठीक है ये भी सॉल्व हो गया, बढ़िया है। द पैसेज एंडोर्सेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सारे स्टेटमेंट को वो एंडोर्स कर रहा है। मैथमेटिक्स लाइकली टू बी a creation more of physical observation than of cognitive abstraction. More of than of cognitive abstraction नहीं पता। At least some mathematical properties are not resistant to the real world perception. हाँ ये तो पक्का है, ये तो एंडोर्स कर रहा है ये ना। वेरी theoretical but are rarely seen, ये क्या बोल रहा है? डिस्क्रीटनेस को तो इसने बोला था है, हाँ ये क्या बोल रहा है? वेरी rarely, ये तो उल्टा हो गया ना। आज डोमिनेंट फिलोसफी until the time of, हाँ ये तो था, तो ये तो मेरे को पक्का पता है कि ये तो था, ये भी था। कॉग्निटिव एब्स्ट्रैक्शन ये बोला है क्या? हाँ तो सच है, ठीक है ये भी हो गया। अब क्वेश्चन दोस्तों मेरे सामने ये है, देखो ठीक है दोस्तों, अब मैंने बहुत देर तक आप लोगों की चैट नहीं देखी थी क्योंकि मैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, बिकॉज आई हैड टेकन अ लॉट ऑफ टाइम। अब तक मेरे पास 17 मिनट बाकी है, मेरे पास 8 VA के क्वेश्चन है आइडियली जिनको 16 मिनट देने चाहिए मुझे, और एक पूरा पैसेज बाकी है। अब क्या करना चाहिए मुझे? मैंने एक पैसेज पढ़ा था, मेरे को पता है कि उसमें गड़बड़ करता हूँ मैं, तो आई रादर आई हैव डिसाइडेड कि मैं क्या करूँगा अब। आई एम गोइंग टू डू द VA पार्ट फर्स्ट। VA पार्ट में आराम से करता हूँ पहले, और उसके बाद हम चलेंगे हमारे उस पैसेज पे जो मेरे को थोड़ा टफ लगा था। ठीक है, यस 17 मिनट है, देखते हैं क्या करेंगे। वन और टू तो डेफिनेटली नहीं है। टू हो सकता है क्या? टू हो सकता है डिफरेंट, तो या तो 2 है या 4 है। क्वेश्चन से एंड होगा। It has to go. आई थिंक 2 से मैं जाऊँगा, ज़्यादा समय नहीं है। ओके समय ए भी नहीं यार, ये क्या होगा? सेकंड और थर्ड तो नहीं हो सकता, कि हो सकता था मिस्टर ह्यूजली में।
went beyond all of this. It went beyond all of this. So सी तो डेफिनेटली नहीं है, डी भी डेफिनेटली नहीं है, तब डाउट है ए और बी में. इट इज़ नॉट व्यूअरशिप अवार्ड विद न्यू लॉ बीइंग पास्ड बिकॉज ऑफ द कंटेंट. ए लग रहा है, बी भी नहीं होगा. होपफुली मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं आपसे ना ये भी डिस्कस कर पाता कि मुझे ये चीज़ें क्यों लग रही है, तो बढ़िया और मज़ा आ जाता है ना. ऑलराइट, फॉरम अच्छा ये ऑड वन आउट है ना, तो इसको तो मार्क करके ही आगे बढ़ेंगे. 12-13 मिनट. ओके, काफ़ी क्वेश्चन है यार. ठीक है, ड्रोन टू dots and negatives of voice for range to correct the father and then समय has taken its usual 4 और 5 में. क्या लग रहा है यार, क्या कठिन चीज़ें हैं. फैकल्टी 5 पे जाएंगे यार. चलो मार्क तो करना ही था. सेम है क्या? ओके. सेम चीज़ें बन रही है ना. ठीक है, तो ये गलत जो कॉन्ट्रास्ट वाला ये 4, तो ये क्लियर था काफ़ी. होपफुली सही होगा ना, इतना क्लियर बोल के गलत नहीं होना चाहिए. 13 वाला तो मार्क किया था ना, ये अच्छा अपन ने मार्क नहीं किया था. ओह शिट, ये गलतियाँ मत करना. देखो गलती एक पकड़ में आई दोस्तों, है ना. तो ये देखो यार, 13 से हमने एक क्वेश्चन ही मार्क नहीं किया था. ओके, Going best states the central idea of the passage. Despite the perception of abstract. Despite the perception of abstraction. ये लगा के देख रहे हैं, अभी पक्का नहीं है भाई. रॉन्ग लंग कैंसर. हाँ, ये डस्ट की बात तो लास्ट में हुई है. 4 ही होगा इसका आंसर. ठीक है, 18, 23, 24 सही है यार. मैं शायद चांस है छोटा सा कि मैं लास्ट वाले पैसेज पे जा पाऊँगा. बढ़िया है. ऑल्टरनेट समरी. चलो एक्साइटिंग हो रहा है अभी.
डिसीजंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है, वोलेटाइल कंपैरिजन, ठीक है। सिस्टम प्रोवाइड वैल्यूएबल स्टेबिलिटी, रिस्ट्रेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, बी सी लग रहा है। यू हैज़ क्लियर एडवांटेजेस स्पेशली व्हेन कंपेयर टू मोर सेंट्रलाइज पर्सनैलिटी, नहीं नहीं नहीं, क्लियर एडवांटेजेस तो नहीं बोला है क्योंकि डिसएडवांटेज। बी और सी, द यू इज़ स्लो, है ना, बट ऑफर स्टेबल रिस्ट्रेंट गवर्नेंस कंपेयर टू, हाँ ठीक है, बी लग रहा है मुझे ये। ठीक है, 23-24-6-7 मिनट, ओके। पैरा जंबल्स स्टोरिंग इज ऑल्डर प्योर मोर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन फॉर्म में वी रियली फील अपलिफ्टेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी नो सपोर्ट दिस यूनिक कॉम्पैक्ट बिटवीन नैरेटर एंड लिसनर सो व्हाइल इलेक्ट्रॉनिक कैन हैव अस फीलिंग पेक्यूलियरली अंडर नॉलेज डिससैटिस्फाइड एंड फुलफिल। ठीक है, तो मतलब 4 के बाद 3 आएगा ना। वन तो पहले आएगा, ओल्डेस्ट प्योरेस्ट एंड मोस्ट डायरेक्ट फॉर्म, है ना, दिस यूनिक कॉम्पैक्ट बिटवीन नैरेटर एंड लिसनर स्टोरी बाय इलेक्ट्रॉनिक कैन लीव अस फीलिंग। हाँ, 3 के बाद 4 नो सो यूनिक कॉम्पैक्ट बिटवीन नैरेटर, सो 4 and 2 आई थिंक। समय नहीं बिगाड़ सकता यार अभी तो, ठीक है, अब जो होएगा देखेंगे। What remains is a sleek outside coating with no sense for true express. This means that they can't smell yet. Rose smell and pretend to smell again. चलो तो 3 पहला सेंटेंस है, ओपनर है। When we look at हैं सेंटेंस है कैसे, what happens in the brain when we look at authentic true smell and pretend smell, ठीक है, the process also functions the other way around. Which process? People who have their face coated, मतलब ये तो समझ नहीं आ रहा। 4 to 1 4 to 1 4 मिनट बचे, एक पूरा पैसेज बचा हुआ है, अब क्या करें। ठीक है दोस्तों, ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले ताकि स्पीड में सॉल्व कर पाएँ जितना हो सकता है। सैल्वेज कर रहे हैं हम। फॉलोइंग बेट डिस्क्राइब द ऑथर एटीट्यूड टुवर्ड्स द रोल ऑफ एजुकेशन इन फिलोसफी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ एजुकेशन इन फिलोसफी, ठीक है। द पैसेज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नेचुरल हिस्टोरिकल जजमेंट ढूंढना है, नेचुरल हिस्टोरिकल जजमेंट। और तो मेक द ऑथर व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फिलोसफी, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, वीकन करना है, ठीक है। फॉलोइंग अजम्पशन अंडरलाइन द ऑथर आर्गुमेंट ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशन, अजम्पशंस, ओके। तो एजुकेशन का रोल क्या है, रोल ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स फिलोसफी। हाँ, दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली वी विल टॉकिंग ना, VARC कैसे करना है।
नेचुरल हिस्टोरिकली आया था ना। ठीक है, मतलब पता नहीं यार क्या समझ में आया। जो था फिलोसफी बट नॉट बी रिलेवेंट फॉर अदर एरियाज है। और एजुकेशन डेट्रीमेंटल तो फिलोसफी बिल्कुल भी नहीं। डेवलपमेंट क्योंकि हम रीज़न हाँ बट अच्छा क्रिटिकल नहीं है। चलो ये तो सही होना चाहिए। 8 4 ये नहीं पता था। इम्पोर्टेंट फॉर्मल कैन डेवलप रैशनल डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं रोल ऑफ एजुकेशन में, विच इज़ ओके। और वैसे जो है बायस भी नहीं ऐसे कैन डेवलप। तो फॉर्मल एजुकेशन थोड़ी है ना, तो ठीक है। हाँ अगर वो ही ऐसा नहीं कर रहा है, पर्सनल रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी एजुकेशन, है ना, ठीक है। हाँ नहीं विच ह्यूमन रेशनल हाँ ठीक है। चलो 8 अब ये इन नेचुरल क्लासेस ग्रेड नहीं हाँ ये है बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इवन व्हेन इंडिविजुअल। हाँ ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट। चलो सबमिट टेस्ट। अब देखते हैं दोस्तों कितने सही होंगे। 21 सही हुए, 3 गलत हुए। ठीक है, तो एनालिसिस थोड़ा जल्दी करेंगे, लेकिन भाई यार 2-3 मिनट का ब्रेक लेंगे। ठीक है, 2-3 मिनट का ब्रेक, मेरे को पानी पीना है, फिर देखते हैं। हाँ चलो सबसे पहले तो वीडियो ऑफ करता हूँ। वेयर इज़ द वीडियो। हाँ चलो, पानी तो वीडियो पे पी सकते हैं यार। बॉटल ख़त्म हो गई है अपनी। दोस्तों 1 मिनट देना मुझे, आई जस्ट बी बैक। कहाँ से वीडियो कैप्चर हटा देते हैं। यस आई एम हियर ओनली, बट मैं वीडियो नहीं दिखेगा आपको कुछ देर।
ऑलराइट दोस्तों, आई एम बैक. आई विल नाउ लुक एट योर कमेंट्स. ठीक है, बताओ दोस्तों, हाउ डिड यू फाइंड द अटेम्प्ट? अटेम्प्ट से कुछ सीखने को मिला आपको? देखो, पर्पस वॉज नॉट टू शो ऑफ कि इतने मार्क्स आएंगे उतने मार्क्स आएंगे. आई ऑल्सो डिड नॉट नो एंड आई वॉज ट्राइंग टू वर्बलाइज एवरी टाइम आई वॉज अनश्योर. मैं जितनी बार अनश्योर था मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपको बताऊं, है ना. बट मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, व्हाट ऑल डिड यू नोटिस? यस, ठीक है. देखो, सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ अपना रिफ्लेक्शन शेयर करता हूँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको ये देखना है. अब कुछ चीज़ें होती है यहाँ पर. आई गॉट नर्वस एट मल्टीपल पॉइंट्स. मैंने थैंकफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैंने इस पैसेज में कुछ चीज़ें गलत पिक करी. जैसे जो हमारा लास्ट वाला पैसेज था वो हमने एक बार पिक करा था, वो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है. जो फर्स्ट वाला पैसेज था वो भी मेरे को लगभग थोड़ा गलत लग रहा था कि मैंने यार गलत कर लिया है. ठीक है, अब यहाँ पर द वॉट हाउ शुड बी प्रोसीड. ठीक है, द आइडिया वॉज दैट आई वेंट इन विद अ क्लियर स्ट्रेटजी. मेरे को पता था कि मेरे को आरसी पहले करना है, वीए बाद में करना है. और आरसी में मैं क्या करूँगा, आरसी में सबसे पहले मैं अपनी स्ट्रेटजी बना लूँगा. मेरी स्ट्रेटजी बनी थी 4132 या 4123 और हम उस पर रहे. ठीक है, हमने हिले नहीं उससे. फिर वीए में हमने, जब हमको लगा कि यार ये पैसे डिफ़िकल्टी नहीं होगा तो हम वीए में गए और वीए भी हमने करा. बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ द टाइम कितना बचा है मेरा, है ना. शुरुआत की 2 आरसीज में मैंने ज़्यादा समय लिया था, मैं उतना अवेयर नहीं था. बट उसके बाद आई वॉज कॉन्स्टेंटली अवेयर. और ये ओवर टाइम आपकी प्रैक्टिस से आपको डेवलप हो जाएगा कि यू नीड टू बी अवेयर ऑफ कितना टाइम बाकी है और उससे घबराना नहीं है. बिकॉज अगेन द पर्पस इज, देखो VARC मेरा सच में स्ट्रॉन्ग सेक्शन है. मैं इतना अच्छा परफॉर्म ना तो DILR में कर पाऊँगा, क्यों में बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा. सो ऑब्वियसली मेरे नेचुरल एडवांटेज है VARC में. आपके हो सकते हो या ना हो, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज़ कि क्या हम हर सेकंड को यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं और क्या हम आखिरी तक पैनिक नहीं कर रहे हैं. जब मेरे पास आखिरी के 4 मिनट बचे थे और मेरे पास एक पूरा पैसेज था, मैंने गिव अप नहीं किया. माई आइडिया वॉज, व्हाट वाज माई आइडिया? माई आइडिया वॉज सिंपली कि हाउ डू आई मैक्सिमाइज इन दिस 4 मिनट्स. और व्हाट डिड आई डू, एंड आई स्टिल डोंट नो कि वो 3 गलत कहाँ पे हुए, टीटा में हुए या फिर उस पैसेज में हुए. बट व्हाट आई न्यू कि अगर मैं इन 4 में किसी तरह से कुछ कर पाऊँ तो मैं वो करूँगा. ठीक है, एक बार अब देख लेते हैं कि क्या एनालिसिस चलता है ना. यस, एनालिसिस पे कहाँ पे जाते हैं देखता हूँ. मैंने एनालिसिस देखा नहीं है ज़्यादा. अब एनालिसिस पे गए हैं हम. यार इसका एनालिसिस खुलेगा कैसे? रोधा का मॉक डैशबोर्ड पे गया. इस पे आपको रोधा का मॉक डैशबोर्ड दिखने लगा है क्या दोस्तों? हाँ दिख रहा है. चलो, RCM रिजल्ट्स आउट रिपोर्ट, VARC सेक्शनल, लेफ्ट स्कोर्ड. ठीक है, स्कोर्ड ये रहा, है ना. ये मेरा पोर्टल नहीं है दोस्तों कि, है ना. यस, कंप्लीटेड में जा कर के. ठीक है, रैंक 1, टोटल कैंडिडेट 24, 72, 17, टाइम 39, एवरेज स्पीड 99.96, राइट मार्क्स 63, नेगेटिव मार्क्स 3. 3 गलत हुआ है, मतलब टीटा तो कोई भी गलत नहीं हुआ है, टीटा सारे सही करती हैं. अब मैं क्या करूँगा, अब सॉल्यूशन रिपोर्ट. ओके ठीक है, मेरे क्या गलत हुए थे? 6th शो बिकॉज ऑफ मिलियन. हाँ, इस पे अपन कंफ्यूज तो थे. चलो अब मैं आंसर नहीं देख रहा हूँ. व्हाट शुड हैव बीन द सेकंड क्वेश्चन, है ना.
क्या हमारा सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए था? सी तो गलत है, सी तो गलत है मुझे लग रहा है, और डी भी नहीं लग रहा है यार. The greatest impact a TV show can have is not viewership, awards or meme, but no new law being passed because of the content. ठीक है. अब यार देखते हैं दोस्तों. मैं अपनी थॉट प्रोसेस बताता हूँ कि मैंने ए क्यों चुना था, मुझे बाकी ऑप्शन क्यों गलत लगे थे, है ना. इस पे अपन बात कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि exactly what was going in my mind, and then I'll see the solution and see कि मैं गलत हूँ सही हूँ क्या हूँ. तो देखो सी क्या बोलता है, मिस्टर बेट्स वर्सेस द पोस्ट ऑफिस डिड नॉट गेदर मच व्यूअरशिप. ये मेरे को गलत इसलिए लग रहा है कि द यूके टीवी शो वेंट फार बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसका ये मतलब हो गया कि अगर इसके सबके बियॉन्ड गया है तो व्यूअरशिप वगैरह तो मिली होगी. तो सी तो डेफिनेटली नहीं था, ये मैं क्लियर था. अब मेरे को ए, बी और डी में हम देखते हैं. वॉज अ ह्यूजली इम्पैक्टफुल टीवी शो बिकॉज ऑफ अ मिलियन पिटिशन दैट फोर्स द गवर्नमेंट टू अनाउंस अ लॉ. ठीक है, तो ये तो हुआ था, मिलियन पिटिशन हुई थी और इससे लॉ बना था, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा. द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट अ टीवी शो कैन हैव इज़ नॉट व्यूअरशिप. अच्छा यार, मुझे ये लगा नहीं कि कहीं पे उन्होंने बोला है कि दिस इज़ हाउ वी विल डिस्क्राइब द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट. दिस इज़ माई थॉट. डी, मिस्टर बेट्स वॉज इज ह्यूजली इम्पैक्टफुल. ह्यूजली इम्पैक्टफुल मैं फिर भी कह सकता हूँ. ग्रेटेस्ट तो थोड़ा सा क्या वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम हो जाता है ना. बिकॉज शोड मिसकैरेज ऑफ जैसे रेजोनेटेड वेल विद द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट. ये भी सही है यार. तो ये ह्यूजली इम्पैक्टफुल तक तो सेम है, बिकॉज ये मिलियन पिटिशन है. हाँ, डी हो सकता है. चलो डी ही सही है. ए में क्या गलती है? ऑप्शन ए इज पार्शियली एक्यूरेट बट टू नैरो एंड कैजुअल. द इम्पैक्ट ऑफ टीवी शोज अफेक्टिव पॉइंट विच लेड टू द पिटिशन एंड लॉ, नॉट दैट द पिटिशन अलोन फोर्स द आउटकम. क्या पिटिशन? ये बोल रहा है कि विच लेड टू द पिटिशन एंड नॉट द पिटिशन अलोन. वैसे तो ठीक है, डी कॉम्प्रहेंसिव है ज़्यादा. ठीक है, समझ गया. गाइस, आपको समझ में आया क्या डी और ए के बीच में डिफरेंस? मैं क्या सोच रहा था, मैंने ये देखा, मुझे अब समझ में आ गया कि मैंने ना ए को, ए नेरो था, मैंने ये गलती कर दी कि मैंने नेरो ऑप्शन को सही मार्क कर दिया. ये मैं एक्चुअल में बहुत गलती करता था. यस, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये अपना वही पैसेज था जिसमें अपने को गड़बड़ थी ना थोड़ी. नहीं, देखो आप लोग जो ये बोल रहे हो ना, प्रियंका, उत्कर्ष, सिर्फ फोर्स्ड पार्ट के कारण ही वो गलत नहीं है, ये समझो आप. ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो नैरो और ब्रॉड वाली बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फोर्स ने तो उसको गलत बनाया है, बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हम ये भी समझे कि फोर्स और नैरो वाली बात है. तो यार सॉल्यूशन पढ़ के पूरा पढ़ना, सिर्फ एक चीज़ पकड़ के नहीं सॉल्यूशन समझना है, वरना हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट. यार मैराथन लेट हो गई ना अपनी, 9 बजे तक ख़त्म करना था ये सब. कोई बात नहीं, आई एम ग्लैड अभी 181 लोग हैं मेरे साथ. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट वीकन द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फिलोसफी. ये बोल रहा था कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है फिलोसफी में. क्यों? क्योंकि रैशनल वगैरह थिंकिंग आपकी डेवलप नहीं होती है, तो आपकी एजुकेशन वो आपकी रैशनल थिंकिंग डेवलप करती है, जिसके कारण आप फिलोसफी सीख सकते हो. दिस वॉज द आर्ग्यूमेंट जितना मैं समझा था. मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था कि अगर वो रिनाउंड फिलोसोफर है, वो एट्रीब्यूट दैट सक्सेस टू पर्सनल रिफ्लेक्शन नॉट फॉर्मल एजुकेशन. तो ऑथर थोड़ा में दोगलापन होता, हिपोक्रिटिकल होता अगर वो बोलता कि मैं तो पर्सनल रिफ्लेक्शन से हुआ. पर्सनल रिफ्लेक्शन, फॉर्मल एजुकेशन, एक तो जितनी जगह पे फॉर्मल एजुकेशन थी वो गलत हो जाना चाहिए था. अब डी बोल रहा है फिलोसोफर विद डाइवर्स कल्चरल बैकग्राउंड में हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन द रोल ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी.
ठीक है, तो डाइवर्स होंगे, कोई काउंटर तो नहीं कर रहा था। ऑथर ऑफ अ पैसेज हैज़ अ बायस्ड व्यू इन फेवर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। यार ये फॉर्मल एजुकेशन तो बोला नहीं, द स्टडीज डिड नॉट रिसीव। ए ही सही होगा ना। स्टडीज़ ने दिखाया कि इंडिविजुअल हु डिड नॉट रिसीव अ फॉर्मल एजुकेशन कैन डेवलप रेशनल पावर, मतलब एजुकेशन के बिना भी रेशनल पावर वो डेवलप कर सकते हैं। मैंने ए मार्क क्यों नहीं करा था, मुझे लगा था कि यार फॉर्मल वाली जो बात थी ना, मेरे को लग रहा था कि फॉर्मल एजुकेशन के बिना नहीं करेंगे, एजुकेशन के साथ कर लेंगे, कहीं पे फॉर्मल नहीं आया, तो मैं इससे कन्फ्यूज हुआ। देखते हैं ए ही सही है क्या, ए ही सही है, ठीक है। ऑप्शन है ट्रू, द ऑथर ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट तो अपन सही समझे, आर्ग्यूमेंट में दिक्कत नहीं है। कौन है, ठीक है। प्रोवाइड एम्पिरिकल एविडेंस दैट रैशनल पावर एंड फिलोसॉफिकल एंगेजमेंट कैन अकर विदाउट फॉर्मल एजुकेशन। यार तो इसने फॉर्मल मेरा थोड़ा सा बस इसमें फॉर्मल वाले पार्ट से कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। While this might highlight a personal inconsistency, it is anecdotal and does not broadly चलें। हाँ ये बात सही है कि जनरली ये जो हम आर्ग्यूमेंट की जगह आर्ग्यू करने वाले को टारगेट करते हैं, तो वो जनरली इज़ नॉट अ ग्रेट वे टू वीकन द आर्ग्यूमेंट, है ना। कि सोनू ने ये कहा है तो ये गलत क्यों है, तो क्यों गलत है ये बताओ। सोनू गलत ही होता है, सोनू को तो अकल ही नहीं है, ये चीज़ थोड़ी ख़राब हो जाती है। यस, तो सी तो अब मेरे को समझ में आ रहा है मैंने क्या गलत करा था, है ना। अच्छा, मैं जर्नल में क्या लिखता अपना, मैं पहले वाले में लिखता जनरलाइजेशन, है ना, नैरो वगैरह वाला, है ना। और इसमें अटैकिंग एन आर्ग्यूमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट देन अटैकिंग द आर्ग्यूअर। दिस इज़ माई टेक अवे, कि अगर मैं कभी भी किसी को वीकन करने की कोशिश करूँ तो इंसान को वीकन ना करूँ, आर्ग्यूमेंट को वीकन करूँ। यस यस यस, है ना। चलो वीडियो सोल्यूशन भी सुन सकते हैं वैसे, अगर और समझ में नहीं आ रहा है तो। 17 पे चलते हैं। अरे यार ये तो मेरे को लगा था मैं सही हूँ, मैंने क्यों करा था। हाँ, द मोस्ट डेंजरस आर दोज स्मॉलर वायलर ब्लड स्ट्रीम। हाँ 1 पे आ सकता था। नहीं तो 1 और 2 तो नहीं होना चाहिए, टू चेंज 3 भी नहीं होगा, तो 1 या 4 होता। 4 गलत है तो 1 ही सही होगा। मैंने 1 और 4 में 4 क्यों चुना, ऑप्शन 2 होगा, 2 था इसका। चलो देख लेते हैं, मैं तो अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ, देखो है ना, मैं गलत हूँ ये तो क्लियर हो गया है, अब मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं सच डस्ट, तो मेरे को चाहिए था कि कहीं पे डस्ट की बात हो, है ना। और डस्ट की बात पहली बार हुई थी 4 के पहले। इसके देखो सबसे पहले जो मुझे डस्ट दिखा वो यहाँ पे दिखा था 4 के पहले, तो मैंने कहा यार सच डस्ट, अगर वो डस्ट को रेफ़र कर रहा है तो 4 पे ही आना चाहिए, है ना। इस पर अपन ने कितना 1 मिनट 35 सेकंड लगाए थे, ठीक है। अब मैंने बोला था 4 होना चाहिए। चलो सोल्यूशन देख लेते हैं। या क्या बोल रहे हो भाई, क्या बोल रहे हो, कंफ्यूज कर रहे थे बेफालतू में। 2 था, आप तो मतलब देखो जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था तब झूठ बोलना था मुझे कंफ्यूज करने के लिए, ताकि मुझे सही आंसर ना दिखे। मैं बहुत क्लियर था यार कि 2 और 3 तो नहीं होना चाहिए। ऐसे मत करा करो यार कॉन्फिडेंस हिला देते हो आप लोग। चलो पहले 4 से जाएंगे, हमने उसको क्या करा था। सही बात है। इन्होंने बोला है कि एक स्पेसिफिक स्टडी के बारे में बोला था, तो उस स्टडी में सच डस्किन, अच्छा ठीक है, सही बात है। तो वो अगर ह्यूमन लंग को स्पेसिफिक गया था, तो अब ये हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, लंग कैंसर, ये थोड़ा ब्रॉड हो जाता। सही बात है। 1
ठीक है, सही बात है, 1 होना चाहिए। ओके, ऑल राइट गाइस, ठीक है। तो यार दोस्तों, अब देखो आइडियली अगर इसको मैं अटेम्प्ट करता, मतलब एनालिसिस करता, तो एनालिसिस थोड़ा लंबा जाता। लंबा क्यों जाता? उसका कारण था कि अभी मैंने सिर्फ गलत आंसर को देखा है। आपने ये भी देखा था कि बहुत सारे आंसर ऐसे थे जिसमें मैं श्योर नहीं था। तो आइडियली मुझे क्या करना चाहिए? जिन चीज़ों में मैं श्योर नहीं था उसको भी मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, उनको भी मेरे को पढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी मैंने नहीं पढ़ा है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो हमको करनी है, एक चीज़ जो आप रियलाइज़ करोगे, हमने शुरुआत में बात करी थी ना कि एक रूल है अपना कि 2 मिनट से ज़्यादा हम किसी पे नहीं देंगे। तो लेट्स डू दिस, लेट्स चेक कि क्या मैंने किसी क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज़्यादा दिए हैं क्या, एक्सेप्ट फॉर आरसी वाले, क्योंकि आरसी तो मैं पढ़ूंगा 2 मिनट से ज़्यादा। तो इस पर तो ठीक है, इस पर 23 सेकंड 24 सेकंड, ये यहाँ पर ये थोड़ा मैंने ना ज़्यादा समय ले लिया, मतलब यहाँ पे वेस्ट किया है मैंने टाइम, 1 मिनट 57 सेकंड, ये गलत बात करी है ना। इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर सकते थे। हाँ, इसमें बहुत समय भी लगा था, याद आ रहा है मुझे। अब 5 156 6 149, ये तो पड़ा होगा 50 23 11 1 से 30 से 40 3 28, ये पड़ा होगा। ज़्यादा समय लेके बिगाड़ दिया, कोई बात नहीं, ये गलत करा अपन ने। 1 18 वाला, इस पे अपन बात करेंगे, ये पड़ा होगा, कोई बात नहीं। आप देख रहे हो दोस्तों, अपने रूल से अपन, ये तो अपन किसी, ये क्या होता कि दिस हैज़ बिकम अ सेकेंड हैबिट नाउ। नहीं, आई रेड थ्रू एवरीथिंग उत्कर्ष, आई रेड थ्रू एवरीथिंग। चलो दोस्तों, अब दिस वॉज द ओनली थिंग दैट मस्ट कंसर्न मी कि ये यहाँ पे मेरा रूल वायलेट हुआ है 2 मिनट वाला। इसमें मैंने इतना समय लगा लिया था। मैं किस पे था ना, डी तो मैंने शायद एलिमिनेट कर दिया था। हाँ, मैंने इसको वापस पढ़ा था, इनफैक्ट ये गलत करा मैंने। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मेरे को ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। यहाँ पे एक जगह वायलेट हुआ। तो ये भी देखना यार आप दोस्तों कि आपके कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपने बहुत ज़्यादा समय लगाया है। आप नोटिस करोगे कि अगर आप सिर्फ ये हैबिट डाल लो ना कि मैं किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो इम्प्रूव होगा स्कोर, वो इम्प्रूव होगा। चलो कुछ क्वेश्चंस अब आपके एफएक्यू पे चलते हैं अपन, है ना। कुछ रेगुलर एफएक्यूज है, ये स्क्रीन में ख़त्म कर रहा हूँ और ये वाली विजिबल कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमन VARC एफएक्यूज, यस। चलो देखो, काफ़ी एग्जॉस्टेड सा फील कर रहा हूँ। आई बीन डूइंग दिस फॉर ओवर 2 आवर्स नाउ, है ना। मेरे को अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन है, उनके बात करते हैं। आप 1 मिनट दोगे? आई जस्ट चेक माई व्हाट्सएप ग्रुप रोधा का, इफ आई एम अलाउड टू एक्सटेंड दिस सो मच। Is anyone from Rodha watching this stream? Can you tell me if I can keep on doing this? कुछ स्ट्रीम की दिक्कत तो नहीं होगी? यार दोस्तों, हमें को कैसे पता चलेगा? ठीक है। अरे यूट्यूब पे एक बार ना कुछ तो था, इशू हुआ था। ठीक है, चलो कॉमन VARC FAQ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, तो आई एम श्योर कि ठीक ही है ना। यस, ऑल राइट दोस्तों, कुछ
आप लोगों के FAQs मैंने देखे हैं, ये हम एक साथ लिख लेंगे सारे FAQs और एक एक करके उनका आंसर देंगे. अटेम्प्ट वर्सेस, ये गलत पेन है तो कलर ही अलग होना चाहिए. नॉट नाउ. यस. अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी, स्कीमिंग वर्सेस एक्चुअल रीडिंग. ठीक है. और क्या क्या डाउट होते हैं आपको? हाउ डिड आई डिसाइड द सीक्वेंस, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है दोस्तों. मैंने अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, तो आप थोड़ा पहले देख लेना. और कुछ कॉमन FAQs हैं, स्पेसिफिक डाउट अपन बाद में ले लेंगे. चलो अभी इन दोनों क्वेश्चंस पे बात करते हैं, फिर एक एक करके मैं आपके डाउट्स भी ले लूँगा. ठीक है. यस. देखो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप में से कई सारे लोग पूछते हैं कि हाँ, अब मेरे को मैसेज आ गया है रोधा वालों का कि रैप अप करना है. ठीक है. दोस्तों, पहला, अटेम्प्ट वर्सेस एक्यूरेसी. शुड यू रियली गो फॉर अटेम्प्ट और शुड यू रियली गो फॉर एक्यूरेसी? प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, है ना. जब कोई बोलता है ना कि आप एक्यूरेसी पे फोकस करो, तो एक्यूरेसी पे फोकस करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होगा कि आप 2 मिनट से ज़्यादा दे दो. क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ पर 2 मिनट से ज़्यादा दे रहे होंगे, शुरुआत में मैं समझ सकता हूँ कि कुछ पैरा समरी को आपको पढ़ने में समय लग रहा है तो उस पर आप 3 मिनट दे रहे हो. बट अगर आप 2 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन पे रुके हुए हो तो आप क्या कर रहे हो? आपकी कोई एक्यूरेसी नहीं आ रही है, आप एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हो बस. ठीक है. तो हमको क्या करना है, हम अगर कोई टाइम्ड टेस्ट दे रहे हैं तो वी विल गिव इट इन द एग्जैक्ट वे जैसे कि हम कैट को दे रहे हैं. ठीक है. ऑल राइट. कि जैसे हम कैट को दे रहे हैं वैसे ही हम देंगे. तो एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे, अटेम्प्ट पे फोकस करेंगे, हम हमारी स्ट्रेटजी पे फोकस करेंगे, विच टेल्स अस कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ने के बाद, उसके ऑप्शन पढ़ने के बाद 2 मिनट से ज़्यादा उस पर नहीं बिताने. उसमें एक्यूरेसी नहीं आई तो क्या होगा, गलत कर दिया तो क्या होगा. तो गलत कर दिया तो उसके बाद हम हमारे एनालिसिस में देखेंगे और उससे सीखेंगे. ठीक है. लेकिन सिर्फ ये कोशिश करना कि मैं 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा और वो अच्छे से करूँगा, ये ठीक नहीं होगा. और इसमें क्या होगा कि बिकॉज कैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, परसेंटाइल दूसरे लोगों के ज़्यादा आ सकते हैं. साथ ही में कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैंने स्किम करा कहीं पे या मैंने एक्चुअली रीड करा. आई हैव रेड एवरीथिंग, है ना. मैं स्कीमिंग में विश्वास नहीं रखता हूँ और उसका सिंपल सा रीज़न है कि आप कितना भी स्किम कर लो, कितनी भी स्पीड रीडिंग टेक्निक्स यूज़ कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वो कैट वाले स्मार्ट हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे जो स्किम करने से आपको समझ में आ जाए. जब तक आप ऑथर का ब्रॉड पॉइंट नहीं समझोगे तब तक, है ना, ये प्लीज़ स्टॉप रनिंग बिहाइंड दिस टेक्निक्स. ये हैक्स होते हैं. स्कीम करना, स्पीड रीड करना, ये सिर्फ हैक है ना. यू शुड एम फॉर इंक्रीजिंग योर रीडिंग स्पीड. और हाउ डू यू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड? अगेन कोई हैक नहीं है. रीड एज मच एज यू कैन, टाइम्ड टेस्ट दो, है ना, एंड रीड कामली. ऑल राइट. तो एक्चुअल रीडिंग आपको करनी होगी, स्किमिंग नहीं करना है. अब देखो, ऑब्वियसली मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि मेरा VARC स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है. अगर आप मेरी जगह होते तो यहाँ पर क्या किया जा सकता था? क्या आप लोग यहाँ पे 2 RCs कर सकते थे अच्छे से और लेट से 4 VA के क्वेश्चन कर पाते? क्या ये डुएबल था? ये मुझे लगता है कि आराम से डुएबल था. और 2 RCs करने में अगर मान लो आपने ठीक ठाक एक्यूरेसी से किया होता, 8 क्वेश्चन होते, आपने 6 सही कर दिए होते, 2 गलत कर दिए होते, और यहाँ पे 3 सही कर दिए होते, 1 गलत कर दिया होता, है ना, और एक लेट से टीटा वाला गलत करा होता, तो आपका यहाँ पे स्कोर क्या आता? 18 - 2 16 और +9 25. तो 25 का स्कोर तो आ ही सकता था इस RC में, है ना. और ये मैं कब बात कर रहा हूँ? जब हम इसको कर सकते थे. और यहाँ से हमको बिल्ड करना है. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस फ्रॉम द नेक्स्ट सेक्शनल यू डू. आज ही इसके बाद एक सेक्शनल दे देना. और मेरे को पता है आपने सुबह से मैराथन अटेंड करी है,
तो आज शायद पॉसिबल ना हो, सुबह उठ के पहला सेक्शनल देना एंड यूज दिस स्ट्रेटजी। एंड देखो, आई डू नॉट क्लेम दैट दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है, ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है बिल्कुल भी नहीं है, इससे बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है, बट कोई भी एक फिक्स स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और उस फिक्स स्ट्रेटजी को हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट। आपने अगर नोटिस किया हो तो मैं हर जगह पूरे अटेम्प्ट में वर्बलाइज कर रहा था, बट क्या कभी भी हम अपनी स्ट्रेटजी से हटे? एट नो पॉइंट डिड वी स्ट्रे अवे फ्रॉम आवर स्ट्रेटजी गाइज। हम जो स्ट्रेटजी सोच के आए थे हम उसी स्ट्रेटजी पे रहे, एंड दैट विल ऑलवेज गिव यू बेटर रिजल्ट्स। तो स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है, लेकिन मॉक या सेक्शनल के बाद, उसके ड्यूरिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अब फटाफट क्या आप लोगों के जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आप लोग मुझे बता दो। जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस है एक एक करके स्पीड में जैसे करना है हम फटाफट उसको कर लेते हैं। कैन वी हैव सच मैराथन फॉर कॉन्स? डेफिनेटली होगी सर। हाउ डिड यू गेट सो गुड एट स्पीड एंड कॉम्प्रहेंशन एट द सेम टाइम? उत्कर्ष, ये हुआ ओवर टाइम रीड करने से, है ना। तो मैंने एक बार बात भी करी है क्लास में, 2021 में आई टुक अ टारगेट दैट आई रीड a certain minimum number of words every day before sleeping, and that I followed diligently, which I believe helped me a lot. Secondly, मैं CLAT करके एक एग्ज़ाम है उसमें पढ़ाता था, तो वहाँ पे आई यूज टू टीच क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, तो उससे ऑटोमेटिकली मैं इम्प्रूव हुआ। थर्डली, मेरा यूजी बैकग्राउंड लॉ में है, तो लॉ में यू टेंड टू रीड अ लॉट, नॉट दैट आई वाज अ ग्रेट स्टूडेंट जो बहुत पढ़ता था, मैंने काफ़ी मक्कारी करी है अपने लॉ में, लेकिन हाँ पढ़ाई को लेकर के, थोड़ा पढ़ने को लेकर के एक्सपोजर था उससे। तो ऑल ऑफ दिस, ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो मुझे थे, नॉट दैट कि मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है। सर 3 RC एंड VA क्वेश्चन हो जाते हैं विद इन टाइम, बट VA में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नव्या, ठीक है, तो क्या समझना है? जैसे आज मैंने जब एनालिसिस करा था नव्या, तो आपने देखा था ना कि मैं कोशिश कर रहा था ये समझने की मैंने गलती क्या करी है। और एनालिसिस कैसे करा था? पहले मैंने अपने रैशनल दिए गलत क्वेश्चन को कि मैंने क्यों मार्क किया है, व्हाट इज़ माई सेकेंड बेस्ट आंसर, एंड टर्न्स आउट मोस्ट केसेज में सेकेंड बेस्ट आंसर था, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखने के पहले थोड़ा स्ट्रगल करा मैंने उस क्वेश्चन के साथ, ताकि अगली बार से मैं गलती ना करूं। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं गलती ना करूं, मेरा पर्पस ये है कि मैं गलती ना दोहराऊं। सर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से ज़्यादा जार्गन हो तो ऑलमोस्ट 0% कॉम्प्रहेंड होता है, उसको कैसे डील करें? बिल्कुल सही बात है सौम्यजीत, मुझे भी कई सारे ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस था और वो कॉम्प्रहेंड करने में दिक्कत आई, ठीक है। तो एक उसके लिए वोकेबलरी करनी होगी, और दूसरा धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक्सपोजर लंबे सेंटेंसेस से बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका लंबे सेंटेंसेस से एक्सपोजर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप देखोगे कि आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली फील होगा, ठीक है। हाउ टू रीड, मनीष का क्वेश्चन है हाउ टू रीड, तो यार मतलब ये तो बहुत ब्रॉड क्वेश्चन हो गया, थोड़ा फिलोसॉफिकल हो जाएगा। देयर इज़ नो स्पेशल टेक्निक टू रीड। आप देखो, आज 22-23 साल के हो, 25 साल के हो, जितनी भी उम्र है आपकी, आप एक तरीके से पढ़ते आए हो, प्लीज़ उसको चेंज मत करना आप, है ना। तो जैसे आप पढ़ते आए हो उसी तरह से पढ़ते रहना, लेकिन ज़्यादा पढ़ोगे तो स्पीड तेज होगी। टेल अस हाउ टू एलिमिनेट द RC क्वेश्चन बाय यूजिंग द फैलेसीज ऑफ रीजनिंग एंड विल इट वर्क इन VA एंड CR क्वेश्चंस आल्सो? यस पीयूष, देखो इसका क्लियर ये होगा पीयूष कि फैलेसीज ऑफ रीजनिंग के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बट उन टेक्निक्स से ज़्यादा ये होता है कि अगर मैंने उस RC को अच्छे से पढ़ा है और मुझे समझ में आया है, तो मुझे ये तो पता है कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कॉन्ट्री जा रही है और मैं उनको एलिमिनेट कर देता। यानी कि जब भी आपने मुझे देखा होगा कि मैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के डाउटफुल था, तो मैं ये क्लियरली बता पा रहा था आपको कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। ये मैंने 2-3 बार बोला है ना। वो कैसे बोला है? क्योंकि मेरे को वो क्वेश्चन समझ में आया था और मेरे को रियलाइज़ हुआ था कि यार ये ऑप्शन तो रिलेट बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, तो ये ओवर टाइम प्रैक्टिस से आएगा, बट क्लियर रैशनल से आएगा। उसके लिए क्या करना होगा? हर बार एनालिसिस देखने जाओ, उसके पहले सोचना कि मैंने ये क्यों मार्क किया, अगर मार्क नहीं किया तो मैं क्या मार्क करता, और क्या मार्क करता तो उसका आपको ये देखना है कि अगर मैं ये मार्क करता तो मैं क्यों कर रहा हूँ मार्क। तो स्ट्रगल विद द क्वेश्चन, है ना, स्ट्रगल करना होगी आपको, और जैसे जैसे स्ट्रगल करोगे वैसे वैसे आंसर की आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। तो जब तक स्ट्रगल नहीं होगी तब तक हम एक्चुअल में कुछ सीखेंगे नहीं।
व्हाट शुड द टाइम फॉर रीडिंग द आरसी पैसेज। आरसी पैसेज का टाइम हर इंसान के लिए अलग होगा डिपेंडिंग कि आपकी स्पीड और कॉम्प्रहेंशन कैसा है, लेकिन कभी भी कॉम्प्रहेंशन को स्पीड के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अटेम्प्ट्स हाउ टू इंक्रीज, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे किया था आपने इतना तेज? यार ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने कैसे किया था, अगेन मैंने पढ़ा, मेरे को क्रक्स पैसेज का समझ में आ गया और उस हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन थे उनको एलिमिनेट किया था। आपके अनुसार कहाँ से पढ़ना चाहिए? देखो यार सेक्शनल टेस्ट दे दो, वो सबसे बेस्ट सोर्स होगा। पांचजन्य बिल्कुल। यार उत्कर्ष मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटेजी बताई हुई है। आयुष मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई है कैसे इंक्रीज करना है। सूर्यांश ये देखो धीरे धीरे इंक्रीज होगी एक्यूरेसी, है ना, इंक्रीज तो करना पड़ेगा। हाउ टू हैंडल डेंस आरसीज विद इन टाइम, टीजी का क्वेश्चन है कि डेंस आरसी को विद इन टाइम कैसे हैंडल करें। बहुत सिंपल सी चीज़ है यार कि धीरे धीरे पढ़ो उनको, है ना, मतलब दिस इज़ कॉन्ट्री टू एवरीथिंग पीपल से कि स्पीड रीडिंग करना है, नहीं करना है। डेंस है धीरे समझ में आएगा, स्लो पढ़ेंगे, ये समझेंगे पूरा। अगर आप नॉर्मल स्पीड से उसको पढ़ने की कोशिश करोगे नहीं आएगा समझ में। ये कमेंट में जल्दी पढ़ पा रहा हूँ, देन आई वाज एबल टू रीड द आरसी। शिखर देखो बहुत सारी चीज़ें कैसे इंप्रूव होगा स्कोर, अटेम्प्ट कैसे इंप्रूव होंगे, ये सब प्रैक्टिस से होगा। सुमित मैंने 2 बार कैट लिखा है, कैट 2022, कैट 2023, है ना। कैट 2024 में नहीं लिख पाया बिकॉज आई वॉज ऑन स्टूडेंट एक्सचेंज। कर दूंगा मनीष में शेयर। सुनील आरसी कैसे चूज करना है? रीडेबल आरसी, कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट टू रीड। देखो यार मैं जनरली फर्स्ट 2-3 लाइन पढ़ के देखता हूँ आरसीज की और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं कितना फेमिलियर फील कर पा रहा हूँ इससे, ठीक है। तो वो एक डिसीजन है जो आप लोगे बेसिस जब आप थोड़े दिन हो जाएंगे आपको कैट प्रिपरेशन में, तब आप डिसाइड करोगे ये। I end up 2-4 like always. I want to improve my understanding. Yes, Deepak, you can solve more. रोनक क्लैट मेरे समय ऑनलाइन होता था भाई। Manish, never compromise comprehension for speed. Can we do full sectional analysis in a separate session? कर सकते हैं यार, बट बहुत, क्योंकि इसमें देखो आई डोंट थिंक उतना इम्पैक्टफुल होगा। मतलब आई शुड रादर, बुदित बोल रहे हैं कि पूरे सेक्शनल का एनालिसिस कर सकते हैं, शायद मैं ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ आपकी DILR या क्वांट का सेक्शन, जहाँ पे मेरे को एक्चुअल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो DILR की मैं पजल नहीं बना पाऊँगा, तो वहाँ पे मैं सीख पाऊँगा ज़्यादा, तो वो एनालिसिस शायद ज़्यादा हेल्पफुल हो। आरसी करते करते एग्जॉस्ट हो जाते हैं, नेहा बिल्कुल होंगे, और इसके लिए हमको डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि वो हम हमारा स्टेमिना बढ़ा सकें, मेंटल स्टेमिना। एंड गाइस कैन यू प्लीज़ लाइक दिस स्ट्रीम, आई एम टोल्ड कि 11 लाइक और मिल जाएंगे तो वी विल हिट सम माइलस्टोन। रामतुआ फाउंडेशन बिल्कुल है यार, अभी वर्ड पावर में कर सकते हो। सौम्यजीत नॉर्मन लुइस मत करना, पोर्टल के एक सेक्शनल दे सकते हो। यस किड्स, आयुष दे सकते हो, देखो नुकसान क्या ही है, एक सेक्शनल मॉक खराब ही तो होगा, लग रहा है तो दे दो। ऑल राइट, और भी बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स हैं। आई हैव टू एंड दिस ऑल्सो एट सम पॉइंट ना, तो वी विल टेक द रिमेनिंग डाउट्स इन सम अदर सेशन गाइस। देखो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टुडेज मैराथन। आज जब रोधा ने ये मैराथन को सोचा तो उसके पीछे कई सारी चीज़ें उन्होंने सोची थी, और आई विल जस्ट टेक अ फ्यू मिनट्स टू टेल दिस थिंग्स टू यू, ठीक है। देखो सबसे पहले एक चीज़
जो हर एडुकेटर यहाँ पे करना चाहता था वो था कि आपको जो ये 114 बच्चे अभी तक बचे हुए हैं उनको ये पता हो कि वो भी 10 घंटे पढ़ सकते हैं। आज ये मैराथन लगभग सुबह की 10 बजे से शुरू हुई, हमने बीच बीच में कुछ ब्रेक्स लिए, लेकिन आप में से अधिकतम लोगों ने आज, कुछ लोगों ने 10 घंटे देखी, कुछ ने 11 घंटे देखी, जो होने वाले ऑलमोस्ट, है ना, कुछ ने 7 घंटे देखी। बट इससे आपको ये समझ में आया कि आप इतनी देर मेहनत कर सकते हो, मतलब स्टेमिना तो है आप में। आज हम साथ में कर रहे थे तो इसलिए करना थोड़ा आसान था, लेकिन आप अकेले भी करोगे तो होगा। आज आपने अपना VARC सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करा होगा अगर आपने ये सेशंस देखे होंगे। तो यही चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो और आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट द फैक्ट कि आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं साथ में, इज़ द पर्पस ऑफ द मैराथन। तो अब आपको डीमोटिवेट नहीं होना है ना, इट्स टाइम टू गेट दैट मोटिवेशन हाइट। 100 डेज बचे हैं कैट में और कैट हो सकता है अभी, क्योंकि आज आपने जितनी पढ़ाई करी है उतनी पढ़ाई आप रेगुलर कर लो, है ना, उससे थोड़ी कम भी रेगुलर कर लो, उसका 80% भी रेगुलर कर लो, तो यू विल बी एबल टू क्रैक कैट। एंड दैट वाज द कोर आइडिया ऑफ दिस मैराथन। ऑब्वियसली एक और आइडिया ये था कि आप VARC अच्छे से आपको समझ में आए, चीज़ें आप देखो, सेक्शनल का अटेम्प्ट कैसे होता है ये देखो, सब चीज़ें थी। बट सबसे बड़ा और सबसे प्राइमरी पर्पस था कि ये विश्वास हम सब में आए कि हम सबका कैट हो सकता है। और इस थॉट के साथ आई एम कॉलिंग दिस मैराथन क्लोज। थैंक यू सो मच गाइज, and we'll keep meeting at Rodha.